So good morning, future officers. Welcome to EduTap and welcome to your selection marathon session in which we are going to cover the most important reports, schemes and RBI notifications of the past 5 months for the examination point of view. So my dear friends, we all know that for your upcoming RBI Grade B officer examination, the reports, schemes and RBI notifications are one of the most important components, and these are one of the major pain points of the aspirants since past so many years. But let me tell you here, for all of you, so that we can help you in your journey of becoming the next RBI Grade B officer. We can help you in this journey by clearing all these kind of pain points and making sure that yes, you are ready for the upcoming examination. And let me tell you, my dear friends, that we are going to cover today the last 5 months of the reports, schemes and RBI notifications, and this is really the best opportunity for you, because if you are someone who has already covered all the important points from the previous months, that is from May to September 2025, but still you are having some doubts in your mind कि सर हमने कवर तो अच्छे से किया है, बट क्या हमें सब याद है या नहीं है, हमने अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज किया है, बट अभी तक हमने एनालाइज नहीं किया है, या हमने अभी तक चीजों को पढ़ा ही नहीं है। तो लेट मी टेल यू दैट आप जैसे सभी इस तरीके के एस्पिरेंट्स के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा for your examination. So guys, please give me a thumbs up in the chat box if I am audible and visible to all of you, so that we can start with the today's session. My dear friends, today's session is going to be very helpful for all of you from the examination point of view, and I'm waiting for a response in the chat box. Please make sure that you are giving me the answers in the chat box. So very good morning, Om Lakshmi, entrepreneur, Vijay Mehta, Shrishti, Dinab, Shrishti. Then we have Shubham, Radha and all other people who have joined us live today in this session. Guys, once again, a very good morning to all of you. Let's begin the session. And before starting the session, guys, you all know that we are EduTap have come up with the super weekend offers in which we are offering you savings up to 85% off on the various courses for your upcoming examinations. If you're preparing for the regulatory body exam like RBI, SEBI, NABARD, EDI, IFSTA grade A examination, guys, let me tell you that we are offering you the savings of up to 75% off. And in order to use this, you have to make sure you are using the Festival 75 code to avail this 75% off on these courses. Okay. Now, the most important thing is the validity, that this code is only valid till today. So make sure that you are making sure you are availing these discounts by today only. So my dear friends, it's really great to see such a number of people in the session. Let me tell you here that right now I will be starting with the reports. After that, we will be having RBI notifications taken by the Kritika ma'am, and then it will be followed by the schemes part, which will be taken by the Gurkirat sir. So before starting the session, please tell me in the chat box, how's the Josh? Are you guys ready for the today's selection marathon session, which is going to help you to be selected in the upcoming RBI Grade B officer exam and be the next RBI Grade B officer in year 2025. So very good morning, Subhashri, Grisha, Avantika, Rajnikant, Vijay, Deneb and all other people who have joined us live today. So guys, let's start the session, and we are starting with the reports. Let me tell you that the most important reports we will be covering through the MCQs. We will analyze, we will see that how we have to answer such kind of questions, what are the most important things. So let's start the session with the very first question on the screen. The first question from a very important report, that is India Rankings 2025. You have to identify which of the following statements are correct with respect to the India Rankings 2025. Guys, you all know that education is one of the very important pillar of the Indian economy. And for any economy across the world, it is very important for us to ensure that we are monitoring and assessing all the impacts, all the pillars of the education. And that is why we have this particular report. So good to see that, yes, the Josh is high, everybody is ready. So guys, let's kill the session. Let's kill all these questions. Let's see, make sure that we are going to be the next RBI officer this year. The first question on the India Rankings 2025 on the very basic dimensions. You all know whenever we are required to cover the reports, we have to cover it across the 5 important dimensions: releasing body, about section of the report, important rankings, recommendations and important findings. So let's start it. The first statement is on the releasing body, that is, it has been released by Department of Higher Education, Ministry of Education, and evaluates ranking higher education institutions in India. Second statement, this report was launched in 2006 with 1 category and then expanded to 9 categories and 8 subject domains. And the third statement is
National Institutional Ranking Framework launched in September 2015 by the Ministry of Education was used for the 2025 edition. So guys, quickly tell me in the chat box which of the following statements are correct from the examination point of view. And I can see here, I can see in the chat box that yes, most of the people are saying option D is the right answer. So guys, I'm giving you another option, another chance to give me the right answer in the chat box. People are saying option D is the right answer. Okay, so what is the right answer here? Right answer is not option D, guys. I told you from the start of the session, this session is a wake up call for you, whether you are watching this question correctly or not. क्या आप जोश जोश में होश तो नहीं गवा रहे दोस्तों? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट? इट सेज दैट इंडिया रैंकिंग्स वाज लॉन्च्ड इन 2006, बट वाज इट लॉन्च्ड इन 2006? नो, इट वाज लॉन्च्ड इन 2016, and that is why second statement is incorrect. So guys, you can see here that how we are required to attempt the question. Yes, excitement is really good, जोश is really good, but yes, यहां पर दिमाग का अच्छे से ध्यान रखना है, हमें पूरा प्रयोग करना है इसका, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे डेटा को चेंज किया जाएगा और आपके सामने एक चैलेंज आएगा जहां पर चीजें लगेंगी कि हाँ बिल्कुल सही है, बट नहीं गाइस, ऐसा नहीं होगा एग्जाम के अंदर. ठीक है, सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग द लर्निंग दैट वी हैव टू मेक श्योर वी आर वाचिंग द क्वेश्चन करेक्टली. बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, बट बिफोर दैट अगर हम बात करें वो 5 पैरामीटर्स अक्रॉस विच द इंस्टीट्यूशंस आर बीन रैंक्ड, इट इंक्लूड्स teaching, learning resources, research and professional practice, graduation outcome, outreach and inclusivity, and perception. So these are the 5 most important parameters on the basis of which all the institutions are being ranked under this particular part. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन फ्रॉम द सेम रैंकिंग, और इस बार आपके सामने क्वेश्चन है ऑन द रैंकिंग्स. तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर. यू आर हैविंग 30 सेकंड्स ऑफ टाइम टू गिव मी द राइट आंसर. बहुत ही छोटा क्वेश्चन है. लेट मी टेल यू दैट प्रीवियस पेपर्स में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था और इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना. सो लेट्स सी हु विल टेल मी द राइट आंसर. आईआईटी मद्रास हैज मेंटेन्ड इट्स फर्स्ट पोजीशन in the overall category for 7 consecutive years and is on the top in the SDG category. SDG category जो इस साल पहली बार शुरू की गई है इंडिया रैंकिंग्स 2025 के अंदर. सो नेक्स्ट पार्ट, आईआईएससी बेंगलुरु हैज टॉप्ड इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी. IGNOU holds the top position in the open university category. Let's see who will tell me the right answer to this particular question. Option B is the right answer. People are saying that 1 and 3. Why? What is the incorrect part in the statement number 2? It says IISc Bangalore has topped in the engineering category. Guys, when we talk about the engineering category, it is basically IIT Madras which is on the top, and not the IISc Bangalore, because IISc Bangalore has topped in the research institutions category, and that is why second statement is incorrect. Right answer is option B, that is 1 and 3. Don't worry, this will be corrected in the PDF. Okay, so yes, this is the right answer. बढ़ते हैं दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स की तरफ. देखिए आप इन ओवरऑल कैटेगरी अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि क्या वो तरीका है आपको याद करने का. So basically, please remember that you are remembering it in the way MBBDK. So this is the most important part. IIT Madras, IISc Bengaluru, IIT Bombay, IIT Delhi, and IIT Kanpur. These are the top 5 rankers, top 5 position holders in the overall category of India rankings. अगर हम बात करते हैं in terms of universities, तो IISc Bengaluru ने टॉप किया है. रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी IISc Bengaluru ने टॉप किया है. ठीक है, देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फॉलोड बाय मणिपाल. तो यहां पर सिर्फ टॉप परफॉर्मर का याद रखिए दोस्तों, आपको सिर्फ टॉप का याद रखना है. यहां पर टॉप 5 याद रखना है, बट इन द सब रैंकिंग्स बस टॉप परफॉर्मर को याद रखना है. इन द टर्म्स ऑफ कॉलेजेस, हिंदू कॉलेज इज ऑन द टॉप. इन टर्म्स ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, IISc Bengaluru इज ऑन द टॉप. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं SDG कैटेगरी के अंदर, तो IIT मद्रास इज ऑन द टॉप. देखिए दोस्तों, ये पहली बार इंट्रोड्यूस की गई इस साल, तो इसीलिए हमें टॉप 3 को अच्छे से कवर करना है फ्रॉम द SDG कैटेगरी. तो यहां पर आप देख सकते हैं मद्रास, दिल्ली एंड बॉम्बे, दीज आर द टॉप परफॉर्मर्स इन द SDG कैटेगरी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. आगे बढ़ते हैं. ओपन यूनिवर्सिटीज में IGNOU इज ऑन द टॉप, स्किल यूनिवर्सिटी में सिम्बायोसिस ऑन द टॉप, इनोवेशन में IIT मद्रास इज ऑन द टॉप. So these are the most important parts that we have to remember from examination point of view. I hope that yes, everybody is clear with this part. Absolutely right guys. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. तो देखिए कि जो लर्निंग्स हैं, छोटी छोटी लर्निंग्स को लेकर चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए एग्जाम में इसको कवर करना. तो टॉप 5 परफॉर्मर्स कौन से हमारे ओवरऑल कैटेगरी के अंदर? MBBDK. प्लीज इसको याद रखिएगा, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट.
IIT Madras, IIT Bengaluru, IIT Bombay, IIT Delhi and IIT Kanpur. These are the top 5 performers. बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट पे। सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको देखना है कि व्हाट इज द सेंट्रल टॉपिक। सेंट्रल टॉपिक इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सेकंड थिंग इज what is the demand of the question. We need to identify incorrect statements. The third thing is basically we need to analyze the keywords, identify which of them are correct and incorrect. So please tell me in the chat box which of the following is the right answer. Global innovation index is based on 2 sub-indices. What are these 2 sub-indices? We will be covering that in the upcoming part. It utilizes 78 indicators to assess innovation ecosystem. First statement is correct or not? It is correct. Second statement, innovation output sub-index is organized into 5 separate pillars. Second statement is not correct because it is not having the 5 separate pillars. It is the innovation input which is having the 5 separate pillars. So option statement 2 is incorrect. Third statement, it is released by World Intellectual Property Organization. Is this right or wrong? Yes, it has been launched in partnership with the Portulans Institute, and yes, statement 3 is correct. So right answer will be, we have to identify the incorrect statement. Let's see who has given me the right answer. To the question number 3, people are saying option B is the right answer. My dear friends, see again, make sure that what you are required to do, you are required to identify the incorrect statement, और आप मुझे आंसर दे रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। यही गलती करते हैं हम एग्जामिनेशन के अंदर, यही गलती हम एग्जाम के अंदर करते हैं दोस्तों। सो क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3? राइट आंसर इज ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। देखिए आप, इनोवेशन इनपुट के अंदर 5 सेपरेट पिलर्स हैं, इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन। इनोवेशन आउटपुट की बात करते हैं तो 2 सब पिलर्स हैं, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स, क्रिएटिव आउटपुट्स। तो ये 7 पिलर्स टोटल हैं, मगर यहां इनोवेशन इनपुट, इनोवेशन आउटपुट। सो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। आपने मुझे आंसर दिया करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। दोस्तों यही लर्निंग है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए सिलेक्शन मैराथन की जो भी गलतियां हैं आप आज के सेशन में कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद जब आप बैठेंगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर, वहां पर कोई स्कोप नहीं होगा गलती करने का, और वहां पर गलती से भी आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि इतनी लर्निंग आज के सेशन में आज हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, सो यस, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से ही आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए दोस्तों, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, बड़े इत्मीनान से देखिए कि क्या डिमांड है क्वेश्चन की क्या डिमांड है। इन करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है। अब करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, इस क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट है। बताइए मुझे, इंडिया की ओवरऑल पोजीशन 39th रैंक थी 2024 के अंदर और 38th रैंक है 2025 के अंदर। दैट मींस हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है। सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 मेजर इनोवेशन क्लस्टर्स इन द वर्ल्ड्स लिस्ट ऑफ टॉप 100 क्लस्टर्स। तो इंडिया के अगर हम देखें ग्लोबल इनोवेशन क्लस्टर्स लिस्ट के अंदर, तो इंडिया के 4 क्लस्टर हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, शेंजन, हांगकांग, ग्वांगझू of China top the GII 100 innovation cluster rankings. So this is right or wrong? This is absolutely right. ठीक है, so what is the right answer to the question number 4? People are saying option D is the right answer. Absolutely right. तो जैसे कि इंडिया ने इंप्रूव किया पिछले साल से इस साल, वैसे ही मैंने देखा कि सभी स्टूडेंट्स ने इंप्रूवमेंट की है फ्रॉम द पास्ट क्वेश्चन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि पिछला क्वेश्चन काफी लोगों का इनकरेक्ट था, बट हाँ इस क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया, दैट इज ऑप्शन डी। तो 4 क्लस्टर्स दोस्तों आप कौन से हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। तो याद रखिए ये भी काफी जरूरी है। 3 क्लस्टर एडवांस किया सिग्निफिकेंटली विद द इंक्लूजन ऑफ वीसी एक्टिविटी, दैट इज बेंगलुरु रोज टू 21st एंड टू 26 एंड मुंबई टू 46। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग से टॉप 5 रैंकर्स आपको बताना है कि कौन सी कंट्री टॉप 5 में परफॉर्म करती है, कौन सी कंट्री टॉप 5 से बिलोंग करती है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द राइट आंसर हियर टू दिस क्वेश्चन? यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अमंग द टॉप 5। तो टॉप 5 में कौन कौन सी हैं दोस्तों? यहां सारी कंट्रीज जिनका नाम दिया गया है सभी टॉप 5 का पार्ट है। सो ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। टू द क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन पे भी हम आते हैं आपको करना है सर क्वेश्चन नंबर दिस एंड व्हाट इज योर राइट आंसर। फॉर एग्जांपल यहां पर है राइट आंसर ऑप्शन ई, तो इस तरीके से आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए।
और साथ ही साथ आप अपने पास एक ब्लैंक पेपर भी लेकर रखिए, सो दैट इस सेशन के एंड में, क्योंकि 200 से ज्यादा क्वेश्चन हम यहां पर कराएंगे आपको, तो 200 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर है ये आपको बताएगा कि आपका अभी का प्रिपरेशन लेवल कितना है और आने वाले 13 दिन में आपको किस चीज पर काम करना है। सो यहीं से दोस्तों आपकी सिलेक्शन निकलेगी और यहीं से पता चलेगा आपको कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड ने यहां टॉप किया विद स्कोर ऑफ 66, फॉलोड बाय स्वीडन, यूएसए ऑन द थर्ड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ऑन द फोर्थ, सिंगापुर ऑन द फिफ्थ, एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया की रैंक थी 2024 के अंदर 39 और अब इंडिया की रैंक हो गई है 38 विद स्कोर ऑफ 38.2। तो 38.2 स्कोर के साथ इंडिया की रैंक है 38 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और इंडिया के टोटल कितने क्लस्टर थे? क्लस्टर वाली रैंकिंग में इंडिया के टॉप 100 में 4 क्लस्टर्स थे, जिनको हमने ऑलरेडी कवर किया आज के इस सेशन के अंदर। एब्सोल्युटली राइट, वेल डन। बढ़ेंगे अगले स्टेटमेंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मंथली बुलेटिन अगस्त 2025। दोस्तों देखिए, वैसे तो नॉर्मली आपके जो मंथली बुलेटिन से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मगर क्योंकि आपका पेपर अक्टूबर में है और सितंबर में इस रिपोर्ट को देखा गया और इसीलिए ये रिपोर्ट होती है आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो बताइए मुझे स्टेटमेंट के अंदर व्हाट इज द राइट आंसर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट में बताया गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सेकंड स्टेटमेंट में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, थर्ड स्टेटमेंट में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखते हैं कौन देगा इस क्वेश्चन का सही आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट नंबर 1, among the persons age 15 years and above जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन हुई है टू 5.1%। स्टेटमेंट 2, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 62.2% था इन अगस्त 2025। स्टेटमेंट 3, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट fallen for 3 consecutive months from 5.1% to 4.3% in August 2025। तो दोस्तों क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 6? Let's see who will give me the right answer. People are saying option D, some are saying option C, some are saying option B. So काफी कंफ्यूजन है, डोंट वरी, आपकी सभी कंफ्यूजन को कवर किया जाएगा आज के सेशन के अंदर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 6। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3। दोस्तों वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करते हैं तो ये हमारी 52% है, 52.2% ना कि 62.2%। तो दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बताते हुए हिंट भी दे दिया था एक कि ये वो कीवर्ड है जहां पर हमें फोकस करना है। ठीक है, और किस स्टूडेंट ने दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर? आई कैन सी मोस्ट ऑफ द पीपल वर सेइंग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हियर विष्णु, राहुल, गुरुराज, विष्णु, हर्षल, विजय, संचिता, so only these are the people who have given me the right answer to this question। guys जिसने दिया ऑप्शन सी मार्क कीजिए अपने लिस्ट के अंदर +1, और जिसने दिया था ऑप्शन डी अभी उनका है -0.25। देखिए you have to be responsible and accountable for your own dream of becoming the next officer in the Reserve Bank of India। इसीलिए आपको इंश्योर करना है कि ऑनेस्टली अपनी मार्किंग स्कीम को ना मेंटेन करके रखिए। ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में। देखिए दोस्तों, अच्छी चीज है कि जो सच है ना वो अभी समय से पहले ही पता चल जाए। प्रिपरेशन अच्छी है, स्कोर अच्छा है, दैट इज वेल एंड गुड। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, इसी मोमेंटम में रहना है। बट अगर स्कोर खराब आया है उसको एक्सेप्ट करना है। बट सी दिस इज जस्ट अ डायग्नोसिस, इससे खुद की प्रिपरेशन को जज मत करना, जस्ट एक एनालिसिस है कि किस पर काम करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग्स 2025 जिसको रिलीज किया आईएमडी ने। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दोस्तों क्यों हम इतनी करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को कवर कर रहे हैं आज? क्योंकि आपका स्टेमिना होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जब आप ऐसे क्वेश्चंस को सेकंड्स के अंदर सॉल्व करेंगे तो जो इजी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, हलवा क्वेश्चंस आएंगे, उनको तो आप ऐसे खत्म कर देंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपके सामने अगला सवाल है, प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर क्या है, कौन सी स्टेटमेंट है यहां पर इनकरेक्ट पार्ट। रैंकिंग इवैल्यूएट्स कॉम्पिटेंसेस for long-term economic value by assessing workforce growth, retention and attraction। Second statement, Iceland ने top position ली for the 10th consecutive year। Third statement, India has been ranked 63 while Mongolia was placed at the bottom at 69th position। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अलग अलग एरियाज के ऊपर ये क्वेश्चन है, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट पैरामीटर्स पर, सेकंड स्टेटमेंट टॉप परफॉर्मर पर, थर्ड स्टेटमेंट बॉटम परफॉर्मर और इंडिया की रैंक पर। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर? लेट्स सी हु विल टेल मी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज इट? पीपल आर सेइंग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली, जिन्होंने ऑप्शन डी आंसर दिया प्लीज मार्क +1 in your answer sheets। yes, you have answered me the question correctly।
दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ऑन द टॉप इट इज स्विट्जरलैंड, वहां पर दिया गया था आइसलैंड इज ऑन द टॉप। नो, इट्स नॉट द आइसलैंड, इट इज स्विट्जरलैंड ऑन द टॉप। Then Luxembourg, Iceland, Hong Kong, Netherlands, these are the top 5 performers in the world talent rankings, जो कि आपके डिफरेंट एरियाज के अक्रॉस आइडेंटिफाई करता है, लाइक इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कैसी, अपील कैसी है, रेडीनेस कैसी है, तो इन सभी के ऊपर आइडेंटिफाई करता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग्स 2025। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का क्वेश्चन ना, आज का सेशन है थोड़ा सा रैपिड फायर होगा, हमें कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, बट स्टिल सारे एक्सप्लेनेशन हम बहुत ही डिटेल में रखेंगे सो दैट कोई ऐसे डायमेंशन ना हो जहां से क्वेश्चन आए पेपर में और हम उसको कवर ना करें आज के सेशन के अंदर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वालिटी लाइफ इंडेक्स दोस्तों, जैसे आपकी स्टडी की क्वालिटी का पता चलेगा आज के सेशन में आपकी प्रिपरेशन कैसी है, उसी तरीके से हमारी एयर क्वालिटी कैसी है ये इस रिपोर्ट से पता चलता है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। सो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो। 3 statements are given. I try to identify which of them are correct here. So first statement released by Energy Policy Institute at the University of Chicago. This is right or wrong? This is right. Second statement, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉक्सिक एयर से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है ये इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया। सो एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस बाय एन एवरेज ऑफ 3.5 years, जहां malnutrition reduces life expectancy by 1.6 years. Third statement, Southern India is the most polluted region on earth with 544.4 million people of India's population living under severe air pollution. So what is the right answer? कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है बताइए चैट बॉक्स के अंदर। आपका क्वेश्चन था, आपको आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है, एंड यस ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो साउथ इंडिया नहीं है बल्कि नॉर्दर्न इंडिया है जो कि मोस्ट पोल्यूटेड रीजन है ऑन द अर्थ। एब्सोल्युटली राइट। So to the question number 8, right answer is option E, and I can see here that Nikita Vaibhav has given the right answer. Girvani, Ritesh, Shetty, Devyanshi, UPSC, Avantika, everybody has given the right answer. Well done my dear friends, hats off to all of you. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Before that, you can see the some other important details. So toxic air reduces life expectancy by an average of 3.5 years. यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसको compare करते हैं with the other diseases, with the other cause of concerns which are existing in our society, it includes malnutrition जो कि 1.6 years से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करता है। Then we have tobacco which uses by 1.5 years, unsafe water and sanitation जो कि 8.4 months से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ऑन एवरेज कम करता है। बट यहां पर सबसे ज्यादा किसकी बात है, वो इनविजिबल वेपन विच इज एक्टिंग अगेंस्ट अस ओनली। हम लोग जाते हैं दोस्तों गाड़ी में घूमने के लिए, राइट, बट पोल्यूशन कितना हो रहा है उससे, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है उससे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना होगा, 3.5 years हाईएस्ट फ्रॉम द टॉक्सिक एयर। उसके बाद दोस्तों नॉर्थ इंडिया आपका मोस्ट पोल्यूटेड रीजन है, दिल्ली एनसीआर वर्स्ट हिट एरिया है, बिहार हरियाणा और यूपी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी 5.6 years, 5.3, 5 years तक हमारी कम हो जाती है ड्यू टू द टॉक्सिक एयर। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू सी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एब्सोल्युटली राइट। बढ़ेंगे अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इज असेसमेंट ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया। सितंबर 2025 रिपोर्ट। तो अभी फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे और अमेजॉन की ग्रेट इंडिया फेस्टिवल में काफी लोगों ने बहुत कुछ मंगाया होगा, बट आपके पास सब कुछ टाइमली पहुंचा। क्यों? क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक्स इज रियली एट अ वेरी गुड लेवल, राइट। सो यहां पर दोस्तों उसी को हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि हमारी लॉजिस्टिक की कितनी कॉस्ट है, क्या स्टेटस है, कहां पर हम जा रहे हैं और क्या हमारा टारगेट है, ये हम पता लगाएंगे इस रिपोर्ट के अंदर। सो यहां पर आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। पहला स्टेटमेंट है, इसको रिलीज किसने किया, इस सर्वे को कंडक्ट किया नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया की एग्रीगेट लॉजिस्टिक कॉस्ट 24.01 लाख करोड़ है एट 23 to 24 प्राइसेस। टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात अगर हम करें, इट अकाउंट्स फॉर 7.97% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड 9.09% ऑफ नॉन सर्विसेज एग्रीकल्चर माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। सो क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। टू द क्वेश्चन नंबर 9, which of the following are incorrect? Let's see who will give me the right answer. So I can see to the question number 9, people are saying option D as the right answer. Some are saying option E, some are saying option C. Most of the people are saying option E. Yes, the people who have marked option E is the right answer. Guys, you have marked the question correctly because there is none of the statements which are incorrect here. That is why option E is the right answer to this question. देखिए दोस्तों बहुत जरूरी है एग्जाम में
अगर आपको सारी नॉलेज है मगर आपने करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच में डिफरेंस नहीं निकाला ना, तो कोई मतलब नहीं इसका। हमें सिर्फ ये जानना नहीं, एग्जीक्यूशन भी बहुत जरूरी है दोस्तों। ज्ञान होने के साथ उसका एग्जीक्यूशन होगा, तभी एग्जाम के अंदर वो आपके लिए इफेक्टिव साबित होगा। और इसीलिए हमें इंश्योर करना है कि ऐसे क्वेश्चंस की हम अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पार्ट की तरफ। Next question is on the Unified District Information System for Education Plus Report 2024-2025, and you need to identify the incorrect statements from those given below. So my dear friends, here we have to identify the UDAC Plus report. It is one of the very important report when it comes to the education. ठीक है, so education is really very important pillar, and we covered India rankings, and now we are covering the UDAC Plus report, a very important report which gives us the findings across the major important parameters which impacts the education system in our country. So here let's start. So the first statement is the UDAC Plus report. Who is releasing this report? Department of School Education and Literacy is releasing the report. It provides on the status of school education across the states and union territories. First statement is right or wrong? It is right. Second statement, for the first time since the inception of UDIC Plus, the total number of teachers crossed 1 crore mark. This is right or wrong? This is absolutely right. Next part is, it shows a rise of 16.7% compared to 22-23 level. Third statement is, the pupil to teacher ratio in the secondary level was 21, which is well below the national education policy's maximum of 30:1. So what is the right answer? To this particular question number 10, you have to identify the statement which is incorrect. Incorrect. Guys, again, please make sure you are focusing on the demand of the question. So people are saying to the question number 10, what is the right answer? What is the right answer? People are saying, some people are saying option B, some are saying option E. So people who have given me option E is the right answer. This is absolutely right, because option E is the right answer. Why? Because when it comes to this particular comparison from the 22-23 level, we have seen that it has not increased by 16.7%. Yes, it has increased, but by only 6.7%. and not 16.7%, and that is why the statement is incorrect. So yes, absolutely right. The people who have given answer option E is the right answer, please mark +1 in your answer sheets. Moving on to the next question. Next question on the same report, you have to identify which of the following statements are incorrect again. So first statement is, in 24-25, the number of the single teacher schools, that is those schools where only one single teacher is there and he's teaching each and everything in the entire school. So as a single teacher school, it fell by about 6%, and the zero enrollment schools are those schools which are empty. Nobody is going there, nobody is enrolling into that school. This is just remaining empty throughout the year. So these are the zero enrollment schools. So we just don't want that such kind of schools are there in our society, where there are a single teacher school or the zero enrollment schools. If the school infrastructure is there, teacher should be there, students should also be there, right? So declined by about 38%, both indicating positive progress. Second statement, girls enrollment increased to 48.3% in 24-25 compared to 48.1%. Gross enrollment ratio at the middle level declined to 89.5% in 24-25. At the secondary level fell to 66.5% in the same year. Which of the following are incorrect? You have to identify here to this particular question. Question number 11, what is the right answer? So do this particular question, what is the right answer? People are saying option E, some are going with option C. Guys, here option E is the right answer. Third statement is incorrect one, because the gross enrollment ratio improved with the middle level rising to 90.3% in 24-25. And when we talk about the secondary level, it increased to 68.5%. So that's why the statement is incorrect. Right answer is option E, that is 3 only. We need to identify the incorrect statements. Yes, most of the people have answered the question correctly. That is option E is the right answer. Absolutely right. So I can see in the chat box, Deneb, Stuti, Raghav, Prabisht, Salma, Pukit, Vabhav, Vijay, Nikita, Sujit, everybody has given the right answer. That is option E to this particular question. My dear friends, so you can see here the report we have already discussed. It has been released by the Department of School Education and Literacy under the Ministry of Education. Now when it comes to the pupil to teacher ratio, it is basically defined as the number of students which are there to one teacher
For example, right now in our session, guys, around 150 students are there, right? And I am here. Just one single teacher for all these 145, 150 students. So that means the pupil to teacher ratio is 150 is to 1. So basically, according to the national education policy, we just need to make sure that it is below 30, right? So you can see here in the foundational level, you can see that it is 10. In the preparatory level, it is 13. In the middle level, it is 17. In the secondary level, it is 21. Then infrastructure की बात करें हम, then the schools with the computer access, it has increased to 64.7%. School with internet facility, it has improved to 63.5%. So these are one of the very important data that we should retain, we should cover from examination point of view. Moving ahead, when it comes to the dropout rate, so many times we have seen that the students drop out from the previous year. So in the preparatory level, the dropout rate has reduced to 2.3%. In the middle level, reduced to 3.5%. In the secondary level, reduced to 8.2%. When we talk about the retention rate has been higher, and it has been highest in the foundational level at 68.9%. And when we talk about the gross enrollment ratio, we already covered. In the middle level, it is 90.3%. In the secondary level, it has increased to 68.5%. So these are the most important areas that we should remember, we should cover from the examination point of view from the UDISC plus report. I hope that these details are very much clear to all of you. Now let's move ahead to the next part. The next report here is the state of the food security and nutrition in the world. So the state of the food security and nutrition in the world report, which addresses high food price inflation. You need to identify which of the following organizations are responsible for the launch of this report, guys. Let me tell you that so many times in the examination, the examiner is testing you on the very first dimension of the report, that is the releasing body. And here the question is all about, you have to identify that which of the following bodies are responsible for the launch of this report. Guys, let me tell you here that these kind of questions can be asked in the exam, have been asked in the exam, and can be waiting for you in the upcoming examination when you will be sitting in the RBI Grade B officer exam phase 1 exam. So guys, please quickly try to tell me the right answer. People are saying option E. Yes, option E is the right answer. That is Food and Agriculture Organization, International Fund for Agriculture Development, United Nations Children's Fund, World Food Program, all of them are the part of this. So yes, option E, all of the above is the right answer to this question. Absolutely right. Next question from the same report, that is SOFI report. You need to identify the correct statements which are given here. So 4 statements are been given. You need to identify which of the following are correct. So first statement, in 2024, what was the level of the hunger? That hunger was reported to have affected 720 million individuals worldwide. Nearly 8.2% of the total global population. Second statement, largest proportion of undernourished population was in Asia, followed by Africa and then Latin America and the Caribbean. Third statement, it is estimated that 2.3 billion people were either moderately, severely food insecure during 2024. Fourth statement, by the year 2030, 112 million people projected to face chronic undernourishment. So which one of the following statements are correct here? Please tell me in the chat box. So some people are saying option E is the right answer. Some are skipping the question. Abhishek, Stuti, Divyanshi, Raghav, Jangani, Ujwal, Shrishti, Earthling, Nikita. Let's see. Yes, people are saying option E is the right answer. So we need to identify the correct statements. And yes, here guys, let me tell you that option A is the right answer. That is 1, 2 and 3 only. See guys, these kind of questions are being asked in the examination. So yes, later down the period, people have told me that option A is the right answer. Yes, the people who have marked option A, please mark +1, because in the option, you can see in the statement number 4, it says 112 million people. And I already marked this data for all of you guys. Why exactly we are focusing on these data? Because these are the data across which we have seen the questions being asked in the previous examinations. And that is why we have to make sure that we are able to see, identify, and analyze these keywords, these key data, facts and figures which can be tempered in the question in the upcoming examination. Okay, so here you can see the 512 million people are projected to face chronic undernourishment. That is why fourth statement is incorrect. Right answer is option A. So guys, when it comes to the India related data, this report mentions that when it comes to the wasting, so it is India leads globally. Over 21 million children are affected due to the wasting. When it comes to the stunting, then 37.4 million of the children are suffering from stunting. Anemia की बात की जाए तो 203 million total, which is highest in Asia, 4th globally.
And when it comes to undernourishment, it affects 172 million people in India. India is the largest number of undernourished globally, and 42.9% cannot afford healthy diets. Guys, when exactly the food insecurity comes in our society, for example, you are having, right, after 1.5 hours, you will be having some 10 minutes for your lunch, right? So basically, guys, let me tell you here that when you are not even able to afford your lunch, or when the lunch is available but you're not able to access it, or when it takes an example that you are having everything but again you are not able to consume it. So basically these are the different factors which are responsible for the food security. If all of them are tick, if the food is affordable, accessible to all of you, that means that yes, you are in the food security. But when any of the impact is there, then you are in the food insecurity. Globally, India की बात करें तो India ranked 48 out of 204 countries in the terms of undernourishment. Undernourishment के मामले में India 48th position पर आता है. ठीक है? I hope this is clear to everyone. So Srishti, it's just a practice and practice due to which these people are able to identify these key details in these questions from the examination point of view. If you are also practicing it, you will see also that in the upcoming timeline you will be able to identify these patterns in your preparation. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. So toward resilient and prosperous cities in India is the next report. We need to identify correct statements. So the next question is on the towards resilient and prosperous cities in India. You need to identify the correct statements as per the below report. So please tell me in the chat box what is the right answer. What is the right answer to this question? The first statement is the report is released by World Bank along with the Union Ministry of Housing and Urban Affairs. Second statement, India's urban population will get almost double to 951 million by 2050 and then 1.1 billion by 2070. By 2050, India needs investments exceeding $2.4 trillion for low carbon infrastructure in the urban areas of the country. So my dear friends, to the question number 14, what is the right answer? Let's see who will give me the right answer to this question. So what is it? To the question number 14, yes, option D, 1, 2 and 3 is the right answer. So all these statements are correct. 1, 2 and 3 is the right answer to this question. So in 2020, you can see that the cities hosted 1/3, that is 33% of the national population, around 480 million people. अगर हम बात करें इंडियंस की जो रिसाइड करते हैं अर्बन एरियाज के अंदर, इट इंक्रीज 6-fold ओवर द लास्ट 60 years फ्रॉम 1964 टू 2024. तो देखिए दोस्तों, 60 years के अंदर 6x हमारी अर्बन पॉपुलेशन हो चुकी है. ठीक है, 2030 तक 70% जो नई एम्प्लॉयमेंट होगी ये हमारी अर्बन एरियाज के अंदर ही बनेगी. आई होप दिस इज क्लियर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया को 144 मिलियन न्यू होम अर्बन होम्स चाहिए, more than doubling the current housing stock. So देखिए दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा that there is the migration of the people from rural areas to urban areas, which we call urbanization, right? So basically, as the people are moving from rural areas to urban areas, we need more jobs in the urban areas, we need good homes in the urban areas so that these people can go there, stay there, live there. For all of that, we need some investments, we need some work to be done in the background for the creation of the infrastructure, and that is why this is really very important. Moving ahead, consider the following statements regarding annual survey of industries. Identify the correct statements from those given below. So my dear friends, annual survey of industries, it basically identifies the different parameters in the industries, that how exactly the job creation is getting placed there, कितना आउटपुट है, कितना इनपुट है, so कितने लोग वहां पर काम करते हैं. तो इस सारी चीजों को हमने एनालाइज किया with the annual survey of industries. Now you need to identify which of the following statements are correct here. First statement, so guys, I am just giving you 20 seconds to read all these statements. So 3 statements are being given, just you have to skim through these keywords. What are the keywords here? Annual survey of industries, Ministry of Statistics and Program Implementation, industrial performance for the period April 23 to March 24. These are the keywords from this statement 1. Second statement, gross value added increased by 31.89%, output 5.8%, and input 4.71%. Third statement, Gujarat ranked first in terms of fixed capital, Tamil Nadu ranked first in terms of persons engaged. So what is the right answer? Which of the following statements are correct here? To the question number 15, what is the right answer among these 3 statements? Which of them are following? So people are saying option C, that is 1 and 3 is the right answer. Yes, what is the incorrect part in the statement number 2?
So I've already marked it for all of you. What is the right answer? The right answer is option C. That absolutely right. Now what is the incorrect part? Here it is not 31.89%. When we talk about the gross value added, it is basically at 11.89%. तो ये 11.89% increase हुआ है and not the 31.89%, and that is why the statement is incorrect and the right answer is option C. Absolutely right. So here guys you can see when we rank the states and when we rank the different kind of sectors, तो ये हमारी टॉप परफॉर्मर्स आते हैं. अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज की, सो यू ऑल नो दैट इंडिया इज रियली हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. तो यहां पर फूड प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी. तो फूड प्रोडक्ट्स इज हैविंग द टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में अगर फूड प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है तो वहां पर सबसे ज्यादा वर्कफोर्स भी काम करेगी. So that's a total persons engaged is also highest in the food products. Now in terms of fixed capital, basic metals is on the top, and in terms of output also basic metals is on the top. After that in the gross value addition, again basic metals is on the top. So guys यहाँ पर आपको क्या याद रखना है when it comes to the different sectors of food products? Due to the high population in our country, we need more number of factories for the food products, and more factories means more number of people engaged in these particular factories. So that's why just remember food products in the number of factories and the number of people. When it comes to the top 5 states, it accounts for 54% of the manufacturing GVA and 55% of total employment in the manufacturing sector. When it comes to the total number of factories, my dear friends, you have to remember, see, earlier it was the food product, right? So now when it comes to the states which is having the total number of factories, so basically Tamil Nadu is on the top. And again, क्योंकि number of factories ज्यादा है तो number of workers भी यहीं पर सबसे ज्यादा होंगे. तो यहाँ पर number of workers में persons engaged में भी Tamil Nadu is on the top. But when it comes to the basic metals, sorry, fixed capital, Gujarat is on the top, and in the output also Gujarat is on the top. When it comes to the gross value added, यहां पर दोस्तों एक चेंज आया, that is Maharashtra is on the top. तो यहां पर हमने इस रिपोर्ट के सभी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को with this explanation and with the question we have already covered it in a very detailed manner. I hope कि आप सभी को ये समझ आ गया है, and I hope that you guys have understood that okay where exactly you did the mistake in attempting this question and what are the different points you need to take care of in such kind of question, right? Now let's move ahead to the next question. Next question from the State Energy Efficiency Index 2024. You need to identify incorrect statements. So my dear friends, when it comes to the State Energy Efficiency Index, you all know that we need to make sure that yes, we are maintaining our energies very well, we are using our energies very efficiently. So क्योंकि अगर energy efficiency नहीं होगी तो क्या होगा? There will be leakage of energy. इससे क्या होगा? लोगों को एनर्जी की कमी होगी और एनर्जी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. When it comes to energy, I mean the electricity consumption is also increasing, right? So basically this is something that we are talking about. तो अब आप मुझे बताइए, as we all know that energy efficiency is really very important. We assess the energy efficiency being adopted by all the states and UTs in our nation. So that's why we have State Energy Efficiency Index. The first statement is it is released by BEE and AEEE, that is Bureau of Energy Efficiency and an Alliance for Energy Efficient Economy. So इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया. Second statement, it classifies states and UTs into the 4 performance categories, that is front runner, achiever, contender and aspirant, with front runner scoring above 60%. Now the third statement, among the top performing states, Andhra Pradesh led in group 1 while Tripura in group 2. So my dear friends, you need to identify which of the following statements are incorrect here. To the question number 16, most of the people have mentioned option E as the right answer. Yes, absolutely right. Option E is the right answer. So in the top performers, Maharashtra is on the top. Guys, I already told you when we were discussing this report in the session, the CT 360 session, I told you that see, जब अभी दोस्तों इंडिया ने एशिया कप जीता, राइट? आप सभी ने देखा होगा. तो इंडिया ने एशिया कप जीता, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन द फाइनल्स, राइट? सो बेसिकली व्हाट वाज द हेडलाइन इन द हिंदी न्यूज़पेपर्स कि इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल्स में मात दी, राइट? तो ऐसे ही स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी के केस में कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने मात दी है, ये हमें याद रखना है. MAAT. M stands for Maharashtra, A stands for Andhra Pradesh, A stands for Assam, and T stands for Tripura. So these are the top 4. These are the top performing states in the respective groups, that is group 1, 2, 3 and 4. I hope that you guys are able to retain it. Yes, most of the people are saying math is the right answer. Absolutely. So इसी तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, मात किस स्टेट ने दी है उनका नाम भी मात ही है, ठीक है? आई बिलीव कि आप सभी को याद रहेगा स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स. बढ़ते हैं यहां पर अपने
और क्लासिफिकेशंस की तरफ. सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, the front runner is that which is scored more than 60%, achiever ka 50 to 60%, contender 30 to 50%, aspirant is having less than 30%. Okay, when it comes to the top performers, I told you that these are North states. So on the top, Maharashtra, then Andhra Pradesh, then Assam and Tripura. This is the right answer. So in more than 15 million tons of oil equivalent, we are having this, right? Then 5 to 15 MTOE, we are having Andhra Pradesh, then Assam, then Tripura. That is the right answer. I hope guys this is clear to everyone. Absolutely right. Now guys, before moving on to the next question, I would like to tell you here another important part कि देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको चैलेंज कर रहे हैं आज के सेशन के अंदर. ठीक है, लेट मी टेल यू हियर दैट अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक फाइनल टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, और आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने बहुत ही वेरिड सोर्सेस से इधर उधर से बहुत चीजें पढ़ी, बट अभी रिवीजन का एक अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा, और साथ ही साथ हमें टेस्ट करना है कि क्या हमें हर चीज याद है, वेदर वी आर एबल टू retain all the important parts, whether we are able to analyze all the important parts. So guys, for those aspirants who are basically little bit lost in terms of the revision part, let me tell you that we at EduTap has come up with the ultimate test series. Ultimate test series दोस्तों हमने आप सभी के लिए लॉन्च की है, जहां पर हम आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर बूस्टर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द क्विजेस which will help you to identify that okay, what are your weak areas, what are your strength areas, on what areas you need to work upon. So make sure कीजिए अगर आप एक ऐसे aspirant हैं. So basically I am just telling you this to help you out so that you guys are not lost and your preparation, your revision is in the right direction from the examination point of view. Okay, now let's move on to the next part. Next part is the National Annual Report and Index 2025 ऑन द वुमेन्स सेफ्टी, क्योंकि नारी की सेफ्टी के ऊपर इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया, इसलिए इसका नाम है नारी इंडेक्स. अब आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करनी है. 3 स्टेटमेंट्स हैं, जल्दी से फटाफट इनकी कीवर्ड्स को एनालाइज कीजिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर चैट बॉक्स के अंदर. लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. सो यू आर हैविंग 30 सेकंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. So my dear friends, to the question number 17, let's see who will give me the right answer. So first statement, Nari 2025 report release कौन करेगा? National Commission for Women and surveyed women across 31 cities. Second statement, national safety score was benchmarked at 55% and all India average was much above than this benchmark, that is at 64.6%. Third statement, safest cities में कौन से cities हैं? Like कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर. तो गाइस ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है which of the following are correct here. So you need to identify to the question number 17 what is the right answer. So you need to identify incorrect statement. So what is it? The right answer is option E, that is 2 only. Why? Because when it comes to the benchmark was not 55, it is 65%. And India's score is slightly less than the benchmark score at 64.6%, and that is why the second statement is incorrect. Right answer is 1 and 3 are correct, but we need to identify incorrect statement. So that is why option E is the right answer. And to this question number 17, I can see here Earthling, Prabhat, Stuti, Bhavesh, Dena, Britesh, Surya, Mukund, Harshal, Girvani, Raghav, Shetty, Sunrise, Mayank, Sandeep. Everybody has given the right answer to this question number 17. That is option E. Well done guys. बढ़ते हैं अपने next report की तरफ, next question की तरफ. From the same report, we need to identify now the correct statements from those given below. 3 statements are given. Please quickly go through and tell me the right answer. To the question number 18, 60% of the women surveyed felt safe. Second statement, perceptions of safety drop sharply at night, especially in the public transport, recreational spaces, जहां educational institutions में उन्होंने बताया कि 66% safe during the day. So यहां पर देखिए दोस्तों, बहुत ही जरूरी है, सुरक्षा बहुत जरूरी है, हर एक इंडिविजुअल का एक ह्यूमन राइट है उसकी प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, राइट? एंड दैट इज व्हाई यहां पर वी ऑल नो दैट व्हेन इट कम्स टू द वुमेन, सो वुमेन आर नॉट फीलिंग सेफ, एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग नारी इंडेक्स व्हिच हैज बीन रिलीज्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू नारी इंडेक्स. थर्ड स्टेटमेंट है वर्क प्लेसेस, जहां पर 91% ने बोला कि रिपोर्टिंग दैट दे फील सेफ इन देयर वर्कप्लेस एनवायरनमेंट. अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है टू दिस क्वेश्चन, एंड यस द राइट आंसर हियर इज option C, that is 1 and 3. Why? Because perception of the safety drops sharply at night.
ये बिल्कुल सही दिया गया था दोस्तों, बट यहां पर लिखा है कि 66% सेव करती है। नो, 86% ऑफ देम feel safe during the day in these institutions, and that is why second statement is incorrect, and right answer is option C, that is 1 and 3 is the right answer. Absolutely right, all the people have given option C as the right answer. Well done. बढ़ते हैं next question पे. Next question is comprehensive modular survey education 2025. You need to identify correct statements from those given below. See guys, today we covered the India rankings, we covered the UDIC plus rankings, but now we need to understand about that. Yes, ओके हमारे स्कूल्स अच्छा काम कर रहे हैं, बट हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं वहां पर फॉर द चिल्ड्रन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर पर हाउस होल्ड इज देयर ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन, राइट? सो इन ऑर्डर टू असेस दिस वी आर हैविंग दिस CMS survey, that is comprehensive modular survey. So here the three statements are being given. You need to identify the correct statements. So first statement is on the releasing body, that is Ministry of Statistics and Program Implementation, as a part of 80th round of the National Sample Survey, focus on household expenditure of students in the school education. Second statement, government schools accounted 55.9% of the total enrollments, जबकि rural share की बात की जाए तो वहां पर 66% था, higher than the urban share of 30.1%. That means government schools में total आप देखेंगे तो 55% है, right? मगर अगर आप देखेंगे अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में, तो रूरल एरियाज में लोग ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज. क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में है प्राइवेट स्कूल्स जहां पर लोग जाना प्रेफर करते हैं. So that is the second statement. Third statement, 95.7% of the students reported paying course fees compared to 26.7% in the non-government school. Guys, ये जो चीज है कोर्स फीस, जब आप गवर्नमेंट स्कूल में होते हो तो कोर्स फीस आपकी इतनी ज्यादा नहीं होती, बट प्राइवेट स्कूल्स में ए फी, बी फी, सी फी, डी फी, ई फी, राइट? बहुत सारी फीस होती है. सो बेसिकली द स्टेटमेंट, व्हेन इट कम्स टू द स्टेटमेंट, इज इट राइट और रॉन्ग? This statement is absolutely incorrect. Right answer is option A, that is 1 and 2 only is the right answer. Why? Because when it comes to the students in the government schools, they only give 26.7% of them give the course fees, and 95.7% of the non-government schools are paying the fees, right? So that is why the statement is incorrect. Right answer to the question number 19 is option A. Moving ahead, you can see that 1.2% students reported that the government scholarships were their first major source of the funding for school education. तो स्कूल एजुकेशन के लिए 1.2% जो लोग हैं हमारे, उनकी फंडिंग यहाँ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप से जाती है. और सेकंड स्टेटमेंट है हाउस होल्ड पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट स्कूल, इट वाज लो, averaging to it 6.3 compared to 25,002 in the non-government schools. तो दोस्तों ये आपका हाउस होल्ड पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यस, एब्सोल्युटली राइट. सो बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. सो right now we are on the 20th question. Please tell me the right answer as per the new insights from the Unified Payment Interface Data Report. दोस्तों इस रिपोर्ट को रिलीज किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने. आपको आइडेंटिफाई करना है what is the name of the bank which leads the UPI remittances with 5.2 billion transactions and Dash emerged as the top beneficiary member according to nearly 8 billion transactions. तो देखिए दोस्तों, रेमिटेंसेस के मामले में और ट्रांजैक्शंस के मामले में, दोनों के मामले में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 20. आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बैंक है जो यूपीआई रेमिटेंस में टॉप पर है और कौन सा वो बैंक है जो कि टॉप बेनिफिशियरी मेंबर है. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है इन दिस क्वेश्चन. तो द क्वेश्चन नंबर पीपल आर सेइंग ऑप्शन सी. सो हियर गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. एसबीआई इज ऑन द टॉप इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस. When it comes to the top beneficiary, it is the Yes Bank. Absolutely right. इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ कवर करनी चाहिए कि एवरेज डेली वैल्यू देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की इंक्रीज फ्रॉम 75,743 to 80,919 करोड़ इन द मंथ ऑफ जुलाई. अगर हम बात करते हैं उस स्टेट की जिसने लीड किया है पेमेंट्स के केस में, तो वहां पर महाराष्ट्र है. महाराष्ट्र इज द राइट आंसर with 9.8% in the digital payment share, और फोन पे was the leading UPI app. तो आजकल दोस्तों आप जाते हैं किरियाना स्टोर पे जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो आप यूपीआई करते हैं. तो ऐसे लोग जो कि यूपीआई करते हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो ऐप यूज हुआ दैट वाज द फोन पे ऐप. तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं. जल्दी से मुझे बताइए 20 क्वेश्चन में आप में से किस स्टूडेंट का कितना स्कोर आया, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स के अंदर. 20 क्वेश्चन आर डन, राइट? So I would say that 33% of the reports part is done. What is your score till now in this particular session? Please tell me in the chat box. So yes, it is really very important that analysis is also there. ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस हमने किए हैं दोस्तों, और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अराउंड 41 क्वेश्चंस और हैं रिपोर्ट से. उसके बाद हम कवर करेंगे आरबीआई नोटिफिकेशंस.
Kritika ma'am will be taking it and then Gurkira sir will take over for the schemes. ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एंड तक बने रहे इस सेशन के अंदर. And here I can see the scores of the so many students. So most of them are basically relying around 60 to 70%. ठीक है, तो 60 to 70% तक लोगों का स्कोर आ रहा है अभी. ठीक है, so that means दोस्तों जिनका 60-70% है, इसको 80-90 तक कैसे लेकर जाना है, ये आपको ये आज का सेशन बताएगा. कहां पे कौन सी गलती की, कौन सा डेटा जो मुझे याद नहीं हो रहा, कौन सा डेटा जो मैं भूल जा रहा हूं, कौन सा डेटा मैंने अपने माइंड में गलत फीड किया था. तो ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है इस सेशन के अंदर. एंड गाइस दैट्स हाउ दिस सेशन इज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ यू कि हम अभी तक बहुत कुछ पढ़ रहे थे. हमने मई किया, जून किया, जुलाई किया, अगस्त किया, सितंबर किया, बहुत कुछ किया, मगर कितना याद है. अगर वहां से क्वेश्चन आएगा तो वहां से क्या हम आंसर कर पाएंगे, ये चीज भी कवर करनी बहुत जरूरी है और ये पता चलेगा सेशन के अंदर. ठीक है, डोंट वरी, अगर आपने सितंबर में नहीं पढ़ा था, डोंट वरी गाइस. सो बेसिकली यहां पर सितंबर और अगस्त दोनों की ही हमने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को कवर किया है. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. बट यस, आई कैन सी हियर दैट आज आपका स्कोर कम है, बट इन द अपकमिंग सेशन जब हम लेंगे तो वहां पर आपका स्कोर डेफिनेटली एक बहुत अच्छा और शानदार स्कोर होगा. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. एज पर द टॉप ब्रांड 2025 टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स लिस्ट, टॉप ब्रांड यूनियन ने जिसको रिलीज किया, आपको बताना है कि कौन सी कंपनी है जो कि वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है. Which company is the world's most valuable brand? Please quickly tell me in the chat box what is the right answer to this question. So what is the right answer? Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet. Guys, this is a halwa question for all of you. And yes, the right answer to this question is option C, that is Microsoft. So Microsoft is on the top, followed by Nvidia, then Apple, then Amazon and Alphabet. So these are the top 5 performers. These are the top 5 most valuable brands in the entire world. याद रखिए दोस्तों, Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon and Alphabet. Just इसको ऐसे याद रखिए, MNAAA. मेजर चांसेस होंगे कि आपसे यहां पर टॉप परफॉर्मर ही पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर. बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ. अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द टॉप सिटी ग्लोबली. और अगर हम बात करते हैं इंडियन सिटीज की, तो इंडियन सिटी से कौन से सिटी ने टॉप किया. देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ टॉप परफॉर्मर नहीं, इंडिया के रेस्पेक्ट में भी जो इंफॉर्मेशन है उसको भी कवर करना बहुत जरूरी है. तो यहाँ इंडिया में से किसने टॉप किया, वर्ल्ड से किसने टॉप किया, ये आइडेंटिफाई करना है. टू द क्वेश्चन नंबर 22, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ज्यूरिक एंड दिल्ली. अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज द ज्यूरिक ऑफ स्विट्जरलैंड ऑन द टॉप. देन वी हैव ऑस्लो, जेनेवा, दुबई एंड अबू धाबी. दीज आर द top 5 cities ranked in the top city globally. Then when it comes to India, Delhi is on the top, followed by Mumbai, Hyderabad, Bengaluru. That is the right answer. ठीक है, so that's how we need to remember it in terms of. अगर हम बात करते हैं टॉप ग्लोबल सिटी, तो देखिए दोस्तों, इसका नाम है ज़ुरिक, which is on the top. From India, it is Delhi, which is on the top. Absolutely right. This is the right answer. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स. दोस्तों अभी हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, राइट. तो ऐसे कौन से सिटीज है, ऐसे कौन से सिटीज है जिन्होंने रियली बहुत अच्छा काम किया इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो ये क्वेश्चन है, पता चलेगा इस रिपोर्ट से. ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स, आपको बताना है वो कौन सा सिटी है विच इज ऑन द टॉप, विच इज रैंक्ड एज द टॉप एआई सिटी ग्लोबली, और वो कौन से वेंडर्स हैं जो इन एआई एक्टिविटीज को ड्राइव कर रहे हैं इन दीज एआई सिटीज. तो बेसिकली 2 डायमेंशंस पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि across the world which cities on the top, and then which are the vendors which are driving the activities in this part. So here the city which is on the top is Singapore, and the vendors are, when it comes to the vendors, these are Microsoft and Google. So Microsoft and Google is the right answer. So Singapore is on the top in terms of AICT, followed by Seoul, Beijing, Dubai and San Francisco. ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं वेंडर्स की, तो Microsoft and Google is the right answer. और दोस्तों हमने अभी बात की थी कि वो टॉप ब्रांड, द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अक्रॉस द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रांड यूनियन रिपोर्ट, दैट वाज व्हिच ब्रांड, दैट वाज माइक्रोसॉफ्ट ओनली. माइक्रोसॉफ्ट वाज ऑन द टॉप हियर. ठीक है, फॉलोड बाय एनवीडिया. तो माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया एंड एप्पल वर द टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ द ब्रांड यूनियन रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट. एब्सोल्युटली राइट. तो दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Moving to the next question. Next question is on the India Electric Mobility Index, which is released by Niti Aayog. You need to identify correct statements from those given below. तो दोस्तों आपको नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. हम बात करते हैं इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स की. यू ऑल नो दैट Indian government is really focusing on the electrification of the vehicles, right?
they are really promoting the electric vehicles in our culture. So basically आपको identify करना है, उसी के basis पर ये report है. You need to identify the correct statements. Statement number 1, releasing body is Niti Aayog, and this is first of its kind tool to track and benchmark the progress of states and union territories. Second statement is Indian state और UTs को evaluate करता है across the 16 indicators under the 3 core themes. वो 3 core themes क्या है? ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन. तो दोस्तों जब हमने इस रिपोर्ट को डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था व्हेन वी वर टेकिंग द रिपोर्ट सेशन, राइट, एंड व्हेन वी वर टेकिंग द सिटी 360 सेशन. नाउ यू नीड टू टेल मी देयर दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट है कि कौन सी स्टेट्स आपके फ्रंट रनर है. लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा आर द फ्रंट रनर. और अगर हम बात करें दिल्ली और महाराष्ट्र की, दे वर इन द परफॉर्मर्स कैटेगरी. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? So here to this particular question, option A is the right answer. Why? Because third statement is incorrect. When it comes to the front runners, these are not the Karnataka, Tamil Nadu and Haryana. These are just the performers. When it comes to the front runners, these are Delhi, Maharashtra and Chandigarh. These are the front runners in terms of electric mobility index. So electric mobility index released by the Niti Aayog, a very important organization. And here absolutely this is the right answer. आप देख सकते हैं वो 3 core pillars are ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस. देखिए दोस्तों, जब हमारा रिसर्च अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो सबसे पहले हमें रिसर्च पर काम करना है. उसके बाद हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा. देन वी विल बी वर्किंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम किया जाएगा. सो दीज आर द 3 themes across which the states and UTs are being assessed by the Niti Aayog in the India Electric Mobility Index. Moving ahead, फ्रंट रनर्स की बात करें तो दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ आर देयर. परफॉर्मर्स में कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा आर देयर. रेस्ट इन द एस्पिरेंट्स कैटेगरी ऑफ द स्कोर ऑफ 0 to 49. So these are the top performers in the India Electric Mobility Index, which has been released by the Niti Aayog. Absolutely right. I hope this is clear. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. So my dear friends, the Swachh Sarvekshan Ranking Report 2024-2025 released by Minister of Housing and Urban Affairs, a very important report. Now you need to identify here which of the following statements are correct with respect to this particular part. देखते हैं दोस्तों क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर. So you need to identify the statements which are correct here. Please don't see this. Don't see here. Just see the question and then try to answer the question, right? First statement, 2024-25 edition is the 9th edition of Swachh Sarvekshan exercise, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया टू बेंचमार्क सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स अक्रॉस सिटीज. सेकंड स्टेटमेंट, दिस ईयर द सर्वे वाज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर थीम. व्हाट वाज द थीम? द थीम वाज रीप्ले, रिप्लेनिश एंड रिसाइकिल. थर्ड स्टेटमेंट, 4, 5, 8 and urban local bodies actively participated in the survey. So what is the right answer? What is the right answer to this part? So absolutely right to the question number 25. The statements which are correct here are 1 and 2. 1 and 3, sorry, which are correct. The statement number 2 is incorrect. Why? Because the theme is mentioned incorrectly. It is not replay, replenish and recycle. It is reduce, recycle and reuse. This is the right answer to the question number 25. Option B is the right answer. Absolutely right. तो किसने दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर? So Deneb, Praful, Nikita, Bhavesh, Mukund, Salil, Sunrise, Stuti, Sanchita, Girvani, Avantika, everybody has given the right answer, guys. Well done. Hats off to all of you that yes, you have given the right answer. This is one of a very important reports that we need to cover from examination point of view. Swachh Sarvekshan rankings. बढ़ते हैं इस report के अगले question के ऊपर. Next question, you need to consider the following statements and identify the correct statement from the Swachh Sarvekshan rankings. So here, you need to identify what are the recent changes which has taken place in this year report. Statement number 1. सिटीज को ग्रुप किया गया 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज के अंदर, फ्रॉम वेरी स्मॉल टू द मिलियन प्लस सिटीज. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट, सुपर स्वच्छ लीग को इंट्रोड्यूस किया गया इस साल टू ऑनर सिटीज दैट कंसिस्टेंटली एक्सेल्ड इन द अर्लियर सर्विस. देखिएगा, बहुत ही जरूरी है, जो पर्सन, जो सिटी, जो स्टेट, जो कंट्री लगातार अच्छा काम कर रहा है एक पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर, तो उसके लिए एक अलग लीग भी होनी चाहिए, राइट. एक अलग लीग जहां पर उसको प्लेस किया जाए एज द ऑनर की ठीक है आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. बट पहले क्या होता था कि बस रैंकिंग में टॉप किया, दैट्स इट. बट इस बार क्या किया इस रैंकिंग ने कि स्वच्छ, सुपर स्वच्छ लीग को शुरू किया उन सिटीज के लिए जो कि ऑलरेडी काफी सालों से एक्सेल कर रहे हैं इस एरिया के अंदर. थर्ड स्टेटमेंट, प्रयागराज was recognized as the best Ganga town in the 24-25 rankings. So let's see who will give me the right answer. You need to identify correct statements here. To the question number 26, what is the right answer?
What is the right answer to this? People saying option D as the right answer. Yes, option D is the right answer. 1, 2 and 3 are correct. So दोस्तों, this report was released by Ministry of Housing and Urban Affairs. This is one of the very important report that we need to cover from examination point of view. So this report serves as a powerful tool to evaluate and compare sanitation standards. This report is the 9th edition and the first edition was launched in 2016. अब देखिए हमने कवर किया था कि टोटल 5 कैटेगरीज के अंदर इन सिटीज को डिवाइड किया गया. Starting from the population less than 20,000, then 20 to 50,000, 50 to 3 lakh, 3 lakh to 10 lakh and more than 10 lakh. So these are the top 5 population categories in the part of this report. यहाँ पर in the bottom, so आप देखेंगे less than 20,000 में किसने टॉप किया? पंचकनी, पतन, पन्हाला, बिश्रमपुर एंड बुधनी, then वीता, शाश्वत, देवलाली एंड दंगरपुर, the New Delhi Municipal Corporation, तिरुपति, अंबिकापुर एंड लोनावाला, नोएडा, चंडीगढ़, मैसूरू, उज्जैन, गांधीनगर और इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा. तो देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ क्या याद रखना है? आपको मोर देन 10 लाख वाला ही याद रखना है, क्योंकि इन सबके नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है. तो सिर्फ याद रखिए कि टॉप परफॉर्मर कौन है इन द टॉप कैटेगरी, दैट इज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs. व्हाट आर द सिटीज व्हिच आर ऑन द टॉप? दैट इज इंदौर, सूरत, नवी मुंबई एंड विजयवाड़ा. एब्सोल्युटली दिस इज द राइट आंसर. ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं स्वच्छ शहर की, तो स्वच्छ शहर के अंदर आप देखेंगे मोर देन 10 lakhs के अंदर अहमदाबाद इज ऑन द टॉप, भोपाल इज ऑन द सेकंड पोजीशन, लखनऊ इज ऑन द थर्ड पोजीशन. सो ABL इन द टॉप कैटेगरी दैट इज ऑफ more than 10 lakh, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ आर ऑन द टॉप. 3 लाख टू 10 लाख के अंदर मीरा, बयानदार, बिलासपुर, जमशेदपुर इज ऑन द टॉप. और नीचे वाली दोस्तों सबको याद नहीं करना, आप सिर्फ रैंक 1 को याद रखिए. ठीक है. टॉप कैटेगरी के अंदर टॉप 3 को याद रखिए, बट इन द रिमेनिंग कैटेगरी जस्ट रिमेंबर द टॉप परफॉर्मर, दैट इज मीरा, बयानदार, देवास, पणजी एंड बिल्हा. दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, एब्सोल्युटली राइट. और सिकंदराबाद कैंटोनमेंट को मिला है बेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड फॉर इट्स सैनिटेशन एफर्ट्स. तो देखिए दोस्तों, आपकी सिंगल स्लाइड से, एक सिंगल क्वेश्चन से, सिंगल स्लाइड से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ द रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड. इट्स डन एंड डस्टेड एंड आई बिलीव most of you have given me the right answer to all these questions. Moving ahead to the next part, let's move ahead to the Sustainable Development Goals National Indicator Framework Progress Report 2025. So this report has been released to understand about the Sustainable Development Goal progress in our country, and now you need to identify the statements which are incorrect with respect to this report. So 3 statements are given. The proportion of men, women and children living in poverty declined from 24.85% in 2015-16 to 14.96% in 2019-2021. So guys, you guys have basically required to make sure that you are giving me the answers in the chat box. Make sure कि आपकी participation रहनी चाहिए सेशन के अंदर, क्योंकि अगर participation नहीं रहेगा दोस्तों तो ये सेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं होगा. ठीक है. तो पार्टिसिपेशन रखिए और देखिए, अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं लगातार, चिंता करने की कोई बात नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एक डायग्नोसिस है दोस्तों. ये आपका एक, आपको यहां से अपनी परफॉर्मेंस को जज नहीं करना है, बिल्कुल भी कोई जज नहीं करेगा. ठीक है. सिर्फ डायग्नोस करना है कि क्या गलती मैं कर रहा हूं जिस पर काम करना चाहिए और अपने एग्जाम के लिए मैं खुद को और बेहतर तरीके से तैयार कर सकूं. तो स्टेटमेंट नंबर 1, proportion of men, women and children living in poverty declined from 24.85 to 14.96%. Second statement, population covered by social protection is 64.3% in 2025. Gross value added in agriculture per worker was 24,110 in 24-25. You need to identify the incorrect statement. तो incorrect statement क्या है? Incorrect statement है option E, that is statement 3, that is option E is the right answer. क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे दोस्तों, gross value added per agriculture worker, that is not 24,000, it is 94,110 in 24-25, and that is why the statement is incorrect. And I can see in the chat box, Mayank, Girvani, Tanushri, Earthling, Sunrise, Vijay, Meena, Prabhat, Utkarsh, Ujjwal, Avantika, Mukund, Shrishti, everybody has given the right answer. Well done my dear friends. So these are the most important things that we need to remember. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. From the same report on the same dimensions, but this time you need to identify the correct statement. So यहाँ पर demand of the question has got changed, but the report is same. The dimensions are also almost the same, but yes, the data is being changed here. Now you need to identify on the gross enrollment ratio for the tertiary education improved to 29.5% in 22-23. Second statement, rural population
uses improved drinking water source increased to 99.62%. The proportion of household electrification stood at 92% in 24-25. guys, अगर हम देखें इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरा अचीव कर लिया है। और अगर हम बाकी स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो दे आर ऑलरेडी करेक्ट। सो व्हाट इज द राइट आंसर? यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। So it is, what is the right answer? The right answer is option C, that is 1 and 2 only. Why the third statement is incorrect? क्यों? क्योंकि ये हम already पूरा अचीव कर चुके हैं। Absolutely right. So Deneb is saying that sister, it's difficult to cover this report, lot of data. Yes, why Deneb? That is the reason that I have brought here the most important data only for the examination point of view, so that आप उस डेटा को कवर करें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सारा डेटा याद करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, बट मैक्सिमम कौन सा डेटा है जो हम देख सकते हैं विच आर रियली ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी नीड टू टेक श्योर that we are taking the required action to cover that particular data. Okay, so इसी तरीके से हमें इसको कवर करना है देने। Okay, and for all the people, so guys, अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था और ये आइडेंटिफाई करती है व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री in the sustainable development goals that we want to achieve by 2030. There are 17 sustainable development goals जिनको हम 2030 तक अचीव करना चाहते हैं, तो वहां पर हमारी क्या प्रोग्रेस है ये वो रिपोर्ट बताती है। अगर हम बात करते हैं सोशल प्रोटेक्शन की, तो पहले 22% था 2016 में, अब ये सोशल प्रोटेक्शन हमारी 64.3% है इन 2025। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन कवर्ड बाय अ मोबाइल सेलुलर नेटवर्क, so this population has increased from 97% to 99.28%. अगर हम बात करें neonatal mortality rate की, that is per 1000 live birth, so basically this neonatal mortality rate has reduced from 25 to 19. और दोस्तों neonatal mortality rate क्या है? It is the number of children who lost their life within the first 28 days of their life per 1000 live birth. तो मान लीजिए कि अगर 1000 live births हुए, तो उसमें से अगर मान लीजिए 25 children lost their life in the first 28 days of their life. So basically this is 25 is the neonatal mortality rate of the country. So right now you can see the number is 19. That is the right answer. Okay, absolutely right. Well done guys. बढ़ेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की थी। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पहले क्या होता था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर इतना फोकस नहीं था गवर्नमेंट का, बट अब गवर्नमेंट ने फोकस करना शुरू किया है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं, क्या वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए हमने लॉन्च किया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट 2023-2024. So this was the second edition of the report. You need to identify which of the following statements are correct with respect to the northeastern region district sustainable development goals index. So the first statement, it is released by Niti Aayog and Ministry of Development of Northeastern region. Second statement, Nathial district of Mizoram scored highest in the region with 81.43 points. Wahi Longding district of Arunachal Pradesh was the lowest with 58.71 points. So these two statements are absolutely right. Moving to the third statement, all districts in Mizoram, Sikkim and Tripura achieved front runner status. तो सभी ने front runner status को achieve किया है from the Mizoram, Sikkim and Tripura. So which of the following statements are correct here? Right answer is option E, that is 1, 2 and 3. All of them have basically are been mentioned correctly in this particular part. Absolutely right guys. This is absolutely the right answer. देखिए दोस्तों, बहुत ही जरूरी है ये रिपोर्ट को हमें कवर करना और इसके डिटेल्स को कवर करना। तो नाथियाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम इज ऑन द टॉप, और अगर हम बात करेंगे ऑन द बॉटम इट इज लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट, दैट इज ऑन द टॉप। तो इसको कैसे आ सकते हैं? हाथी इज ऑन द टॉप, हाथी ऑफ मिजोरम इज ऑन द टॉप, राइट। और लॉन्गडिंग कौन है? जिसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, ऑफ अरुणाचल प्रदेश, विच इज एट द बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, और इन डिस्ट्रिक्ट्स को दोस्तों 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, दैट इज अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेंट। दीज आर द 4 कैटेगरीज इन विच दे आर बीन डिवाइडेड। एंड जब हम बात करते हैं टॉप 5 परफॉर्मर्स की, so these are Nathial, Champhai, Gomati, Mokokchung and West Tripura. So these are the top 5 districts in this particular northeastern region Sustainable Development Goal Index, जिसको रिलीज किया नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज बहुत ही ध्यान से देखिए, आप सिर्फ 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने कंसिडर किया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन
डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि दो गोल्स को हमने एक्सक्लूड किया। दीज टू गोल्स आर गोल नंबर 14 एंड 17। तो इसके ऊपर भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। आई एम मार्किंग द स्टार हियर। तो गोल नंबर 14 और 17 को हमने एक्सक्लूड किया, बाकी 15 गोल्स को कंसीडर किया गया इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑन द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी। आपके सामने दोस्तों तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट स्टेटमेंट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो रही हैं, किस एरिया में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, दैट इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई हियर, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द डिजिटल इकोनॉमीज। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई across the different timelines, across the different dimensions, what are the right answers. So first statement, इसको रिलीज किसने किया? यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, ग्लोबल एफडीआई 11% से डिक्लाइन हुआ है टू रीच $1.5 ट्रिलियन एंड दिस इज द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द ग्लोबल एफडीआई। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया की रैंक है 25th इन द 2024 और इंडिया ने इंप्रूवमेंट की है फ्रॉम 36 इन 2023 विद द इनफ्लो ऑफ $28 बिलियन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई रिपोर्ट कवर करते हैं, यहां पर इंडिया की क्या रैंकिंग है, इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, ये कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा सही इन द स्टेटमेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर? द स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। व्हाई? क्योंकि इंडिया की रैंकिंग यहां गलत है। इंडिया ने दोस्तों 16th से 15th पोजीशन पर इंडिया आया है। ठीक है, तो लास्ट ईयर इंडिया 16th पे था और अब 15th पर आया है, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इंडिया की रैंक 16th नहीं, इंडिया की रैंक 25 नहीं 15 थी 2024 के अंदर, और उससे पिछले साल 16 थी। एंड दैट इज व्हाई टू दिस क्वेश्चन यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड, international investment in the digital economy, you need to identify what is the name of the country which is ranked first among the top home economies of FDI outflows. अभी दोस्तों हम बात कर रहे हैं FDI आउटफ्लो की। FDI आउटफ्लो में टॉप होम इकोनॉमी कौन सी है? और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, while India was placed at rank dash in 2024 from 23rd position in 2023. तो बेसिकली 2024 में इंडिया की रैंक यहां पर क्या थी और कौन सा कंट्री टॉप पर था? So what is the right answer to the question number 31? Yes, it is United States which is on the top and India's rank is 18 in the 2024. So दोस्तों ये है आपकी टॉप होम इकोनॉमीज ऑफ FDI आउटफ्लो। देखिए दोस्तों, ये रिपोर्ट हमें दो चीजें बताती है। ये एक हमें बताती है कि FDI आउटफ्लो और एक बताती है इनफ्लो। तो इनफ्लो के केस में भी यूएस इज ऑन द टॉप बट इंडिया इज ऑन द 15th पोजीशन। ठीक है, लास्ट ईयर 16th पे था इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो, इस साल 15th पोजीशन पर है। और एफडीआई आउटफ्लो के अंदर इंडिया 18th पोजीशन पर है और यूएसए इज ऑन द टॉप इन बोथ दीज काइंड ऑफ कैटेगरीज। चाहे इनफ्लो की बात करें चाहे आउटफ्लो की बात करें, यूएसए इज ऑन द टॉप इन बोथ ऑफ देम पार्ट्स। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2002 2023, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करेगा? दोस्तों बात हो रही है मैटरनल मोर्टेलिटी की। ठीक है, सो बेसिकली मैटरनल मोर्टेलिटी के केस में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करेगी? देखिए दोस्तों, मोर्टेलिटी की बात हो रही है, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल बी देयर, राइट। देन अब मदर्स से चिल्ड्रन हमारे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, सो बेसिकली एंड वी हैव सीन दैट सो मेनी टाइम्स मदर्स पासेस अवे व्हाइल गिविंग बर्थ टू द चिल्ड्रन। सो यहां पर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड विल आल्सो बी देयर। देन अब जब चिल्ड्रंस आर टेकिंग बर्थ तो उससे क्या होता है? पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड विल आल्सो बी देयर। Then we need some money to raise the children, right? So basically the World Bank Group and Department of Economic and Social Affairs will also be there. So right answer is option E, that is all of the above. To the question number 32, as all these organizations are there which works for the releasing of trends in maternal mortality ratio 2002 2023. Absolutely right. Now moving ahead. From the same report, the next question is, what was the maternal mortality ratio in India per 1 lakh live birth showing an 86% decline since 1990? तो 1990 से इंडिया का एमएमआर जो है वो रिड्यूस हुआ है। कितना रिड्यूस हुआ है ये हमें बताना है, और ग्लोबल लेवल पे क्या रिडक्शन हुआ ये भी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए दो चीजें हैं। सबसे पहले हमने कवर किया इसकी रिलीजिंग बॉडी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इंडिया के अंदर एमएमआर कितना कम हुआ और ग्लोबल लेवल पर कितना कम हुआ। एंड वी कैन ऑल्सो basically analyze that okay whether India is in the right direction or not. क्या इंडिया के अंदर रिडक्शन ज्यादा है as compared to वर्ल्ड, ये हम देखेंगे इस क्वेश्चन से। So to the question number 33, right answer is option C, because 80% is the MMR in our country.
अगर हम बात करते हैं रिडक्शन की ऑफ द एमएमआर इन द ग्लोबल लेवल, इट वाज एट 48%. तो याद रखिए 80% इन इंडिया, 48% in the world, that is the global reduction in the maternal mortality ratio. Absolutely, this is the right answer. Next question. Next question is on the management effectiveness evaluation for 2020 to 2025, which was released by Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So you need to understand that which of the following statements are correct with respect to this particular report. Management effectiveness evaluation, which is released by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, और यहां पर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेट है जिसने टॉप पोजीशन सिक्योर किया. Only one to receive very good rating here in this part. Then Chandigarh was the top performer among UTs, while Ladakh was the only region which has been classified as poor in this report. And the third statement is Eravikulam National Park and Dachigam National Park were identified as lowest scoring protected areas. तो लोएस्ट स्कोरिंग प्रोटेक्टेड एरियाज में आपके 2 पार्क्स हैं. इसके अलावा चंडीगढ़ टॉप पर है और लद्दाख आपका पुअर रीजन है, और केरला वो इकलौता स्टेट है जो कि वेरी गुड रेटिंग के साथ टॉप पर था. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं. सो हियर राइट गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर. व्हाई? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द दिस पार्ट, सो यू कैन सी हियर that Kerala was followed by Karnataka, Punjab and Himachal Pradesh respectively in descending order, all of which were received a good rating. ठीक है? So basically this is the right part. I hope this is clear to all of you. So we were required to identify the correct statements here, right? So दोस्तों यहां पर अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, तो ये हमारे लो स्कोरिंग प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं है, बल्कि हमारे हाई स्कोरिंग प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. और this is the reason that why the third statement is incorrect and absolutely right. थर्ड में दोनों टॉप पे थे. बिल्कुल सही जवाब मुकुंद कुमार, आपने दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 2 ओनली. सभी स्टूडेंट्स ने सही दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर. वेल डन गाइस. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2025, जिसको वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया था. Global Findex database, guys, you all know that financial inclusion is really very important across the world, जहां पर we are trying our best that we are bringing people under the umbrella of formal banking system, leading to the financial inclusion in the country. और इसी regarding एक रिपोर्ट आई जिसका नाम है Global Findex Database 2025, कनेक्टिविटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द डिजिटल इकोनॉमी. आपको आइडेंटिफाई करना है दोस्तों कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. सो देयर आर 3 स्टेटमेंट्स. प्लीज गो थ्रू द स्टेटमेंट्स, ट्राई टू गिव मी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स. What is the right answer to this question? तो दोस्तों 3 स्टेटमेंट्स हैं. ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस सबसे पहले 2011 में लॉन्च हुआ, उसके बाद इसको पब्लिश किया गया 11, 14, 17 और 21 में. Why exactly such kind of statement is given? Because they can test you across these lines in the examination. Second statement, 2025 एडिशन डिजिटल कनेक्टिविटी ट्रैकर को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे मोबाइल टेक्नोलॉजी के एक्सेस और यूजेज को हम आइडेंटिफाई कर सके. दोस्तों आपके पास मोबाइल होता है हमेशा, राइट? काफी लोगों ने मोबाइल से ज्वाइन किया होगा सेशन को, काफी लोगों ने किया होगा अपने लैपटॉप से, किसी ने किया होगा टैब से. तो आपका इंटरनेट एक्सेस कहां जा रहा है, कहां आप ज्यादा यूज कर रहे हो, कौन से एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज करते हो, तो ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है इस रिपोर्ट के जरिए. थर्ड स्टेटमेंट, ग्लोबली कितने एडल्ट्स हैं जिनके पास अकाउंट है? 79% जिनके पास बैंक में अकाउंट है, मोबाइल मनी प्रोवाइडर और बोथ, which is up by 28 percentage points since 2011. Let's see who will give me the right answer to this question number 35. Which of the following statements is or are correct here? Let's see who will tell me the right answer. Yes, option E is the right answer. All of them are absolutely right here. So 79% adults are having the bank account with the bank, mobile money provider or both of them. 2025 एडिशन में डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस किया गया है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर भी ये रिपोर्ट फोकस करती है. किसने रिलीज किया? वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया. आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम द सेम रिपोर्ट वी आर हैविंग अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन. Now you need to identify incorrect statement. तो 3 statements आपको दिए गए हैं. Try to identify which of the following statements are incorrect. My dear friends, you are having 30 seconds only to go through these statements. If we see as per the latest trend of the examination, we have seen that the statement based questions are also been asked in the exam. And अगर आप 40 सेकेंड्स के अंदर दोस्तों आंसर कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो डेफिनेटली इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है? तो 40 सेकेंड्स आर द ऑप्टिमम टाइमलाइन टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड योर टाइम इज अप. नाउ लेट्स मूव अहेड. 2024 के अंदर 60% ऑफ एडल्ट्स
in the developing economies saved in financial account, which marked a 16% point increase in the 2021. सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया के अंदर अकाउंट ओनरशिप है वो 50 परसेंटेज पॉइंट से इंक्रीज हुई है, रीचिंग 89%, 88.7% बैंक्स के अंदर है, 23.1% मोबाइल मनी अकाउंट्स के अंदर है. थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया के अंदर 16% ऑफ द अकाउंट ओनर्स हैव इनएक्टिव अकाउंट्स और वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबली कंपेयर टू जस्ट 4% इन द अदर लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज. देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे जब जनधन योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था तो अकाउंट्स तो खुलवा दिए गए, बट काफी लोगों ने अपने 4-4, 5-5, 6-6 सालों तक उस अकाउंट के साथ कुछ किया ही नहीं. ना ही कोई वहां पर विड्रॉल हुआ, ना ही कोई डिपॉजिट हुआ, मनी, नथिंग वाज देयर. सो दैट्स व्हाई दीस वर द इनएक्टिव अकाउंट्स. When it comes to these statements, which of the following are incorrect? Right answer is option A only, which is the incorrect one. Why? Because 40% of adults in the developing economies saved in the financial accounts and not the 60%. 60% ने नहीं बल्कि 40% ने savings की थी, and that is why this is incorrect part to this question on the global fintech database 2025. I hope that most of you are able to answer this question correctly. बढ़ेंगे अब अपने अगले question की तरफ. Next question is on the economic impact trend report released by the World Travel and Tourism Council. World Travel and Tourism Council report आई है recently by the economic impact trends report. आपको आइडेंटिफाई करना है which of the following not belong to the group of top 5 largest global travel economies. तो global travel economies में वो कौन सी कंट्री है जो कि टॉप 5 में नहीं आती है. टॉप 5 को याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा रिसेंटली जो हमने ट्रेंड देखा वहां पर टॉप 5 ऐसे इंटरनेशनल रिपोर्ट से पूछे जाते हैं और इसीलिए आप बताएंगे यहां पर कौन सी कंट्री यहां पर नहीं है. देखिए दोस्तों, बहुत जरूरी है क्वेश्चन को समझना. क्वेश्चन देखिए, डज नॉट बिलोंग लिखा हुआ है. अगर बिलोंग लिखा होता तो एक अलग नजरिए से क्वेश्चन को देखना होता, बट डज नॉट की बात हो रही है, दैट मींस दिस इज द राइट पार्ट. ठीक है, तो यूएसए इज देयर, राइट, जर्मनी इज देयर, राइट, यूके इज देयर, राइट, जापान इज देयर, राइट. सो विच वन ऑफ देम इज नॉट देयर? इट इज रशिया विच इज नॉट देयर. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. एब्सोल्युटली राइट. आप देख सकते हैं यूएसए इज ऑन द टॉप, followed by China, Germany, Japan, UK. So these are the top 5. And when it comes to India, India की पोजीशन है दोस्तों यहाँ पर 8. In the terms of the top 5 largest global travel economies, India is on the 8th position. याद रखिए दोस्तों, बाकी कुछ रहे याद ना रहे, इंडिया की पोजीशन याद रखना बहुत जरूरी है. India was on the 8th position. Earlier India was on the 10th position, but this year India was on the 8th position in this particular ranking. Absolutely right. Next question from the same report, but on the different lines. Which of the following statements are incorrect? अब हम बात कर रहे हैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन की. अब हम बात कर रहे हैं कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ. अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमी के अंदर. देखिए, ये है हमारी की फाइंडिंग्स. ट्रैवल एंड टूरिज्म के जरिए हम कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली कितनी हमने जॉब एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन किया. थर्ड पार्ट, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इन द टूरिज्म पार्ट. सो व्हाट इज द राइट आंसर? द स्टेटमेंट नंबर 1, travel tourism contributed $10.9 trillion US into the global GDP, which is 10% of the world economy. Second statement, 400 million jobs globally, equivalent to 1 in every 8 jobs. Third statement, what is India's contribution? $250 billion to the global tourism economy in 2024. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है. आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं. Let's see who will give me the right answer to the question number 38. To the question number 38, Dipanshu is saying option D. Vijay, Meena, Thiagu, Girwani, Deneb, Mukund. So most of them are skipping the question. Gururaj is saying option D. Mayank option B. So lot of confusion. B, D, and skip. What is the right answer here? We need to identify the incorrect statement, and here option D is the right answer as 2 and 3 are incorrect. Why? Because when it comes to India's contribution, it is $231.26 billion. तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमी इज $231.6 billion, एंड व्हेन इट कम्स टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ड्यू टू द टूरिज्म, इट इज 357 million jobs. That is 1 in every 10 globally, and not 1 in every 8 jobs, not 400 million jobs. It is 357 million jobs, and that is why the statement is incorrect. Hats off to all the people who have given the right answer to this question, because this was a kind of twisted question, tweaked question, जहां पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा को याद रखना पड़ेगा, उसे अपने माइंड के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, माइंड पैलेस पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा. दोस्तों, ये कैसे होगा? विद मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. दैट्स इट. प्रैक्टिस इज द की टू द सक्सेस, एंड फॉर द प्रैक्टिस ओनली वी आर हियर टुडे फॉर दिस सिलेक्शन मैराथन. आई होप दैट एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग द सेशन. गाइस, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, आर यू गाइस एंजॉयिंग द सेशन? मजा आ रहा है आप सभी को सेशन के अंदर?
क्या आपको वो रियल फेस दिख रहा है अपना कि अभी मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने के लिए मैं कितना तैयार हूं, कितनी मेरी तैयारी है, किन चीजों पर मुझे काम करना है? आर यू गाइस एबल टू आइडेंटिफाई दैट? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स. सो इट इज very important that we are assessing this part, because that is why today we are standing here. We are here in this session to ensure that yes, what is the problem that we are facing in our preparation and how we are required to work on them. This is something we need to identify. If you are not doing this, then please leave the session, guys. There is no point in attending the session. Let me be very frank to all of you. The analysis is very important. अगर कोई analysis नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, then there is no point. Seriously. ये क्वेश्चंस करने का, ये एनर्जी डालने का इस सेशन में कोई मतलब नहीं है दोस्तों, अगर हमने एनालिसिस नहीं किया. सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए यहां पर मत रहिए. एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने 6 मॉक टेस्ट दिए हैं, अगर आपने सिर्फ एक के बाद एक मॉक टेस्ट दिया, उसका कोई मतलब नहीं है. अगर एक मॉक टेस्ट दिया, वहां से आपने 3 से 4 लर्निंग्स निकाली और दूसरे मॉक टेस्ट देने से पहले इंश्योर किया कि अगले मॉक टेस्ट में ये 4 गलतियां नहीं होंगी और आपने इसको एग्जीक्यूट किया. दिस इज द रियल विनिंग फॉर द एग्जाम. This is the real winning for examination, right? Attempting 6 mocks is not at all important. Attempting 3 mocks with the proper analysis, identifying the problems and working on the solution and correcting them in the upcoming mock, that is something which you have to cover, you have to do in these 13 days before the examination. ठीक है? I hope this is clear to everyone. Yes, thank you for your responses. बढ़ेंगे अपने next question की तरफ. Quackerly-Simons report was released. तो Quackerly-Simons ने QS Best Student Cities 2026 रिपोर्ट को रिलीज किया. आपको आइडेंटिफाई करना है what is the name of that city which ended London 6 years run at the top of the 5 rankings. अगर हम बात करते हैं इसके अलावा इंडिया की, so इंडिया से वो कौन सा सिटी था which was on the top, and then वर्ल्ड का मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. सो गाइस, वर्ल्ड लेवल पे कौन है टॉप पे, इंडिया का कौन सा टॉप पे है, और वर्ल्ड लेवल पर अफोर्डेबल सिटीज कौन सा है, ये आपको बताना है इस चैट बॉक्स के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर. लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर. To the question number 39, the right answer is option C, that is Seoul, Mumbai and Delhi. Seoul is on the top in the world. Mumbai is on the top in terms of India, and when it comes to the most affordable city for the people, that is basically Delhi. Delhi is the right answer. Delhi is the most affordable city across the world, and that is something which is really very important. So students का favorite city कौन सा है across the world? Seoul is on the top, then Mumbai from India, and then Delhi is the most affordable city across the world for any student. That is the right answer. Next question. Henley Passport Index 2025 released by Hurun Global. You need to identify what is the name of the country which is on the top, what is the name of the country which is at the bottom, and what is India's position. देखिए दोस्तों, ऐसे रैंकिंग्स के अंदर, ऐसे रिपोर्ट्स के अंदर टॉप किसने किया, इंडिया की क्या रैंक है, और बॉटम पे कौन है, ये तीनों चीजें अगर आपने नहीं की तो डेफिनेटली यू आर ऑन द लूजिंग एंड, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन, बिकॉज इन द एग्जाम दीज आर द डायमेंशन, इन द एग्जाम दीज आर द एरियाज व्हिच आर बीन assessed. So please tell me the right answer to question number 40. What is the right answer? It is Singapore which is on the top, Afghanistan at the bottom, और इंडिया की पोजीशन है 77. तो इंडिया 85 से 77 पोजीशन पर आ चुका है. ऑन द टॉप इट इज सिंगापुर, जिसने बेसिकली जापान को हराया दोस्तों, जापान को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है. और उसके बाद आता है हमारा अफगानिस्तान, दैट इज ऑन द 70, दैट इज एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स. एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025. गाइस, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न इज अ प्राइवेट सेटअप. It is a startup which is having the valuation of more than $1 billion. That is the right answer. ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स. सबसे पहली स्टेटमेंट, कौन सी कंट्री टॉप पे है? यूएसए इज ऑन द टॉप. सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया की क्या रैंक है? विद 64 यूनिकॉर्न्स, इंडिया इज ऑन द थर्ड पोजीशन. थर्ड स्टेटमेंट, यूनिकॉर्न कैपिटल कौन सी है? दैट इज सैन फ्रांसिस्को. सैन फ्रांसिस्को टॉप द लिस्ट ऑफ सिटीज विद द मोस्ट यूनिकॉर्न्स, and from India Bengaluru featured in the list. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. So Saurabh is having a question, is asking, sir, how many videos will come for the GE under the marathon series? So my dear friends, let me tell you that this is a selection marathon. Let's try to focus here only on the first, and after that we will be moving on to the other marathons as well. Don't worry. बट आज के हम ये चीज देख लें कि आज हमारी क्या लर्निंग है इस सेशन से, so that जब हम अगली मैराथन सेशन में आएंगे या मॉक टेस्ट में आएंगे तो हम ये इंश्योर कर लें कि वेदर वी आर एबल टू.
अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स और नॉट, क्या हमने अपनी गलतियों पर काम किया नहीं किया, इस चीज को हम देखेंगे। सो हाँ, काफी सेशंस आगे भी प्लान है सौरभ, डोंट वरी अबाउट इट। आपकी पूरी प्रिपरेशन की हमने अच्छी तैयारी की है एंड वी विल बी देयर विद ऑल ऑफ यू टिल द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन journey, right? So what is the right answer? Option E is the right answer. All the statements are right. अगर हम बात करते हैं टॉप कंट्री विद द मोस्ट यूनिकॉर्न्स, तो यूएसए इज ऑन द टॉप विद 758 यूनिकॉर्न्स, फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया इज ऑन द थर्ड पोजीशन। तो इंडिया थर्ड पोजीशन पर है विद 64 यूनिकॉर्न्स। अगर हम बात करते हैं टॉप सिटीज विद द मोस्ट यूनिकॉर्न्स, तो सैन फ्रांसिस्को इज द यूनिकॉर्न कैपिटल। क्यों? क्योंकि सैन फ्रांसिस्को एक ऐसा सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स जहां से निकले हैं। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का बेंगलुरु इज ऑन द 7th पोजीशन, ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। ऑन द 22nd इट्स मुंबई एंड 27th इट्स गुरुग्राम। बट टॉप 10 में दोस्तों अगर यूनिकॉर्न कैपिटल्स की बात की जाए तो बेंगलुरु इज ऑन द 7th पोजीशन, ठीक है। अक्रॉस द वर्ल्ड यूएसए इज ऑन द टॉप, चाइना इज एट द 2nd पोजीशन, इंडिया इज ऑन द 3rd पोजीशन। एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the statistical review of the World Energy 2025 released by the Energy Institute in collaboration with Kearney and KPMG, what is the rank of India among the top consumers of biofuel? दोस्तों बायोफ्यूल्स के केस के अंदर इंडिया का क्या रैंक है एज अ टॉप कंज्यूमर ऑफ द बायोफ्यूल? सो गाइस, अगर हम बात करते हैं टॉप कंज्यूमर और टॉप प्रोड्यूसर, तो दैट इज यूएसए। बायोफ्यूल के केस में टॉप कंज्यूमर और टॉप प्रोड्यूसर यूएसए है, बट इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया इज रैंक्ड 4th in this particular ranking. On the top it is USA, Brazil, Indonesia, followed by India at the 4th position in terms of consumers. In terms of producers, USA is on the top. तो याद रखिए statistical review of World Energy Report के according on the top it is USA in both consumer and producer, and when it comes to India, India, my dear friends, is on the 4th position, that is in terms of consumers of biofuel, that is 4th position. Next question, as per the Time 100 creators list, who was the sole Indian featured on the list? तो वो sole Indian जो कि इस लिस्ट में थी दोस्तों, क्यों हम कवर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? क्योंकि she was the only person which was there at the top, which was there in this particular list, only Indian. What is the name of the person? प्राजक्ता कोहली, ऑप्शन सी। हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। टू द क्वेश्चन नंबर 43, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एंड यस, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गिवन द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, and now this is the star report, global gender gap report 2025, one of the very important reports, because we have seen in the previous year examinations question being asked from this report. Now you are having 50 seconds to answer this question. My dear friends, please make sure you are going through the statements, trying to identify what is the demand of the question and try to answer it. थोड़ा कामली इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और अच्छे से इसको आंसर कीजिएगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसको रिलीज किसने किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया। सेकंड स्टेटमेंट, जेंडर पैरिटी हम आइडेंटिफाई करते हैं अक्रॉस द 4 सब इंडेक्सेस। थर्ड स्टेटमेंट, आइसलैंड ने टॉप किया है इस रिपोर्ट को, फॉलोड बाय फिनलैंड, नॉर्वे ऑन द 2nd and 3rd पोजीशन रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों जब हमने इस रिपोर्ट को कवर किया था, सो बेसिकली हमने कवर किया था एक बहुत ही अच्छे तरीके से, and I will be repeating that again, but first we have to see that who among you will be answering the question correctly here. To this question number 44, what is the right answer? Right answer is option E. हमें आइडेंटिफाई करना था incorrect statement, and yes, most of the people have given me the right answer, that is option E, as none of the above is incorrect, right? So basically सभी statements हमारी correct हैं, absolutely this is the right answer. अब दोस्तों बढ़ेंगे अपने important part की तरफ। So हमने आपको बताया था जब हमने इस रिपोर्ट को कवर किया था, दैट हाउ टू रिमेंबर इट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हेल्प्स इफ नन इज देयर। ग्लोबल जेंडर गैप हेल्प्स इफ नन इज देयर। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का नाम है। अब हेल्प क्या है? दीज आर द 4 सब इंडेसेस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट इज? What it is? It is health, economic participation, literacy and political empowerment. आप देख सकते हैं 4 सब इंडेसेस कौन से हैं? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट से क्या होगा? लिटरेसी होगी, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दीज आर द 4 सब इंडेसेस, राइट? एंड नाउ इफ नन इज देयर, ये क्या है दोस्तों? ये है आपकी टॉप 5 परफॉर्मर्स, टॉप 5 रैंकर्स कौन है? ऑन द टॉप इट इज आइसलैंड with the score of 0.926. Second statement, second position Finland, Norway, United Kingdom, New Zealand. So I told you if
none is there, right? So please remember that you are covering it in this particular manner. From this single line, you will be able to retain all the important information from this examination point of view. Okay, global gender gap help if none is there. So guys, Iceland 0.926 on the top, Finland, Norway, UK, New Zealand और इंडिया की बात की जाए, one of the most important part, India's position was 131 with a score of 0.644. That shows that India ने 64.4% जेंडर गैप को क्लोज कर दिया है. तो अगर हम बात करें, एक डिस्टेंस है दोस्तों, एक डिस्टेंस है, ठीक है, और बेसिकली यहां पर है 0, यहां पर है 1. तो जितना ज्यादा आप इस 1 के क्लोज होंगे, दैट मींस आपके कंट्री के अंदर जेंडर पैरिटी उतनी ही ज्यादा है. दैट मींस इक्वल फैसिलिटीज आर देयर फॉर मेन एंड वुमेन, राइट? सो बेसिकली आपको यहां पर देखना है कि आप देख सकते हैं ऑन द टॉप इट इज आइसलैंड विच इज एट 0.926. दैट मींस 92.6% इन्होंने ये डिस्टेंस कवर कर लिया है और बाकी का 0.74 डिस्टेंस आपका यहां पर बचा है, ठीक है. सो 7.4 डिस्टेंस यहां पर बचा है आपका आइसलैंड का. तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर टॉप परफॉर्मिंग कंट्री ही यहां पर है, हमने कहा था कि फुल पैरिटी कब होगी, जब स्कोर होगा इक्वल 1. So can anybody tell me how many economies across the world are there who have achieved the gender parity? Can anybody tell me that? How many economies are there which have achieved the gender parity according to the report? So श्रुति, डोंट वरी, इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट. हमने इसको CT 360 सेशन में बहुत ही डिटेल में कवर किया था. So how many economies are there? How many economies are there which have achieved the gender parity across the world? The answer is none. 0. Why? Because the country which is at the top is having a score of 0.926 and the country is said to be achieved full parity when its score is equal to 1. So there is not a single country. Let me tell you that this was the question which was being asked in the examination in the previous year, that what exactly is the number of economies which have achieved the gender parity. राइट? और लोगों ने सोचा कि यार सर आइसलैंड को कर देते हैं, आइसलैंड इज ऑन द टॉप. नो गाइस, आइसलैंड के अंदर भी जेंडर पैरिटी नहीं है. तो इसलिए राइट आंसर होगा 0, नन. दैट इज राइट आंसर. यस, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गिवन द राइट आंसर. दैट्स इट. इंडिया का स्कोर है आपका 131. सॉरी, इंडिया का रैंक है 131 विद अ स्कोर ऑफ 0.644. अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. सो यू हैव टू कंसीडर द फॉलोइंग statements regarding the global gender gap report and identify the correct statement. तो दोस्तों आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स स्कोर हैज शोन अ कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम 64.1% to 68.8% in 2025, a rise of 4.8 percentage point. सेकंड स्टेटमेंट, बांग्लादेश ने मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट दिखाई है रैंकिंग्स के अंदर. थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया इज हैविंग अ पैरिटी स्कोर ऑफ 64.4% in 2025 and is the highest performing country in the South Asia, ahead of most of its regional peers. आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है. टू दिस क्वेश्चन लेट्स सी हु विल टेल मी द राइट आंसर. टू दिस क्वेश्चन लेट मी सी हु विल टेल मी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट इज इट? So the right answer here is option B, that is 1 and 2. Why? Because when it comes to India, guys, India is among the lowest performing countries in the South Asia, not the highest performing country. आप देख सकते हैं बांग्लादेश के मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है, और अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया का लोएस्ट परफॉर्मिंग है इन दिस पर्टिकुलर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. सो यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर. ये सब तक दिस वीडियो विल बी देयर आफ्टर द सेशन, डोंट वरी अबाउट इट. इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगी, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है. अभी के लिए मेक श्योर कीजिए, कोशिश कीजिए कि सेशन में एंड तक बने रहिए. अभी हम रिपोर्ट्स कवर कर रहे हैं, फिर स्कीम्स करेंगे, आरबीआई नोटिफिकेशंस कवर करेंगे, बहुत कुछ है दोस्तों. मेक श्योर कीजिए अपने एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करके रखिए, अपने आप को यहां पर मेंटेन करके रखिए इन दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके, मूविंग अहेड. So global gender gap index improved by 4.8 percentage points, rising from 64.1% to 68.8%. करंट पेज पर चलते हैं तो 123 years हमें लगेंगे और in order to achieve the gender parity according to the report. और बांग्लादेश ने highest improvement show की in the ranking by ascending by 75 positions to the 24th place. So that's all that we have to cover from this report. बढ़ेंगे अगले पार्ट की तरफ. But before moving on to the next report, guys, you were asking me that वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कहां पर कवर की थी. जब आप इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इस लिंक पर जाइएगा, ये डायरेक्टली आपको ले जाएगा इस पर्टिकुलर सेशन की तरफ, ठीक है.
तो यहां पर हमने बहुत ही डिटेल में इस रिपोर्ट को कवर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एग्जामिनेशन के लिए। बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट। You need to identify which of the following statements are incorrect. So first statement. So quickly go through the statement, try to identify the right answer. Just देखिए कि यहां पर कौन से कीवर्ड्स है जिन पर हमें फोकस करना है। पहला स्टेटमेंट किसने रिलीज किया? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने रिलीज किया। सेकंड स्टेटमेंट, अप्रैल 2025 तक इंडिया की पॉपुलेशन 146.39 करोड़ थी और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया का दैट इज 1.9, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो चुका है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट कितना है? 2.1 है। थर्ड स्टेटमेंट, 1/5 ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज एडल्ट्स को लगता है दे वोंट बी एबल टू हैव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट दे डिजायर। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट दे डिजायर, वो उतने चिल्ड्रन नहीं हो पाएंगे उनके। सो गाइस, दिस इज व्हाट द रिपोर्ट इज। यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देन ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सो लेट्स सी हु विल टेल मी द राइट आंसर। So here, my dear friends, option A is the right answer. That is third statement only. Why so? Because you can see here, see, the report states that almost 1/5 of the reproductive age adults believe they will be able to have the exact number of children they desire. So my dear friends, let me tell you that these are those people who don't believe that they will be able to have the desired number of children. And that is why third statement is incorrect to this particular question. And right answer is option A, that is 3 only. Absolutely right. Now moving on to the next report, the next question, state of the world population report. Now you need to identify incorrect statement. So देखिए दोस्तों, बहुत जरूरी है इन डायमेंशंस को कवर करना। और एक बार फिर से आपके सामने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। Let's see who will give me the right answer. So yes, Avantika, Deneb, Srishti, Thiagu, Srishti, Vijay, Mukund, Prabhat, everybody has given the right answer. दोस्तों अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इंडिया ने ओवरटेक किया चाइना को टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। एब्सोल्युटली राइट। चाइना की करंट पॉपुलेशन 141.6 करोड़ है और इंडिया की पॉपुलेशन हमने अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर देख ली थी। सेकंड स्टेटमेंट, एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का, इट इज 14.1 बर्थ पर 1000 वुमेन एट द एज ग्रुप ऑफ 15 to 19 ईयर्स। थर्ड स्टेटमेंट, 2025 प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ की इंडिया के अंदर, इट इज 71 ईयर्स फॉर मेन एंड 74 ईयर्स फॉर वुमेन। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप बताएंगे मुझे चैट बॉक्स के अंदर टू द क्वेश्चन नंबर 47। राइट आंसर इज ऑप्शन ई। कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है दोस्तों, सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इस डेटा को नोट कर लीजिए, इस डेटा को याद रखिए, इस डेटा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नॉट जस्ट द फेज 1 एग्जामिनेशन दोस्तों, फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगर अगेन आपने इस सेशन को मिस किया था तो आप इस लिंक पर जाकर इस सेशन को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगली रिपोर्ट पर। दोस्तों अब हम आ चुके हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पे from the previous month, which is beyond the last 3 months, but it is very important. Now we are into the month of June 2025. Sustainable Development Report. दोस्तों आप सभी जानते हैं हम Sustainable Development Goals को अचीव करना चाहते हैं by 2030. There are 17 goals that we want to achieve, right? अब क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि हम कितना क्लोज हैं उसको अचीव करने के लिए। So question is about the Sustainable Development Goals report and what is India's performance. पहली स्टेटमेंट, 17% of the Sustainable Development Goals targets are progressing on schedule and likely to be achieved by year 2030. Only 17% of the goal. देखिए दोस्तों 17 goals हैं, इसका 17% ही हम अचीव करेंगे। Second part, India had made remarkable progress, placed among the top 50 performing countries in the SDG index out of 167 nations. Third statement, SDG index assesses progress towards achieving 17 goals adopted in 2015. is released by United Nations Sustainable Development Solution Network. तो वेरी डायमेंशंस है, किसने रिलीज किया, क्या पोजीशन है, कितने टारगेट्स ऑन ट्रॉट हैं, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे कवर किया। लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर। Yes, Zanab, it is the very first time that India was in the top 100 countries and India was on the 99th position, and that's why right answer is option E, that is only 2. Second statement is incorrect because India is not in the top 50, India is in the top 100 countries. तो दोस्तों इसको हमें कवर करना है, बहुत ही जरूरी है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें कवर करना कि कौन सी कंट्रीज टॉप 5 परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं। Which of the following countries does not belong to the top countries as per the Sustainable Development Report 2025? कौन सी कंट्री टॉप 5 परफॉर्मिंग कंट्रीज का पार्ट नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर।
So Srishti is asking कि sir should I watch all the video links and PDF mentioned for today's session enough because time is less. So देखिए सृष्टि, सबसे पहले तो जो हमने आज के सेशन में कवर किया है इसको आप ऑन प्रायोरिटी कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो आप उन सेशंस पर जा सकते हैं, बट स्टिल देखिए जिस सेशन का मैंने लिंक आपको दिया है उन्हीं सेशन उसी रिपोर्ट को आप वहां से कवर कीजिएगा और बाकी न्यूज आर्टिकल्स को कवर मत कीजिएगा फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि अभी हम रिपोर्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहां पर दोस्तों आप सभी ने सोचा होगा कि सर याद कैसे करें, कैसे याद करें कि टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है। मैं कहता हूं कि बच्चों आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सी, आप सभी आरबीआई ऑफिसर्स हैं, फ्यूचर आरबीआई ऑफिसर्स, आपको इस रिपोर्ट का डेटा याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों याद करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर हम बात करें टॉप 5 कंट्रीज की ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है, वी हैव टू फाइंड विच आर द टॉप 5 कंट्रीज इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और बड़ा फ्रैंकली हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, बड़ा फ्रैंकली आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो फाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टॉप परफॉर्मर्स फ्रैंकली। सो फाइंड स्टैंड्स फॉर फिनलैंड, एस स्टैंड्स फॉर स्वीडन, डी स्टैंड्स फॉर Denmark, G stands for Germany, and I told you that we have to identify frankly, that means France is on the 5th position. That's it, my dear friends. These are the top 5 performers. So yes, absolutely right. The right answer to the question is option E, that is South Sudan, which is not among the top 5 countries. And here, let me again show it to you. तो एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, आपको याद ही नहीं करना है कौन से टॉप 5 है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ना। वी नीड टू फाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टॉप 5 परफॉर्मर्स, फाइंड दैट इज फिनलैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल frankly, find the top performers in the SDG frankly, that's it. These are the top 5 countries, you can see here 1 2 3 4 5. So these are the top 5 performers. When it comes to India, India is on the 99th position. तो बताइए मुझे चैट बॉक्स के अंदर कि क्या आपको यहां से याद करने की कुछ जरूरत है या नहीं है। Please tell me in the chat box, is there something to remember from here or not? Yes or no? Just tell me in the chat box by saying yes or no. क्या यहां से कुछ याद करना है? कुछ भी याद नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी आपको पता है। Find sustainable development goal top 5 performers, that's it. और आपको पूरा क्रोनोलॉजी के अंदर ये सारे रैंकिंग्स याद हो जाएंगी। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। सो दिस इज समथिंग गाइस वी नीड टू फोकस अपॉन। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन के साथ हमें स्मार्टली काम करना है और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बट इससे पहले 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इफ देयर इज एनी स्टूडेंट हु इज नॉट अवेयर ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस, अगेन दिस सेशन, डिटेल सेशन हैज बीन गिवन। अगर आपके पास टाइम होगा डेफिनेटली आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने इस रिपोर्ट को यहां पर कवर किया था। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वी आर ऑन अनदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन, दैट इज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 फॉर द स्टेट्स एंड यूटीज वाज बीन लॉन्च्ड। यू नीड टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हियर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। So thank you guys for giving me the responses. Avantika, Srishti, Shetty, Ritesh, Srishti, Nikita, Mayank, Deneb, Sunrise, Srishti. Yes guys, it is super easy. It is super duper easy. बस थोड़ी सी observation हमें identify करनी है और उसके बाद everything is very easy for us. तो moving on to this report. सबसे पहला statement, report released by कौन release कर रहे हैं? Department of School Education and Literacy, Ministry of Education. Second statement, PGI framework carries a total weightage of 1000 points distributed across 73 indicators across two broad areas, outcome and governance and management. Third statement, highest grade कौन सा है? प्रचेष्टा 1 है, which corresponds to a score range of 701 to 760. Only Chandigarh has attained grade प्रचेष्टा 1. No state or UT made it to the top 4 levels. तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है ये आप आइडेंटिफाई करेंगे, मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर। टू द क्वेश्चन नंबर 50. Absolutely right. People are saying option E. Yes, option E is the right answer. All the statements are correct here. तो दोस्तों परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, देखिए हमने यूडीआईसी प्लस रिपोर्ट को कवर किया, हमने सीएमएस सर्वे किया, हमने इंडिया रैंकिंग की बात की, और एक और रिपोर्ट आई है हमारे सामने, दैट इज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जहां पर हम असेस करते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की कैसी परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है जो आगे जाने के बाद
जो देश का भविष्य है, आगे लेकर जाएगा देश को, तो इसीलिए इस रिपोर्ट को कवर करना बहुत जरूरी है। और यहां पर हम इन सभी इंस्टीट्यूशंस को असेस करते हैं अक्रॉस द टू इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, दैट इज आउटकम एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट। आउटकम के अंदर दोस्तों हमारे पास कुछ 4 फैक्टर्स हैं, लाइक लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी एंड इक्विटी। दीज आर द 4 डोमेन्स इन द आउटकम्स। अगर गवर्नेंस मैनेजमेंट की बात की जाए तो वी हैव गवर्नेंस प्रोसेसेस एंड टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो दीज आर द 2 पार्ट्स इन द गवर्नेंस मैनेजमेंट। तो टोटल हमारे पास आप देख सकते हैं 6 डोमेन्स हैं और 2 कैटेगरीज हैं जिसके अक्रॉस हम असेस करते हैं स्टेट्स एंड यूटीज को। अब हम बात करेंगे कि हमारी ये ग्रेड्स कौन से हैं जो बनाए गए। तो आप देख सकते हैं टोटल 10 ग्रेड्स बनाए गए हैं। एट द बॉटम इट इज आकांक्षी 3, आकांक्षी 2, आकांक्षी 1। देखिए दोस्तों यहां पर है आकांक्षी 3, आकांक्षी 2, आकांक्षी 1। ये हमारे सबसे नीचे से शुरू हो रहा है, ठीक है। हम नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर प्रचेष्टा 3, 2 एंड 1, उत्तम, अति उत्तम, उत्कर्ष एंड दक्ष। तो ये हमारे 10 ग्रेड्स हैं दोस्तों। जो टॉप है आपका 91 to 100%, दैट इज दक्ष। एट द बॉटम इट इज आकांक्षी 3, दैट इज अप टू 10%, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया यहां से। आई होप सभी को एकदम क्लियर होगा। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि बेसिकली अगर हम यहां पर देखें तो मैक्सिमम डेविएशन जो है हमारा 302 पॉइंट्स का, ये कहां पर है। सो इससे पहले दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है, आप सभी को बहुत शॉक होगा ये देखकर कि टॉप 4 लेवल्स पर एक सिंगल स्टेट और यूनियन टेरिटरी यहां पर नहीं था। ऑन द टॉप इट वाज चंडीगढ़, विच इज अंडर प्रचेष्टा 1 कैटेगरी। प्रचेष्टा 1 कैटेगरी में चंडीगढ़ इज ऑन द टॉप, ठीक है। सिर्फ एक सिंगल स्टेट और यूटी हमारा है in the Prachesta 1 category, that is the 5th level in this particular hierarchy. और at the bottom you can see मेघालय से। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा डेविएशन फ्रॉम द स्कोर, सबसे ज्यादा डेविएशन फ्रॉम द स्कोर किसका है, मेघालय का है, ठीक है। यही चीज यहां पर दी गई है, मैक्सिमम डेविएशन ऑफ 302 पॉइंट्स इज बीन सीन इन द इंडियन स्टेट ऑफ मेघालय। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करता है, एंड वी नीड टू कवर इट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी प्रॉपरली, ठीक है। बी गणेशन, आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस अभी कुछ दिन पहले खत्म हुआ है, वेट कीजिए, एडमिट कार्ड आ जाएगा। बट क्या आप रेडी हैं, क्या आप पेपर देने के लिए रेडी हैं या नहीं है, ये आप मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर। मुझे बताइए आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर किया, ठीक है। सी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट डिस्ट्रैक्ट अदर स्टूडेंट्स राइट नाउ। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। एडमिट आएगा, आपको पता चल जाएगा। 100 नंबर ऑफ वीडियोस विल बी देयर ऑन द एडमिट कार्ड, राइट। बट राइट नाउ ट्राई टू फोकस ऑन द सेशन। अगर अभी आप इसको लूज करेंगे डेफिनेटली इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू ओनली, ठीक है। सो राइट नाउ जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द सेशन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट रिपोर्ट, दैट इज वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। Consider the following statements and try to identify the incorrect statements. Guys, please focus on the session. Don't give focus to any such kind of questions which are not related to the topic right now. जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है उस चीज को हम इग्नोर करके चलेंगे, बिल्कुल इग्नोर करके चलेंगे। अगर मैं भी ऐसा कुछ करूंगा, कोई ऐसा क्वेश्चन करूंगा, जस्ट इग्नोर मी। आई एम वेरी ब्लंट इन दैट, आई एम वेरी ऑनेस्ट इन दैट, ठीक है। प्लीज मेक श्योर राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक्स। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025. Please identify incorrect statements. First statement, according to the report released by IEA, global energy investment was projected to reach $3.3 trillion. दोस्तों इस रिपोर्ट से हम कवर करते हैं कि एनर्जी के अंदर हम कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है आने वाले सालों में, अभी कितना है, किस स्टेज पर हम है, ये हम कवर करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में $2.2 ट्रिलियन का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। रेदर देन अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें वहां पर $1.1 ट्रिलियन होगा, जो कि उसका हाफ है। थर्ड स्टेटमेंट, चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी इन्वेस्टर विद इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल क्लीन एनर्जी। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया 6th पोजीशन पर है। फोर्थ स्टेटमेंट, इंडिया हैज रिकॉर्डेड थर्ड लार्जेस्ट इंक्रीज इन द पावर जनरेशन कैपेसिटी। फिफ्थ स्टेटमेंट, इंडिया का रिन्यूएबल पावर इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हुआ है। दोस्तों पहले क्या था, इंडिया का रिन्यूएबल पावर इन्वेस्टमेंट $37 बिलियन था, बट वो घटकर $13 बिलियन हो चुका है। लेट्स सी हु विल बी गिविंग मी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। तो दोस्तों देखते हैं कौन देगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर इन द चैट बॉक्स टू द क्वेश्चन नंबर 51, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। व्हाट इज द राइट आंसर? सो यस, पीपल आर सेइंग ऑप्शन ई टू द क्वेश्चन नंबर 51। यस, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी पावर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये घटी नहीं है दोस्तों, ये इंक्रीज हुई है। कितने से? पहले थी $13 बिलियन 2015 के अंदर, और फिर ये हो गई है $37 बिलियन in 2025, and that is why the statement is
Incorrect. Right answer is option E. So this is something that we need to identify from examination point of view. Absolutely right. Metrics have been reversed. This can be the case in the exam. We have to be very vigilant about these topics, about these things in the examination. Next part. आप यहाँ देख सकते हैं, China is on the top and India is on the 6th position. Moving ahead. Next report is Fostering Effective Energy Transition Report 2025. Guys, we are on the last leg of the reports part. Please make sure. See, last year जो reports थी आपकी, पेन पॉइंट था स्टूडेंट्स का, ठीक है, रिपोर्ट्स ने डोमिनेट किया, बच्चे हुए शॉक, सरप्राइज मिला पेपर के अंदर. आई डोंट वांट कि एग्जाम में इस साल आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो इसीलिए इंश्योर कीजिए कि आप यहां पर फोकस करें सेशन के अंदर एंड मेक श्योर कीजिए कि सारी डिटेल्स आपको अच्छे से याद रहें. तो एनर्जी फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2025, 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा 1 मिनट दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. So here is the question for all of you. Try to give me the answer in the chat box. So please make sure that you are reading the question very properly. So it has been released by World Economic Forum in collaboration with the Accenture. Second statement. Country's final ATI score is weighted composite of 2 sub-indices, that is system performance, transition readiness. Third statement, Sweden ने टॉप किया है, फिनलैंड एंड डेनमार्क सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हैं, इंडिया की पोजीशन 71st है. फोर्थ स्टेटमेंट, 2025 के अंदर 77 कंट्रीज ने इंप्रूव किया अपना ओवरऑल ATI स्कोर, दैट इज 65% ऑफ द ओवरऑल कंट्रीज. फिफ्थ स्टेटमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 1.1% का इंक्रीज देखने को मिला इन द ग्लोबल स्कोर्स. सो लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 52. What is the right answer? Right answer here is option E, that is none of the above. So my dear friends, we were required to identify incorrect statement to the question number 52. Let's see किसने दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर. So Mukunda skip the question. Denevi Singh option C, Srishti B. So Gururaj, Mayank, Thiagu, Srishti, Rahul, Srishti, Vijay Meena, Avantika, these are the people who have given me the right answer, that is option E. Guys, not a single statement here is incorrect. All the 5 statements are correct. Yes, it is literally a time taking question, but yes, it is going to give you +1 mark. अगर जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, आप +1 मार्क कीजिए अपने आंसर शीट के अंदर. और दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं टॉप परफॉर्मर्स की, तो स्वीडन इज ऑन द टॉप, देन फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड आर द टॉप 5 कंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया विद द स्कोर ऑफ 53.3 वाज ऑन द 71st पोजीशन. इससे पहले इंडिया 63rd पोजीशन पर था, बट इस साल इंडिया की रैंकिंग गिरी है, 63 से इंडिया 71st पोजीशन पर जा चुका है एज अ पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जो 5 पैरामीटर्स अक्रॉस व्हिच द कंट्रीज आर बीन असेस्ड, दिस इंक्लूड्स रेगुलेशन एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट, innovation, infrastructure, education and human capital, finance and investment. These are the 5 parameters across which these countries are been assessed in the Fostering Effective Energy Report. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. So Global Economic Prospects June 2025 which has been released by the World Bank Group. तो दोस्तों World Bank Group ने रिलीज किया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जून 2025. आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं. Which one of the following are incorrect statement? The first statement, global growth is expected to slow to 2.6% in 2025. Second statement, by 2027, average global GDP growth in the 2020s is projected to be just 2.5%, which is slowest for any decade. Third statement is related to India's growth forecast, and it has been revised to 6.3% due to the weaker export and investment growth. Let me tell you, my dear friends, although when we are sitting for the examination, we have to make sure that we are only covering the latest data. And when it comes to this report, if this report has been asked, let me tell you that it was released in the month of June 2025, and that is why it is still the latest report and we have to cover the data accordingly. ठीक है? So what is the right answer to this part? Right answer here to this question is option A, that is 1 only is the incorrect part. Why so? Because my dear friends, you can see a global growth in 2025 is not 2.6%, it is 2.3%. So 2025 में it is 2.3, 2026 2.4 एंड 2027 2.6. तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले 1 पॉइंट से बढ़ा, फिर 2 पॉइंट से बढ़ा. सिमिलरली अगर आप देखेंगे इंडिया की, तो इंडिया की 6.3% है 2025, देन इंक्रीज बाय 2% टू 6.5 इन 2026, देन इंक्रीज बाय 2% टू 6.7 इन 2027. So this is the right answer. These are the most important findings that we need to cover from this particular report of World Economic
Global Economic Prospects June 2025. Let's move on to the next question. According to the Child Labor Global Estimates 2024 released the International Labour Organization, तो ILO ने और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया, चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स, विच इज, दोस्तों हम सभी जानते हैं चाइल्ड लेबर इज वन ऑफ द वेरी कॉज ऑफ कंसर्न इन आवर सोसाइटी। तो हमें इसको कम करने की रिक्वायरमेंट है, कैसे कम करेंगे, क्या करेंगे। सो इस रिपोर्ट के अंदर दिया गया कि व्हाट इज प्रेजेंटली द सिनेरियो हियर। तो चाइल्ड लेबर कंटिन्यूज टू इफेक्ट हाउ मेनी चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड विद डैश ऑफ दीज एंगेज्ड इन द हजार्डस वर्क। तो चाइल्ड लेबर कितने पॉपुलेशन को, कितने चिल्ड्रन को इंपैक्ट करता है और इसमें हजार्डस वर्क में कितने ऐसे बच्चे अभी भी इन्वॉल्व हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। यस, इट इज लिटिल बिट अ ट्रिकी वन, बट यस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। So just try to focus on the data a little bit and try to identify. So when it comes to the number of children, when it comes to the percentage terms, it is 7.8% of the children are in the child labor. But when it comes to in the numerical figure, it is 137.8 million children who are basically impacted due to the child labor. And out of them, how many of them are in the hazardous work? 3.1%. That is 54 million. So option D is the right answer to this question number 54. 54 question, option D is the right answer. Absolutely right. Next question. Now we are on to the Global Peace Index 2025. So my dear friends, Global Peace Index was been released recently. You need to identify incorrect statement. So दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को आप अच्छे से कवर कीजिए और मुझे जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ग्लोबल पीस इंडेक्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, Global Peace Index 2025 was released by the Institute for Economic and Peace and evaluates peace across the three primary areas. ठीक है? Then the second statement, Iceland has topped the index with India's ranking and the index declined from 116 to 115. तो आइसलैंड ने टॉप किया और इंडिया की रैंकिंग कितनी है ये भी हमें गिवन है। थर्ड स्टेटमेंट है, एवरेज ग्लोबल पीसफुलनेस आपकी 0.36% से इंप्रूव हुई है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? Let's see who will give me the right answer to this question. So yes, Vijay, Avantika, Prabhat, Abhigyan, Rahul, Gururaj, Vijay, Dinab. Let's see who will give me the right answer to the question number 55. Yes, it is option A, that is 3 only. We need to identify incorrect statement. It was not released. Sorry, it was basically showing that it improved by 0.36%. But guys, this is not the scenario. It basically declined and that is why this is the incorrect statement. अगर हम बात करते हैं टॉप कंट्रीज की, तो आइसलैंड इज ऑन द टॉप, फॉलोड बाय आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एंड सिंगापुर। सो दीज आर द टॉप 5 कंट्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द पीसफुलनेस। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज ऑन द 115th पोजीशन। तो इंडिया 115th पोजीशन पर है, दैट इज व्हाई इट इज रैंक 115। तो दोस्तों याद रखिए इंडिया की रैंक क्या है? 115। ऑन द टॉप इट इज आइसलैंड। आइसलैंड दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप में भी टॉप पे था। कोई मुझे बताएगा ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया की रैंक क्या थी? तो ग्लोबल जेंडर गैप में आइसलैंड टॉप पे था विद द स्कोर ऑफ 0.926, राइट? एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड व्हिच हैज बेसिकली अचीव्ड द जेंडर पैरिटी। नाउ यू नीड टू टेल मी हियर व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। गाइस लेट मी टेल यू दैट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शंस होंगे तभी आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे। आपको मेक श्योर करना है कि आप आइडेंटिफाई करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर इवन विदाउट द ऑप्शन। ठीक है? तो हमने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में एक और चीज को कवर किया था कि ग्लोबल जेंडर गैप हेल्प इफ नन इज देयर, राइट? तो हमने इस पूरी चीज को कवर किया था, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इंडिया की रैंक की बात की जाए तो इंडिया वाज प्लेस्ड 131 इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। एब्सोल्युटली राइट, एवरीबॉडी हैज गिवन द राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो यहां पर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बिलोंग करती है टॉप 5 यूनिवर्सिटी से एज पर द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आप देख सकते हैं दोस्तों एमआईटी ने यहां पर, एमआईटी यूएस ने यहां पर टॉप किया फॉर द 14th ईयर इन अ रो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, एमआईटी ने 14th ईयर इन अ रो पे टॉप किया है इन दिस पर्टिकुलर रैंकिंग। ठीक है? So on the top it is MIT, then Imperial College of London, Stanford University, University of Oxford and Harvard University. These are the top 5 universities in terms of the top 5 universities of QS World University Rankings 2026. Absolutely right. Moving to the next question, but before that you can see here the different details. So India was the
fourth most represented country in this particular rankings. On the top guys, that means most represented country का मतलब क्या है, किस रैंकिंग में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज कौन सी कंट्री की थी. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया की 54 यूनिवर्सिटीज थी, तो इसलिए इंडिया टॉप 4 में आता है, फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री. इट वाज देयर ऑन द टॉप, इट वाज यूएस, देन यूके एंड देन चाइना. ठीक है. और आईआईटी दिल्ली अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूशंस इट इज ऑन द टॉप. IIT Delhi was on the top in terms of Indian institutions. Moving it to the question number 57, the question is on Human Development Report 2025. My dear friends, another important report that we need to cover from examination point of view, which basically is going to assess your knowledge across the reports and indices in the upcoming RBI Grade B officer exam. And this report was released in the month of May, but still it holds a lot of importance in the upcoming examination because it is directly related to your syllabus. First statement, तो यहां पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमें कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विटनेस्ड अ ग्रोथ ऑफ 53% सिंस 1990. सेकंड स्टेटमेंट 13.5 करोड़ पीपल इन इंडिया एस्केप्ड मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी out of total population of 144 crores. Third statement, India has been ranked highest in the world for the prevalence of self-reported artificial intelligence skills among its population. So you need to identify which of the following statements are incorrect with respect to Human Development Report 2025. देखिए दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स को कवर करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद हम वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग्स को भी कवर करेंगे. सो बेसिकली व्हाट इज द राइट आंसर? Right answer is option E, as none of the statements is incorrect. All the statements are correct here with respect to this report. Absolutely right. So I can see in the chat box, lot of the people were saying that option C is the right answer. That is 1 and 3. So दोस्तों, जिस स्टूडेंट ने, जिस फ्यूचर आरबीआई ऑफिसर ने ऑप्शन सी को आंसर रखा है, दोस्तों आप अपने आंसर शीट में बड़े प्यार से -0.25 को मार्क कर लीजिए. ठीक है, आपको मिलता है -0.25, क्योंकि यहां पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. देयर इज नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट व्हिच इज इनकरेक्ट हियर. ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, व्हिच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड हियर द क्वेश्चन इज, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर रैंक्ड अमंग द टॉप 5 इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025. तो इसका क्वेश्चन आंसर दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर. My dear friends, let me tell you that at the end of the question, I will be giving you Jadi Booty to answer and to retain that which are the top 5 countries in this world. So statement number 1, Iceland has secured the first rank. Statement 2, Norway and Switzerland on the second position. Third statement, Denmark and Germany have been included in the top 5 positions. That is on the 4th and 5th. Option D is all of the above. Option is none of the above. I asked you that which of the following countries are ranked among the top 5 in the Human Development Report 2025. So people are saying option D is the right answer. That is all of the above. Absolutely right. Now guys, let me tell you that you are not required to retain this information. You know why? Because in the question itself the answer is given. But how? Let me ask you one question. That do you guys really believe that human development lies in the sustainable development goals? That means the sustainable development goals that we want to achieve by 2030. The 17 sustainable development goals. If we are achieving the sustainable development goals, then there will be human development across the world, right? So can I say that human development lies in sustainable development goals? Can I say that human development lies in the sustainable development goals? Why I am saying this? Let me tell you here. In the human development on the top, it is Iceland. I for Iceland, N for Norway, S for Switzerland, D for Denmark, G for Germany. So this is what are the top 5 performers in the Human Development Report. So do you guys really believe now that whether we need to identify and retain this information? No, just remember that your development, human development lies in the sustainable development goals, and that's it. We are up to the mark with all the top 5 countries of this particular report, right? Do you guys agree with me? Similarly, guys, we covered the sustainable development goals, right? And there I told you which are the top 5 countries. See, in the human development and in the sustainable development goals, I asked you that which are the top 5 countries, and I told you that what you need to remember, that we will be finding the top 5 performers in the sustainable development goals frankly. Find sustainable development goals frankly. So which was the top performer? It was Finland. Find Finland. And in the last, it is
France, and the remaining 3 countries are again starting with the S, D and G, right? So that's how we need to observe these things, guys. See, you are the future RBI officers and you are the smarter one, right? So you don't need to retain all this information. You are just required to see that yes, that's how we have to cover this. तो अपना काम आसान कीजिए, मुश्किल ना बनाए. तो आसान करने के लिए क्या करना है, ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है जो आपको और स्मार्टर बनाएंगी as compared to the other aspirants. ठीक है? So do you guys agree with me? So that's how we need to less the amount of data. क्योंकि दोस्तों आप देख चुके हैं कि इवन आज के सेशन में हमने 58 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं रिपोर्ट्स के, राइट? कितना डेटा याद किया, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा कम कर लिया जाए, है ना? So that's how you are required to retain it. Now guys, let's move ahead. You can see that these are the 3 HDI components on the basis of which we are assessing the performance of the countries in the Human Development Report. So this includes longevity, education, knowledge, with the 2 indicators comprising of expected years of schooling and mean years of schooling for adults age 25 years and above. And then we are having income per capita. ठीक है? अगर हम बात करते हैं HDI value of the world, it was 0.756. तो HDI value of the world was 0.756. That is the right answer. ठीक है? So ये चीजें याद रखिए. Thank you for giving me your responses that yes, you are not required to retain this data. We have already, with our logical approach, we can retain them from examination point of view. अब हम बढ़ते हैं अपने next part की तरफ, Global Report on Food Crisis 2025. So दोस्तों, food crisis, जब हमें फूड नहीं मिल पाता बहुत दिनों के लिए, तब होता है फूड क्राइसिस. मैंने आपको बताया था फूड सिक्योरिटी और फूड इनसिक्योरिटी के बीच में डिफरेंस. सिक्योरिटी कब होगी, जब फूड आपके लिए अफोर्डेबल होगा, एक्सेसिबल होगा, राइट? और फूड इनसिक्योरिटी कब होगी, जब इनमें से कोई भी एक डायमेंशन नहीं पूरी हो पाएगी. फूड अफोर्डेबल होगा बट एक्सेसिबल नहीं होगा, या एक्सेसिबल होगा अफोर्डेबल नहीं होगा. आपके लिए सामने रखा है खाना बट खा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है, राइट? सो दिस इज बेसिकली, जब लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा चलता है तो होता है फूड क्राइसिस. फूड क्राइसिस को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक तो चाहिए फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो फूड सिक्योरिटी के लिए काम करे. फिर एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जो कि फूड क्राइसिस के अगेंस्ट काम करे, जो फूड क्राइसिस के अगेंस्ट काम करे, ऐसा ग्लोबल नेटवर्क चाहिए. सो दीज आर द 2 ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर रिलीजिंग द report, that is the global report on food crisis. Now we need to identify that which of the following statements are incorrect statements. See guys, the demand of the question is to identify incorrect statements. So please tell me which of the following is the right answer. Statement 1, let's quickly go through the keywords of these statements. Statement 1, 2024, 295.3 million people analyzed population faced high levels of food insecurity. Second statement, 2024 marked 6th consecutive year when the share of people facing acute food insecurity exceeded 20%. Third statement, number of people facing acute food insecurity reported from Nigeria, followed by Sudan and Democratic Republic of the Congo. So now quickly tell me what is the right answer. What is the right answer? So my dear friends, yes, right answer is option A, that is 2 only. ठीक है, ऑप्शन 2 only is the right answer because it is not the 6th consecutive year, it is the 5th consecutive year. Absolutely right, that is the right part. So दोस्तों, ये रिपोर्ट अगर आपने मिस की है, मैं आपसे एक गुजारिश है कि आप जब पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे इस सेशन पर जाइएगा, इस रिपोर्ट को डिटेल में देखिएगा, क्योंकि आपके फेज 1 के लिए ही नहीं, ये फेज 2 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है. ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि 5th consecutive ईयर हमने देखा 20% से ज्यादा ये नंबर है, और 6th consecutive ईयर वाला डेटा क्या है, इंक्रीजिंग फूड इनसिक्योरिटी एंड चाइल्ड मालन्यूट्रिशन. देखिए दोनों ही बहुत कंफ्यूजिंग है, 5th भी है और 6th भी है. 5th कौन सा है, जब 20% से ज्यादा वैल्यू है, और लगातार इंक्रीज फॉर द 6th consecutive ईयर देखने को मिला है. ये डिफरेंस है इन डिटेल्स के अंदर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो ये थी आपकी 3 डायमेंशन, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. ठीक है, सो आई होप सभी को याद रहेगा. अब हम बढ़ते हैं अपने 60th क्वेश्चन के ऊपर, एंड द 60th क्वेश्चन इज the World Press Freedom Index 2025 released by Reporters Without Borders. You need to identify the incorrect statements. Please try to identify the right answer in the chat box. So 3 statements are been given. Please tell me which of the following are correct here. India ranked 151st in 2025 with a score of 32.96. Second statement, 2025 के अंदर जो global average score है for the press freedom dropped to 54.7. Third statement, top 5 countries are Norway, which leads the list, followed by Estonia, Netherlands, Sweden and Finland. What is the right answer? To this question, what is the right answer?
So my dear friends, let's see who will give me the right answer to this question. To the question number 60. People are saying option E, some are saying option C. Yes, option E is the right answer, none of the above. So कोई भी statement incorrect नहीं है, all of them are correct here with respect to the World Press Freedom Index. दोस्तों एक और important index जो हमारे phase 1 के लिए important है, not for the phase 2 but only for the phase 1. ठीक है, बढ़ेंगे next part की तरफ. So these are the top 5 countries. इंडिया की रैंक 151 है, लास्ट इंडिया की रैंक 159 थी. On the bottom it is Eritrea. दोस्तों अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं इस रिपोर्ट एंड इंडिसेस के. एंड कृतिका मैम इज वेटिंग फॉर यू सिंस लॉन्ग कि सर मेरी बारी कब आएगी. तो just last question and then ma'am will be taking over the session, but make sure that you are giving me the answer to this last question of the reports and indices. According to the World Social Report 2025, a new policy consensus to accelerate social progress, how many people across the world are currently living in the extreme poverty? तो extreme poverty में कितने लोग रह रहे हैं across the world according to this report? That is what you need to identify here. Guys, अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी की, नाउ आई कैन मेक श्योर दैट आफ्टर द टुडेज सेशन, राइट नाउ वी आर कवरिंग रिपोर्ट्स, देन वी विल बी कवरिंग नोटिफिकेशंस, देन वी विल बी कवरिंग द स्कीम्स. तो आपकी नॉलेज की जो पेपर के लिए नॉलेज चाहिए, तो उसकी पॉवर्टी में कोई नहीं होगा एट द एंड ऑफ द सेशन. दैट आई कैन मेक श्योर, राइट? एंड आई होप कि यू विल also agree with me. To the question number 61, what is the right answer? So people are saying option A, and yes, option A is the right answer. That is 690 million. That is the right answer to this particular question. Absolutely right. Well done, my dear friends. I can see in the chat box Gururaj, Vijay, Rahul, Mukund, Vijay, Ujjwal, Mayank, Nikita, Dinav, Shrishti, Ritesh, Thyagu, Mayank. Everybody is given the right answer. That is option A. Well done, my dear friends. Now that was the last question of the today's session, and Kritika ma'am is also here. So in the meantime, ma'am is working on the PPT and opening the PPT. So you can basically see that अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों, सबसे पहले मुझे अपना स्कोर बताइए. आउट ऑफ 61 व्हाट इज योर स्कोर? चलो एक मैंने आपको ग्रेस मार्क दिया. आउट ऑफ 60 आप मुझे बताइए कि क्या है आपका स्कोर इन दिस सेशन टिल नाउ इन द मंथ ऑफ रिपोर्ट्स. So guys, please tell me what is your score out of 60 in this particular reports part. देखिए बाकी सब चीजें भी हम कवर करेंगे in the upcoming time. Don't worry about it. So Srishti is asking, sir, RBI annual report, FSR. Do not worry, Srishti. The things will be taken care of in the upcoming part. Don't worry. But अभी के लिए हम इसको कवर कर रहे हैं, right? तो बाकी की जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, जो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स का पेन पॉइंट था, उसको हमने कवर कर लिया है. ठीक है. So right now, please tell me what is your score. Mayank is saying 55. That's really a good score. That is almost, we can say that 90% of the questions have been marked correctly by Mayank. Shrik is having 13, Gururaj 54, Mukund 48.5. That's really good, guys. So majorly I can see here that लोगों का जो score है 50 to 90% में यहाँ पर वेरी कर रहा है. So that's really good part. तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. ये एक डायग्नोसिस था, ठीक है? अपने वीक एरियाज को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और अब आपको क्या करना है, उनके ऊपर काम करना है. कौन सा एरिया आपको याद नहीं था, कौन सा डेटा याद नहीं था, ये पूरा करने के बाद आप आगे बढ़िएगा. जब अगला सेशन होगा हमारा, ठीक है, तो अगला सेशन के दौरान आपको इंश्योर करना है कि इन गलतियों को आप दोबारा से नहीं दोहराएंगे. ठीक है. आई होप दैट कृतिका मैम विल ऑल्सो अग्री विद दिस पार्ट. Correct. So welcome Kritika ma'am. Students are eagerly waiting for you. So guys, now I am saying bye to all of you. All over to you ma'am. Okay. So first of all, give me a thumbs up if I'm clearly audible and everything is fine. Okay. So give me a thumbs up if I'm clearly audible. And we are starting with the RBI News tab. First, see, I have divided the RBI News tab part in such a way that first we will discuss the questions from September, then August, then July, then I have brought the questions from the less important months, we can say the May and June. Okay. So first we will start with September questions, August questions, July questions. Okay. So that we are doing the more important part in the initial phase. So let's get started. Give me a thumbs up. Audible? Okay. Let's start with the first question. I hope you will be able to answer this question because कल ही हमने ये discuss किया था हमारे Finance 360 degree session में. So we had discussed this that RBI has signed its renewed statement of commitment to the Foreign Exchange Global Code, and this Foreign Exchange Global Code was developed by a partnership between central banks and the market participants from around the globe and was first published in which year? So is it 2015, 2016, 17, 18, 19? It was 2017, right?
So the answer here should be 2017, and there is the recent amendment that has happened, or the recent update that has happened in December 2024. So as per the recent update, the RBI has signed the renewed statement of commitment. Okay, so here the answer is 2017, and this is important because this is the news article of September. Okay, now here we had discussed this in the RBI in the Finance 360-degree session, that the RBI has signed the renewed statement of commitment, and this foreign exchange global code, this was first published in 2017, so that the integrity and the effectiveness of the wholesale foreign exchange market can be maintained. And this is recently updated in December 2024, and that's why the RBI has signed the renewed statement of commitment. That is the idea. Chalo, coming to the next question, I hope you will be easily able to answer this question. And the Payment Regulatory Board, this is one of the most important board. Recently, it has been constituted. Okay, and you have to tell me that which of the following members are there in the Payment Regulatory Board. So try to answer this question, that which of the following are the members in Payment Regulatory Board. So Payment Regulatory Board, that has replaced the Board for Regulation and Supervision of the Payment and Settlement System. So the Payment Regulatory Board has replaced the BPSS, that is the Board for Regulation and Supervision of the Payment and Settlement System. Now there is the Payment Regulatory Board that consists of 6 members. Okay, 3 members are from the Reserve Bank of India, and the 3 members are nominated by the central government. Okay, so the Payment Regulatory Board consists of the Governor of the RBI, the Deputy Governor in charge of the Payment and Settlement Systems in RBI, the Executive Director in charge of the Payment and Settlement System in RBI, Secretary of the Ministry of Finance. No, Secretary of Ministry of Finance will not be a member of the Payment Regulatory Board. The Secretary of the Department of Financial Services, yes, the Secretary of the Department of Financial Services will be a part of the Payment Regulatory Board. Shaktikanta Das, IS retired, no, he will not be a part of the Payment Regulatory Board. It is Aruna, who is IS retired. Srimati Aruna will become the part of the Payment Regulatory Board. So here the right is 1, 1st, 2nd, 3rd and 5th. So the right answer here is E, that is these are going to be the part of the Payment Regulatory Board. So this you have to keep in mind, that the Governor of the RBI, the Deputy Governor in charge of the Payment and Settlement System in the RBI, Executive Director in charge of Payment and Settlement System in RBI, as well as the 3 members that are nominated by central government are Secretary of the Department of Financial Services, Secretary of Ministry of Electronics and Information Technology, and Srimati Aruna Sundararajan, IS retired. They have become the member of the Payment Regulatory Board. Got it? So this is what you have to remember. Now the Payment Regulatory Board itself is very important. Though it was released in May 2025, you can see that it is again in news in the September 2025. Okay, so try to answer this question that is in regards to the Payment Regulatory Board. You need to keep in mind that the Payment Regulatory Board, the members as well as the quorum, the minimum members that should be present in the meeting, as well as the meeting should happen at least how many times. So all these are important points from the Payment Regulatory Board. So here you have to tell me that which of the following statements is incorrect in regards to the Payment Regulatory Board Regulations 2025 that were released in May 2025. So try to answer this question. So it is the Payment Regulatory Board will be chaired by the RBI Governor and will include 3 members nominated by the central government. Absolutely correct. Okay. The PRB, the Payment Regulatory Board, will be chaired by RBI Governor and will include 3 members that are nominated by central government. Members nominated by central government cannot be above 70 years of age. This is also correct. Member of the board nominated by the central government, unless he is a public servant, shall hold office for a period of 4 years and shall not be eligible for re-nomination. This is also correct. That the members that are nominated by the central government, they cannot hold office for more than 4 years and they are ineligible for re-nomination also. The board shall ordinarily meet at least, the board should meet at least 2 times in a year. It is not 4 times, it is 2 times in a year. And the quorum, that is the minimum members that should be present in the meeting, should be 3 members. Okay, that is the chairperson should be present, and in case the chairperson, that is the governor of the RBI, is not present, in this case, in his absence, the deputy governor should be present. Okay, and 1 member nominated by central government should be present in the meeting. So all of the other statements are correct. Only the incorrect statement is D. So most of you have given the right answer, that is D. Okay, so here the right answer is D because only the D statement is incorrect.
So now the payment regulatory board, the members, you need to keep in mind the members, that is the governor. Who are the members? 3 members are from RBI, 3 members are nominated by the central government. As well as the members nominated by the central government, they can only hold office for a period of 4 years and they are ineligible for reappointment. Okay, and the person should not have completed the age of 70 years for being appointed as a member in the payment regulatory board. So these are the things that you need to keep in mind. I have taken a session, but I do not want you to waste your time in going back to the session and seeing all the points. So here I have brought the major points. Okay, so if you have less time, just see the PPT that I will be providing you, this PPT through in which I have provided you the major points. Okay, so the board shall ordinarily meet at least twice in a year, as well as at least 3 members should be present in the meeting, and the chairperson has a second or casting vote. That means in case of equality of votes, 3 people are saying yes, 3 people are saying no, so the chairperson has a casting vote, has an additional vote. This is the idea. Now moving forward to the next question, that the 32nd meeting of the Subcommittee of Financial Stability and Development Council was held in Mumbai. Institutionally, the FSDC subcommittee is chaired by which office? Now, if you know that the FSDC subcommittee is the committee that releases the financial stability report, or that prepares the financial stability report. So you should know that which person or which entity or which individual heads the FSDC subcommittee or chairs the FSDC subcommittee. So try to answer this question. Very easy question it is, and such kind of static question can come. So it is the Governor of Reserve Bank of India. So the Financial Stability and Development Council is chaired by who? The Financial Stability and Development Council is chaired by, it is chaired by the Union Minister of Finance. So Finance Minister chairs the Union Minister of Finance, or Finance Minister chairs the FSDC. Okay, while the FSDC subcommittee, the Subcommittee of Financial Stability and Development Council, is chaired by the Governor of the Reserve Bank of India. That is the idea. Okay, so here the answer is Governor of the Reserve Bank of India chairs the FSDC subcommittee. Now here the 32nd meeting of the FSDC subcommittee happened, where the regulators, they met, where the chairperson of SEBI, chairperson of IRDI, chairperson of PFRD, all of these members, they were present in the meeting, and they discussed major global and domestic macroeconomic and financial sector developments that has happened in recent times, the financial and macroeconomic developments that have happened, and various issues that may have financial stability implications on India. So there were major discussions that happened. Okay, now FSDC is chaired by Union Finance Minister, as well as the Governor of Reserve Bank of India chairs the subcommittee of FSDC, and the major regulators, the heads, they are present in the FSDC and the subcommittee of FSDC. Now coming to the next question, that is Reserve Bank of India released the balance of payment data for the first quarter, that is April to June of 2025-26. Now this data is released in September 2025, that is very near to the examination. That's why even the quarterly data, the main idea, the main definition you must, or the main data you must know about, or you must remember. So as this data, the quarterly data was in news, as well as it is released in September 2025, that is near to the examination. That's why this data is important. Okay, so Reserve Bank of India has released the balance of payment data for the first quarter. The foreign exchange reserves in nominal terms, including the valuation effect, has increased by $, how much? Billion. So basically the foreign exchange reserves in April to June, in this time period, the foreign exchange reserves have increased by how much amount, and including the valuation effect. So basically foreign exchange reserves in the balance of payment, the balance of payment surplus is there. The balance of payment surplus was how much? It was $4.5 billion. So there was balance of payment surplus of $4.5 billion. Okay, so if there is a surplus, the balance of payment, the money went to the foreign exchange reserves, as well as the foreign exchange reserves consist of gold and the other securities. So the gold prices are increasing, so gold valuation is increasing. So there was valuation effect. The foreign exchange reserves increased because the gold prices are increasing, the valuation is increasing. So valuation increased of the gold that is held by RBI in the foreign exchange reserves. So the valuation effect was $25.3 billion. So you can see that because of the valuation effect and because of the balance of payment effect, there was the increase in foreign exchange reserves by $29.8 billion. Okay, so you have to remember
Thereby, the balance of payment basis, the foreign exchange reserves increased by $4.5 billion. Okay, so this is the idea. So here the answer is A. Here you can see that the current account balance, in the balance of payment there is current account, there is capital account. Okay, so the current account was in deficit of $2.4 billion. The capital account was in surplus of $6.9 billion. That's why the balance of payment was in surplus of $4.5 billion. So balance of payment surplus as well as the valuation effect of $25.3 billion. So in total, the foreign exchange reserves increased by $29.8 billion. Got it? So this is the idea. Now coming to the next question, try to answer this question that India's current account balance recorded a deficit. That we have seen that the current account balance recorded a deficit in the April to June 2025 in the first quarter of the 2025-26. So the first quarter, quarter 1 of 2025-26, that is from April to June 2025. In this, there was a current account balance deficit. Now the deficit is what percentage of GDP that you have to inform. So try to answer this question. Yes, you will get the PDF of this session by tomorrow. Okay, the team will provide you the PDF of the session. Okay, do not worry about that. For now, just focus on giving the answers. So yes, India's current account balance recorded a deficit of 0.2% of GDP in the first quarter. As compared to 0.9% of GDP in the first quarter of the previous year. So here, currently, or in the first quarter of the 2025-26, there was the balance of there was current account deficit of 0.2%. Okay, chalo. These are the 3 points that you have to keep in mind, that India's current account balance recorded a deficit of 0.2% of GDP. The percentages are more important in comparison to the data, direct data here. So merchandise trade deficit in the goods, merchandise trade deficit means, see, the current account consists of trade in goods, trade in services, and the transfer payment. So trade in goods, the merchandise trade in goods was in deficit of $68.5 billion. That was covered by the service surplus. The trade in services were in surplus, and the transfer payments were also in surplus. The remittances that we are receiving was also in surplus. Okay, so the trade deficit, the trade in goods is in heavy deficit, but that is being covered to an extent by the surplus in trade in services and transfer payment, but still the current account was in deficit of $2.4 billion. That is 0.2% of the GDP. That is the key idea from here. Okay, now moving forward to the next question, that with reference to the Reserve Bank's 35th Conference of the State Finance Secretaries. So there was 35th Conference of the State Finance Secretaries that happened, and the theme of this 35th conference was journey towards economic prosperity through the path of fiscal consolidation. Okay, this was the theme. Now this theme most appropriately aligns with which of the following stances? If you know that what is the meaning of fiscal consolidation, you will easily be able to answer this question. So the question can come like that, what is the theme? Directly the question can be on theme, or the question can be a little more analytical and the alignment can be asked that what is the target of the theme? What is the target of the theme? So fiscal consolidation means that reduce the debt burden of the government. Fiscal consolidation means that reduce the deficit that the government is having, reduce the deficit. Deficit is what? The expenditure minus receipts. The government is receiving less, the government is spending more. So there is a deficit. So reduce the deficit by reducing the extra expenditure, and reduce the deficit so that there will be less debt burden. Okay, so this is shown here, that prioritizing the debt sustainability by reducing the debt burden, we have to make the debt more sustainable. That means the debt we should be able to handle, that much debt only we should be taking, the government should be taking. Improving the quality of expenditure so that we are doing less wasteful expenditure. With a glide path of deficit reduction, we have to reduce the deficit. So this is the best option that is aligning with the theme of fiscal consolidation, that says reduce the deficit, reduce the debt burden. That is the idea. Okay, so here if you know the fiscal consolidation, you would have been able to answer this question. So the question can come directly on theme, or the question can be more analytical also here. Now, so Reserve Bank holds 35th Conference of State Finance Secretaries. The theme of the conference was journey towards economic prosperity through the path of fiscal consolidation. As well as the RBI has launched the microsite for banknotes. Before, the site was called Paisa Bolta Hai
Now the site is called indiancurrency.rbi.org.in. That's it. And this microsite is providing us 360-degree view of the banknotes, and it is providing us the detailed information about the banknotes. Now coming to the next question. Recently we have discussed about regulatory review cell. So RBI has constituted a regulatory review cell. In which department? When it will be operational? For what it has been launched? There is also a advisory group on regulation that has been formed that will advise the regulatory review cell. So who is the head of the advisory group on regulation? So all of these are the important points, and these are the points under this regulation. So try to answer this. So basically the RBI has said that to review all the regulations that have been released by the Reserve Bank of India, there is a regulatory review cell that is being constituted. The regulatory review cell will be housed in Department of Regulation. Absolutely correct. The RRC, the regulatory review cell, becomes operational with effect from October 1, 2025. Correct. The newly formed advisory group on regulation is chaired by who? Can you tell me that who has chaired, or who has been selected to chair the advisory group on regulation? Okay, is it Shyam Srinivasan, or who is it? Okay, so RRC's mandate is comprehensive internal review of all the RBI regulations. So the regulatory review cell will comprehensively review the RBI regulations every 5 to 7 years. Okay, so that the regulations are updated as per the requirement. This is the idea. Rana Ashutosh, correct. So the newly formed advisory group on regulation is chaired by Rana Ashutosh. That is the answer, not Shyam Srinivasan. So third is wrong, the other are correct, and that's why 1, 2 and 4, this is the answer here. Okay, so regulatory review cell, this is constituted so that there is continuous review that can happen of the regulations, and all the regulations will be systematically reviewed every 5 to 7 years, so that if there is any update that can be done. Regulatory review cell is under the Department of Regulation, and it is going to be effective from 1st October 2025. Okay, and there is the AGR, that is an advisory group for the regulatory review cell for the RRC. There is a advisory group that has been formed. This advisory group is independent. That means the external experts are present in the advisory group, so that the external recommendations can be provided, and the feedback can be provided of the industry to the regulatory review cell when it reviews. Now, can you tell me that the group is constituted for how many years, and it is extendable for how many years? Okay, so the group is constituted for how many years? That you have to tell me. The group, the AGR, that is the independent advisory group on the regulation, that consists of the external experts to channel industry feedback into the periodic review of regulations. Now this group is constituted for initial 3 years, and the timeline is extendable by a further period of 2 years. This is important to remember. Okay, so the AGR will have the initial tenure of 3 years, renewable or extendable by a further period of 2 years. Yes, very good everyone. Correct. So now coming to the next question, question number 9. Following the launch of the next generation data warehouse. Yes. So following the launch of the next generation data warehouse of the Reserve Bank of India, that is centralized information management system, RBI has decided to commence the reporting of the internet banking return and mobile banking return in the CIMS. As per the existing practice, the returns for every month should be submitted by the dash of the succeeding month. So for August, the returns have to be submitted by what date of the October of the succeeding month? So it is 7th. Very good. Everyone has given the right answer. Good to see. Yes, absolutely correct. Vaibhav, Saurabh, Rahul. Okay. Yes, correct. So here the answer is 7th, it is not 15th, it is 7th. Okay. So remember that the answer is C here. So basically the Department of Payment and Settlement System submission in CIMS. So the CIMS, it is the Centralized Information Management System of the RBI. That is the next generation, a very developed data warehouse. It has been said to the banks, all the banks, they have to provide the internet banking returns, and they have to provide the mobile banking returns through the CIMS portal now, and they have to provide the returns by the 7th of the succeeding month, Okay, these returns have to be submitted by the 7th of the succeeding month. So for the returns for August 2025 have to be submitted by September 7th, not October. After August, it is September, sorry.
Okay, so for August, the returns have to be submitted by 7th September. That is the idea. Chalo. Coming to the next question, read this question very carefully, as this is a question from the master action that the RBI has recently released on the payment aggregator. So I hope you will be able to answer this question. So try to answer this. Read the question carefully and try to answer this. So basically, RBI has released the updated directions for payment aggregators. The Reserve Bank of India Regulation of Payment Aggregators Directions 2025. Now, which of the following statements is incorrect in this regards? So the bank does not require authorization to carry out payment aggregator business. Absolutely correct. The non-banks, they require, the non-banks, that are the non-bank entities, they require to get the authorization. If a non-bank entity is regulated by any financial sector regulator, it must get a no objection certificate, and after getting the no objection certificate, within 45 days it has to request for authorization. Correct. An entity whose application for grant of certificate of authorization for payment aggregator online, payment aggregator cross-border is under consideration of the RBI. This they shall inform the Reserve Bank if they have been working as a payment aggregator in the physical business. So this is also correct. They have to inform by 31st December 2025 through the online portal of RBI, through the Prava portal of RBI. Correct. An entity seeking authorization to commence or carry on payment aggregator business shall have a minimum net worth of how much? Crores. 15 crores. 15 crores at the time of sending the application for authorization, and shall attain a minimum net worth of 25 crores within by the third financial year of the grant of authorization. So this is the idea, that when you are sending the application to become a payment aggregator, you need to have the net worth of 15 crores, and your net worth by the end of the third financial year should be 25 crores. That is the idea. It is not 20, it is 15 and 25. The net worth shall include compulsory convertible preference shares, and additionally, if deferred tax assets have been added, that has to be deducted. Okay, so this is the idea. So here the D statement was incorrect, and that's why the right answer here is D. So everyone has given the right answer? Yes, correct, absolutely correct. So here you can see master action on regulation of payment aggregator. This we have discussed in detail, and we have discussed that the bank does not require authorization to carry out payment aggregator business, but the non-bank entity need to have the authorization, and they need to have the no objection certificate, and after that they can apply within 45 days. Okay, the non-bank payment aggregator should be a company incorporated in India under the Companies Act 2013. So this is the idea. Okay, next is we have discussed that by December 31st 2025 they need to get the information, they need to provide the information to the RBI, or they need to get the authorization, new authorization. Capital requirement, net worth requirement is 15 crores immediately and 25 crores by the end of third financial year. And there is a slight change in the net worth definition, that it has been said net worth will include compulsory convertible preference shares and will exclude the deferred tax asset. All of this we have already discussed. Now coming to the second part of the master action. Now try to answer this question, that as per the master action on regulation of payment aggregator, a payment aggregator cross-border shall not purchase foreign currency from or sell it to any other entity other than the authorized dealer. In respect of inward transactions or outward transaction that is processed by a payment aggregator cross-border, the maximum value per transaction shall be dash lakh. So the maximum value for the inward transaction or outward transaction through the payment aggregator cross-border can be 25 lakh. Very good. So this shows, that means you are covering the recent directions. That is good, because these are most important directions. Okay, so 25 lakh is the answer here. So everyone that has given the right answer, give yourself a pat on the back, because you have given the right answer. And the master action, it is difficult to remember so many of the data, but very good. Okay, so here is the right answer, and here you can see that the maximum value per transaction for inward or outward transaction shall be 25 lakh. And these are the the highlighted part or the marked part. This is the part that you have to keep in mind, that payment aggregators, they shall not carry out marketplace business. They cannot open the platforms like
Amazon or Flipkart and such, okay? And they shall not give an option for ATM pin as a factor of authentication for card not present transactions and such. So these are the important points. Now coming to the next question from the payment aggregator master action. If you give the right answer of this question also, that means your master action is done. Try to read the question carefully and try to answer the question that which of the following statement is or are correct in regards to the payment aggregator master action. So try to answer this question. So pre-funding is allowed in escrow account, domestic, but it is not allowed in inward collection account and outward collection account. So basically for the domestic payment aggregators, the pre-funding is allowed. They can do the pre-funding, that means they can have some amount in the escrow account that they can use for the transactions, refunds and such. But for the inward collection account and outward collection account, pre-funding is not allowed. That is absolutely correct. The core portion of escrow account, that is the reserved portion, shall be permissible to entities who have been in business for how many fortnights? For 26 fortnights. For 26 fortnights, not 29 fortnights. Payment to any other account third party on specific direction of a merchant having physical or online presence with an annual turnover above rupees 40 lakh or an annual export turnover of more than 5 lakh. So basically payment to any other account third party. So basically from the escrow account, the third party transaction can happen or the money can be sent to third party if the merchant requests, and the merchant should have the annual turnover of above 40 lakh and annual export turnover or annual export turnover of more than 5 lakh. So then it is allowed. So the second and third statements are incorrect, and that's why the correct answer is one only. So only the first statement is correct, and that's why the answer here is D. The answer here is D. Okay. Okay. So good to see that you are able to remember some of the points. Here, if you have not been able to answer this, that means this part of the topic you have to cover it more thoroughly. Okay. So basically, it was said that there will be escrow account, third party account for domestic transactions through the payment aggregator, and inward collection account and outward collection account will be there for the payment aggregator cross border, for the cross border transactions. Okay. Pre-funding is allowed for the escrow account domestic, but it is not allowed, not permitted for the inward or outward collection accounts. Okay. So this is the idea. Next, the core portion of escrow accounts. The core portion of escrow accounts, they will be allowed if you have been in business, payment aggregator business for 26 fortnights. So all of this due diligence also, the payment aggregators will do the due diligence for onboarding the merchants, and they can use the due diligence data from the central KYC registry. If they do not have the data from the central KYC registry for the due diligence, they can take any other means. They can do this process, and this process can be done for the merchants that have annual turnover that do not exceed 40 lakh or its annual export turnover that do not exceed 5 lakh. So this is the idea. Okay. And the payment aggregators, they can allow the third party transfer if the merchant has the annual turnover of above 40 lakh or annual export turnover of more than 5 lakh. So these are the important data points. You have to focus on the data points, okay, and the major points. So this is the idea. Now coming to the next article, this is also from September. This is the direction from September itself. So under the Reserve Bank of India authentication mechanism for digital payment transaction directions, which of the following statements is correct? That you have to tell me. Okay. So basically here, I hope you remember that it was said that there is two-factor authentication that is required, two-factor authentication, and we have been using the SMS-based OTP as a second factor of authentication, and this has become constant. All the entities have started to use SMS-based OTP as a second factor authentication, or majorly this is being used. So now the RBI is saying that use the other factors of authentication also. Okay. So for that, the direction has been released. So all the digital payment transactions in India must be authenticated using two-factor authentication, not three-factor authentication. Issuers are not prohibited. Issuers are not prohibited from using SMS-based OTP. It is just said that the SMS-based OTP can be used, but use the alternatives also for the second factor authentication. At least two-factor authentication for digital payment should be dynamic. No, at least one factor should be dynamic.
one factor should be dynamic. The one factor should be dynamic and one factor can be static. Okay, so both the factors do not need to be dynamic. One factor should be dynamic and one can be static. So this statement is also wrong. Card issuers shall by October 1, 2026 put in place a mechanism to validate non-recurring cross-border card not present transactions where request for authentication is raised by an overseas merchant or acquirer. Basically, card issuers, they need to keep in mind that there should be a mechanism for validating the non-recurring cross-border transactions where card is not present in the physical manner. Okay, in such cases, if the payment is happening to overseas merchants or acquirer, this is correct. This is absolutely correct. Issuers are not responsible for compensating customers in case of transaction loss due to non-compliance with these directions. The banks, the non-banks, they have to comply with the directions. They need to provide the two-factor authentication. If they have not provided the correct authentication mechanism, then this is the mistake of the banks, this is the mistake of the non-banks and such, that are the issuers. So issuers are responsible for compensating the customer if in case there is a transaction loss or there is a fraud due to non-compliance with these directions. So all the other statements are wrong, only the D statement is correct. Only this statement is correct. That's why the answer here is D. So all of you have given the right answer. Sanchita, Rahul, Ronika, Vaibhav, absolutely correct. The D is the right answer here. Okay. So basically, principles for authentication of digital payments, two-factor authentication is required. At least one of the factors should be dynamic. In case the card is not present, there should be one dynamic factor. Okay. Robust, so the process should be robust. Okay. Interoperability, open access, that means the authentication and the tokenization should be present for all the people. Okay, authentication and tokenization. Next is risk-based approach. In case there is some changes in parameters, the behavioral changes are happening, that means suddenly there is spike in the payments, or suddenly there is a lot of amount that is being taken out, or suddenly the transaction is happening from a new country, from a new place. So in this case, other than the two-factor authentication, more factors can be imposed. Okay, responsibility of the issuer, I have told you that it is the responsibility of the bank and the non-bank, the issuers, that they need to follow these guidelines and they need to provide the two-factor authentication. If they do not follow the guidelines, they will have to compensate in case loss happens. Okay, cross-border transactions, so by October 1st, 2026, the validation process has to be provided for non-recurring cross-border card not present transactions. This is the idea. So now the September part is ending and we are going to start with the August month. Okay. So the September part is ending. In the September, there was one more news article that was there. It was quite in news recently, as well as this is the press release of the RBI. So basically the rate of interest. Here you do not have to remember the rate of interest. Here you have to remember that what is the process that is followed. So rate of interest on Government of India floating rate bond. So Government of India, the Government of India raises the funds through the government bonds. Okay, so RBI issues the government bonds on behalf of the Government of India. So government raises the funds through the government bonds from the investors. Now these bonds can have the floating interest rate, can have the changing interest rate. Now this floating interest rate is decided on the basis of the base rate. So the floating interest rate or the coupon rate is decided on the basis of base rate. Base rate is equal to the average of the weighted average yield of the last 3 auctions of the 182-day T-bills. So last 3 auctions of 182-day T-bills, the weighted average yield of the last 3 auctions of 182-day T-bills. So that is the base rate. Okay, the weighted average yield, the average interest of the last 3 auctions of the 182-day T-bills plus a fixed spread, of 1.22%. So this is the interest rate, that is the floating rate interest on the government bond for 2033. So that is the idea. So interest rate, that is the floating rate for the bond of 2033. That will be a base rate, that is the average of the weighted average yield of last 3 auctions of 182-day T-bills plus the fixed spread. The fixed spread will be 1.22%, and as per this formula, the coupon rate, that is the interest rate that has been decided for the half year, for the second half of the financial year, that is 6.82%. This is the interest rate that has been decided for this particular bond. That is the idea. This was in news and I thought that you might get confused in this article, so I've given you the details. Okay, now we are starting with the August questions. So which of the following statements correctly describes the new auto bidding facility introduced in the RBI's retail direct
portal. So RBI Retail Direct Portal. So RBI Retail Direct Portal, this is the portal that provides the retail investors the access in the primary market, in the primary auctions of the government bonds. So the retail investors, they can directly invest in the government bonds through the primary market, as well as they can trade in the government bonds. They can buy and sell the government bonds in the secondary market. Okay. Now there is the auto bidding facility that has been provided. So try to answer this question. Okay, I have started getting the answer. Everyone is saying B. Let's see. So it allows investors to purchase only the long-term government securities. No, the auto bidding facility, first of all, this has been provided for T-bills, for treasury bills, that is called the short-term loans. That is the short-term loans that the government is taking. Okay, so it permits, the auto bidding facility permits auto bidding in T-bill auctions. Absolutely correct. With investment and reinvestment auctions, this is correct. So the B statement is correct. Investors can now place T-bill bids in any amount starting from 10,000 and in multiples of 10,000. Okay, so here this statement was wrong also. So here the right answer is B. Everyone has given the right answer. So this is the answer. So basically the Retail Direct Portal was launched in November 2021 so that the retail investors can access the primary market and secondary market of the government securities, and they can buy the government securities in the primary market and such. Now to enable the investors to systematically plan their investment, an auto bidding facility has been provided for the T-bills, covering both the reinvestment and reinvestment in the T-bills. You just have to set the basic rules that in 1 month I want to invest in 2 auctions, and T-bills of 91 days I want to invest in those T-bills. So you are setting the basic rules, and after you have set the basic rules, there will be auto bidding that will happen, okay, in the T-bill auctions. And the minimum investment is 10,000 and in the multiples of 10,000. That is the idea. Now this was stated in the Statement on Developmental and Regulatory Policy document that there is the auto bidding facility that has been introduced for the retail investors for through the RBI Retail Direct Portal. Okay. Now coming to the next question, that is regarding the Small Finance Bank. So which of the following statements is correct regarding the eligibility and conditions for a small finance bank to transition into universal bank? So if a small finance bank voluntarily transitions into the universal bank, which of the following criteria should be met? That you have to answer. So the small finance bank must have a minimum net worth of 100 crores as at the end of previous audited quarter. So minimum net worth of 1000 crores should be there. There is mandatory requirement for an eligible small finance bank to have an identified promoter. There is no mandatory requirement as such. Okay, the small finance bank have to be scheduled status. The small finance bank should have a scheduled status with a satisfactory track record of performance for a minimum of 5 years. So this is correct. Okay. The small finance bank to have gross non-performing asset less than 2% and net non-performing asset of less than 1%. So it should be 3%, less than 3% and 1%. Okay. Small finance bank to have a net profit in the last 3 financial years. So the net profit should be in last 2 financial year. Okay. So basically the small finance bank, all the other statements were wrong. Only the third statement, C statement, was correct. So basically if a small finance banks want to transition into universal bank, these are the guidelines that has to be met, that there should be a minimum net worth of 1000 crores, the having a net profit in the last 2 financial years, as well as having gross non-performing asset and net non-performing asset of less than or equal to 3% and 1%, as well as scheduled status with a satisfactory track record for a minimum of 5 years. So C was the right answer. Okay, and there is no mandatory requirement. There is no mandatory requirement to have a promoter in a small finance bank if they want to transition into universal bank. Now coming to a direct question, that recently the Reserve Bank of India has approved the amalgamation of which cooperative bank with Saraswat Cooperative Bank Limited, Mumbai. So is it Abhyuday Cooperative Bank, New India Cooperative Bank, Cosmos Cooperative Bank, Bharat Cooperative Bank, or Punjab and Maharashtra Cooperative Bank? Which of the following cooperative bank has been amalgamated into Saraswat Cooperative Bank? So very good. It is New India Cooperative Bank Limited. Okay. So New India Cooperative Bank Limited, this is the answer. So Saraswat Bank has received the RBI nod for for amalgamation with the New India Cooperative Bank Limited, and the branches of the new cooperative bank, they will operate as the branches of Saraswat Cooperative Bank.
So the branches of New India Cooperative Bank will operate as the branches of Saraswat Cooperative Bank. Now coming to the next question, that the fifth cohort, this has been recently exited. So try to answer the question. Try to answer this question. So here, what should be the answer? You have to tell that under the fifth cohort, products of the entities which completed the test phase was evaluated based on mutually agreed test scenarios and expected outcomes. Accordingly, one product was found viable. Which of the following statements is or are incorrect in this regards? So the regulatory sandbox in which the testing happens of the products. The testing happens of the products. Okay. Now the testing has finished and a product has been found viable. So try to answer this question. So I've started getting the answer and I'm getting the answer C. Okay. Some are saying E also. Let's see. The fifth cohort of the regulatory sandbox, which was theme neutral. The theme was neutral, theme neutral. Indian Banks Digital Infrastructure Company Private Limited blockchain-based deep tier financing solution has been found by this entity. So this is also correct, that Indian Banks Digital Infrastructure Company Private Limited has found the solution that has been found viable and it has successfully exited the cohort after seeing that its product is viable. Okay. Partner financial institutions are IDFC, First Bank, IndusInd Bank, State Bank of India and Policy Bazaar. This is not correct. The partner financial institutions are ICICI Bank and such. Okay. So first and second statements were correct, but the third statement is wrong and you had to tell that which of the following statement is or are incorrect. So here the answer is C, that is only third statement is incorrect. Yes. So this is the idea. So fifth cohort, basically in the regulatory sandbox, there is preliminary screening that happens. After that, application is assessed, test design is assessed and such, and then testing phase starts and then evaluation phase. So only one product was found viable in the evaluation phase. That was the product of the IBDIC, that is Indian Banks Digital Infrastructure Company. Its product has been found viable in the testing phase, in the evaluation phase and such. Okay. So 5 entities, there were around 5 entities which was in the testing phase. There were 5 entities that were in the testing phase, but only one entity's product has been found viable, that is this entity. Okay. So you have to remember the name of the entity, and the partner financial institutions are ICICI Bank, SDFC Bank, Yes Bank and Aditya Birla Capital Limited. This is the idea. Now coming to the next question, that which with reference to the newly issued RBI co-lending arrangements directions 2025, which of the following statement is or are correct? So basically sometimes the banks and NBFCs, they co-lend, they come together to do the co-lending, so that the banks deep pockets, that is the bank has the financial resources, and the NBFCs, they have the reach in the farther off areas. Okay, so banks and NBFCs, they come together to provide the lending. So under the co-lending arrangement directions, which of the following statement is or are correct? Yes, Saurabh. So focus on the question, that which of the following statement is or are correct. So each regulated entity must retain at least 10% of every loan under a co-lending arrangement in its own books. So this is absolutely correct. Each regulated entity that is in the co-lending, each regulated entity that is in the co-lending must retain at least 10% of every loan under its own books. Originating regulated entities, that is the regulated entity that is originating the loan, that is the main entity in the loan, may provide default loss guarantee up to 5%, default loss guarantee up to 5% of the loan outstanding under the co-lending arrangement. Okay, loan shares of each partner regulated entity must be reflected in their books within 15 calendar days of the disbursement of the loan. So this is also correct. So the first statement is correct and the third statement is also correct, and that's why the right answer here is C. Absolutely correct. The C is the right answer here. Okay. So this is the idea, the co-lending arrangement directions. Remember, the applicability is always very important. So these directions are applicable on all the commercial banks, excluding the small finance banks, local area banks and the regional rural banks. These directions are also applicable on all India financial institutions and non-banking financial companies. Okay. Next is that each regulated entity must have the minimum 10% of share in the loan,
as well as default loss guarantee cannot be above 5% of the loan outstanding. This is the basic idea. These are the important points from this direction. As well as the next important point is that within 15 days, not later than 15 calendar days, the transfer should happen of the loan portfolio. So the partner entities that are doing the co-lending, so they should get the loan portfolio in their own books within 15 days. Within 15 days from the date of disbursement of the loan. Okay. So this is the idea. Now coming to the next question or the next article regarding the check truncation system. It was said that right now the check clearance takes T+1 days. That is, today you are giving the check, by tomorrow it will be settled. So now through the continuous settlement, it is said that the check clearing process will be made very fast, and within few hours your check will get cleared. Within few hours your check will get cleared. So there will be continuous clearing that will happen of the checks. So RBI has decided to transition the check truncation system to continuous clearing and settlement on realization in 2 phases. Phase 1 shall be implemented on October 4, 2025 till January 3rd, 2026, and phase 2 will start on January 3rd, 2026. There shall be a single presentation session from 10 a.m. to 4 p.m. That means you can deposit your check in between 10 a.m. to 4 p.m. and the confirmation session shall start from 10 a.m. that will close at 7 p.m. So here the right answer is D. Here the right answer is D. Absolutely correct. Okay. So this is the check truncation system. Now there will be a continuous clearing process that will be followed continuously. The checks will be sent forward and will be cleared on the continuous basis. Okay. The single presentation session, that means you can deposit your check between 10 a.m. to 4 p.m. and on the continuous basis the checks will be moved forward for the clearance. Okay. The confirmation session, that means either the check is accepted or not accepted. So the confirmation has to be given between 10 a.m. to 7 p.m. Now try to answer this question. In phase 2, from January 3rd, 2026, the item expiry time of check shall be changed to dash clear hours. So basically the confirmation hours, the confirmation session is in between 10 a.m. to 7 p.m. right? So the confirmation session, the confirmation, either positive confirmation that the check is accepted or negative confirmation the check is not accepted. So this confirmation has to be provided in between 10 a.m. to 7 p.m. The maximum confirmation time in phase 1 is 7 p.m. In phase 2, when the phase 2 starts from January 3rd, 2026, in phase 2 it has been said that the confirmation for the checks has to be given within T+3 clear hours. That means in the T hour you have received the check for confirmation. So within 3 hours you have to confirm the check, either positive confirmation or negative confirmation. So in the phase 2, the clear hours are T+3 hours. T+3 hours. Okay. So this is the right answer. So this is the idea that during phase 1, the confirmation session is in between 10 a.m. to 7 p.m. and the confirmation can be provided by 7 p.m. on the same day. In phase 2, the confirmation timing is still 10 a.m. to 7 p.m. but the confirmation has to be provided within T+3 hours. Okay. So this is the idea. Now coming to the next question, try to read the question very carefully and try to answer this question. Now this data was released in August 2025. That's why even the quarterly data is important, but you do not have to go too much in depth in quarterly data. Just try to remember the most important points. So here try to answer this question. So bank credit growth decelerated to 9.9% in June 2025 from 15% in June 2024. So basically the credit growth happened, the credit was growing but by a lesser percentage at 9.9%, that was lower than 15%. Okay. Next is, in line with monetary policy actions, the weighted average lending rate on outstanding credit has declined by 39 basis points, not 59 basis points. It is 39 basis points. Now, if you remember that in February 2025, the repo rate was decreased. Then in April 2025 also the repo rate was decreased. Then in June also the repo rate was decreased. So because of the decrease in repo rate, the weighted average lending rate, the lending rate that is charged by the banks has also decreased by 39 basis
points, not 59. Okay, so this is the idea. Now, public sector banks recorded higher credit growth than private sector banks, correct? And the public sector banks share in the total loan is 53.7%. So these are some important data points that you have to remember from the quarterly data. So bank credit growth has been 9.9%, that is lower than the previous years. Okay, so the first statement is correct, the second statement is wrong, the third statement is also correct. So first and third are the right statements, but you had to tell the incorrect statement, that which of the following statement is incorrect in regards to BSR 1, the credit data. So the incorrect statement is 2 only, that is E is the right answer here. Yes, E is the right answer here. So the quarterly data was released for the credit data. So bank credit growth has been 9.9%, that is lower than the previous year. The share of loans bearing interest rate below 9% has increased. So you can understand that the interest rate is decreasing in the economy, and the loans with less than 9% of interest rate, those loans are increasing. The lending rate has decreased by 39 basis points, that is by 0.39%. Public sector banks recorded higher credit growth, and the public sector banks have the leading share in the total credit. So these are the important data points that you have to keep in mind. Now, the women's shares within credit to individuals too has increased to 23.7%. So out of the total credit, in the share of individuals, the women's share within credit to individuals has increased to 23.7%. So this is the share of credit that is going to the individuals. In this, 23.7% is the share that is going to the women, and this is the higher share in comparison to the previous year. That is the idea. Now, as I've told you that in February 2025, the repo rate was decreased, then in April, then in June 2025, the repo rate was continuously decreased, due to which the interest rate is also decreasing for the credit in the country. That's why the weighted average lending rate has decreased by 39 basis points. That's why it become very important, because it is linked to the monetary policy. Now, coming to the next question, that the BSR2 was also released. BSR2 is the basic statistical return for the deposit data that shows the deposit data. Now, bank deposits with scheduled commercial banks registered a growth of how much percentage at the end of June 2025? That you have to tell me. So Abhigyan has given the answer 11.3%, as well as PK Vaibhav, they are also saying 11.3%, and 11.3% is the correct answer actually. So basically, the bank deposits with scheduled commercial bank have registered a growth of 11.3% at the end of June 2025 in comparison to 11.7% a year ago. The term deposits recorded a growth of 13.5%, and the share of term deposit in total deposits has increased to 62.2%. That means out of the total deposits, the highest deposits are in the form of term deposits. Okay, nearly 70% of term deposits, nearly 70%, that is maximum of term deposits, were for the period of 1 to 3 years. Okay, next is higher interest rate. The deposits bearing higher interest rate has declined. So because the interest rate is declining in the country, so the deposits with higher interest rate are also declining. Next important point is that the financial corporations deposits have increased, while the share of household deposits have declined. Okay, have a modest decline. So this is the basic idea. Now moving forward with the next article or with the next question, the regulated entity shall put in place suitable internal aggregate individual ceilings for issuance of guarantees. So basically, the RBI had released non-fund based credit guidelines. So basically, when the banks are giving loans, that is the fund based credit, that the bank has given the loan, the bank has given the money. So that is fund based guarantee, that is fund based credit. But there is non-fund based credit also, where the bank is giving the guarantee on your behalf, where the bank is co-accepting your bill. So the bank will have to face the burden. Okay, so this is non-fund based credit facilities that the banks can provide, and for the non-fund based credit facilities, the RBI has released the guidelines. Now try to answer this question. So basically, the urban cooperative banks, RRBs, local area banks, state cooperative banks, and central cooperative banks, they can provide the non-fund based credit facility. They can provide the guarantee that should not exceed, the guarantee should not exceed 5% of their total assets, and the
unsecured guarantee that is not secured by a collateral should not increase, should be restricted to 1.5% of the total assets. So here the answer is 5% and 1.25%. That is the answer is B here. Okay, so this is the answer. So here you can see that the guarantees, if the bank is providing the guarantees, so the scheduled commercial, the urban cooperative banks, RRBs, local area banks, for them the limit has been provided. That is, the guarantees, the total guarantee should not exceed 5% of their total asset, and unsecured guarantee should not exceed 1.2% to 5% of their total asset. For the scheduled commercial bank, they can themselves decide the limits for themselves. Okay. Now, a regulated entity shall not provide a guarantee favoring another regulated entity, another bank and such, for fund-based credit facility. But for the non-fund-based credit facility, there can be a guarantee that can be provided by a regulated entity. So regulated entity cannot provide a guarantee in case of fund-based credit facility, but a regulated entity can provide a guarantee for non-fund-based credit facility provided by another regulated entity. Okay, so a regulated entity can provide guarantee to another regulated entity for a non-fund based credit facility. That is the idea. Now coming to the next question. So try to answer this question. If you answer this question, that means you have the knowledge about the partial credit enhancement. Okay, so like the guarantee, that is a non-fund based credit facility, the partial credit enhancement is also a non-fund based credit facility that the banks can provide. Okay, so try to answer this question. So basically, scheduled commercial banks. So the question is, as per the RBI non-fund based credit facilities direction 2025, which of the following statements is incorrect in regards to partial credit enhancement? So which of the following statement is incorrect, that you have to tell. So scheduled commercial bank excluding RRBs, all India financial institutions and NBFCs, middle layer and above, including housing finance companies, they are entities that are allowed to provide the partial credit enhancement. Absolutely correct. Okay. The PC exposure limit by a single regulated entity, that is partial credit enhancement exposure limit by a single regulated entity, shall be 50% of the bond issue size. So that is correct. A single entity can have the exposure in the PC 50% of the bond issue size. The aggregate exposure limit of all the regulated entities towards the partial credit enhancement for a given bond issue has also been decided at 50%. Regulated entities may offer partial credit enhancement only in respect of bonds whose pre-enhanced credit are not lower than BBB minus. Correct. Since PC is drawn, since PC is the partial credit enhancement, where this credit enhancement has been given for certain kind of bonds, that if the entity that has issued the bonds is not able to provide interest payments or is not able to provide the payments for a short period of time, the partial credit enhancement, that is the credit facility, will be provided by the bank for covering the returns or for covering the payments of the bond. Okay, so for certain bonds, the partial credit enhancement can be provided by the banks, where the banks are promising that if the issuer of the bond is not able to provide the returns or is not able to provide the payments for a short period of time, the bank will provide the issuer the credit so that the issuer can pay for the bonds and can give the money for the bonds. Okay, so since PC is drawn only when a project faces cash flow shortfall, when there is cash flow shortfall that the issuer is facing, so in this case the drawn PC, that is the money that has been taken under the partial credit enhancement, must be repaid within 15 days, within 30 days. It is not 15 days, it is 30 days. If it is unpaid for this is the idea, that the partial credit enhancement must be repaid by the issuer within 30 days, and if it is unpaid for 90 days, it will be considered non-performing asset. So all the other statements are correct. The E statement is incorrect because it is not 15 days, it is 30 days. So very good. This is the answer. Okay. So here you can see that partial credit enhancement, basically this is an irrevocable backup credit line provided by a bank which gets activated if the bond issuer face cash flow issue and the bank provides short-term loan for the bonds. Okay, so this is the idea. So entities allowed to provide partial credit enhancement are the scheduled commercial bank excluding RRBs, all India financial institution, NBFCs, middle layer and above, including housing finance companies. The partial credit enhancement can be provided for corporate or special purpose vehicle
for any type of project funding, non-deposit taking NBFCs, they can also get the partial credit enhancement from the banks. Asset size should be greater than 1000 crores of these NBFCs. Municipal corporations bonds can also have the PCE, partial credit enhancement, okay? And the partial credit enhancement should be given for bonds which has a pre-enhanced rating of BBB minus, and the rating should be from the two credit assessment providers, okay, or two credit assessment institutions. So this is the basic idea. Now the features of PCE. So here you have to remember that the PCE exposure limit for a single regulated entity is 50%, as well as for all the entities combined, the exposure limit is 50% in a single bond issue. That is the idea. Now applicability, the PCE applicability we have discussed. The other guarantees and such, they have the applicability that these entities can provide the guarantees, co-acceptance of bills and such. So it is these NBFCs, including housing finance companies and middle layer and above, only for the issuance of PC they are allowed, only for the issuance of PC. Now try to answer this question, the last question from this direction. So basically, as per the RBI non-fund based credit facilities directions 2025, PC exposure by a regulated entity to a single counterparty or group of counterparties shall be within the overall regulatory exposure limit. Okay, the aggregate PC exposure of a regulated entity shall not exceed what percentage of tier 1 capital. So under the non-fund based credit facilities directions, the PC exposure by a regulated entity to a single counterparty or group of counterparties shall be within the overall regulatory exposure limits. Okay, the aggregate PC exposure, the total PC exposure. See, the PC exposure in a single instrument, a PC, the partial credit enhancement exposure for a single bond should be 50% of that bond issue size. Okay, that is the exposure limit. But the total exposure limit that the banks are having in the different bonds, the total exposure that the banks can have or the entities can have is 20% of tier 1 capital. It is 20% of tier 1 capital, and the tenor of bond issued by NBFCs or housing finance company for which PC is provided shall not be less than 3 years. So this is the answer. So the total PC exposure limit for a single entity that is providing PC for multiple bonds is 20% of tier 1 capital, and NBFCs and housing finance companies, they should have the bond tenure of at least 3 years. Okay, for them the PC can be given. So here the answer is third. Okay, so remember that the asset classification norms, since PC is drawn only when a project faces cash flow issues, the PC has to be repaid within 30 days, and if it is unpaid for 90 days or more, then it is considered non-performing asset. The aggregate PC exposure entity can have shall not exceed 20% of the tier 1 capital. So this is the basic idea, and the tenure of the bond issued by NBFC's housing finance company should not be less than 3 years. Now these are some of the general directions. Okay, I have provided the whole of the direction at one place so that you do not have to go to multiple PPTs or multiple sessions to go through the important part. So all the important points have been provided here so that you can read. Okay, conditions applicable to co-acceptance. So basically co-acceptance of bills should happen for only the genuine bills. Co-acceptance of bills means undertaking of to make payment to the drawer of the bill. So basically seller is selling the product and the buyer is saying that I will pay after 3 months. Okay, what if the buyer do not pay? So here the bank provides the co-acceptance of bill that if the buyer is not able to pay, the bank will pay. So this is co-acceptance of bill. Okay, so it should be done. Co-acceptance of bills by bank should only be done for the genuine bills and such. So you can read more about the direction, or you can see the complete session that I have taken on the non-fund based facilities directions. If you have any problem in the direction, if you are not able to understand the direction, you have to see this session for that. Now try to answer this question. Mayank, you will be able to get the 5-minute break after the question finishes and scheme session, before the scheme session. Okay. So which of the following is among the parameters covered under the Rural Consumer Confidence Survey conducted by the RBI? So in July, there were the information, or there was the data that was given that different surveys have been conducted, and from such a survey a question has come in the previous year phase 1 RBI Grade B examination. Okay, so that's why the basic information, the static information is important from such news articles. So try to answer this.
So here, which of the following is among the parameters covered under Rural Consumer Confidence Survey? So stock market, interest rate, foreign exchange, bank credit growth, these are not covered under the Rural Consumer Confidence Survey. Consumer confidence depends on the price situation. So this should be the answer. The C should be the answer here. Okay, so use a little of the logic also and elimination method, and these kind of questions can also be done through the elimination method, that the rural consumer confidence does not depend on stock market, interest rate, foreign exchange or the bank credit. It depends on price situation. Okay, so the survey collects current perception and 1 year ahead expectation of households, and the data is collected on general macroeconomic situation, employment scenario, overall price situation, own income and spending. Now next is, try to answer this question. Try to answer this question now, that the Reserve Bank of India has been regularly conducting inflation expectation survey of households. The survey aims at capturing subjective assessment on price movements and inflation based on their individual consumption baskets. So basically the inflation expectation survey is conducted of the households, that what is the expectation of the households, what are they expecting, that the situation is going to be good in the future or the situation is going to be bad in the future, the inflation will be very high in the future. Okay, now this kind of survey is conducted across 19 cities. Which of the following city is not among the 19 cities? Such kind of question has come in the previous year in the RBI Grade B phase 1 examination. The cities names were given, multiple names were given, and you have to find that which is not the city under this kind of survey. Okay, now remember that this is a question that you can leave, or you should be leaving if you do not know the answer, because this is a very factual question, and 19 cities, the names you might not be able to remember in the examination. So in this kind of question, there is no elimination method that you can use, because either you remember the cities or you don't remember the cities. And remember that out of 80 questions, you do not have to answer 80 questions. You have to answer around 40 to 50 questions. So choose the questions very selectively. If you are not able to recall, do not force your mind. It will not be able to recall even in the second or the third go, and you will be making a mistake. Okay, so either do this kind of, if you remember this name of the cities, do the question, otherwise skip it. This is the kind of question that you have to skip it if you do not remember basic facts. Okay, so the answer here is C. Answer here is Surat. Surat is not one of the cities. Here you have to tell that which of the following is not among the 19 cities. Surat is not among the 19 cities. Ahmedabad, Bengaluru. So A, B, Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Delhi, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, Raipur, Ranchi and Thiruvananthapuram. There is no name from S. So there is no Surat. Okay, so either you have to remember that A, B, C, D, then G, H, J, L, M, N, P, R and T. Either you remember the city or you don't remember the city. Okay, either do the question or leave the question. You will have to skip such kind of questions that is too factual in nature. Okay. Okay, so now try to answer this question. This kind of question you can do. This kind of data you should be able to remember. Okay, that the Reserve Bank of India has been regularly conducting urban consumer confidence survey, and these surveys are conducted in how many cities? In how many cities? So the number of cities is easier to remember. Yes, it is 19 cities directly. 19 cities. So if such kind of question comes, you should be able to remember it. But if a question is coming like that, the name of the city, and such a question has come in the examination, that's why I have brought this question, and we were also shocked that the city's name was asked. Okay, and it's not like the simple question. Multiple cities names were given 7 to 8 cities, and it was asked that which of the following is not among the cities in which survey happens. Okay, 1 and 2, 2 and 3. So it was very confusing question. So that kind of question you will have to leave. So here directly the number of cities has been asked. So in 19 cities, this urban consumer confidence survey happens, and here the data is collected from the households in regards to economic situation, employment, price, households income and such. Now coming to the next question. So the KYC amendment has happened. There is the amendment of the KYC. Okay, there is the amendment of the KYC, and in this regards try to answer this question. So basically, according to Reserve Bank of India, KYC Amendment Directions 2025 for verifying the identity of customers at time of account opening. At time of account opening, the KYC needs to be done. Okay, or when there is a
occasional transaction that is happening, that is walk-in transactions. If walk-in transaction is happening in a bank, a customer is just walking in and wants to do the transaction, wants to send the money or receive the money. So if walk-in transaction is happening or account opening is happening, KYC is required. Now, what is the minimum transaction amount, single or multiple connected transactions at or above which regulated entity they are allowed to rely on customer due diligence done by a third party? They will not have to do the KYC themselves. They can use the KYC done by a third party. So which amount it is? Yes, for 50,000. If the walk-in transaction is happening or a one-time transaction or accumulated transaction of 50,000 or above is happening, in that case, the KYC has to be done, the information has to be taken, and the banks can rely on the customer due diligence done by a third party. That is the idea. So if the transaction is lower than 50,000, then there is no need to have the detailed KYC and such. But if the transaction is of 50,000 or above, in that case, the KYC details, the customer due diligence has to be done, and even the third party data can be used in case of customer due diligence. Okay, so that's the idea. So answer here is B. Answer here is B. Okay. So RBI has done the amendment in the directions. RBI has basically said that customer acceptance policy shall not result in denial of banking or financial facility to the members of the public, especially the financially or socially disadvantaged. They should not be kept away from the financial services, including the persons with disabilities. Okay. Now, while carrying out occasional transaction of an amount, the bank, if the bank is carrying out the occasional transaction on behalf of a customer and the amount is equal to or exceeding rupees 50,000, in this case, even if it is a single transaction or multiple transactions accumulating to 50,000, in this case, there is the KYC that needs to be done. Or for the international money transfer operations, the KYC or customer due diligence has to be done either by the bank themselves, or the bank can use the customer due diligence done by a third party. Okay, so for the amount of 50,000 or above, there is the customer due diligence. There is a customer due diligence that is required. Okay, and it can be done by a third party also. Now, including the biometric, before the biometric was your thumbprint or iris scan. Now it has been said that including Aadhaar faced authentication, even the face scan can be used for the Aadhaar face or Aadhaar authentication. Okay, video customer information procedure can be used, and through the video CIP, through the video customer information can be taken. The liveness check, through the video also the KYC happens. Now the KYC also happens through the video, and in the video the liveness is checked. Liveness is checked means that you are actually live, you are actually present, and you are the person that wants to do the KYC. So your name is asked, or in which city you are currently, as well as your Aadhaar number is asked, your number is asked. Multiple questions can be asked by the agent that is doing the video KYC. Okay, now the liveness check shall not result in exclusion of person with special needs, because some people response time is slow. So such kind of people, or the people that have the special needs, they should not be left out in case the liveness check is happening and the person is not able to immediately answer. The time should be given to the person and such. So this was the amendments. Now coming to the next question, that is in regards to free AI. So as you know that there was a free AI committee that was constituted for developing a framework for responsible and ethical enablement for the artificial intelligence. So for developing a framework for responsible and ethical enablement of artificial intelligence, there was a committee that was established. Now you have to tell me the correct statements in regards to free AI, in regards to the free AI, in regards to the framework and the report that has been provided. So first of all, I have started getting the answers very fast, I can say. So the free AI committee was chaired by Dr. Pushpak Bhattacharya, absolutely correct. And the free AI committee has submitted 7 key sutras. Okay, you need to remember the name of the key sutras also. Important for phase 1, important for phase 2. The committee focused solely on risk mitigation. Was the sole focus was on risk mitigation? Was the focus not also on the innovation enablement? So the focus was on 2 ways: innovation, enablement. Innovation should be done as well as risk mitigation should be done. So no, the sole focus was not on risk mitigation. The recommendations were 26, but the focus was on innovation enablement and risk mitigation. The free AI committee identified 6 strategic pillars, including infrastructure, policy, capacity, governance, protection and assurance. 3 are in the innovation enablement case and 3 are in the risk mitigation. So 6 pillars are divided into 2 categories. Okay, so here the right answer is first,
and third. So the right answer is B. And absolutely everyone has given the right answer. That means yes, Anil, Abhigyan, Vaibhav, Sarthak, Saurabh, Guru Raja, Rahul, Ujjwal, Avantika, PK, Saurabh, Mukund, Sunil, Ronika, everyone has given the right answer. Sanchita, Mayank, everyone. Okay, nice. Praful also. So everyone has given the right answer. Good to see that you people are able to remember these key details. Okay, so you have to remember that the free AI committee report, first of all, free AI committee head was Pushpak Bhattacharya. Pushpak Bhattacharya was the chairperson of this committee. Very, very important. Okay, now in the committee report, there are the 7 sutras that have been identified. Trust in the foundation, people first, innovation over restraint, fairness and equity, accountability, understandable by design, and safety, resilience, and sustainability. As well as, other than the 7 sutras, there are 2 dimensions that was discussed, that innovation enablement and risk mitigation. Under the 2 dimensions, in total there were 6 strategic pillars were given, 3 strategic pillars in innovation enablement and 3 strategic pillar under the risk mitigation. Okay, so innovation enablement, under this there is infrastructure, policy and capacity pillars. In the risk, under the risk mitigation, there is governance, protection and assurance. These are the 3 pillars under the risk mitigation. Under the innovation enablement, these are the 3 pillars. That's it. Yes, coming to the next question, try to answer this question. Read the question carefully and try to answer this. So Reserve Bank of India released the results of the 2024-25 round of the survey of foreign liabilities and assets of the mutual funds and the asset management companies that manages the mutual fund. Which of the following statement is or are correct in regards to the data that was released for 2024-25? Okay, so first of all, foreign liabilities of the mutual funds increased by 19.9% during 2024-25 due to the rise in units issued to non-resident. Yes, the foreign liabilities have increased by 19.9%. Okay, that means more foreign investors are investing in India. So the foreign liabilities have increased. Okay, non-resident of United Arab Emirates, USA, UK and Germany. Is it Germany? Is it Germany? It is Singapore, not Germany. Okay, so non-residents of UAE, USA, UK and Singapore, they held the largest share in mutual fund units, both in terms of face value as well as in terms of market value. Over 95% of overseas equity investment of the mutual funds. So mutual funds are also investing in other countries. So over 95% of the investment that was done by mutual funds were concentrated in the USA, Luxembourg and Ireland. Okay, so second and third statements are wrong. Only the first statement is correct. So here the right answer is 1 only. So this is the idea. Only these 3 points are the most important ones, so that you have to focus on. So foreign liabilities of mutual funds have increased by 19.9%. So foreign liabilities have increased because foreign investors, they are investing more in India. So we have to return that money later on, right? So foreign liabilities have increased by 19.9%. Non-residents of UAE, USA, UK, Singapore, they held the largest share in mutual fund units, as well as over 95% of the investment done by the mutual funds is in Luxembourg, Ireland and USA. So that is the idea. Now coming to the next question, RBI has released discussion paper on review of monetary policy framework. In May 2016, the RBI Act of 1934 was amended to provide a legal basis for the implementation of flexible inflation targeting. Currently, the flexible inflation target is dash percentage plus minus 2%. This was the same target that was established for the period of 2016-2021, and this is the same target that is established for 2021 to March 2026. So try to answer this question, that what is the flexible inflation target? It is 4%, 4% plus minus 2%. Okay, so the discussion paper has been released by the Reserve Bank of India for review of monetary policy framework. Basically, I hope you know the monetary policy framework, that in 2016, in May 2016, the RBI Act was amended to provide flexible inflation targeting, and the flexible inflation target was set at 4% plus minus 2%. This was for the period of
2016 to 2021. Now for 2021 to 2026 also, by the end of March 2026, the inflation target is still 4% plus minus 2%. Now accordingly, a second review of the target is now, because the target 4% plus minus 2%, this is till end March 2026. So after end March 2026, what should be the new target? So for that, the discussion paper has been launched. That is the idea. Chalo. Now in the article we had discussed, we have already discussed in the Finance 360 degree article, or in the Finance 360 degree session, we have discussed about the INR, the SRVA, that is the Special Rupee Vostro account. Okay? So we have already discussed about the Special Rupee Vostro account, in the Finance 360 degree session. Okay, so Special Rupee Vostro account, there were updates that were released about the Special Rupee Vostro account. So basically it was said, now to open the Special Rupee Vostro account, if the Indian banks have to open the Special Rupee Vostro account for the correspondent foreign bank, there is no requirement to take the permission from the Reserve Bank of India. Okay, as well as it was said that if in the Special Rupee Vostro account, if there is some surplus that is left for the correspondent foreign bank, okay, if there is any surplus, the surplus can be used for investment in the government securities. So this surplus in the Special Rupee Vostro account, if there is the surplus for the correspondent foreign nation, so if there is surplus, that can be used for investment in the rupee surplus balance can be invested in the central government securities, including the treasury bills. That is the idea. So I have not brought a question on this because nothing much to bring the question on it. Just remember that for the Special Rupee Vostro account, there is no need to take the RBI permission to open the Special Rupee Vostro account by the Indian bank, as well as the surplus rupee that is left in the Special Rupee Vostro account can be used by the foreign nations to invest in the government securities, including the treasury bills. That's it. Now coming to the next question, try to answer this question. Yes. Try to answer this question. RBI DPI, this is one of the most important topics in your finance, current affairs, in your RBI notifications and such. So RBI DPI, the Digital Payment Index and Financial Inclusion Index are important. So basically you have to tell that the RBI has been publishing a composite Reserve Bank of India Digital Payment Index since January 1, 2021 to capture the extent of digitization in India. Which of the following statement is or are incorrect in regards to the RBI DPI? So if you read the first statement, RBI DPI has been constructed with March 2018 as the base period, and the base score is 100, but it is for 2018. The DPI, the Digital Payment Index for March 2025 stands at 493.22. Okay, for March 2025, the Digital Payment Index is at 493.22. Okay, the increase in RBI DPI index was driven by significant growth in parameters. That is, so the RBI DPI has increased from September 2024 to March 2025. The RBI DPI Digital Payment Index value has increased from 465.33 to 493.22. So DPI has increased because of the supply side factors, because of the payment infrastructure supply side factor and payment performance. So this is correct. So first and second statements are incorrect, and that's why the right answer here is C. The right answer here is C, 1 and 2. Okay, so basically we have completed the August month also, and now we have started with the July month. Okay, so here C is the right answer. The Digital Payment Index, I hope you know about it, that there are 5 parameters for the Digital Payment Index, that is payment enablers, payment infrastructure demand side, supply side, payment performance and consumer centricity. Currently the RBI DPI value has increased from 465.33 to 493.22. So RBI DPI value has increased from September 2024 to March 2025, and this increase in value is because of payment infrastructure supply side and payment performance. Okay, the sub parameters of each of the parameter also you have to keep in mind, because in the last year RBI Grade B 2024 examination there was a direct question that this sub parameter is belonging to which parameter. Okay, so sub parameters also you have to focus on here in this Digital Payment Index. Okay, so that is the idea. Now coming to the next question, that it has been said that the small finance banks that had to maintain 75% of their net credit for the priority sector lending, now the small finance bank will only have to maintain dash percentage
of their net credit for the priority sector lending. So the small finance bank target has been reduced from 75% to what percentage? From 75% to what percentage? Yes, to 60%, to 60%. So basically now the small finance bank will have to provide 60% of their adjusted net bank credit for the priority sector lending. Before, the small finance bank, they had to provide 40% to the set subcategories, and 35% could be provided by them, and 35% could be provided by them to the different categories as per their understanding and their business requirement, okay, in the priority sector, in the priority sectors. Now it has been said that the small finance bank will have to provide 40%, in the set categories under the priority sectors, but how much percentage can be provided as per the small finance bank understanding or the business requirement? How much percentage can they provide? The small finance bank can provide how much percentage on the basis of their business requirement in the priority sectors? It is 20%. Okay, so this is the idea. So basically, before, the 75% was the priority sector lending criteria for the small finance bank, out of which 40% they had to provide in the selected categories as per the priority sector lending norms, and 35% could be provided to whichever category under the priority sector that the small finance bank wants. Now this 35% criteria has been reduced to 20%, and that's why the 75% of the total priority sector lending criteria for small finance bank has been changed to 60%. This is the idea. Now coming to the next question, that due diligence of Aadhaar enabled payment system touchpoint operators. So Aadhaar enabled payment system, that is the payment system, you just have to provide your biometric and Aadhaar details and the payment can be done, or the transaction can be done. Now it has been said that there were frauds that were happening through the Aadhaar enabled payment system. So under the new protocol, under the inactivity protocol, a fresh KYC of the Aadhaar enabled payment system touchpoint operator is required before re-enabling transactions if the Aadhaar enabled payment system touchpoint operator has been inactive for 3 months. So if the ATO has been inoperative for 3 months, there is re-KYC that needs to happen so that there are lesser frauds. Okay. So the answer here is 3 months. So this is the basic idea, that Aadhaar enabled payment system, you can do the payment or you can do the transactions just by providing your biometric or providing your Aadhaar details. There were frauds that were happening, so now there has been stricter norms that has been brought, and if there is the ATO that is inoperative for 3 months, if it wants to recontinue the transactions, then it needs to have the KYC. Okay. Now coming to the next question, Reserve Bank released data relating to India's international investment position for end March 2025 over dash of the rise in India's overseas financial assets was due to increase in overseas direct investment that we are doing, currency and deposits that we are doing, and the reserve assets that we have. Okay, so what is the answer here? Very good. So again, remember that this is the July 2025 articles that we are doing. We have completed the September and August months, and now we are doing the July ones. Okay. So Reserve Bank released data relating to India's international investment position, and over 72% of the increase that has happened in the India's overseas financial asset was due to increase in overseas direct investment that we are doing, currency and deposit, and the reserve assets of the RBI. So 72% is the answer here, and 72% is important because it was in news at that time. So here the important points are these. So over 72% of the rise in India's overseas financial asset is because of the following. Okay, inward direct investment that we have received, loans as well as currency and deposits that we have received consist of 3/4 of the rise in foreign liabilities. So 3/4 of increase in foreign liabilities because of the direct investment that we have received, deposits that we have received, the loans that we have received, and such. Ratios of the ratio of India's international financial asset to international financial liability. So financial asset to financial liability has increased to 77.5%. Okay, the liabilities in actual amount, the liabilities have increased by 74.2 billion, and the assets have increased by 105.4 billions. So liabilities have increased by 74 billions and the assets have increased by 105 billions. So in total, the net claims of non-residents have declined by 31
billion in the financial year 2024-25. As a ratio of GDP, residents' overseas financial assets, the overseas financial asset as a ratio of GDP has increased, okay, and external financial liabilities have declined as a ratio of GDP. The ratio of net claims of non-resident on India to GDP improved to negative 8.7% in March 2025. So ratio of net claims of non-resident on India to GDP. So net claims of non-residents to the GDP has declined to 8.7%, has improved because the net claims of the non-residents have declined, and that's why the improvement has come in the net claims to the GDP ratio. So this is the idea. Now coming to the next question, that the RBI, any confusion anyone has? Try to answer this question now. So basically remember that the net claims of the non-residents to the GDP, this has declined to 8.7%, okay, and that's why there is the improvement that is coming, because the net claims of non-residents are declining. So there is the improvement. Now coming to the next question, the Reserve Bank of India has expanded the list of recognized external credit assessment institutions under Basel III norms. Banks can now use the ratings. So whenever the bank is providing the loan, the bank uses the rating given by a credit assessment institution, okay. So for the loan that the bank is providing to the different corporates, to the different individuals, there is the risk that is present on the basis of the credit rating. If the credit rating is very good, the risk is low. If the credit rating is very low, the risk is high, okay. So credit rating, now the banks can now use the ratings issued by CareEdge Global IFSC Limited for risk weighing, for deciding the risk. So banks can use the rating provided by CareEdge for deciding the risk, on the claims on non-resident corporates originating at the International Financial Service Center. So basically, if the loan is being given, if the bank is giving the loan to the non-resident corporate in the IFSC, the bank can use the rating for the loan provided by the CareEdge Global IFSC Limited, so that the risk weight can be decided for this particular loan. That is the idea. So this is all that now the banks can now use the rating provided by CareEdge Global IFSC Limited for risk weighing their claims on non-resident corporates, the loan that is originating, or the entities, the non-resident corporates originating at IFSC, the non-resident corporates that are originating or that are established in IFSC. So if the loans are being provided to such non-resident corporates that are in the IFSC, if loans are provided to such entities, then the CareEdge ratings can be used, and the ratings will have the risk weight. So if the rating is AA, the risk weight is 20%. If the rating is low, the risk weight is more. If there is low rating, more risk is there. If there is high rating, less risk is there. Now coming to the next question, that is in regards to prepayment charges on loans. So RBI has released prepayment charges on loans directions 2025. You have to tell me that which of the following statements is or are incorrect. So read the statements carefully and try to answer that which of the following statements is or are incorrect, okay. Read the statements very, very carefully and then try to answer, okay? Okay, I've started getting the answer. So first of all, for all the fixed rate loans, no, for all the floating rate loans, granted for the purpose other than business to individual with or without co-obligent, and regulated entity shall not levy prepayment charges. So for the floating rate loans, if the floating rate loans are given for purposes other than business, in that case there is no prepayment charges that can be taken. Small finance bank, regional rural bank, tier 3 primary urban cooperative bank, state cooperative bank, central cooperative bank, NBFC middle layer shall not levy any prepayment charges on floating rate loans if the loans are up to the amount of 50 lakh. Okay, commercial banks and these loans are granted for business purpose to individuals and micro and small enterprises. So these entities, they cannot levy the prepayment charges if the loans are given
up to the limit of 50 lakh for the business purposes to individuals and micro and small enterprises. Okay, a commercial bank excluding the entities cooperative bank, NBFC middle layer, NBFC upper layer, and all India financial institutions shall not levy any prepayment charges. They cannot levy any prepayment charges for any loan up to whatever amount if the loan is given for business purposes to individuals and micro and small enterprises. So for all the floating rate loans, that are given for non-business purpose, non-business purpose to individuals, they should not have any prepayment charges. Any prepayment charges should not be there. For all the floating rate loans that is given for business purposes to individuals or micro and small enterprises, these big entities like the commercial bank and the tier 4 primary urban cooperative bank, NBFC upper layer, they cannot charge any prepayment charges. But the small entities like small finance bank, RRBs and such, they can charge the prepayment penalties if the loan is above 50 lakh. So the second statement is correct, but the first and third statements are wrong. And that's why the answer is C here, because you have to tell the incorrect statements 1 and 3. The second statement is actually correct. Okay, so here see the statements that for all the loans, floating rate loans for purposes other than business to individuals, these loans will have no prepayment charges. There will be prepayment charges. Okay, if there will be prepayment charges if the loan is given by the small finance bank, regional rural bank, tier 3 urban cooperative bank or state cooperative bank or NBFC middle layer, if they are giving the loan for the business purpose to the individuals or micro and small enterprises for the purpose of the business, and these loans, if they are more than 50 lakh, then the prepayment charges can be there. Got it? So read the statements very, very carefully in the question also, and these are the three statements. The whole guideline has these three most important statements, that for all the floating rate loans that is given for purposes other than business to individuals, these loans will not have any prepayment charges. But loans that are given for business purposes to individuals and micro and small enterprises, these will also have no prepayment charges if the big entities are giving the loan. But if the small entities are giving the loan up to the limit of 50 lakh, the loan is given, then there will be no prepayment charges. But above that, the prepayment charges can be there. Okay. Now coming to the next question, that is from the RBI Electronic Trading Platform Directions 2025. So the RBI has issued the Master Direction Reserve Bank of India Electronic Trading Platform Directions 2025. Now on the basis of these directions, which of the following statement is or are not correct in regards to the criteria for the electronic trading platform? If you want to have an electronic trading platform, if you want to establish an electronic trading platform, so which criteria is not correct in this regards? So the entity shall be company incorporated in India. This is correct. It is a criteria that has to be met. An entity seeking authorization as an ETP operator under these directions shall have a minimum net worth of, the minimum net worth should be of how much? The minimum net worth, it is not of 10 crores. So how much should be the minimum net worth? The entity seeking authorization as an ETP operator, it should have the certificate, or if it does not have the certificate, at least a minimum of 2 of its key managerial personnel shall have the experience of at least 3 years in operating the trading infrastructure in financial markets. This is correct. First statement is correct. Third statement is correct. Second is wrong, because the minimum net worth requirement is, very good Harshal, it is 5 crores. It is 5 crores. Okay. So second statement is wrong. Second statement is wrong. The first and the third statements are correct. Okay. And that's why the answer is E, because you have to tell that which of the following is not the correct criteria. So net worth requirement is 5 crores. Very good. Okay. So this is the idea. So electronic trading platform, first of all, remember that the entity shall be company incorporated in India. There should be the experience that the ETP operator should have, or a minimum of 2 key managerial personnel should have the experience of 3 years. Okay. The minimum net worth requirement is 5 crore. As well as this is also very important that these directions will not be applicable for the electronic system operated by the scheduled commercial bank or the primary dealer if they are doing the transaction themselves, or if they are one entity in the transaction, if they are one party in the transaction, and if they are deciding, if they are the sole quote or price provider and they are party to all transactions contracted
through the electronic platform, then these scheduled commercial bank and the primary dealers will not have to follow these guidelines, these directions, if they are party to all the transactions in their electronic system, as well as if they are providing the price or quote. Operating framework, just these 2 points are there, that for the ITIS audit, at least once in a year there should be the audit that should happen for the IT, for the information technology, by the auditors with the certified information system auditor certificate, that is certificates, or the auditors empaneled by Indian Computer Emergency Response Team, that is CERT India. Okay, so basically for the information technology there should be audit at least once in a year by auditors with certified information system auditor certificate, or the auditors should be from the Indian Computer Emergency Response Team and such. Okay, so this is the idea. Now coming to the next article, read the question. Now project finance guidelines, the project finance guidelines, they were released. On the project finance guidelines, now the questions will come. Okay, so let's see how many of you know about the project finance guidelines. So first of all, the definition of project finance, read this and try to answer the question. You have to complete the definition of project finance. Yes, I'm getting the answer. Okay. Abhigyan has said C. Manish is saying D. Let's see the statement. First of all, project finance refers to the method of funding. So project finance basically means that the banks, the big entities, they are funding a project. That is a real estate project, or that is an infrastructure project. So a big project is being funded. Now project finance basically means the project is being funded, a new project or a previous project that is being expanded. So that is being funded. But the project finance, for the purpose of these direction, an exposure shall qualify as a project finance if the repayment that is happening, if the repayment is happening through the cash flows arising from the project which is being financed. Okay, so at least how much of the repayment should happen through the cash flows that is arising from the project. So that is 51%. So project finance here basically means, the project finance here basically means that a big project is being funded, a new project or a earlier project that is being expanded, and 51% of repayment, the 51% of repayment is happening through the cash flows that is coming from the project when it has started operating. When the project has started operating, the cash flows from the project is helping in 51% of repayment. That is the idea. It is not 85%, it is 51%. 51%. Here you can see that the predominant source of repayment at the time of financial closure, basically the predominant source of repayment, at least 51% must be from cash flows arising from the project. Okay, any confusion here? So predominant source of repayment should be predominant source of repayment should be cash flows arising from the project. Now this is the idea. Chalo. Applicability, all commercial banks including small finance banks but excluding payment bank, local area bank and regional rural bank. Applicability criteria is also very, very important. So all the commercial banks including the small finance banks, excluding the payment bank, local area bank, regional rural bank, all non-bank finance companies including housing finance companies, all primary urban cooperative bank and all India financial institutions, these are the entities on which the directions are applicable. So all commercial banks including small finance banks but excluding the local area banks, regional rural banks and payment bank. Okay, and the project finance, 51% of repayment should be from the cash flows that is coming from the project once the project has started operating. Now coming to the next question, that in under construction projects where the aggregate exposure, where the total exposure of the lender is up to 1,500 crores, no individual lender shall have an exposure which is less than what percentage of the aggregate exposure. But if the project is having the aggregate exposure of all lenders which is more than 1,500 crores. So if the aggregate exposure is more than 1,500 crores, the exposure floor or the minimum exposure for an individual lender shall be what percentage, or 150 crores, whichever is higher. So in case of less than 1,500 crores, the minimum exposure should be 10%. In case more than 1,500 crores, the minimum exposure of a lender should be 5%.
10%. So here the answer is 10% and 5%. Got it? So here the answer is C. So this is the data point that you have to remember. Now, before the lender has started giving the money to the entity, or the lender shall ensure the availability of sufficient land or right of way. So for infrastructure projects under public-private partnership model, at least 50% of the land should be available or the right of way should be there. Okay. For all the other projects, non-PPP infrastructure or non-infrastructure including the commercial real estate and such, for that at least 75% of the land should be available or there should be legal permission to use the land. Right of way should be there. Okay. For transmission line projects like for the power line and such, for that the banks can decide that how much of the available land should be there or the right of way should be there. So this data point is also important. For private public partnership, for public private partnership, in this case the banks, when they are lending the money, they have to do, like before lending the money, they have to do the techno-economic viability study, that this project, is it viable, is it economically profitable, is it going to be beneficial for the country, or is it going to be economically beneficial, will it provide returns. So a techno-economic viability study shall be required for this purpose for all projects where the aggregate exposure, the total exposure of all lenders is 100 crores or more. Okay. Now the lenders, let's say the time of operating. Now 51% of repayment will happen after the project has started operating. After the project has started operating, and from the cash flow from the project, 51% of repayment will happen. So the banks want the project to start operating. Now let's say the operations are going to be extended further, or the date of commencing of the commercial operation that has been extended. So that shows a stress in the loan. Or let's say the lender is asking for more, the borrower, the project owner is asking for more money. Or let's say the project owner is saying that there is some problem in the loan, or I'm not able to repay the loan. A part of the loan that had to be paid before the project start operating, the borrower is not able to repay that. So in this case, there is the credit event that has happened, the default is happening, or the default is initiating. In this case, any such credit event or the default is seemingly happening. So in this case, the central repository of information on large credit, this has to be informed. So any such credit event that has happened, default with any lender, or any lender determines a need to extend the operational deadline, as well as expiry of original or extended date of commencement of commercial operation. So in such credit event, this shall be reported to central repository of information on large credit, the lender, in the prescribed weekly as well as CRILC main report. So weekly has to be informed, as well as in the main report also it has to be informed. A lender shall undertake a initial review of the debtor account within 30 days from the date of such credit event, and the conduct of the lender during this review period, including a signing of the intercreditor agreement, that how we have to proceed further. In this case of credit event, should we allow more money to the borrower, or should we provide more time to the borrower? So initial review that should happen within 30 days of the credit review, as well as there is a resolution plan that has to be implemented, that how we can resolve the situation. So the decision has to be taken on implementing a resolution plan. Now in case of a resolution plan, which of the following statements is correct, that you have to tell me. So a credit event that is considered kind of default if this is happening in case of project finance. In this case of project finance, if a credit event is happening, in this case the information has to be provided to the central repository of information in the weekly report, as well as in the main report, as well as within 30 days the initial review should happen of the credit event, that why the problem has come. Is it because of floods that the project has stopped, and that's why the operational deadline is being extended and such. So the credit event has to be like reviewed within 30 days, and after the review ends, there is the resolution plan that has to be implemented. Okay, now when the resolution plan is implemented and the guidelines are being followed, then the loan, project finance will still be considered standard and a good loan, even though there is a credit event that has happened. But if the resolution plan is being followed, the project finance can still be considered a standard or good loan if which of the following conditions are being followed. If the maximum permissible date of commencement of commercial operation has been extended for 3 years for the infrastructure projects, and for
2 years for non-infrastructure projects. The cost overrun has happened, the cost has increased up to a maximum of 10% of the original project cost. So this is also correct. That cost overrun has happened, but in the infrastructure projects, usually it happens that there is a cost overrun. If it is up to maximum of 10% of the project cost, that is fine. Okay. The rise in project cost because of the when the project is happening, it has been found that we want to further expand the project. Rather than 10 buildings, we want to make 11 buildings because that is more beneficial. Okay. So if there is change in scope of the project or size, in this case 25% of the project finance, 25% of the loan that was given previously or more than that can be given for changing the scope or size, but the viability testing has to happen again. So this is correct, this is correct. So second and third statements are correct, first was wrong, and that's why the answer here is that which of the following statements are correct? 2 and 3. So this is the idea. Okay. So here you can see that the loan project finance account will be classified as standard even if it has gone through the credit event, even if it has gone through a problem situation, still it will be considered standard if there is a resolution plan that is going on and if these points are being followed. That is, the deferment or the extending timeline is up to 3 years for infrastructure projects and up to 2 years for the non-infrastructure projects, and the cost overrun up to a maximum of 10% of the original project cost. Okay, as well as if the change in scope and size has happened, so for the project the additional money has been given, that is 25% or more. Okay, so if these are being followed, then the project will still be considered standard. So this is the idea. Now prudential norms for resolution, criteria for upgradation and such. So basically provisioning has to be maintained. So in the construction phase, there is the provisions that has to be maintained for the commercial real estate, residential housing, and for the other projects. The construction phase, during that provisions have to be maintained, and during the operational phase also the provisions has to be maintained by the bank when they are giving the loan. Okay, as well as for if there is any credit event that has happened, in that case also there is additional provisions that has to be maintained. So I have provided you the information. You do not have to go through different videos or different PPTs for getting the compiled information. I have provided you in this PPT itself. So now coming to the next question. See, I will request you that do see the monthly revision sessions. Monthly revision sessions. Okay. Even if you are seeing the Maha Marathon and such, to see the monthly revision sessions, more questions you need to practice. More and more questions you have to practice. Now coming to the question, try to answer this. So financial inclusion index, I have told you that this is a very important topic. The digital payment index and the financial inclusion index, both the topics are important. Okay. So here the index, the financial inclusion index for the year ending March 2025 has been compiled, and the value of financial inclusion index for March 2025 stands at 67. Okay, that is again 64.2 in March 2024. So this is the idea that the financial inclusion index, now this is released on the yearly basis. The digital payment index is released for half yearly basis, but the financial inclusion index is released for yearly basis. So financial inclusion index value has increased from March 2024 to March 2025 from 64.2 to 67. Now try to answer this. Let's see that how many of you have the detailed understanding of the financial inclusion index. So basically here you have to tell that which of the following statements is incorrect in regards to financial inclusion index. So the index is responsive to access, usage and quality. Correct. The financial inclusion index has been constructed without any base year. Correct. The index captures information in a single digit like 67. That is, in a single value, the financial inclusion index shows the value of financial inclusion that is ranging between 0, that shows complete financial exclusion, and 100, that shows complete financial inclusion. Correct. Improvement in financial inclusion index financial year 2025 is contributed. So in March 2025, the value has increased because of the usage and quality dimensions. Absolutely correct. A unique feature of index is the quality. So quality is a parameter that has 20% of weight. 20% of weight in the financial inclusion index. So the E statement is incorrect. So the E statement is incorrect. Okay.
because the quality has the weight of 20%, not 25%. So here you can see that the index captures information in the value between 0 and 1. 0 means complete financial exclusion, 100 means complete financial inclusion. Okay, excess has the percentage 35%, excess has the weight of 35%, usage has the weight of 45%, quality has the weight of 20%. Okay, I've taken sessions on most of the topics. If you want to see the sessions, you can see the sessions, but the details or the information has been provided in this PPT, so that you do not have to go to multiple sessions and such. Okay, but for most of the topics like project finance, non-fund based credit facility, the co-lending directions and such, for all the major topics I have taken the sessions in Finance 360. Now coming to the next question, try to read the question carefully and try to answer the question. So basically the question is regarding the amendment that has happened in the KYC direction. Okay, so there is the amendment in the KYC direction. In regards to the amendment in the know your customer directions, which of the following statement is or are correct, that you have to tell me. So which of the following statement is or are correct in this regards? So for the low risk individual customers, regulated entities shall continue to allow all the transactions even if the KYC is due, provided KYC has to be updated within 1 year from the due date or by June 30th, 2026. Okay, whichever is later. So this is correct. Banks may obtain a self-declaration from customers in case of no change in KYC info or only address through an authorized business correspondent. So business correspondent, that is the extended arm of the banks, they can be used. Their network can be used for updating the KYC if there is no change in the earlier KYC or if there is only change in address. So yes, it can be done. Banks must update the KYC in their system, and the final responsibility of KYC updation remains with the banks, not the business correspondents. Okay, so here the first and second statements are correct, third statement is wrong, and that's why the answer is D. Very good, everyone has given the right answer. First and second statements are correct. So we have moved towards the May and June articles now. Okay, so here you can see that within 1 year the KYC update needs to happen for low risk customers from the due date or by up to June 30th, 2026, as well as self-declaration can be taken. Self-declaration can be taken from the customers if there is no change in KYC or if there is only update in address, and the self-declaration can be taken by the business correspondents. Okay, so this is it. As well as if there is the due date that is near for the KYC update, 3 intimations have to be given to the customer. At least one of that should be in letter form. Okay, at least one intimation should be in the letter form. So 3 advance intimations should be given if the due date is nearing. If the due date has been passed, the due date has finished for KYC update, in that case also the regulated entity shall give at least 3 reminders if the due date has passed. Okay, at least one of the intimation should be in letter form. Now, yes. So now the updation of periodic KYC, it was said that the periodic updation. So Reserve Bank has observed a large tendency in periodic updation of know your customer for the direct benefit transfer. So Kisan Samman Nidhi, I hope you have heard about that. So in the Kisan Samman Nidhi, 6,000 rupees on the yearly basis is given to the farmers. Now that is a direct benefit transfer. Or for your LPG cylinder, subsidy is given, direct benefit transfer. Directly the money is going in your account, but the accounts have not been updated with the KYC. So actually the money is going to the farmers or not, that cannot be checked because the KYC update has not happened. So in this case, it has been said that do the periodic updation in case of the accounts that are linked for the direct benefit transfer or scholarship and such cases. Okay, so that actual beneficiaries get the money. Okay, so KYC updation has to be done, and for this case there is the camps that have been launched and such. As well as for inoperative accounts and unclaimed deposits, for inoperative accounts, if the individual wants, then there should be the KYC that should be done. The video KYC can also happen. Okay, so that the inoperative accounts can be reopened and become reoperative. So this is the idea. Now coming to the next article, try to answer this question. So Reserve Bank of India has recently released RBI investment in alternative investment fund directions. So basically the regulated entities, that is banks and BFCs under the Reserve Bank of India, they can do the investment. Like regulated entities that are under the Reserve Bank of India, they can do the investment in alternative investment fund. Alternative investment fund is the privately pooled money that can be invested in different securities
So alternative investment fund, they are pooling in the money that can be invested in the different securities. Okay, and in the alternative investment fund, usually the sophisticated investors invest. Usually the sophisticated investors, they invest. Okay, so regulated entities, they can invest in AIF. Now it has been said that if a regulated entity contribute more than 5% of the corpus of an alternative investment fund scheme, which also has a downstream investment to the debtor company, then 100% of the provision has to be maintained by the bank. 100% of provisions has to be maintained by the bank. So here the right answer is E. Here the right answer is E. So this is the right answer. So basically, we had discussed in that if the banks or the NBFCs, they can do the investment in the alternative investment fund, there is no regulated entity shall individually contribute more than 10%. So a single regulated entity contribution limit is 10% of the corpus of an AIF scheme. Collective contribution by all the regulated entities combined in an AIF scheme is 20%. Okay, as well as downstream investment. Basically, if a regulated entity contributes more than 5% of corpus in the AIF scheme and there is downstream investment that is happening to the debtor company, in this case, 100% of provisions has to be maintained by the bank. This we have discussed in a session. I'm not going to explain it again. It will take a lot of time. Now, July month is going to be completed. So now July is completing, and from here we are going to start with May and June articles. Okay. So in the July, it was said that there is the RBI has launched quarterly order book inventories, capacity utilization survey. Not much important. Just remember that it has been launched and it has been conducted since 2008 and for selected manufacturing companies. Okay, the data is collected for orders, for inventories that the manufacturing companies are keeping. Now try to answer this question. After the 60 questions, after my questions ends, you will get 10-minute break. And after the 10-minute break, Gurkirat sir will be coming. Okay. So after my questions ends, after that, you will get a 10-minute break and then Gurkirat sir will be coming. Now try to answer this question. So the now May and June articles are going to start. So definition of qualifying asset of NBFC microfinance institutions. So non-banking finance companies, microfinance institutions, for them the qualifying asset is the microfinance loans. Now as per the definition of microfinance loans, dash is the maximum annual household income for a household to be eligible for microfinance loan. So microfinance loans, they are the collateral free loans that are given to the households with the annual income up to the limit of 3 lakh rupees. Okay, and the for the NBFC microfinance institutions, the qualifying asset is the microfinance loans. That means microfinance institutions, they must give the microfinance loans at least minimum of 60%, of the total of their total asset. So the right answer here is D. So basically the review of qualifying asset criteria. So it was said that qualifying asset definition has been matched with the microfinance loans. So microfinance loans, they are collateral free loans where no collateral has to be given. So collateral free loans that are given to the household having annual household income up to 3 lakh rupees. Okay, qualifying asset of NBFC microfinance institutions shall constitute a minimum of 60% of the total asset. So 60% of the total asset of microfinance institution should be going for the microfinance loans. That is the idea. Now coming to the next question, try to answer this. So in February 2025, RBI constituted a 9-member working group under the chairmanship of Radhashyam Rathore. Okay. Now the 9-member working group had to review the trading and settlement timing in the various financial markets regulated by RBI, in the government, securities, in the foreign exchange, in the call money market and such. In all the markets that are regulated by the Reserve Bank of India, the working group had to review the trading and settlement timing. Now the recommendations have been provided by the
committee and some of the recommendations have been accepted. So which of the following statements is or are incorrect in regards to the accepted recommendation? So the market timings for call money shall be extended to 7 p.m. with effect from July 1, 2025. So absolutely correct. The market timing has been extended for call money from 9 a.m. to 7 p.m. Okay. The trading hours of market repo and tri-party repo shall be extended to 7 p.m. No, it has been extended to 4 p.m. So from 9 a.m. to 4 p.m. 4 p.m. The trading hours for government securities market, foreign exchange market and interest rate derivatives have not been changed at all. So the second and third statements are wrong. Only the first statement is correct. So here the answer is, okay, I have got the mixed answers E and B. So you have to tell the incorrect statement, right? So incorrect statement, the second statement is incorrect, third statement is incorrect. So third statement is also incorrect now because the timing has not been changed. Okay. So the timing has not been changed. Timing has not been changed. So here, remember that for the call money, the timing has been extended to 7 p.m. With effect from July 1, 2025. And trading hours for market repo and tri-party repo shall be extended to 4 p.m. The trading hours for government securities market, foreign exchange market, interest rate derivatives market remain unchanged. So this is the idea. Chalo. Coming to the next question. So RBI has decided to officially introduce stripping, that is the separate trading of registered interest and principal of securities, that is strips. Okay. So RBI has decided to officially introduce strips in the state government securities in the state development loans and such. So which of the following requirements is or are correct in regards to the eligible securities, eligible state government securities in regards to stripping or reconstitution in state government securities? Okay. So basically state government securities, they have been allowed under the strips. So state government security, let's say this is the security, it's the principal amount and its coupon amounts or interest amounts, they can be divided and they can be sold separately, that is strips, that is separate trading of registered interest and principal of securities. Now the eligible securities should be fixed coupon securities that have a fixed interest rate, having a residual maturity of up to 14 years. Minimum outstanding, that is in the market, the state government security that is going under stripping. So in the market, the outstanding value of the state government security should be 1000 crores. Securities are reckoned as eligible investment for the purpose of meeting statutory liquidity ratio requirement and they are transferable. So second and third statements are correct. First statement was wrong. It was not 15, it was 14. So here the answer is correct. That is 2 and 3. That is E. So E is the right answer here. Yes, absolutely correct. So this was the idea. Now here the eligible securities you must know about and the amount of securities. Now the individual, when it is going for doing the strips in the state government security, so the minimum amount of the state government security that is going under stripping is 1 crore and multiples thereof. Okay. So in the market, the state government security must be 1000 crores. So in the market, the value of the state government security present with the multiple investors should be 1000 crores. But if a single investor is going for state government security to be stripped, so this one investor should have the state government security of 1 crore or in multiples thereof for the stripping. At least 1 crore of the state government security should be present with the investor that wants to have the stripping in the state government security. Got it? So the market outstanding, the minimum outstanding of 1000 crores value of the state government security should be there in the market. The state government security worth 1000 crores should be there. Okay. But for the stripping or for the strips in the state government security, the investor should have 1 crore for that particular state government security to be stripped. This is the idea. Now coming to the next question. This is in regards to payment agency commission. Okay. So the banks, they receive the money on behalf of the government. Okay, or they pay, like the banks are receiving the taxes on behalf of the government, the banks are receiving the fees, fines, penalties on behalf of the government, as well as the banks, they also pay pension on behalf of the government, salary, as well as the other payments also are paid by the banks
on behalf of the government. So these banks are the agency banks and they get commission from the Reserve Bank of India. Now, as per agency bank agreement, the RBI pays agency commission at rate determined by it. As per the revised agency commission rates effective from April 1, 2025, what is the revised agency commission rate for payments other than pension? So banks are giving payments other than pension on behalf of the government. So for that, what is the agency rate, agency commission that the banks get? It is 7 paise per 100 rupees. For the pension payment, the agency commission is rupees 80. Okay, but for the payment other than pension, the agency commission is 7 paise per 100 rupees. This is the idea. So basically, the revised rates for the pension payments per transaction, rupees 80 is the revised commission rate. Payments other than pension that the banks are providing. So for that, the agency commission is 7 paise per 100 rupees. Okay, so the rates have been revised from April 1, 2024, and these are the rates that you have to remember. Receipts in the physical mode, the banks are receiving on behalf of the government in the physical mode, that has the revised rate of 40 rupees. Receipts e-mode, 12 rupees of the commission rate. Pension payments, 80 rupees of the commission rate. Payments other than pension, 7 paise per 100 rupees. Coming to the next question, try to answer this question. So basically RBI, these are the June directions or May directions that we are doing. So RBI has released Reserve Bank of India lending against gold and silver collateral direction. Which of the following statement is or are incorrect that you have to tell me? The incorrect statement. So basically the gold or silver can be given as collateral for taking the loans, Now aggregate weight of ornaments that can be pledged for all the, my head started spinning, sorry. So aggregate weight, the total weight of ornaments pledged for all the loans to a borrower shall not exceed 1 kilogram for gold ornaments and 10 kilograms for the silver ornaments. So it is not 100, it is 10 kilograms. Okay, so basically the total gold or silver that can be given as collateral has some limits. Okay, so gold ornaments or silver ornaments that can be given as collateral for taking the loan, that has a limit. 1 kilogram in case of gold ornaments and 10 kilograms in case of silver ornaments. The aggregate weight of coins pledged for all the loans to a borrower shall not exceed 50 grams in case of gold coins and 500 grams in case of silver coins. So this is correct. Tenure of consumption loans in the nature of bullet repayment loan. So bullet repayment loan means that at the end of the tenure, the interest and the principal payment will be given. So during the loan tenure, or let's say the loan tenure is 6 months. So during the loan tenure, no interest or no principal will be repaid. At the end of the tenure, the principal payment and the interest payment will be done at the end of the tenure. So this is bullet repayment loan. So if you have taken a consumption loan by giving gold or silver as collateral, so the tenure of consumption loan in nature of bullet repayment loan, where the repayment is happening in one go at the end of the tenure, this shall be capped. So bullet repayment loans, this shall be capped at 12 months, which may be renewed. Okay. The maximum loan to value ratio, loan to collateral value ratio in respect of consumption loans against the eligible collateral shall not exceed 85% for total consumption loan amount of up to rupees 2.5 lakhs. Okay. In case of delay in release of the pledged collateral after full repayment or settlement of loan, so in case of delay, let's say the full repayment of the loan has happened, but still the collateral, the gold or silver ornaments or coins, they have not been released by the bank even after 7 days. So in this case, for each additional day, the collateral is being kept by the bank even after the repayment. So for each additional day, 5,000 rupees have to be paid as compensation. Got it? So all the other statements are correct. Only the first statement was incorrect. This was in June, I guess. It was in June. So July articles have already been finished.
and we have started with the May and June articles. Only the most important articles from May and June we are discussing. Okay, so here you can see that tenure of consumption loans in nature of bullet repayment loans should be capped at 12 months. Loans against which the loans against the ornaments and coins, they have a collateral limit. Okay, ornaments not exceeding 1 kilogram for gold and 10 kilograms for silver ornaments, and aggregate weight of coins pledged for all loans to a borrower shall not exceed 50 grams. So in case of coins, it should not exceed 50 grams in case of gold and 500 grams in case of silver. So this is the basic idea. Primary gold and primary silver, that is the gold and silver bars, cannot be used as collateral for taking the loan. Only the ornaments and coins can be used. Next, we have discussed, this is the eligibility that you need to keep in mind. Only the payment banks are excluded because they do not provide the loan. For checking the price of the gold, this is the criteria for checking the price of the gold at the current period. Okay. Now compensation, basically a lender shall release or return the pledged collateral within a maximum period of 7 working days. But even after the 7 working days have finished and the collateral has not been released, even after the repayment of loan has happened. So for each additional day, the collateral is held by the bank. 5,000 rupees has to be given as collateral. Okay. For the consumption loans, against the eligible collateral, they shall not exceed the maximum loan to value ratio that has been determined by the RBI. So for the consumption loans that is less than or equal to 2.5 lakh, for that 85% is the maximum loan to value ratio. Okay, so for loans less than or equal to 2.5 lakh, the maximum LTV ratio is 85%. Okay, so that is the loans up to 2.5 lakhs. The loans up to 2.5 lakhs, they have the maximum loan to value ratio of 85% for the consumption loans. So these are the percentages that you have to remember. Okay, now if the auction is happening, so auction price shall not be less than 90% of the current value of the gold or silver collateral, and in case 2 auctions have failed of the same collateral, then the price should not be less than 85% of the current value. That is the idea. Now it was also said that there will be voluntary pledge. So this was released in July. That's why this direction is again very important for the collateral of gold and silver. So basically it was said that the agricultural farmers, as well as micro and small enterprises, they get collateral free loan. That means they do not have to provide the collateral. Now if the farmers want, or if the micro and small enterprises want, they can provide the collateral in the form of gold and silver, even for the collateral free loans, to get the lower interest rate, or to pay the lower interest rate and such, and to get the easier terms and condition. So there can be voluntary pledge of gold and silver as collateral for agriculture and micro and small enterprise loans. Even though for the agriculture there is collateral free loans, as well as for micro and small enterprises there is collateral free loans. Okay. But it is said that if the micro and small enterprises wants, or if the farmers want, they can give the voluntary pledge of collateral to get the easier terms and conditions and lower interest rate from the banks. Try to answer this question now. Okay, so the Reserve Bank had issued the framework. See, basically the self-regulatory organizations, they are the ones that connect the Reserve Bank of India from the regulator with the regulated entities. So all the regulated entities, they cannot individually go to RBI that, okay, do this, do that, or we require this or we require that. Okay, so there is the self-regulatory organization, that is the intermediary between the RBI and regulated entities. So the SRO, they connect the RBI with the regulated entities, and the SRO takes the problem of the regulated entities to RBI, as well as SRO help the regulated entities follow the guidelines issued by the RBI. So SRO are very important as a linkage between the RBI and the regulated entities. So there is the SRO norms that were released for the financial market regulated by the Reserve Bank of India. So basically the self-regulatory organization in the financial market. It was said that there will be self-regulatory organization in the financial market regulated by RBI, so that the RBI can be connected with the intermediaries in the financial market through the help of the self-regulatory organization.
Now, which of the following organization has been recognized by the RBI as a self-regulatory organization in the financial market? So it is FIMDA, that is Fixed Income Money Market and Derivative Association of India. So this has been identified. You can see this is the main article, and the FIMDA has been recognized as the SRO in the financial market. Okay. Now there are some criterias for the SRO. Which entity can become the SRO in the financial market regulated by the Reserve Bank of India? So the entity should have the minimum net worth of 10 crores. Minimum net worth of 10 crores, and the entity should be a not-for-profit organization. Okay, so this is the basic idea that the entity should have. If the entity wants to become the SRO in the financial market domain, the entity should have a minimum net worth of 10 crores, and it should be a not-for-profit company under Section 8 of the Companies Act of 2013, as well as no single entity alone or in concert should hold 10% or more of the share capital in the entity. So the entity that wants to become SRO, in that entity, no single entity or no single individual or no single person or in group, they should not be holding 10% or more of the shareholding in the SRO. That is the idea. Okay. So a single entity or a single individual should not have too much power in the SRO organization. At least 1/3 of members in the board of the SRO shall be independent director and without any active association. So at least 1/3 of the members in the board of the SRO shall be independent directors. This is the idea. Now coming to the next question. In regards to digital lending. So digital lending happens through the digital lending apps. Through the digital lending apps, there is a digital lending that happens. Okay. So try to answer this question. RBI has released the Reserve Bank of India Digital Lending Directions 2025. As per the directions, the borrower shall be given an explicit option to exit a digital loan. Let's say you have taken a digital loan and now you don't want to continue. Okay, so there should be a cooling off period that should be there, that at least 1 day time period or at least a minimum time period should be there for the person to exit the loan. Okay, if the person has taken the loan, so without any penalty you can exit the loan. Without any penalty you can exit the loan during the cooling off period, and the cooling off period should not be less than 1 day. So this is the answer. Yes, 1 day it is. Okay, so this is the idea. The RBI released the digital lending guidelines. The digital lending guidelines were released, and the digital lending guidelines are applicable on all these entities because they provide the digital loans. The commercial banks, the urban cooperative banks, they provide the digital loans. Okay, so basically it has been said that the borrower shall be given an explicit option to exit a digital loan by paying the principal and the proportionate interest and the cost without paying any penalty. They can leave the loan, they can exit the digital loan, and the cooling off period should not be less than 1 day. As well as if there is a complaint, let's say if the customer is raising the complaint and the bank or the lending service provider that is providing the lending service on behalf of the bank, if they are not answering within how many days, the customer can go to the RBI Integrated Ombudsman Scheme. So if the bank or lending service provider do not respond to the complaints, or if their response is unsatisfactory, or if the response is not complete, then the customer can go to the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme. So if the customer is not receiving the response within how many days, the customer can after that go to RBI Integrated Ombudsman Scheme. So within 30 days. Very good. So if the customer, basically, if the borrower has not received any reply within 30 days of receiving the complaint by the regulated entity, the customer has the right to go to the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme. So if the customer is not happy with the response, if the customer is not getting the full response, if the customer is not getting the response within 30 days of the regulated entity receiving the complaint, then the customer can go to the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme. Okay. Now, the digital lending guidelines also includes that there is a public directory of digital lending apps. All the regulated entities through the CIMS portal
they have to inform about the digital lending apps that is connected with the regulated entity. So there is a public depository that will be prepared, that these regulated entities are connected with these digital lending apps, and this public depository will be available to the public, so that we are able to understand that okay, this digital lending app is connected with State Bank of India, these digital lending apps, they are connected with Punjab National Bank, so that we can take the informed decision of taking the digital lending app with from a, like if we want to take the digital loan, we can take the digital loan from a digital lending app that is actually connected with the regulated entity that is recognized. Okay, so basically the recognized entities, the regulated entities under the RBI, they have to list the digital lending apps that they are connected with, and this will be a public depository that will be created, so that the public is aware that which digital lending apps are authorized, which digital lending apps are actual, and they are connected with a good regulated entity. Okay, so this is the idea. Now coming to the next one, try to read the question and try to answer this. So when the digital lending apps are being used for the digital loan, or when the loan is being provided, the digital loan is being provided through the lending service provider that is connected with the regulated entity, there can be a default loss guarantee arrangement. Try to answer this. So basically, let's say that the regulated entity, that is a bank or NBFC, do not want to have a digital lending app because they cannot manage the digital lending app and it requires the IT infrastructure and such. So regulated entities, NBFCs and the banks, they are connecting with the lending service provider, that is a fintech company or any other NBFC, let's say. Okay. Now the lending service provider has the responsibility to provide for the digital lending app that will showcase the loan products of these regulated entities. Okay, so the regulated entity has signed an agreement with the lending service provider, and this is the agent. Lending service provider is the agent that is providing the digital lending app and showcasing the loan products of the regulated entity in the digital lending app. Okay, now the lending service provider through the digital lending app is doing the customer acquisition, and the preliminary risk assessment checks are happening through the digital lending app only. So if they are acquiring the customer, if they are bringing the customer in, if they are doing the preliminary checks, they should be responsible for the loan also, because they are bringing the customers, so they should be responsible for the loan. That's why it has been said that the lending service provider, they need to provide, or they can provide, lending service provider can provide the default loss guarantee up to the limit of 5% of the loan to the regulated entity, so that if the loan default, the default loss guarantee up to 5% is given by lending service provider. So at least some responsibility, some risk is taken by the lending service provider also, so that the lending service providers is not blindly bringing in the customers. Okay, so lending service provider, that is the agent of the banks and NBFCs that is connected with the banks and providing the digital lending application and the digital loans for the regulated entities. So basically, lending service provider is acquiring the customers, is bringing in the digital loans and such. So lending service provider should also be responsible. Okay, so lending service provider can provide the default loss guarantee up to the limit of 5% to the regulated entities. So our regulated entity shall ensure that the total amount of DLG cover on any outstanding portfolio which is specified upfront shall not exceed 5% of the total amount disbursed out of the loan portfolio. So lending service provider can give the default loss guarantee up to the limit of 5% of the total loan, because lending service providers, they are small entities, they cannot take too much of the risk, and the risk of the last risk or the final risk should be with the regulated entity, because it took the decision to connect with this LSP and to provide the loans. Okay, final release of the money is done by the regulated entity for the loan, so it should have checked itself also. So the regulated entity will bear the major brunt of the default. If it happens, 95% of the loss will be handled by regulated entity only. Okay, regulated entity shall invoke the default loss guarantee within a maximum overdue period of 120 days. So if the lending service provider has given the default loss guarantee to the regulated entity, then the regulated entity has to invoke the default loss guarantee, within a maximum overdue period of 120 days, unless the loan dues are made good or they are repaid by the borrower. Okay, within this time period. Regulated entity shall accept default loss guarantee only in the form of cash deposited with the regulated entity. So basically, lending service provider, it is providing the default loss guarantee. But
what if the lending service provider says no at the end, that okay, I don't have money, I cannot pay for the default loss guarantee when the default actually happens. So for that, regulated entity shall accept default loss guarantee only in the form of cash deposited with the RE, fixed deposit maintained with a scheduled commercial bank, that is with a lien marked in favor of regulated entity, or bank guarantee in favor of the regulated entity. So second and third statement are correct. The first statement was wrong, and that's why the answer here is D only. The answer here is D. Okay. So this is the idea that default loss guarantee can be provided by the lending service provider, as they are acquiring the customers. They should be responsible to an extent also. Lending service providers can provide the default loss guarantee up to the limit of 5%, and the regulated entity shall invoke the DLG within a maximum overdue period of 120 days. Okay, so this is the idea. Now coming to the next question, try to answer this question. So 616th meeting of Central Board of Directors of Reserve Bank of India was held in Mumbai under the chairmanship of Sanjay Malhotra in May, and the board discussed the working of the Reserve Bank during the year April 2024 to March 2025 and approved the annual report. That annual report will be released. Okay, as well as it was said that based on the revised economic capital framework and taking into consideration the macroeconomic assessment, the Central Board has decided to increase the contingent risk buffer to what percentage for the 2024-25 to 7.5 percentage. Okay, to 7.5 percentage. So basically, the 616th meeting happened in May 23rd, 2025, and in this it was said that during the accounting year 2018 to 19 to 2021-22, during the COVID time period, there were less buffers that the RBI was maintaining at 5.5%. For financial year 2022-23, RBI started maintaining higher buffers at 6%, and in financial year 2023-24, the RBI was maintaining the buffers of 6.50%. Now for the financial year 2024-25, RBI said that the Central Board of RBI said that we are going to maintain the buffers of 7.5%. Okay, so RBI said that we are going to maintain the contingent risk buffer of 7.5%. Even after maintaining such high buffers for the period of 2024-25, still the RBI was able to transfer the surplus worth 2,68,590 crores to the government of India, and this is the highest ever surplus transfer, even after maintaining the highest ever buffers. Because in the past years, you can see the highest buffers were 6.5%. Now the RBI has maintained for 2024-25 financial year, the RBI maintained the contingent risk buffer of 7.5%. Even after maintaining the contingent risk buffer at 7.5%, the RBI was still able to transfer huge surplus to government of India. This is the idea. Now trying to answer this question. So Reserve Bank of India has issued the revised economic capital framework. Economic capital framework, it was first like the recommendations were provided by the Bimal Jalan committee. Okay, economic capital framework is the framework according to which the risk provisions are maintained by the Reserve Bank of India, and after maintaining the risk provisions, whatever is left, the surplus is transferred to the government of India. So economic capital framework is the framework according to which RBI maintains the risk provisions and transfer the surplus to the government of India. Now this has been revised. So Central Board would have the flexibility. Now the RBI has the flexibility to maintain the market risk buffer at the confidence level of 99.5% or the confidence level of 97.5%. That means the market risk buffers previously, they were only maintained at the confidence level of 97.5%. But now the market risk, the RBI can keep the buffers at the level of 97.5% or at the level of 99.5%. Okay, so there is flexibility that is provided, that higher buffers can be maintained at the higher confidence level, or lower or moderate buffers can be maintained at the lower confidence level of 97.5%. Okay, so the confidence level is 99.5%, that is high safety, that is providing high safety, high confidence, or 97.5%, that is moderate buffers, moderate safety. This is the idea. And for the market risk, the buffers are maintained in revaluation balances. Okay, this topic I am suggesting you that do see the topic. If you are not able to understand, that means you have not seen the video that was released regarding the revised economic capital framework. So do see that session, do see that video. Okay,
in the Finance 360-degree sessions. The range for buffers for monetary and financial stability risk. For monetary and financial stability risk, the buffers were kept at 5% plus minus 1.5%. So it is 5%, not 4%. 5% plus minus 1.5%. For contingent risk buffers, under which monetary and financial risk buffers are kept, credit risk, operational risk buffers are kept. So its range is now 6% plus minus 5%. So first was wrong because it is 97, not 98.5. And the range for buffers for monetary and financial stability risk is 5% plus minus 1.5%. So second was also wrong. So 1 and 2 are incorrect, and that's why the right answer is A here. So here you can see that the range for monetary and financial stability risk is 5% plus minus 1.5%. That is, the range is now 3.5% to 6.5%. As well as for the contingent risk buffer, before the range was 5.5% to 6.5%. Now the range is 6% plus minus 1.5%. That means now the range is 4.5% to 7.5%. And the highest of the contingent risk buffer at 7.5% is being maintained for 2024-25. That is the idea. Now coming to the next question, try to answer this question. The RBI released the framework for formulation of regulation. RBI said that if new regulations will be released, or if the amendment, major amendment will be released in a regulation, then the framework for formulation of regulation will be followed. Okay, so try to answer this question. So here the answer is C. So here, yes. Is it C or D? Many of the students are saying D. It is D. Very good everyone. So framework for formulation of regulations lays down the broad principles for formulating the new regulations by the RBI or bringing the major amendment by RBI. Okay, so framework seeks to standardize the process for creating the new regulations or for bringing the amendment in the regulations. RBI shall provide at least 21 days to the stakeholders and members of public to submit their comments for the new regulations. So whenever the new regulation or a major amendment is being done, the RBI will release, before releasing the final regulations, RBI will release the draft circular on which the comments has to be taken from the public, and at least 21 days should be provided to the public for the comments. That is the idea. So 21 is the answer. So framework for formulation of regulations has been released, and it has been said that the draft circular will be released first and the public comments will be taken, and public will be given at least 21 days, for the comments. This is the idea. Okay, and the rest of the information you can read, not very important. For the major amendments also and for the regulations, new regulations, the draft circulars will be released and the public comments will be taken. Now, non-applicability on certain matters, basically on the internal, administrative and organizational matter as determined by the RBI, there is no need for draft circular, there is no need for taking the public comments from the public. Okay, for internal matter and for organizational matter, for the administrative matter, RBI will not be following these direction or this process. A procedural matter where a minor change is happening, where there is no substantive change or there is no major impact. If a minor change is happening, then also RBI will not follow these directions. Okay, as well as if the change is not general in nature, then also RBI will not follow these directions. Now coming to the next question, that which of the following is the title of the 5-part documentary series launched by the Reserve Bank of India in collaboration with Jio Hotstar to visually document its 90-year journey and functions. So which of the following is the title of the 5-part documentary? So basically the answer here is RBI Unlocked Beyond the Rupee. So this is the title of the 5-part documentary series launched by the Reserve Bank of India in collaboration with Jio Hotstar. Nothing much to remember here. Just remember the title of the documentary. That's it. Okay. And Jio Hotstar, in collaboration with Jio Hotstar, this documentary has been launched. Now coming to the next question. This question, because this topic is quite in news usually, as well as this kind of question has come in the previous year also. Okay. So inoperative accounts or unclaimed deposit in banks, any deposit account in banks that has not been operated upon for a period of 10 years or more, and the deposits that have been unclaimed for 10 years or more, they are unclaimed deposits. And unclaimed
accounts, and the funds from these unclaimed deposits, they must be transferred to the Depositor Education and Awareness Fund once they have been unclaimed for 10 years or more. Okay. So basically, if the funds are unclaimed for 10 years or more, the money is transferred to the Depositor Education and Awareness Fund. Now, if there are unclaimed dividends, if there are unclaimed interest on the bond, if there is unclaimed shares, so these are transferred to the Investor Education and Protection Fund after how many years? After how many years? After 7 years. So if there are unclaimed dividend, unclaimed interest, unclaimed shares, unclaimed bond amount after maturity, so after 7 years they are transferred to the Investor Education and Protection Fund. Now coming to the 61st question. So at end March 2025, India's external debt, there are one question more. Okay, so I've brought 62 questions. So try to answer this question. At the end March 2025, India's external debt was placed at US dollar 736.3 billion. Basically, external debt to GDP ratio you have to tell. The external debt to GDP ratio has increased to 19.1%. Okay. So this is important because this is yearly data. So that's why this is important. So basically, external debt to GDP ratio has increased to 19.1%. External debt to GDP. 19.1%. Okay, as well as see from these data points in the previous year in the RBI Grade B phase 1 examination, there was a direct question. So remember this, that the share of short-term debt to the total external debt, this you have to remember. So the short-term debt to the external debt, the share was 18.3%, as well as the short-term debt, the ratio of short-term debt to the foreign exchange reserves, this was 20.1%. Okay, US dollar denominated debt remained the largest component. After this, debt denominated in Indian rupee, after this yen, SDR and euro. So we have taken the most debt in US dollars, then we have taken debt in rupee form and yen, and then SDR and euro. So these are some of the points that have to be remembered. Next is these points also. Loans, like we have taken loans. Okay, loans remained largest component of external debt. Then currency and deposits that we have taken, that is the liability that we will have to return. Then trade advances and credit. Okay, and debt securities. So this is percentages you do not have to remember, just chronology remember. Loans, then currency and deposit, then the trade and advances, then credit, trade and advances and credit, and then the debt security. Okay, so that is the idea. Coming to the last question, try to answer this. So basically, RBI released 44th half-yearly report on management of foreign exchange reserves for October 2024 to March 2025. Now, this data is not very important, but the important thing is the static point, that which of the following institutions were entrusted with the responsibility of keeping the gold safe. And this question has also come in the RBI Grade B last year phase 1 examination. Okay. So, which of the following institutions have been entrusted with the responsibility of keeping the gold reserves safe? So, in the foreign exchange reserves of RBI, there is gold that can be kept in Bank of England, that is being kept in partly in Bank of England and Bank for International Settlement. Absolutely correct. Okay. Now, coming to the last question. So, this is your homework question that you have to answer. But before that, remember that a part of the gold is being kept in safe custody with Bank of England and Bank for International Settlement, as well as the swap arrangement was also mentioned. So swap arrangement, RBI has provided for the swap arrangement, and RBI has said that any of the SHARC countries, South Asian Association Regional Cooperation countries, any of these countries, if they want the help of India, they can provide their local currencies and they can get the dollars, or they can provide their local currencies and they can get the rupees for a time period for, let's say, 6 months, for 3 months and such. And after the time period finishes, they will have to return the dollars and they will take back their local currency. So the Monetary Authority of Bhutan and Maldives Monetary Authority have already taken this kind of facility, where they have requested, the Bhutan has requested rupees and the Maldives had requested dollars under this swap facility, and they have promised to return it within the timeline, okay, that you can read. So this is the idea. Now this is the homework question from the free AI report that you have to answer. So hello guys, thank you ma'am, till the time Kritika ma'am is here, let me just open my PDF here. Till Gurkira sir opens the PDF, any question, any confusion anyone has? So any question, any confusion?
Okay, homework question you are answering. Good. All the very best for your examination. Let's meet in the marathon session, the Maha marathon sessions that will be conducted. So let's meet in that. If you have made any mistakes in the questions, as Devanshu sir also said, that rectify your mistakes, revise a lot, and that is the idea. Okay, you will get a break. Gurkya sir, you will be giving the break, right? Because students are asking that saas len do. चलो ले लो सांस 10 मिनट, कोई बात नहीं. So you will get the break. Okay. Okay. एक और क्वेरी आ रही है कि एफएसआर और एनुअल रिपोर्ट के क्वेश्चंस क्यों नहीं. तो एफएसआर और एनुअल रिपोर्ट देखो, एनुअल रिपोर्ट के मैंने अलग से एक एमसीक्यू सेशन लिया था, तो उसके थ्रू थोड़ा रिवाइज करो. महा मैराथन जब होगी, व्हेन द महा मैराथन हैपेंस, देन आई विल ब्रिंग द एनुअल रिपोर्ट एंड एफएसआर क्वेश्चंस आल्सो. ओके, but for the annual report there is a separate session that we have already conducted. For like there were, I guess, 15 to 20 questions from the annual report that we discussed in the annual report MCQ session. Okay, so that you can see. चलो, Okay. Take your so, let's have a water break of खाना खाना है सर. ठीक है जी. हाँ जी हाँ जी बिल्कुल खाना खाना है. तो let's have one thing. ठीक है जी. Let's have a break of 5 minutes. So it's 4:09. So we're joining at 4:14. Will it be fine with everybody? 4:14 पे join कर लें. ठीक है जी. उपासना सिंह सर, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम की एलिजिबिलिटी क्या है? डू नॉट वरी, मैं जब आऊंगा आपके साथ तो तभी डिस्कस कर लूंगा कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम पे क्वेश्चन है तो क्या एलिजिबिलिटी है, मैं तभी आपके साथ डिस्कस करूंगा. डो नॉट वरी, वो क्वेश्चन है आज की इस क्लास में, तो विल डिस्कस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, डो नॉट वरी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग. ठीक है जी. चलो, से कमिंग टू द महा मैराथन वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑन 16th of October, 1 day prior to your exam, 2 days prior to your examination. ठीक है जी. उसके पहले हम बात करें तो आपके मैराथन्स होंगे, जैसे आज है, फिर मैराथन्स होंगे और फिर वो चीज. ठीक है, डू नॉट वरी. ठीक है जी. 4:15 पे स्टार्ट करते हैं गाइस. ठीक है, टिल देन प्लीज हैव योर लंच. आई नो बिकॉज मैंने आपको वहां से छोड़ा है, फटाफट में यहाँ पे आ गए. सो 4:15 विद इन 5 minutes वी विल बी ज्वाइनिंग. ओके, चलो.
Okay guys, so it's 4:14, just 1 minute left and let's begin with the schemes part now. ठीक है जी. So I hope these 120 questions were really helpful for you, because if you consider the pattern of the examination which we are seeing now, we are seeing that there are many questions which are being asked from reports and RBI notifications in the recent exam trend that we have witnessed also guys. ठीक है. अब बात करें स्कीम्स की, तो स्कीम्स मैंने आपको एक लिस्ट दी थी अराउंड 50 मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम्स की, तो मैंने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस उन्हीं स्कीम्स में से ही उठाए हैं. एक दो क्वेश्चन होंगे जो स्कीम्स उनके अलावा होंगे, जनरली हमने उन्हीं स्कीम्स को ही पिक किया है, सो दैट वी कैन रिवाइज दो स्कीम्स थॉरोली. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, काफी स्कीम्स मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं. ठीक है, बीच में कोई एक दो स्कीम्स होंगी जो शायद नहीं पढ़ी होंगी, तो कोई इश्यू नहीं है दोस्तों. ठीक है, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे. अगर आप कोर्स के स्टूडेंट है तो कोर्स में आई विल ट्राई कि जो मैं अपकमिंग सेशन लूंगा स्कीम्स का, मैं वहां पे आपको रिवाइज करवा दूंगा. और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे जो स्कीम है मैंने ऑलरेडी इन पे सेशन लिए हुए हैं यूट्यूब पे, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सेशन नहीं लिया है. दिस इज स्कीम नोन एज किसान संपदा योजना दैट आई हैव नॉट टेकन अ सेशन, सो दैट आई विल बी टेकिंग टुमारो इन द मॉर्निंग, तो वो आपको कल दिख जाएगा. उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ स्कीम्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने उन पे सेशंस लिए हुए हैं. ठीक है जी, चलो जी. इट्स 4:15. somebody saying सर 5 मिनट और दे दीजिए. चलो जी, लेट्स हैव अ 5 मिनट मोर ब्रेक. Till then let's look at the query. देवजीत is saying sir is it going to help in NABARD grade A also? देखिए देवजीत, ये हेल्प कर सकता है, बट प्राइमरीली जो फोकस है सेशन का वो आरबीआई ओरिएंटेड ही है. तो जो स्कीम्स हमने जनरली पिक की हैं वो आरबीआई ओरिएंटेड ही हैं, जो डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाबार्ड की कुछ एग्रीकल्चर स्कीम्स है जो हमने यहाँ पे पिक तो की हैं, बट वी विल नॉट गो दैट मच इनटू डिटेल ऑन दो स्कीम्स. ठीक है, बिकॉज इतना डिटेल में आरबीआई के लिए रिक्वायर्ड नहीं. तो जो प्राइम फोकस होगा, क्वेश्चंस तो होंगे बट प्राइम फोकस जो होगा वो आरबीआई ओरिएंटेड ही होगा. ठीक है, क्वेश्चंस आपके नाबार्ड के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, वहां पे भी हो सकते हैं. ठीक है, चलो. ओके जी, रेडी गाइस? Ready everyone? Quickly tell me in the chat section. Are you guys ready for the final leg of the session? That is your government schemes. Final leg of the session. Everyone ready? So let's quickly revise this topic, guys. ठीक है? Schemes ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में अपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुका है. हम लोग अगर आप कोर्स के स्टूडेंट हैं तो हमने आपके क्लासेस में, आपके एमसीक्यू सेशन में काफी बार स्कीम्स को डिस्कस किया है. ठीक है जी, डरो मत, बस एक ही चीज है, डरो मत. कोई बात नहीं है, एग्जाम है, बस कॉन्फिडेंस रखो, जो चीज आती है उसको सीखो, नहीं आती तो लर्न करो. ठीक है, चलो जी, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. वेरी इजी क्वेश्चन. आई हैव टोल्ड, आज ही पढ़ा के आया. वैसे तो अभी मैं अगर क्लास की बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले मैं मेन कोर्स में पढ़ा के आया हूं. हु हैज रोल्ड आउट अ स्पेशल पर्सनल लोन स्कीम फॉर अग्निवीर रिसेंटली इन द मंथ ऑफ सितंबर? ठीक है जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. हर्षल बताओ जी. हर्षल, उपासना, पद्मिनी, गाइस वेयर आर यू? आई एम फाइंडिंग यू. आप डिस्कस हो रहा था ना. चलो जी. हाँ जी राज, व्हाट विल बी द आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन गाइस. द आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बोला है कि हम लोग जो है स्पेशल पर्सनल लोन देने वाले हैं अग्निवीर को. नाउ दिस इज अबाउट द पार्ट ऑफ अग्निपथ स्कीम. कमिंग टू द अग्निपथ स्कीम, इट्स द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है जी, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज बेसिकली टू मेक द यंग पीपल volunteer and they should go and join the army here. Important यहाँ पे क्या याद रखना है? एज ग्रुप इज 17.5 to 21 years. That is the age group here. ठीक है जी. किस मिनिस्ट्री की स्कीम है ये? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है. If I talk about here, so they will be enrolled for 4 years. After that, 25% of Agniveers can join the main army also. ठीक है जी. देन दे हैव अ फिक्स्ड पेंशन. ठीक है जी, फिक्स्ड पेंशन है वहां पे, तो सॉरी फिक्स्ड पेंशन, फिक्स सैलरी है. सैलरी 30,000, 33,000, 36,000 एंड 40,000. ये फिक्स सैलरी है. देन वी हैव अ सेवानिधि पैकेज हियर आल्सो. ठीक है, so I can see now the students of course also. Prangya is here, Harshal is here. हाँ जी, सेवानिधि पैकेज डिस्कस अभी पढ़ा के आया था मैं वैसे तो तुम्हें क्लास में. तो सेवानिधि पैकेज इज 11.7 लाख रुपीस.
ठीक है जी, 11.7 lakh rupees is the सेवा निधि पैकेज that is going to be provided here. In case of death it is 44 lakh rupees provide होंगे, उसके अलावा additional 48 lakh rupees is going to be provided as a additional tax gratia, that is in addition to the 44 lakh rupees here. So this is about Agnipath scheme. ठीक है जी, then we have discussed there are 3 states that you need to remember here: UP, Haryana and Sikkim. So Uttar Pradesh has decided recently that 20% of the seats they will be reserving specifically for the Agniveer personas if there is any job they are conducting with regards to the police department here. Then Haryana has also given some benefits to the Agniveer people, and then the third one was Sikkim here. So that is about your question number 1. ठीक है जी, regarding Agnipath scheme here. Let's move to the second question. Upasana was asking about this thing. Unified pension system, very very important scheme this year. UPS, Unified Pension System, launched on or started from 1st of April 2025. Recently, just अभी कुछ टाइम पहले मैं आपको पढ़ा के भी आया था इस चीज के बारे में, और यही टॉपिक मैं आपको पढ़ा के आया था. ठीक है, एंड आई एम होपिंग दैट ऑल ऑफ यू गिव मी द राइट आंसर हियर, बिकॉज यही सेम चीज मैंने आपको अभी पढ़ाई थी, सेम चीज अभी पढ़ा के आया हूं. ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा. This I hope everybody of you give me the right answer here, because this is something मैंने आपको अभी पढ़ाया है. अभी अगर कोर्स वाले स्टूडेंट्स को तो मैं ध्यान से देख रहा हूं जिन्होंने कोर्स में क्लास ली हुई है. हाँ जी, हर्षल, प्रज्ञा, अभिषेक, संदीप, व्हाट विल बी द आंसर हियर. हाँ जी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी. आई कैन सी. देखो यहां पे आंसर क्या बनेगा, यहां पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3. ग्रेट हर्षल, गुड. ऑप्शन सी इज द आंसर हियर. ठीक है जी. सृष्टि, दैट आई हैव जस्ट टॉट इन दी लाइव क्लासेस ऑफ EduTap. जो लाइव क्लासेस हो रही है हमारे कोर्स में, वहां पे पढ़ाया मैंने अभी ये वाला पार्ट. ठीक है ना, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, यूट्यूब पे तो अब पढ़ाऊंगा, लाइव क्लासेस में पढ़ा के आया था. ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 इज गोइंग टू बी द आंसर हियर. अब ये चीज है क्या, यूपीएस में रिसेंटली 2 चीजें स्टार्ट हुई है, दैट इज ऑन द फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो फंडिंग स्ट्रक्चर की बात उन्होंने बोला 2 तरह कॉर्पस होता है, एक होता है इंडिविजुअल कॉर्पस, एक होता है पूल्ड कॉर्पस. इंडिविजुअल कॉर्पस में उन्होंने क्या बोला है, वेयर एम्प्लॉयज विल बी इन्वेस्टिंग. ठीक है, एम्प्लॉयज जो हैं they will be contributing 10%, गवर्नमेंट विल मैच दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ 10%, और यहां पे जो है the employees can exercise the investment choice which is given as per the PFRDA. Whereas in the pooled investment, it is the government of India which actually gives you additional 8.5%. Additional 8.5% of the basic pay plus DA they are providing here. ठीक है जी. इसके साथ दूसरा पॉइंट यहां पे याद रखना है, यहां पे कि here the investment choice lies with the government of India. So that is the key word here. I always say look at the key word. It is pooled corpus. So that is why this statement is wrong. ठीक है जी. पूल्ड कॉर्पस में एम्प्लॉयज के पास चॉइस नहीं होती. पूल्ड कॉर्पस में बेसिकली क्या होता है, आपकी गवर्नमेंट के पास चॉइस होती है, ना कि एम्प्लॉयज की चॉइस होती है. सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3. गॉट दैट पॉइंट. ठीक है सृष्टि, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू. ठीक है जी, आई होप सृष्टि द पॉइंट इज क्लियर टू यू. ठीक है, दिस इज द थिंग दैट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू इन द क्लास ऑल्सो. जस्ट अभी मैं पढ़ा के आया थोड़ा टाइम पहले. तो ये चीज याद रखना, जो यूपीएस में रिसेंटली देयर इज अ डेवलपमेंट इन यूनिफाइड पेंशन सिस्टम हियर. ठीक है जी, दैट्स अ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड है. एडिशनल 8.5%, एडिशनल 8.5. ठीक है, 18.5 जो है मैंने बोला एडिशनल 8.5 है, एडिशनल. ठीक है, 18.5 तो ओवरऑल हो गया ना, एडिशनल 8.5. ठीक है, तो ये एडिशनल 8.5 है. ठीक है, दैट्स द पॉइंट हियर. तो हुआ क्या था कि 10% प्लस एडिशनल 8.5% गवर्नमेंट यहां पे इन्वेस्ट करेगा, बट यहां पे जो इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा. यहां पे बेसिकली क्या है, एम्प्लॉय 10% पर गवर्नमेंट उसको मैच कर सकता है. दैट इज द थिंग, गवर्नमेंट विल बी मैचिंग द इन्वेस्टमेंट कॉर्पस हियर. ओके, नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन दैट उपासना वाज आस्किंग मी. आई होप एवरीबॉडी ऑफ नो द आंसर. व्हाट इज द एज लिमिट फॉर द यूनिफाइड पेंशन सिस्टम.
Can anybody tell me what is the age limit for unified pension system? तो क्या है जी एज लिमिट? गाइस द आंसर टू दैट इज देयर इज नो एज लिमिट फॉर यूनिफाइड पेंशन सिस्टम बिकॉज इट इज अ स्कीम एप्लीकेबल ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. तो यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट तो वो करनी ही नहीं है. ठीक है, देयर इज नो लिमिट हियर. तो यहां पे कोई लिमिट नहीं है एज लिमिट. यहां पे इंपॉर्टेंट बस क्या याद रखना, यहां पे चीजें जो आएंगी जो नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट. Let's try to figure out the answer for this specific question on UPS here. Which of the following statements of unified pension system are correct here as per the recent approval by the Union Cabinet? The scheme guarantees a pension of 50% of the average basic pay for the last 12 months before superannuation with a minimum qualifying year of 25 years. The assured family pension under the UPS is said to be 60% of the employee's pension before their demise. The scheme offers a lump sum payment at superannuation equal to 1/10 of the monthly emoluments for every completed 6 months of services in addition to gratuity without reducing the assured pension amount here. DNS relief under UPS is actually based on wholesale price index for industrial worker. Tell me what is going to be the answer here. So what is going to be the answer here? Quickly guys, very easy question. So I know all of you know the answer here. What is the answer here? Quickly guys. Quickly. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गिव मी द आंसर. यार क्या हो गया, एग्जाम में भी ऐसे ही करने आंसर फटाफट में. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. 1, 2 and 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर. ठीक है, बिकॉज यहां पे WPI नहीं होता है. यहां पे क्या होता है, दैट इज एक्चुअली CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, नॉट WPI. इट इज एक्चुअली CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर. ठीक है, नॉट WPI है. Now coming to the unified pension system, the important points that you need to remember here is, first of all, if I ask some additional question, what is the minimum pension that is assured under the scheme? What is the minimum pension that is assured under the unified pension system? Minimum pension that is assured is 10,000 rupees, and it is assured if a person is serving for minimum of 10 years. Minimum 10 years सर्व करोगे तो आपको 10,000 की मिनिमम पेमेंट मिलेगी. उसके बाद प्रो राटा बेसिस पे चलती है टिल 25 इयर्स वेयर यू विल गेटिंग मैक्सिमम 50% ऑफ योर बेसिक पे. उसका एवरेज बेसिक पे का 50% आपको यहां पे मिल जाएगा एज अ पेंशन हियर. ठीक है जी. सेकंड थिंग, इट इज एक्चुअली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज एप्लीकेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल है. इसी को देखते देखते स्टेट्स ने भी अपने लॉन्च किया. महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अ स्कीम सिमिलर टू द यूनिफाइड पेंशन सिस्टम इन दैट स्पेसिफिक स्टेट. Now coming to the important point under the unified pension system is minimum pension 10,000 है, minimum 10 years की सर्विस है. ठीक है जी. 60% आपकी फैमिली पेंशन जो आपको मिलेगी, 25 years तक आपको 50% मिलेगा. ठीक है. CPI IW के बेस पे आपकी जो इंडस्ट्रियल वर्कर के बेस पे आपकी जो पेंशन है दैट वुड बी रजिस्टर्ड हियर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिगार्ड्स टू NPS. इफ अ पर्सन जॉइंस UPS, ठीक है जी, देन टेल मी इज इट रिवोकेबल. क्या वो कभी भी एनपीएस को ज्वाइन कर सकता है? इज इट रिवोकेबल और नॉट रिवोकेबल? क्विकली गाइस. इफ अ पर्सन जॉइंस एनपीएस, इज इट रिवोकेबल? उपासना जी 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज नहीं होती है. रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स होती है. 65 ईयर्स किसी किसी डिपार्टमेंट में होती है. जनरल डिपार्टमेंट्स में 60 ईयर्स ही एज है रिटायरमेंट एज. ठीक है, तो वो वाला अपर एज लिमिट हमें बात ही नहीं करनी यहाँ पे. ठीक है, इट इज इररिवोकेबल. इफ अ पर्सन जॉइंस एनपीएस सॉरी यूपीएस, it is irrevocable. He or she cannot join NPS. There is only one exception here, that is now the government has said that is the option is switch off. So switch off is the new option given by the government of India here. What is the switch off option here? Switch off option actually says that, guys, that if a person 1 year before its retirement or 3 months before its VRS, voluntary retirement scheme, 1 year before retirement, 3 months before VRS, he or she, what they can do is they now can say that okay, we want to switch to NPS.
बट वंस दे हैव ज्वाइंड यूपीएस इट इज इररिवोकेबल। आपने एनपीएस छोड़ के यूपीएस ज्वाइन कर लिया तो आप इट इज इररिवोकेबल। वंस एक्सरसाइज यू कैन नॉट स्विच। The only option is that is at the time of retirement there is an option given as switching option given here. ठीक है, तो बस ये यहां पे याद रखना है, that is about the unified pension system. So if we go here guys, as we know, ठीक है जी, applicable to central government employees from 1st of February 2025, एनपीएस वाले लोग भी एलिजिबल हैं। डिसमल हो, रिमूवल हो गया तो एलिजिबल नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, 25 ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, ये भी हमारा डिस्कस हो चुका है। एक बस पॉइंट जो मुझे आपको बताना है वो है ये वाला फंडिंग स्ट्रक्चर आई हैव डिस्कस। ठीक है जी, पूल्ड कॉर्पस, बस ये रखना, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी आपको मिलेगी 25 लाख। दैट इज अ पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर हियर, द रिटायरमेंट ग्रेचुइटी ऑफ 25 लाख इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड हियर। ठीक है जी, दैट्स अ थिंग हियर। ठीक है, लास्ट डेट वाज 30th of September 2025, बिल्कुल स्विचिंग की लास्ट डेट वो थी। ठीक है, अब दूसरा आते हैं पास्ट एनपीएस। ठीक है जी, पास्ट एनपीएस रिटायरी यू आर एलिजिबल फॉर यूपीएस बेनिफिट्स विल रिसीव एरियर इंटरेस्ट, जो भी है आपको मिल जाएगा। डिफॉल्ट एप्लीकेबिलिटी मैंने बताया, एम्प्लॉयज कंटिन्यू अंडर द एनपीएस। ठीक है, इफ नो ऑप्शन इज एक्सरसाइज डिफॉल्ट एम्प्लॉयज आर बाय डिफॉल्ट एनपीएस में जाओगे, यूपीएस में नहीं जाओगे, ये याद रखना। ठीक है जी, फर्स्ट स्विच ऑफ का मतलब सिंपल भाषा में देखो यहां पे लिखा ही हुआ न्यू रूल ऑफ स्विच ऑफ हियर, कि अगर आपको एक स्विच ऑप्शन दी गई है कि वन टाइम इन वन वे स्विच from UPS to NPS is given for the central government employees. Normal retirement 1 year. ठीक है जी, in case of VRS it is 3 months. आप स्विच कर सकते हो यूपीएस से एनपीएस, ये वाला पॉइंट है बस स्विच ऑप्शन का मतलब। क्लियर हो गया कि स्विच का मतलब क्या है? जनरली आप बाय डिफॉल्ट किसमें आओगे, याद रखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय डिफॉल्ट आप एनपीएस में आओगे। डिफॉल्ट एप्लीकेबिलिटी, नो एप्लीकेबिलिटी इज एक्सरसाइज, नो ऑप्शन इज एक्सरसाइज, बाय डिफॉल्ट आप एनपीएस में आओगे। अगर आप एनपीएस से यूपीएस में चले गए तो फिर आप वापस एनपीएस में नहीं आ सकते। रूल ये है कि अगर आप एनपीएस से यूपीएस में चले गए तो भाई आप वापस नहीं आ सकते। फिर आपको क्या बोला गया, ये ऑप्शन दे दी गई कि अगर आप रिटायर होने वाले हैं तो आपको ऑप्शन दे दी गई है कि अगर अब आप स्विच कर सकते हैं अपने यूपीएस से एनपीएस में। ठीक है, आप अपने रिटायरमेंट से 1 साल पहले या फिर अपनी वीआरएस से 3 महीने पहले आप स्विच कर सकते हैं, कहां पे, फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। क्लियर हो गया भरत ये वाला पॉइंट? एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, बिकॉज और इस साल यूपीएस पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है जी, और एक याद रखना, पार्शियल विड्रॉल जो एनपीएस में भी यही सेम चीज होती है, अप टू 3 टाइम्स आफ्टर 3 ईयर का लॉक इन पीरियड आप 25% पैसा पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी, यार इररिवोकेबल का मतलब तो यही हुआ ना भाई, वो स्विच ऑप्शन है। स्विच ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि भाई न्यू रूल्स में बोला है कि भाई पॉसिबल है, आप स्विच कर सकते हो, आपको ये ऑप्शन दी गई है, ये इसको स्विच ऑप्शन है, रिवोकेबल ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये अगर आपने 1 साल में एक बार यूपीएस ले लिया तो बार बार नहीं चेंज हो सकता, तो वो लगातार ही चलेगा आपकी एंड तक, ये है उसका मतलब। ठीक है, रिवोकेबल का मतलब नॉर्मल केस में क्या होता है, जैसे आप एनपीएस से यूपीएस में गए, आपने दोबारा बोला मैं यूपीएस में आ जाऊं, जैसे इनकम टैक्स में होता है ना, आपने बोला कि मुझे पुराने रिजीम में जाना है, बाय डिफॉल्ट चले गए, फिर आप बोलो मुझे नई में जाना, नहीं सर मुझे तो पुरानी में जाना है, हो सकता है ना। तो उन्होंने बोला अगर एक बार तुमने स्विच कर लिया भाई, तो ऐसा नहीं कैसे पता चले, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हमने, ये स्विच वाली ऑप्शन, तो ये है, दैट इज व्हाट इज नोन एज वंस एक्सेप्टेड इट्स फाइनल एंड इररिवोकेबल। यहां पे इररिवोकेबल का मतलब ये है कि भाई अगर आपने यूपीएस एक्सेस कर लिया तो भाई फिर आप नहीं जा चेंज कर सकते। ठीक है, अरे ये नहीं मतलब भरत भाई, आप कुछ और समझ रहे हो इसको। इसका सिंपल मकसद है कि अगर आज कोई बंदा एनपीएस से यूपीएस में चले जाता है और आपने यूपीएस डिसाइड कर लिया, तो भाई यूपीएस डिसाइड कर लिया तो आप जो है आप दोबारा एनपीएस में एकदम नहीं जा सकते, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दी गई है, वो है स्विच ऑप्शन। तो यहां पे रिवोकेबल का मतलब ये है कि आप एकदम ऐसा नहीं कि फटाफट में स्विच कर लोगे, उसको रिवोकेबिलिटी नहीं, उसको स्विच ऑप्शन बोला गया है कि आप अपने फंड्स को स्विच कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये नहीं बोला कि यूपीएस बंद होगी, यहां पे समझ रहे हो, यहां पे तो एक्सरसाइज ही पॉसिबल नहीं है ना।
तो वो चीज है कि गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया कि तुमको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो वहां से ज्यादा पैसा आ सकता था, तो वो चीज है। क्लियर हो गया, समझ लग गया वो पॉइंट? हाँ, ठीक है। देखो यार, ये डिफॉल्ट एप्लीकेबिलिटी यही बता रहा हूं कि डिफॉल्ट एप्लीकेबिलिटी बोला कि डिफॉल्ट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप एनपीएस में, ठीक है। इफ नो ऑप्शन इज एक्सरसाइज तो एम्प्लॉय कंटिन्यूज अंडर एनपीएस। ये डिफॉल्ट एप्लीकेबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को तो बोला कि अब आप यूपीएस के मेंबर ही बनोगे। तो ये चीज है कि अगर आपने स्विच किया है, कुछ भी नहीं है, तो आपको बेसिकली बोला कि आप एनपीएस में जाओगे। ठीक है, चल अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। आई होप दैट स्कीम इज क्लियर नाउ। लेट्स टॉक अबाउट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इंपॉर्टेंट स्कीम। अब यहां पे बहुत ज्यादा आपको एग्रीकल्चर वाले पॉइंट्स नहीं पढ़ने हैं, आपको यहां पे जो मेन पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है विद रिगार्ड्स टू द मेजर प्रोविजंस ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो आपको मुझे बताना यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड्स टू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब देखिए, वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन द फिशरीज वैल्यू चेन। Under the group accident insurance scheme, eligible fishers between 18 to 70 years are provided to pay 5 lakh in case of death or permanent total disability without any beneficiary contribution. अब ये क्या पॉइंट सही है? Without any beneficiary contribution. फिर बोला गया सब्सिडी सपोर्ट अंडर द स्कीम इज 40% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 70% फॉर SC/ST कैटेगरी। क्या 70% है, क्या 60% है, क्या 50% है? ध्यान रखो इस चीज के ऊपर, फोकस। फिर बोला है केसीसी वाज एक्सटेंडेड टू कवर द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द फिश एंड एनिमल्स इन 2018-19। अब क्या ये पॉइंट सही है? क्या 18-19 था, 2021 था? बिकॉज दिस इज समथिंग आई हैव डिस्कस्ड विद द स्टूडेंट्स इन द इकोनॉमिक सर्वे। ये वाली लाइन इकोनॉमिक सर्वे से रिलेट करती है फिशरी सेक्टर में। तो बताओ जी, तो यहां पे कौन आंसर बनेगा? यहां पे आंसर बन जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 and 4 is the right answer here. ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 and 4 आंसर बनेगा। अब देखो सब्सिडी सपोर्ट यहां तक बिल्कुल सही है। सब्सिडी सपोर्ट अंडर द स्कीम इज 40% फॉर जनरल कैटेगरी, बट यहां पे 70% नहीं, यहां पे 60% है। ठीक है, इट इज 60% फॉर SC/ST वुमेन बेनिफिशियरीज वेयर इट इज 40% फॉर जनरल कैटेगरी। तो ये याद रखना है। ठीक है, चलो ठीक है जी, चलो। सो संदीप, हर्षल, अभिषेक, ठीक है जी, वैभव, पद्मिनी, प्रज्ञा, टेल मी हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 हाउ मेनी ऑफ देम वर करेक्ट? उपासना, यू आल्सो वर ऑल द क्वेश्चंस राइट? सारे सही थे अभी तक? और मुझे सब बच्चे बताओ, अभी तक 4 क्वेश्चंस किए हैं, क्या सारे क्वेश्चंस ठीक हुए हैं? ठीक है जी, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीमिंग ऑफर्ड अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, दैट इज आई टोल्ड यू द आंसर, ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। Now under the group accidental insurance scheme, first point is that in case of death or permanent disability, 5 lakh rupees are provided. Tell me in terms of group accidental insurance, age group, partial disability, the money is going to be provided. And the third point that you need to tell me is about the hospitalization expenses if there are any. Tell me guys. So what is going to be the answer here? Age is 18 to 70 years. पार्शियल डिसेबिलिटी में आपको 2.5 लाख रुपीज मिलते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मिलता है 25,000 का। अब इंपॉर्टेंट यहां पे क्या याद रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिशियरी। ठीक है, अब यहां पे एक प्रोग्राम स्टार्ट, इसका नाम है टर्टल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। टर्टल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम या फिर टर्टल प्रोग्राम के नाम से याद रख लो उसको, टर्टल प्रोग्राम। विच स्टेट है स्टार्टेड दिस प्रोग्राम ऑफ टर्टल प्रोग्राम? टेल मी गाइस, विच स्टेट हैज स्टार्टेड द टर्टल प्रोग्राम? ठीक है जी, दैट इज केरला। केरला हैज स्टार्टेड द टर्टल प्रोग्राम। ठीक है जी, चलो जी, कमिंग टू दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन द यूट्यूब आल्सो। ठीक है जी, ये क्या है देखो, 90% है, 60% ऑफ सेंटर एंड स्टेट है, 100% यहां पे है। अब यहां पे जो मेन पॉइंट था वो ये था, फाइनेंशियल असिस्टेंस इट इज 40% फॉर जनरल कैटेगरी सब्सिडीज एंड इट इज
60% फॉर SC, ST एंड वुमेन बेनिफिशियरीज हियर। ठीक है जी। इंश्योरेंस कवरेज मैंने बता दिया, नो बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लाख इन केस ऑफ डेथ, 18 to 70 है। और कोई भी पर्सन जो कि आपका एसोसिएट करता है आपकी आपके ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो भी फिशरी सेक्टर से रिलेट करता है डायरेक्टली, उसको ये इंश्योरेंस मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना। अच्छा, एक लीन पीरियड भी होता है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द फूड सपोर्ट और एट द लीन पीरियड ड्यूरिंग द मत्स्य संपदा योजना फॉर हाउ मेनी मंथ्स? देयर इज अ लीन पीरियड आल्सो अंडर दिस स्कीम। जहां पे फिशरीज का लीन पीरियड होता है, तो कितने मंथ्स के लिए गवर्नमेंट न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है टू द फार्मर्स हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, या फिर उनके पास, ठीक है, हाउ मच मनी और फॉर हाउ मेनी मंथ? दैट इज 3 months। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, 3 months इज द आंसर हियर। चलो जी, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग एनपीएस। यूपीएस हो गया, अब एनपीएस पे आते हैं। चलो जी, कमिंग टू द एनपीएस, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर हियर। So which of the given statements is or are correct with respect to the national pension system? EPFO accounts for 17% of India's GDP with the NPS contributing additional 4.5%. ठीक है जी। देन आ जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन आर एलिजिबल हियर। ठीक है, PFRD has permitted subscribers who join after 65 years of age to allocate 50% of their funds in the equity. Now what is going to be the answer here? ठीक है, ओके, सो वेलकम दिव्यांशी। दिव्यांशी भी आ गई हैं। चलिए, so what is going to be the answer? Answer is going to be option number B. 1 and 3 is the answer here. Very easy guys, because this is something that's a part of, this is the statement that is actually picked from economic survey. ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में से हमने पिक की है ये वाली स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल पेंशन सिस्टम हियर। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे HUF और PIO एलिजिबल नहीं होते हैं, हमें पहले पता है, बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड टू अस इन द एग्जामिनेशन ऑफ RBI अर्लियर आल्सो, दे आर इन एलिजिबल। नाउ कमिंग टू द NPS, इफ आई आस्क यू दिस पॉइंट है गाइस, NPS में एनरोलमेंट एज कितनी होती है? व्हाट इज द एनरोलमेंट एज ऑफ NPS? (18 to how much years? Enrollment age is 18 to शाबाश 18 to 50 years. Enrollment age is 18 to how much years? जीवन ज्योति बीमा योजना नहीं कर रहे, जीवन ज्योति बीमा योजना में 50 इयर्स होती है, यहां पे 18 to 70 इयर्स होती है एनरोलमेंट एज ऑफ NPS, 18 to 70 इयर्स। ठीक है, देन कम्स इन्वेस्टमेंट एज, इट इज 75 इयर्स। इन्वेस्टमेंट एज इज 75 इयर्स। ठीक है, देन कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, रेगुलेटरी बॉडीज, PFRDA। ठीक है, PFRDA इज अ रेगुलेटरी बॉडी हियर। व्हाट्स द partial exit can be done after how many years? So partial exit under the scheme can be done in after how many years? Partial exit under the scheme can be done after 10 years in case of normal. If a person is joining after 65 years of age, अगर 65 प्लस है तो भाई यहाँ पे 3 years ही हो जाती है फिर। ठीक है, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्शियल विड्रॉल, दैट इज सेम एज देयर। पार्शियल विड्रॉल आपको 3 बार अलाउ किया जाता है इन द होल लाइफ टाइम, दैट इज आफ्टर 3 years ऑफ योर लॉक इन पीरियड। 3 साल के बाद आप 3 बार जो है पूरी लाइफ टाइम में आप इस पैसे को निकाल सकते हो। दैट्स ओनली 25% मनी यू कैन टेक। सेम एज यूपीएस, दैट इज आप एजुकेशन के लिए पैसा निकाल सकते हो, हेल्थ के लिए निकाल सकते हो, या कि बहुत इमरजेंसी है तो पैसा निकाल सकते हो। ठीक है जी, चलो, सो एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी एनपीएस में, वो था रिगार्डिंग योर विड्रॉल प्रोसीजर।
नाउ अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 60 years, tell me which of the given statements are correct regarding the withdrawal procedures here. Subscribers has been given the option to defer the lump sum withdrawal up to the age of 75 years. The important thing is he is required to exercise up to 15 days prior to the completion of 60 years. इसको 50 days पहले प्रायर बताना पड़ेगा. फिर आ जाता है जी इन केस ऑफ द टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस इफ इट इज लेस देन 5 लाख द सब्सक्राइबर्स मे ऑप्ट फॉर 100% lump sum withdrawal. Then comes the third part. At least 40% of the accumulated pension wealth of the subscriber needs to be utilized for the purchase of annuity, providing for the monthly pension to the subscriber. So what is going to be the answer here? So what is going to be the answer, guys? I want all of you to give me the answer here. Please look at the question again, guys. Okay, please go through the question again and do let me know what is going to be the answer here. So guys, the right answer here is that is option number D. 1, 2 and 3 is the right answer here. अब मैं आपको बताता हूं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में कंफ्यूजन कहां पे आया होगा. ठीक है, आई टेल यू व्हाट इज द डाउट इन द फर्स्ट स्टेटमेंट. टेल मी इफ आई एम गेटिंग इट राइट. टिल दिस पार्ट ऑफ टाइम ऑल ऑफ यू वर श्योर कि सही है. द कंफ्यूजन इन योर माइंड वाज दिस पार्ट. एम आई गेटिंग इट राइट? एम आई गेटिंग दिस पॉइंट राइट गाइस? सौरभ, Rudraksh, this was the confusion. This 15 days prior. This was the main confusion ना कि 15 days prior होता है, पता नहीं सर, बट 75 तक होता है ये पता है. ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है विद रिगार्ड्स टू द प्रोविजन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट हियर, इफ आई एम सेइंग बिफोर 60 years of age, तो बिफोर 60 years of age जो है फिर आपका 80% अमाउंट जो है वो यूज किया जाता है फॉर द क्यूमुलेटेड पेंशन. और उसके बाद उस केस में क्या होता है, अगर आपका 2.5 लाख रुपीस है, ठीक है, इफ योर लमसम इज, इफ योर टोटल कॉर्पस इज लेस देन 2.5 लाख और 2 लाख, तब आप उस केस में 100% विड्रॉल कर सकते हो. ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखने हैं. अब अगर मैं एनपीएस में बात करूं, ठीक है, हमने पढ़ा था एनपीएस में टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट. ठीक है जी, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट ऑल्सो. So you have to set up a tier 1 account. ठीक है जी. Now tell me, tier 1 account, is it a withdrawable account or a non-withdrawable account? Tier 1 account, very basic question that I have been asking you from past many days. मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है. Tier 1 is actually non-withdrawable account. Non-withdrawable account 500 रुपीज से स्टार्ट होता है. हर साल आपको 1000 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करना पड़ेगा. डेफर का मतलब यह होता है कि अगर आपको 60 ईयर्स पे पैसा नहीं लेना है तो आप बोल दीजिए कि मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में लूंगा, मैं 75 ईयर्स पे लूंगा. उसको बोलते हैं डेफर. डेफर का मतलब आगे बढ़ाना, दैट इज नोन एज डेफर. ठीक है, तो बिल्कुल जी 500 to 1000 है. उसके बाद आ जाता है आपका टीयर 2. इसमें 250 की मिनिमम 250 से स्टार्ट होता है और एनुअल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है. एनुअल कंट्रीब्यूशन मर्जी है, करना है करो, नहीं करना ना करो. बट अगर टीयर 1 खुलेगा तभी ही आपका टीयर 2 अकाउंट खोल सकता है. और ये विड्रॉएबल अकाउंट है, जितना मर्जी बार विड्रॉ करो. ठीक है, टीयर 2 में आप जितना मर्जी बार पैसा डालो, जितना मर्जी बार करो, आप जितना मर्जी बार पैसा निकाल वहां से सकते हो. अब इंपॉर्टेंट क्या था जो मैंने आपको ये वाला प्रोसेस समझाया था दोस्तों. ठीक है, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस प्रोसेस है जो मैं बताया था. 80% अगर आप 60 ईयर से पहले पैसा निकालना चाहते हो तो भाई आपको 10 ईयर्स के बाद तो 80% ऑफ द कम्युलेटेड पेंशन वेल्थ जो है वो आपकी एन्युटी प्रोवाइडेड के लिए यूज की जाएगी. और आपको अगर 2.5 लाख से कम है तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा. ठीक है जी, मैंने बताया था एचयूएफ, पीआईओ और एलिजिबल नहीं होते हैं. और एक चीज और कौन होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस. आर्म्ड फोर्सेस भी एलिजिबल नहीं होते हैं. ठीक है जी, फिर ये टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट वाला कंपैरिजन है. ठीक है, मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है, एएमसीज एप्लीकेबल होंगे. 500 रुपए जो है मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन आपको 500 से स्टार्ट करना होगा. यहाँ पे 250 है, कोई एएमसी नहीं लगेगा. और किसी टाइम पे भी आप एएमसी टीयर 1 से टीयर 2 से टीयर 1 पे स्विच कर सकते हो.
बट यहां पे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। ओके और मैंने ये बता ही दिया आपको, अगर आप पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हो तो 3 टाइम्स कर सकते हो, ठीक है, 3 years के बाद 25% एक्सक्लूडिंग दोज मेड बाय योर एम्प्लॉय। पर यहाँ पे यही याद रखना, वहां पे भी ये प्रोसीजर है, अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई पैसा डाला है तो वो आप वहां से नहीं निकाल सकते पार्शियल विड्रॉल में। चलो जी, नेक्स्ट टॉक अबाउट लीड बैंक स्कीम। आज ही पढ़ाई है, अगर कोर्स के स्टूडेंट हो तो आप तो अभी पढ़ा क्या हूं मैं लीड बैंक स्कीम, तो सबको पता है इसका आंसर क्या है जी, अभी पढ़ाई है तो भी टेस्ट भी कर लेते हैं। द लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1969 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नरीमन कमेटी। पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये नरीमन कमेटी रिकमेंडेशन पे नहीं, गाडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी, ठीक है जी। तो पहली ही स्टेटमेंट, वो जो देखो अभी भी जो आर्म्ड फोर्सेज है एलिजिबल नहीं है, उसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि जो आर्म्ड फोर्सेज है ना वो उनकी स्कीम पेंशन ही अलग है, उनकी आती है 1 रैंक 1 पेंशन, तो वो अलग स्कीम है, अलग ही चीज है उनकी डिफेंस फोर्स ऑनर्स की, ठीक है। चलो तो 1 गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर इज वेरी इजी 2, 3 एंड 4। अब अगली स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, अगली स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर पहली से ही पता चल गया तो आंसर यहां से एलिमिनेशन से 2 सेकंड में निकल गया। सो आंसर इज 2, 3 एंड 4। नाउ अंडर द स्कीम व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज अलॉटेड टू अ लीड बैंक, यूजुअली पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, बिल्कुल सही है। सर्विस एरिया अप्रोच इंट्रोड्यूस की गई थी अंडर द लीड बैंक स्कीम इन 1989 टू असिस्ट द स्पेसिफिक विलेजेस टू असेस और बेसिकली टू assign the specific villages to the bank branches here. NABARD plays a supportive role in preparing credit plans and monitoring level here. जबकि जो इसका गाइडलाइंस है वो कौन बनाता है, who prepare the guidelines, ठीक है, who prepare the guidelines, who prepare the guidelines here, ठीक है जी। चलो सो हु प्रिपेयर द गाइडलाइंस हियर, गाइडलाइंस जो है दोस्तों यहाँ पे कौन अप्लाई करता है, वो करता है आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। चलो जी, लेट्स कम टू द थिंग हियर। बाइस ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका, तो इसमें कुछ पढ़ाने वाला ऐसा नहीं है, बस मेन यही था, गार्डगिल स्टडी ग्रुप की रिकमेंडेशन पे ये आई थी 1970 में, उन्होंने रिव्यू किया था, बट रिकमेंडेशन गार्डगिल ग्रुप के ऊपर ही आई है, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन आता है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अभी आज ही मैंने अभी अगर यूट्यूब पे आपने देखा है तो ये दोनों स्कीम मैंने बस कुछ ही हफ्ते अगस्त के स्टार्टिंग में पढ़ाई हुई है, ठीक है जी, सॉरी अगस्त नहीं, सितंबर स्टार्टिंग में पढ़ाई है। अब आ जाते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। द स्कीम enables individual investors to open a retail direct gilt account through an online portal and access the primary issuance of government securities. Retail investors are required to pay a fee for opening and maintaining the RBI gilt account, but no fee is charged for submitting its primary auctions. The scheme provides retail investors with access to various government securities, including treasury bills, government of India dated securities, state development loans through primary subscription or secondary trades here. So what is going to be the answer here? Answer is going to be the option number C 1 and 3, because यहाँ पे गलत लिखा है, रिटेल इन्वेस्टमेंट में कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, कोई फीस नहीं लगती है आपको ओपनिंग या मेंटेनिंग में, सिर्फ आपको एएमसी चार्जेस पे करने होते हैं जिस भी पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू आप पे कर रहे हो। तो जिस एग्रीगेटर के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो सिर्फ वो चीज होती है यहाँ पे, वैसे कोई फीस यहाँ पे चार्ज नहीं होती है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 here. Now let's come to the next question here. The RBI Retail Direct Scheme allows retail investors to open a retail direct gilt account and provides access to for investment in government securities, secondary market or pension funds, primary issuance or secondary trades, primary auction or stock exchange, government bonds or mutual funds, या फिर none of the above. So what is going to be the answer here? Here the answer is primary issuance and secondary trades is going to be the right answer here. ठीक है, प्राइमरी इश्यूएंस और गवर्नमेंट स्कीम्स में जाते हैं, प्लस आप सेकेंडरी ट्रेड्स भी कर सकते हैं, बिकॉज ये आप चीज अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहीं से क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाता है थ्रू प्राइमरी सब्सक्रिप्शन और सेकेंडरी ट्रेड्स। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट थी यही एक्चुअल में यहाँ पे दूसरे फॉर्मेट में हमने आपसे क्वेश्चन में पूछ ली है। ओके चलो जी, कमिंग टू दी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे देखिए आरबीआई के अंदर आपको अकाउंट खोलना होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था कि पैन मैंडेटरी है, पैन यहाँ पे मैंडेटरी है, और कौन सी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स हो गए, स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स और आरबीआई ऑफर्ड सिक्योरिटीज यहाँ पे आपको एप्लीकेबल
आर अवेलेबल फॉर ट्रेड हियर, और फी फॉर पेमेंट गेटवे जो सिर्फ आपको पे करनी होती है, बाकी कोई भी यहाँ पे फीस नहीं होती है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि सबका ही ठीक हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सबका ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी ही करा के आए ये क्वेश्चन, पूरा समझा के आए अभी इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। ठीक है, बताओ जी। सो यू ऑल नो द आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दैट वी हैव आस्क्ड यू। अब देखो, जनरली फेज 1 में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, बट दिस इज समथिंग वी हैव आस्क्ड यू इंटेंशनली कि हो सकता है पूछे। अब यहां पे आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जब हम लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की बात करते हैं, सबसे पहले स्कीम क्या है, ये बात करती है आउटवर्ड रेमिटेंस की। It talks about outward remittance. What is the limit for outward remittance? That is 2,50,000. 2.5 लाख इज द लिमिट है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इन चीजों को गिफ्ट नहीं कर सकते। whether गिफ्टिंग इज अलाउड है, नो, गिफ्टिंग इज नॉट अलाउड है। यू कैन नॉट इन्वेस्ट द मनी इन द एरिया। ठीक है, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन द मनी। जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि ना तो आप जो ये पैसा है किसी फॉरेन ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, ना आप किसी ऐसी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पे इंडिया ने बैन लगाया हुआ है, ना फिर आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी या एफएटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये चीज, ठीक है जी, ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या रखना है, जो मैंने आपको बताया है कि भाई कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस नहीं है, ट्रेडिंग अगर करते हो ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए यू कैन डू हियर, इंट्राडे इंटरडे ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज होता, गिफ्टिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या है, आप कोई भी अनयूज फॉरेन एक्सचेंज फंड अगर नहीं यूज कर रहे तो 180 डेज में आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इंडिविजुअल्स के लिए, इसलिए एचयूएफ ट्रस्ट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, अरे नहीं अलाउ होता भाई, आरबीआई गाइडलाइन बोल रही है गिफ्टिंग इज नॉट अलाउड अंडर द थिंग। गिफ्टिंग बाय रेजिडेंट टू अनदर रेजिडेंट इन फॉरेन करेंसी फॉर द क्रेडिट ऑफ लेटर्स, फॉर द क्रेडिट ऑफ लेटर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड अंडर। तो वो आपने जो लाइन पढ़ा, पूरी लाइन पढ़ो, ये पूरी लाइन है वहां पे। ठीक है, वन कैन नॉट गिफ्टिंग बाय रेजिडेंट टू अनदर रेजिडेंट इन अ फॉरेन करेंसी फॉर द क्रेडिट ऑफ द लेटर्स फॉरेन, क्रेडिट ऑफ द लेटर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। कि भाई मैंने किसी को पैसा पे कर दिया और वो अपने ही फॉरेन अकाउंट में इस पैसे को क्रेडिट करवा रहा है, तो उसके लिए अलाउड नहीं होता वो पैसा, वो गिफ्टिंग अलाउड नहीं होती यहां पे। ठीक है, ये चीज है। चलो जी, अगला आ जाते हैं पीआईडीएफ, अगेन एन इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ आरबीआई। ठीक है जी, एज पर द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस कवर्ड। द स्कीम इंक्लूड्स फिजिकल पीओएस, mobile POS service and soundbox devices as eligible acceptance device here. Merchants are allowed to acquire 2 digital payment acceptance devices under the scheme here. Even not interoperable payment methods shall be considered under the scheme. So which of the given statements are correct here? Tell me. ठीक है, so which of the given statements are correct? Tell me guys quickly. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर है, ओनली वन इज द राइट आंसर। देखो सिंपल चीज है यार, पहली बात तो ये मर्चेंट्स आर अलाउड टू एक्वायर, 2 नहीं होता, 1 डिजिटल और सॉरी 1 फिजिकल और 1 फ्रॉम डिजिटल और अ साउंड बॉक्स। और अगर स्पेशल केस की बात होती है तो 1-1-1 होता है, 1 डिजिटल होता है, 1 पेमेंट होता है, 1 साउंड बॉक्स, वो मिल जाता है। ठीक है जी, दूसरी बात क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी नोट नहीं है, इंटरऑपरेबिलिटी मस्ट है, इट इज मस्ट, दैट इज द थिंग हियर। ठीक है जी, चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन पीआईडीएफ, व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट नाउ।
The maximum subsidy for a physical acceptance device is set at ₹110,000, including a one-time operating cost of ₹500. A digital acceptance device is eligible for a subsidy covering a maximum cost of ₹3,000, including the one-time operating cost here. The subsidy for other contemporary devices is capped at ₹2,000, inclusive of the one-time operating cost here. So what is going to be the answer here? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? याद रखो, पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. टेल मी गाइस. सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट हियर. ठीक है जी, क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों यहां पे तो मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ फिजिकल एक्सेप्टेंस क्या थी? 10,000 थी, इसकी ₹300 थी, इंक्लूडिंग अ वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ₹200 ऑल्सो. यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो ₹2,000 मिलते हैं, जहां पे एक वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट ली जाती है अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹300 हियर. ठीक है जी. फिर यहाँ पे हमने डिफरेंट सब्सिडाइज रेट पढ़े थे कि फिजिकल डिवाइस पे आपको 60% दिया जाता है, टीयर 1 और टीयर 4 सेंटर्स, डिजिटल डिवाइस पे 75%, कंटेम्प्रेरी पे 75%. अगर स्पेशल में जाओगे 90 is the subsidy that is allowed here. ठीक है. A very important point that you need to remember here is कि ये benefits आपको तब ही मिलेंगे अगर आप conditions fulfill करते हो. conditions क्या है? minimum usage shall be 50 transactions over 90 days, जहां पे कम से कम 10 दिन जो है वो यूजेज होनी चाहिए, और डिवाइस शुड बी इन एक्टिव स्टेटस. ठीक है जी. मिनिमम 3 out of 4 क्वार्टर्स में. ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है जी मेरिट स्कीम. So consider the following statements regarding the multidisciplinary education and research improvement in technical education scheme, that is merit scheme. The scheme aims to improve the quality, equity and governance in technical education, aligning intervention with the National Education Policy 2020 reforms and promoting multidisciplinary programs. जो बच्चे आज क्लास में थे एलपीएस में, अभी पढ़ाया था, फिल इन द ब्लैंक में यही चीज पूछी भी थी मैंने. ठीक है. तो आई होप सबका ये आंसर सही होना चाहिए. टोटल आउटले ऑफ द स्कीम इज 4,200 crore rupees, आउट ऑफ विच 2,100 crore rupees आर गिवन बाय वर्ल्ड बैंक. ठीक है जी. तो 2,100 crore rupees क्या वर्ल्ड बैंक ने दिए इसमें. फिर आ जाता है द मेरिट स्कीम कवर्स 275 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया, primarily focusing on technical education for private sector students only. So which of the given statements are correct? और यही गलती मुझे थी सब लोग करोगे जिन्होंने ऑप्शन डी मार्क किया है. यहां पे कीवर्ड क्या लिखा है? Is it not focusing on government institutions? गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे तो प्राइम फोकस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे थोड़ा है. So यहां पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1 and 2. Getting that point, Divyanshi? Getting that point, Sujit? Option A will be the answer here. ठीक है. So option A is going to be the answer here. That is 1 and 2 is going to be the answer here. अब बात करते हैं which of the following is not a key intervention under the merit scheme here. ठीक है. Not a key intervention here. Development of industry aligned curriculum and blended course here. Faculty skill development, especially for women faculty. Strengthening research and innovation, including incubation centers, creation of a new regulatory body for technical education, और guidelines for multidisciplinary technical program. तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा था कि हम कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे. ठीक है. तो रेगुलेटरी बॉडी कोई भी बात यहाँ पे नहीं हुई थी, तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर. ठीक है जी. दैट्स द थिंग यू नीड टू रिमेंबर. ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द आंसर हियर. ठीक है. कमिंग टू द मेरिट स्कीम, इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे हमने 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया है, जहां पे 175 इंजीनियरिंग है और 100 पॉलिटेक्निक है अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूटीज. कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ये सारे का सारे इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट होंगे, नहीं लिखा गया है. फिर इंपॉर्टेंट क्या, इनको पैसा दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ आईआईटीज, आईआईएम्स, एआईसीटीई, नेशनल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन और अदर रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा. इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, एनईपी के साथ अलाइंड है और 4,200 करोड़ रुपीज टोटल दिए गए हैं, जिसमें से 2,100 जो है वो वर्ल्ड बैंक दे रहा है. ठीक है. और कब तक चलेगी? चलेगी ये 29-30 तक. ठीक है. 2029-2030 तक. इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये याद रखना.
चलो अगला आ जाता है जी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज इनकरेक्ट हियर। इट वाज लॉन्च्ड इन 2016 फ्रॉम बलिया दैट इज इन यूपी। ठीक है जी। अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.2 माइग्रेंट एप्लीकेशंस मस्ट सबमिट राशन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ टू अवेल द बेनिफिट्स हियर। यही गलत है भाई, है ना, यही गलत है। दूसरा है स्कीम इज इंप्लीमेंटेड पेट्रोलियम, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि यहां पे बोला गया था कि आप सेल्फ अटेस्टमेंट कर दो। सबमिशन ऑफ राशन कार्ड इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है जी, सबमिशन ऑफ राशन कार्ड इज नॉट मैंडेटरी हियर। ठीक है, डू नॉट वरी प्रीति, एट द एंड आई विल बी टेलिंग यू कि कहां से पीडीएफ मिल जाएगा आपको। डू नॉट वरी, आई विल बी टेलिंग यू एट द एंड, डू नॉट वरी। ठीक है, लेट्स फर्स्ट सॉल्व द क्वेश्चन। अभी तो 16 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, 80 क्वेश्चन करने हैं स्कीम्स के आज। ठीक है, सो लेट्स स्पीडन अप अ बिट लिटिल बिट हियर। ठीक है जी, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल। चलो जी, अगला क्वेश्चन फिर उज्ज्वला योजना के ऊपर है। Which of the following statements are correct with respect to the प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना here? It provides for financial support of rupees 1600 for a connection of 14.2 kilogram and rupees 1150 for a 5 kilogram cylinder for each cooking gas connections to eligible households. Provides target subsidy of rupees 500 per 14.2 kilogram cylinder up to 12 refills per year. ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया अभी। ठीक है, अब यहां पे क्या था, यहां पे क्या था जी, 300 पर सिलेंडर of 14.2 kilogram. Now as per the recent update, that is still 9 refills are allowed. So guys, if you are a part of our YouTube classes, so वहां पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था। वहां पे एक्चुअली मैंने 12 रिफिल्स पढ़ा दिया गलती से, 12 नहीं है यार, 9 रिफिल्स हैं एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट जो हुई है। अब यहाँ पे एडिशनली कितने एलपीजी कनेक्शन का टारगेट दिया गवर्नमेंट ने? व्हाट आर द एडिशनल एलपीजी कनेक्शन टारगेट हियर दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर? ठीक है जी, तो पहले पे कितना कर दिया, अब उन्होंने बोला 25 लाख एडिशनल एलपीजी कनेक्शन आर गोइंग टू बी सेटअप नाउ। ठीक है, अब यहां पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 इट वाज बीइंग सेड दैट द एलपीजी स्टोव एंड फर्स्ट रिफिल टू द कस्टमर्स आर एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, चलो, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एलपीजी स्टोव देते हैं, रिफिल नहीं देते हैं, एलपीजी स्टोव देते हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करें दोस्तों, रुको यार एक मिनट, सॉरी गाइस, यहां पे आंसर होगा 1 and 3। 1 and 3 इज गोइंग टू बी द आंसर, नॉट 1 ओनली। 1 and 3 का ऑप्शन में दिया हुआ, 1 and 3 आंसर होगा यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है, 1 and 3 आंसर होगा, सॉरी फॉर दिस पार्ट। ठीक है, 1 and 3 आंसर होगा यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बता दिया, 14.2 किलोग्राम हो गया अप टू 9। तो और उज्ज्वला योजना 2.0 में क्लियर कट बोला गया था कि भाई हम लोग एलपीजी स्टोव और जो फर्स्ट रिफिल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ठीक है, फर्स्ट रिफिल भी देंगे, फर्स्ट रिफिल भी देंगे। ठीक है, देते हैं फर्स्ट रिफिल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 1600 की आपको जनरल केस में 1600 रुपीज दिए जाते हैं। ठीक है, फॉर 14.2 किलोग्राम एंड 1150 फॉर अ 5 किलोग्राम सिलेंडर हियर। ठीक है, पहला रिफिल तो फ्री होता है, तो दैट इज द थिंग। तो वहां पे वो थोड़ा सा कनेक्ट इशू है कोई उस क्वेश्चन में, तो विल मार्क। ठीक है, जब फाइनल पीडीएफ दूंगा तो उसको ठीक कर दूंगा। दूसरा पॉइंट क्या आता है, कनेक्शंस कैन बी ट्रांसफरेबल हियर एंड दीज आर गिवन ओनली इन द नेम ऑफ एडल्ट वुमेन ओनली। एडल्ट वुमेन के नाम पे ही आपको जो सिलेक्ट है वो दिया जाता है। ठीक है जी, ठीक है, चलो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ दोस्तों कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी टैगलाइन क्या है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्टार्टेड फ्रॉम बलिया इन 2016। ठीक है जी, क्लियर। चलो, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पीएम स्वनिधि स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, रिसेंटली अपडेट हुआ इसमें। ठीक है, थोड़ा सा पेशन अप करते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि आई नो एट 6 PM जो बच्चे हमारे कोर्स के हैं उनको
पता है उनकी क्लास है, और जो बच्चे वैसे भी सुबह से जुड़े हुए हैं, सो वी विल ट्राई, आई विल ट्राई माई बेस्ट के मैक्स टू मैक्स बाय 7 वी विल ट्राई टू रैप अप द सेशन। ठीक है जी, चलो फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन हियर आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम स्वानिधि स्कीम हियर। ठीक है जी, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। क्यों गलत है? क्योंकि सेकेंड ट्रांजिशन लोन जो है वो 30,000 तो पहले किया नहीं गया, वो तो किया गया था 20,000 से बढ़ा के 25,000। ठीक है जी, और यहां पे जो लोन दिए जाते हैं, कैन बी टेल मी व्हाट आर द टाइप ऑफ टेन्योर ऑफ लोन दैट इज प्रोवाइडेड हियर। तो लोन दिए जाते हैं यहां पे 12 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 36 मंथ। तो ये कितना बड़ा था? ये बड़ा है अब 10,000 से बढ़ के ये हो चुका है 15,000। ठीक है, ये हो चुका है 20,000 से बढ़ के 25,000, और ये वही है 50,000। ठीक है जी, चलो बेनिफिशियरी आर एलिजिबल फॉर अ यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल रीपेमेंट ऑफ द सेकंड लोन ट्रांच। बिल्कुल सही है। कैशबैक इंसेंटिव्स 1,600 रुपए बढ़ा दिए गए हैं 1,200 से। ठीक है जी, क्रेडिट कार्ड वाला पॉइंट सेम ही होगा। टोटल फाइनेंशियल आउटले जो है वो बिल्कुल सही है, 7,332 करोड़ रुपया है फॉर एन एक्सटेंशन टू मार्च 31, 2030। अब यहां पे एक चीज बताना, जो आपकी सब्सिडी है वो कब तक मिलेगी? सब्सिडी अंडर द स्कीम इज गोइंग टू प्रोवाइड टिल विच ईयर? सब्सिडी अंडर द स्कीम इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टिल द ईयर 2033। सब्सिडी 2033 तक मिलेगी आपको, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ऑन द पीएम स्वानिधि स्कीम, वेरी इजी क्वेश्चन। SIDBI act as the implementing agency here. The scheme was launched by Ministry of Finance and the scheme is available for beneficiaries from all the states or union territories. So which of the given statements are correct here? तो ये तो देखो बिल्कुल ही गलत है यार, SIDBI तो नहीं है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है। ठीक है, क्योंकि यही तो मेजर चेंज हुआ था, DFS हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये पूछा गया था। ठीक है जी, दूसरा क्या है? स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं इम्प्लीकेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है, और ये सही है। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर हियर। ठीक है, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द आंसर हियर, क्योंकि दूसरा तो बिल्कुल गलत है ना, ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तो स्कीम ही नहीं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है पीएम स्वानिधि स्कीम। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द आंसर हियर। ठीक है, अब देखो ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल स्टेट्स हैं। ठीक है जी, अब यहां पे क्या याद रखना है? अवेलेबल ओनली इन स्टेट्स दैट हैव नोटिफाइड द रूल्स अंडर। अच्छा एक मिनट रुको, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है भाई, ऑप्शन सी ये भी गलत है। इसका रीजन बताता हूं, इसलिए गलत है दोस्तों क्योंकि यहां पे ये पॉइंट स्टेटमेंट भूल गए हम लोग। ये स्कीम एप्लीकेबल है जहां पे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट एप्लीकेबल है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर बेनिफिशियरीज फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, नहीं, इट विल बी अवेलेबल ओनली टू दोज बेनिफिशियरीज जहां पे स्ट्रीट वेंडर एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, जहां पे स्ट्रीट वेंडर एक्ट एप्लीकेबल है, जनरली हो सकता है, अब हम ये एजम्पशन नहीं लेके चलेंगे कि यहां पे होगा ही होगा, क्योंकि यहां पे वो वर्ड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, यहां पे ये वाला पॉइंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहां पे स्ट्रीट वेंडर एक्ट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मिस मेरे एंड से भी हो गया। ये वही स्टेट्स पे एप्लीकेबल है जहां पे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट एप्लीकेबल है। गेट दैट पॉइंट? ठीक है, तो ये जल्दी में जैसे आपसे गलत हुआ मेरे से भी गलत हो गया। ठीक है, और याद रखना मेघालय जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका खुद का स्टेट वेंडर बट वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। हम इस चीज को बहुत ही सिंपल कैजुअल ले जाते हैं कि सब जगह एप्लीकेबल है। हाँ, मेघालय पार्टिसिपेट कर सकता है ना हर्षल, पॉइंट इसके कारण थोड़ा गलत होता है, इसके कारण थोड़ा गलत हुआ वो क्वेश्चन स्टेटमेंट, वो तो पहली स्टेटमेंट के कारण ही गलत हो गया ना, कि जहां पे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट एप्लीकेबल है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ है ये इसके कारण गलत हो गया। गॉट दैट पॉइंट? मेघालय कैन पार्टिसिपेट, आई नो, बट द पॉइंट इज टू द स्टेट्स दैट हैव बीन नोटिफाइड अंडर द स्टेट वेंडर्स एक्ट।
ठीक है। और अब क्या हुआ, 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स का टारगेट हो चुका है, जहां पे हम लोग नए 50 लाख एंट्रेंट्स को हम ज्वाइन करने वाले हैं। फिर इंटरेस्ट सब्सिडी 7% पर एनम है, जो कि अब क्वार्टरली बेस पे क्लेम की जा सकती है। ठीक है जी। सौरभ सिंह सर, विच स्टेट डजंट हैव स्ट्रीट वेंडर? सौरभ मुझे नहीं पता यार, तो कोई नोटिफिकेशन यहीं पे होगी, ठीक है ना, तो हमें भी नहीं पता। देखो मैं नहीं बोल रहा कि हो सकता सब जगह पे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ना हो, बट अगर आप क्वेश्चन देंगे एग्जाम में तो हमें देखना है कीवर्ड्स के ऊपर। हम लोग कभी भी किसी क्वेश्चन को एजम्पशन पे लेके नहीं जाएंगे, ये रीजन है। ठीक है, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि आप बोलो मुझसे, अगर आप मुझसे पूछो, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कहां पे हो सकता, सब में हो, बट कभी भी किसी क्वेश्चन को एजम्पशन पे नहीं लेके जाना है, बिकॉज यहां पे एजम्पशन क्या दी हुई है, ऑल द स्टेट्स। अगर यहां पे लिखा होता टू ऑल द स्टेट्स वेयर स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट नोटिफाइड अंडर स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, तो बिल्कुल सही होता। गॉट दैट पॉइंट? ठीक है सौरभ जी, चलो जी, ओके। इट्स अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पहले सिड भी रेगुलेट करता था, बट अब इसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेट करता है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट है। बिल्कुल कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्या क्या लोन मिलता है आपको। ठीक है ना, क्लियर हो गया जी? ठीक है, सो गाइस दैट इज द थिंग, हम लोग को हर चीज एज पर द स्कीम आइडेंटिटी, एज पर द स्कीम लिखना है। बिकॉज देखो, अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछे क्या सारे स्ट्रीट वेंडर्स एप्लीकेबल हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज वेंडर्स जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग होगा वही एप्लीकेबल है। गेटिंग पॉइंट? अब क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्ट्रीट वेंडर्स, तो यहां पे ये वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, फिर वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लियर कट लिखा है ना, वेंडर्स विद सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, सर्टिफिकेशन थ्रू अ सर्वे बट नॉट येट इशूड आउटसाइड द अर्बन लोकल बॉडीज बट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, और पेरी अर्बन एरियाज में बट अर्बन लोकल बॉडी से लिमिटेड है, लिंक्ड है। गेटिंग दैट पॉइंट? सो हियर द कीवर्ड ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना। सो consider the following statements and which of the given statements are correct here with regards to PMJDY. One of its 6 pillars include providing pension to the unorganized sector. The scheme was launched as a national mission on financial inclusion. It provides accident insurance coverage of ₹2 lakh for accounts opened after 28th of August 2018. PMJDY account becomes inoperative if there are no customer-induced transactions for 1 year. So what is going to be the answer guys? The answer is going to be the option number B, 1, 2 and 3, क्योंकि कस्टमर रिड्यूस ट्रांजेक्शन 1 साल के लिए नहीं, if there is no customer reduced transaction for 2 years, then it is going to be the answer. Clear everybody? ठीक है, so clear everyone? So answer is not 1 year, it is 2 years. 24 months पढ़ा था ना हमने, वो चीज है यहां पे। क्लियर? चलो जी, let's look at the next question here. Under the enhancement in overdraft facilities under the PMJDY, what is the maximum OD limit available after the extension here? Easy question. 10,000 rupees is the maximum OD limit available here. तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? 10,000 rupees here. अगर हम बात करें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की, तो 5,000 से 10,000 बढ़ाई गई है। If a person is taking, so tell me the age group for overdraft. Age group for OD is that in guys 18 to 65 years एज ग्रुप हो जाएगा। फिर यहां पे हमने पढ़ा था अगर 2,000 रुपीज तक का ओडी है तो फिर कोई भी बैंक चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बट कंडीशन क्या है? योर अकाउंट शुड बी इन ऑपरेटिव स्टेज फॉर 6 मंथ्स। ठीक है जी। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ जनधन योजना? बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पे बेसिक सेविंग अकाउंट्स करवाना चाहते हो, फाइनेंशियल लिटरेसी करना चाहते हो। ठीक है जी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? फाइनेंशियल लिटरेसी, बेसिक सेविंग अकाउंट्स खुलवाना चाहते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज पहले 1 लाख था जिसको बढ़ा के आपने 2 लाख रुपया कर दिया है अब। ठीक है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पेंशन देना चाहते हो, ये 6 पैरामीटर से। रुपए डेबिट कार्ड देना चाहते हो और इंटरऑपरेबिलिटी भी करना चाहते हो। ठीक है जी। नाउ these were the basic goals: banking the unbanked, securing the unsecured, funding the unfunded. Here now what is the goal of PMJDY now?
What is the target or tagline of PMJDY? Banking the unbanked. Now what is the target here? ये तो हो गया बैंकिंग द अनबैंक्ड. अब क्या हो चुका था? बैंकिंग एवरी एडल्ट हाउसहोल्ड. दैट एवरी एडल्ट हाउसहोल्ड और एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड हैव अ बैंक अकाउंट. ये हो गया था. ठीक है, बैंकिंग एवरी एडल्ट पर्सन, ये हो गया था बैंकिंग द अनबैंक की जगह. ये इनिशियल पिलर था बेसिक टेनेट में. अब आ चुका है बैंकिंग द अनबैंक से शिफ्ट हो चुका है बैंकिंग द एवरी एडल्ट ऑफ इंडिया. ठीक है जी, चलो ठीक है. दैट इज द थिंग, एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अनबैंक्ड एडल्ट, शिफ्ट ऑफ फोकस. दैट्स द थिंग आई वाज डिस्कसिंग अबाउट. ठीक है जी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैंने आपको बता ही दी है. आफ्टर 6 मंथ्स और 2000 तक कोई भी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होती है. कस्टमर रिड्यूस ट्रांजेक्शन 2 साल की होनी चाहिए. चलिए अगला क्वेश्चन आता है जल जीवन मिशन के ऊपर. So consider the following statements regarding the Jal Jeevan Mission. The Jal Jeevan Mission aims to provide functional household tap water connection to every rural household here. Mission was launched in August 2019 under the Ministry of Jal Shakti here. The target for achieving its goal has been extended till 2028. The scheme is a central sector scheme with 100% funding from the central government here. Which of the given statements are correct here? JGM, tell me. Quickly guys, tell me what will be the answer here. Answer is option number B, 1, 2 and 3. क्योंकि अगर हम बात की जाए जल जीवन मिशन कौन सी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है. So let's discuss this question और फिर उस पर भी आते हैं. ठीक है, ठीक है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर हियर? जेजीएम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है भाई, सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ठीक है जी, चलो जी. तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल एक्सेप्ट 1, ऑल एक्सेप्ट 2, ऑल एक्सेप्ट 4, ऑल एक्सेप्ट 5. आंसर इज ऑल एक्सेप्ट 5 बिकॉज वेटेज फॉर बैलेंस इज नॉट 30%, इट इज 20%. ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल एक्सेप्ट 5 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर है. बिकॉज अगर आप देखोगे तो वेटेज फॉर बैलेंस इंडिविजुअल हाउस होल्ड 20% है, ना कि 30% है. ठीक है, चलो ओके, लेट्स टॉक अबाउट जेजीएम नाउ. ठीक है जी, जल जीवन मिशन जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गाइस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ठीक है जी, उसके बाद हम बात करें 2019 में स्टार्ट हुई थी, 2028 तक स्कीम एक्सटेंड हो चुकी है, जो हमने पढ़ा भी था. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है यहां पे, क्राइटेरिया फॉर एलोकेशन ऑफ फंड. सो जिशान डू नॉट वरी, आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एट द एंड. गुड अटेम्प्ट कितना होगा वो एंड में डिस्कस करूंगा. पहले आप एक बार पूरे टेस्ट को सॉल्व कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस कि कितना आपका गुड अटेम्प्ट होना चाहिए. ठीक है जी, अब आते हैं रूरल पॉपुलेशन आपकी 30% है, SC ST 10%, फिर हिली एरियाज में 10% हो गया. उसके बाद केमिकल कंटामिनेटेड में 10% और फिर जो बैलेंस है वो आता है 20%, 30% नहीं आता है. फिर यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, पानी समिति वाला पार्ट, तो 10 to 15 मेंबर्स होंगे, कंप्राइजिंग इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत जो कि 25% होंगे, 50% वुमेन होंगे और 25% रिमेनिंग जो है वो वीकर सेक्शन से लोग यहाँ पे आएंगे. ये 2 पॉइंट याद रखना, बिकॉज बाकी सबको पता है कि यार मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट के अंदर है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ठीक है जी, उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है जल जीवन मिशन के अंदर के यहाँ पे आपको 55 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा स्पेसिफिकली फॉर रूरल एरियाज. ठीक है जी, ओके ओके एवरीवन.
क्या हो गया? ठीक है, चलो जी, एकदम ही बात गायब हो गए सारे लोग, क्या हो गया? सबको आते सारे क्वेश्चन जी? आई कैन सी द ड्रॉपेज, इट मे बी ड्यू टू क्या, लेंथ के कारण लग रहा है, ठीक है, इट मे बी ड्यू टू लेंथ, के लेंथ ऑफ द सेशन लंबा लग रहा है, या फिर क्या रीजन है? क्या आते हैं सारे क्वेश्चन कि स्कीम्स रिपोर्ट्स, सर स्कीम्स तो आते, कोई चक्कर नहीं, रिपोर्ट्स और नोटिफिकेशन करनी थी वो होगी। हाँ जी, चलो जी, ठीक है, लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टेट शैल हैव टू पे अ पेनल इंटरेस्ट ऑफ व्हाट परसेंटेज पर एनम बियॉन्ड हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ फॉर द रिलीज ऑफ सब्सिडी? हाँ जी, चलो जी, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर हियर? ठीक है, 12% पर एनम बियॉन्ड 3 मंथ्स, ठीक है, तो 12% पर एनम बियॉन्ड 3 मंथ्स इज गोइंग टू बी द आंसर हियर। ठीक है, चलो, सो आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर सी, 12%। हमने डिस्कस किया था फसल बीमा योजना में, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट बेसिक बेसिक पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि फसल बीमा योजना क्या है। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है जिसके अंदर आपको इंश्योरेंस अमाउंट पता होना चाहिए। तो देखो क्या था, 12% पर एनम आपको देना पड़ता है 3 मंथ्स के बाद। इंश्योरेंस कंपनीज को 2 मंथ का टाइम दिया जाता है कि अगर वो पेमेंट नहीं करते टाइम पे तो 2 महीने के बीच बीच में उनको करना पड़ेगा, नहीं तो उनके ऊपर पेनल्टी चार्ज होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान पूछा है मैंने आपसे। ठीक है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मैच द फॉलोइंग। खरीफ क्रॉप का क्या है, राबिया क्या है, वर्षा क्या है। इजी क्वेश्चन है जी, ठीक है। राबी क्रॉप इज 1.5%, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर इज कमर्शियल हॉर्टिकल्चर इज 5%, इसका मतलब सी का आंसर 1 होगा। ठीक है जी, और ए का आंसर आपका, बी का आंसर जो है वो 1 होगा। तो बी का 3 है, ए का 1, सो आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप 1.5% होना है हर्षल, इट इज 5% यार, है ना। तो खरीफ, राबी हॉर्टिकल्चर 2%, 1.5% एंड 5%। ठीक है, यही तो याद किया था, तो यही यहां पे आंसर भी है। ठीक है, चलो जी, ठीक है, चलो भाई यार, इसको डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं, बस बेसिक चीज याद रखते हैं कि अगर स्टेट्स नहीं पे करती हैं तो उनको पेनल रेट देना पड़ता है 12% पर एनम। ठीक है जी, स्टेट्स चाहती हैं तो वो खुद की इंश्योरेंस कंपनी बना सकते हैं, बट पॉइंट क्या है कि स्टेट्स खुद की स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्या है, फार्मर जो भी नेशनल इंश्योरेंस पोर्टल के अंदर रजिस्टर करेंगे उन्हीं वही फार्मर एक्चुअल में एलिजिबल है टू गेट द बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ठीक है जी, और मैक्सिमम प्रीमियम मैंने आपको बता ही दिया, 2%, 1.5% एंड 5% हियर। ओके, चलो जी, लेट्स टॉक अबाउट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस हियर। द स्कीम प्रोवाइड्स मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ ₹5,000 इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट। सिंगल इंस्टॉलमेंट गलत जी, पूछा क्या है, गिवन स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था ₹5,000 मिलते हैं 2 इंस्टॉलमेंट्स में, दैट इज ऑफ 3,000 एंड 2,000 हियर। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वुमेन इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट एलिजिबल अंडर द स्कीम। तो थर्ड स्टेटमेंट तो मुझे पता है बिल्कुल सही है। ठीक है जी, यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 1 गया और यहाँ पे भी गया, क्योंकि आंसर ऑप्शन 3 ही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। ठीक है, यार 26 क्वेश्चन हुए हैं, 30 क्वेश्चन कर लें फिर ले लेंगे और 5 मिनट की ब्रेक। ठीक है, 26 क्वेश्चन हुए, फटाफट में कर लें, 5 क्वेश्चन और कर ले, फिर ब्रेक ले लेते हैं, फिर क्योंकि 50 क्वेश्चन आखिरी करने हैं, है ना। ठीक है जी, चलो जी, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, थर्ड ओनली इज द राइट स्टेटमेंट है, बिकॉज पहली दोनों स्टेटमेंट यहां पे गलत है। दूसरा क्वेश्चन है जी, टेल मी अबाउट द मैच द फॉलोइंग हियर। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड गिव द आंसर हियर, मैच द फॉलोइंग। सो टैगलाइन ऑफ द स्कीम क्या है जी, मातृ शक्ति राष्ट्र शक्ति इज द टैगलाइन हियर।
तो ए शुड बी 2. ए इज 2 ओनली इन ऑप्शन. आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. ठीक है, अब इसमें ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं पड़ा क्योंकि बहुत आराम से हमारा क्वेश्चन निकल गया है. ठीक है जी. ए इज 2. बेनिफिट फॉर सेकेंड गर्ल चाइल्ड इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सॉरी, बेनिफिट फॉर गर्ल चाइल्ड इज 6,000 रुपीज इन 1 इंस्टॉलमेंट फॉर सेकेंड गर्ल चाइल्ड. मील प्रोविजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिया जाता है और मिनिमम बेनिफिट क्या मिलता है 5,000 रुपीज इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 3,000 एंड 2,000. अच्छा, यहां पे याद रखना है, इफ अ वुमेन इज डूइंग अ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक है, 6,000 रुपीज आर प्रोवाइडेड अंडर द जननी सुरक्षा योजना. जननी सुरक्षा योजना है. इन केस ऑफ मिसकैरेज द थिंग इज द बर्थ, जो आपका जो प्रेगनेंसी है वो काउंट नहीं होगी मिसकैरेज के केस में, फिर आपको नया एज अ फ्रेश केस ही काउंट किया जाएगा. ठीक है, ये याद रखना है. ठीक है, चलो जी. सो बेनिफिट्स मैंने बताए थे, 5,000 2 इंस्टॉलमेंट मिलता है, 6,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलता है, कैन बी वेल्ड बाय यूजिंग द आधार नंबर हियर. जननी सुरक्षा योजना वाला पॉइंट आपको बता दिया कि 6,000 रुपीज मिलते हैं अंडर जननी सुरक्षा योजना. नेक्स्ट इज गाइस पीएम ई ड्राइव इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम. सुजीत, यही तो प्रैक्टिस करनी है यार, यही तो बड़ी प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो, यही तो प्रैक्टिस करने एग्जाम में, यही चीजों पे तो फोकस करना होगा क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा तो मिलेगा ही नहीं. अभी तो हम फिर भी आराम से कर रहे हैं, वहां पे तो और कम टाइम मिलेगा हमें, है ना. चलो जी. So which of the following statements are correct with respect to the PM E-Drive, that is electric truck incentive scheme launched in July 2025? The scheme provides a maximum incentive of ₹12 lakh per electric truck covering both N1 and N2 vehicle. Only trucks operating in the cement and textile sectors are eligible. गलत है जी. Scheme mandates a minimum warranty of 7 years or 6 lakh kilometer for the battery to qualify for the incentives here. The scheme provides upfront incentive reimbursement to the OEMs via first come first served mechanism. So what is going to be the answer here? Option number D is going to be the answer here with regards to this specific answer. ठीक है. Next question is actually on PM E-Drive scheme. So consider the following statements regarding the PM E-Drive scheme. The scheme provides incentive for electric 2-wheelers, electric 3-wheelers, e-ambulances, e-trucks and e-buses with no convergence for infrastructure related support. Demand incentive for electric 2-wheelers, electric 3-wheelers are capped at 5,000 and 2,500 per kilowatt per hour respectively for the fiscal year 24-25 and 25-26. फिर आ जाता है जी, अंडर द स्कीम ई वाउचर्स कैन बी क्लेम्ड बाय ईवी बायर्स एट द टाइम ऑफ परचेज टू अवेल द डिमांड लिंक्ड इंसेंटिव्स. क्वेश्चन इज आस्किंग व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. ठीक है जी. अब थोड़ा ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इतना मुश्किल है, ध्यान से समझो. क्या लिखा उसने पहला पॉइंट कि भाई कोई भी कवरेज नहीं दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए. क्या ऐसा कुछ हमने पढ़ा था? ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो उसने बोला ही नहीं कहीं पे. तो इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. अब ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बट मैंने पढ़ा था कि डिमांड इंसेंटिव भी दिए जाएंगे जो कि अराउंड 5,000 या 2,500 के आसपास हैं. तो मेरा आंसर यहां पे क्या बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3. ठीक है, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 इज गोइंग टू बी द आंसर हियर. कमिंग टू द इलेक्ट्रिक ट्रक्स इंसेंटिव की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की स्कीम है. यहां पे ये हमने पॉइंट पढ़ा था कि भाई मैंडेटरी स्क्रैपिंग मैंडेटरी है. OEM वारंटी आपको 5 इयर्स और 5 लाख किलोमीटर पे मिलेगी. बैटरी की व्हीकल की मिलेगी 5 इयर्स और 2.5 लाख किलोमीटर के अंदर. ठीक है जी. और टोटल डिप्लॉयमेंट इज 5,600 ई ट्रक्स और 9.6 लाख किलोमीटर के ऊपर आता है. और प्राइमरली हमने डिस्कस किया था कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो कोल तक नहीं लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बोला था ठीक है जी, हम जो है 150 ई ट्रक्स प्रोक्योर करेंगे और 15% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है उसको मीट करेंगे. ठीक है. कमिंग टू पीएम ई ड्राइव स्कीम. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, जो डिमांड इंसेंटिव बिल्कुल सही है, जो हमने डिस्कस भी किया था. ठीक है, 780 करोड़ रुपीज है. स्कीम 2028 तक एक्सटेंड हुई है.
जो जनरली हमें पता है। अब 28 तक एक्सटेंड हुई है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक फंड बेस्ड स्कीम है। फंड बेस्ड स्कीम है, इसका मतलब जब तक ये स्कीम कंटिन्यू करेगी, या तो अगर इसके फंड खत्म हो गए वो या 2028, तो जो पहले आएगा तब तक ये स्कीम चलेगी। और इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, जो टर्मिनल डेट है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की, वो अभी भी 31 मार्च 2026 ही है। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन गाइस, जन औषधि परियोजना वाला क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है जन औषधि परियोजना पे, एंड देन वी विल हैव अ वाटर ब्रेक। ठीक है, क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। बताइए जी। एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर हियर? So guys, the right answer here is option number A. 1 is going to be the answer है, क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए तो क्या 30 to 50% लेस देन द ब्रांडेड मेडिसिन मिलता है। ठीक है जी, अगर हम बात करें कितना परसेंट मिलता है, कितना परसेंट मिलता है बताओ। चलो टिल देन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो, फिर डिस्कस करते हैं कितना सस्ता मिलता है जी। Which of the following incentives is or are available under the प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना? A special incentive of ₹2 lakh is provided for women entrepreneurs, divyangs and SC/ST entrepreneurs who open भारतीय जन औषधि केंद्र। ठीक है जी, फिर आ जाता है PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोर्स जो है, आर नॉट एलिजिबल टू ओपन दी जन औषधि केंद्र अंडर दिस स्कीम। केंद्र ओनर्स आर प्रोवाइडेड अ सेल मार्जिन ऑफ 10%, 10% तो नहीं है, 15% था, 20% था। सैनिटरी पैड एट ₹10 नहीं जी, ₹1 है। पीएमबीजे की ओनर्स रिसीव अ वन टाइम ग्रांट ऑफ ₹5 लाख फॉर दी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र ओनर रिसीव अ वन टाइम ग्रांट ऑफ 5 लाख फॉर ओपनिंग द केंद्र हियर। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा जी, यहाँ पे आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, 2008 में ये हुई थी, रिवैम्प हुई थी, 2016 में इसका नाम रखा गया था जन औषधि परियोजना है। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की स्कीम है, टैगलाइन है जी जन औषधि सेवा भी और रोजगार भी हियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है जी, एग्जिस्टिंग को जो है 2.5 लाख का एडिशनल इंसेंटिव मिलता है। ठीक है जी, केंद्र ओनर्स 2.5 लाख से 5 लाख हो चुका है, 15% मिलता है, द सीलिंग ऑफ ₹15,000 पर मंथ। स्पेशल इंसेंटिव 2 लाख का मिलता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मेडिसिन हैं वो 50 to 90% सस्ती मिलती हैं अंडर दी ब्रांडेड देन द ब्रांडेड प्राइस। ठीक है जी, चलो जी लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, EMRS वाला क्वेश्चन कर लें एक बार, फिर वाटर ब्रेक ले लें। हाँ गाइस, टू टेल मी नो। अच्छा, नाउ हैव टू ऑप्शन, वैसे तो वी कैन टेक अ वाटर ब्रेक नाउ। ओके, देखो अभी आपके अराउंड 50 क्वेश्चंस पढ़े हैं, या फिर आप 40 क्वेश्चंस तक पुश कर लो, वी कैन हैव अ वाटर ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स देन। ठीक है जी, कहां पर 20% है? फिफ्टीन परसेंट ही तो है, अप टू फीलिंग ऑफ 15,000। तो कहां पे है 20%? 15% ही तो है भाई, कहां पे कह रहे हो 20%? हाँ, तो केंद्र ओनर्स में 10% थोड़ा ना मिलता है, 15% मिलता है मार्जिन ऑन द मनी एंटरप्राइज।
ठीक है, चलो कहां पे लिखा 20%? मुझे तो बता दो, मुझे ही नहीं बता रहा 20% कहां पे लिखा मैंने एक्सप्लेनेशन में। अच्छा ये कह रहे हो कि 20% है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट ठीक है, आई विल रीवर्क, मैं देख लूंगा इसको, ठीक है, डू नॉट वरी, आई विल रियली गो टू दैट। ठीक है ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है कोई नहीं, देख लेते हैं। चलो जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ईएमआरएस स्कीम हियर। ठीक है, गॉट दैट पॉइंट, डू नॉट वरी गाइस। The scheme was launched in 1997-98 with the objective to provide quality education to ST children in remote areas to improve their academic and professional opportunities. As I now seen that 40 तक कर लेंगे यार फटाफट में, 40 तक करते हैं फटाफट में, फिर हम लोग वाटर ब्रेक लेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं 10 मिनट में 40, 10 से तो नहीं 15 मिनट में 40 तक पहुंच जाए फटाफट में, ठीक है। चलो जी, द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1997-98 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू एसटी चिल्ड्रन in remote areas to improve their academic and professional opportunities. The maximum sanctioned strength of school under EMRS is 480 students with an equal number of seats for boys and girls, and 10% of the seats can be filled by non-SC candidates also. The recurring grant in aid per student is 1,47,062 and the construction cost of the school has been increased to rupee 48 crores in hilly areas. So what is going to be the answer here? Answer is going to be the option number D. All the statements given here are correct. Let's look at next question here. Which of the following is not a feature of EMRS here? The maximum number of students per class is 60. Seats are reserved under the sports quota for deserving SC students who have excelled in the sports year. The recurring grant in aid per student has increased from 1,09,000 to 1,51,019. The construction cost per school in hilly areas is 48 crore rupees here. Priority is given to children who have lost parents to left-wing extremism and insurgencies here. So what is going to be the answer here is option number C, क्योंकि अभी डिस्कस करके आए हो कि ये 1,09,000 से बढ़ के 1,51,000 नहीं 1,47,000 हुए। तो ये जो अभी पीछे पढ़ के है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है जी, तो ये याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद में बात करूं दोस्तों, अब देखो रेकरिंग कॉस्ट ना अपडेट हो गया है, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा आपके पीडीएफ में भी। तो यहाँ पे क्लास 10 6 to 10th मैक्सिमम 60 स्टूडेंट्स से, 10th एंड 12th में 30 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ सीट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विल बी इक्वल एंड 10% सीट्स कैन बी फिल्ड बाय द नॉन एसटी स्टूडेंट्स आल्सो, ठीक है जी। फिर याद रखना एवरी ब्लॉक विद मोर देन 50% ऑफ एसटी पॉपुलेशन एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्संस टू हैव एन ईएमआरएस स्कूल्स हियर, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी 480 होगी, ठीक है जी। हाँ 1.47 हुआ है, हाँ 1.47 हुआ है, हाँ ठीक है। चलो जी, कमिंग टू दिस क्वेश्चन ऑन पीएम किसान मानधन योजना, ठीक है। लेट्स क्विकली कवर दिस क्वेश्चन गाइस, पीएम किसान मानधन योजना, ठीक है जी। क्वेश्चन इज आस्किंग which of the given statements are correct here. A subscriber who exits the scheme before 10 years will receive the contribution along with the interest earned at the saving bank interest rate. The scheme provides an assured monthly pension of 5,000, ये गलत है, 3,000 होती है जी। फिर आ जाता है वो सब्सक्राइबर डाइज आफ्टर द वेस्टिंग एज, द स्पाउस इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 50% ऑफ द पेंशन एज फैमिली पेंशन ओनली इफ दे आर ऑलरेडी एन एसएमएफ बेनिफिशियरी, गलत है भाई। The scheme allows subscribers to continue on a monthly basis only with no other options available. Question is saying which of the given statements are correct here? First statement is right here. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट है बिकॉज इफ शी वांट टू विल अ डिफरेंट पेंशन, अगर वो ऑलरेडी एक एसएमएफ बेनिफिशियरी है तो उनकी खुद की ही पेंशन लग रही है, उनकी खुद की ही पेंशन लग रही है, और पेंशन यहाँ पे 5,000 नहीं है 3,000 रुपीज मिलती है। व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन हियर? कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर द किसान मानधन योजना इज ₹55 to ₹200, ठीक है, 55 to 200 आएगा।
उसके बाद हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे किसान मानधन योजना के अंदर, किसके लिए है ये स्कीम बेसिकली है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनकी लैंड कितने से कम होनी चाहिए, with the land less than, Padmini tell me, land less than how many hectare? ठीक है जी, अवेलेबल टू दोज पर्सन हुज लैंड इज लेस देन 2 हेक्टेयर, ठीक है, अप टू 2 हेक्टेयर। 18 से 40 एज होनी चाहिए। उसके बाद LIC इसका पेंशन फंड मैनेजर है और 55 रुपीज से लेकर 200 रुपीज तक पैसा आप यहां पे दोगे, ठीक है जी। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द पीएम किसान सम्मान निधि, दैट इज पीएम किसान स्कीम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज incorrect here. The scheme provides rupees 6,000 annually to all land holding farmer families disbursed in 3 equal installments. Tenant farmers are eligible for the scheme provided they cultivate the land. ये गलत से नहीं गलत हो, यहाँ पे गलत होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन एक मिनट, यहां पे ऑप्शन बी गलत है, ठीक है जी। 6,000 बी ये भी गलत है, तो यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे ए एंड बी गलत हो जाएगा, सॉरी फॉर दिस पार्ट, ठीक है जी। यहाँ पे 6,000 रुपीज जो है वो एनुअली नहीं मिलता है, वो आपको मिलता है 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 6,000 एनुअली, हाँ ये ठीक है, बी, सॉरी माय बैड ऑल्सो, ऑप्शन नंबर, स्कीम प्रोवाइड्स रुपीज 6,000 रुपीज, ठीक है जी, टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज डिसबर्स्ड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो ये तो ठीक है यार, 6,000 रुपीज आपको साल में मिलता है 3 इंस्टॉलमेंट में, तो बिल्कुल सही है, 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में मिलता है, ठीक है जी। ये तो सही हो गया ना, बी ही गलत है, तो ये तो सही है ना, 6,000 रुपीज एक साल में तो मिलता है आपको इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, वो तो 4 मंथ्स के बाद मिलता है, तो फर्स्ट इज राइट, एक्चुअल में यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि टेनेंट फार्मिंग जो है, टेनेंट्स आर नॉट एलिजिबल। हाँ 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 समझ गया भाई, सही है ये स्टेटमेंट सही है, बी गलत है यहां पे, ठीक है, सही है भाई, सही है, ऑप्शन बी गलत है यहां पे, ठीक है, ऑप्शन बी 3 इंस्टॉलमेंट में, बिल्कुल ठीक है जी, मान गया मैं, ये वही कह रहा हूं आपको बार बार कि ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी गलत है यहां, ठीक है। चलो let's look at the next question, which of the given statements are incorrect in reference to the AI chatbot known as Kisan E-Mitra under the प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी कंफ्यूज हो गया था, डू नॉट वरी, ठीक है जी। सो आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन, आंसर वुड बी ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी गलत है, बाकी वो स्टेटमेंट सही है। So it is AI chatbot integrated with the major flagship scheme of Union Government. It is developed with the support of Niti Aayog and National Informatics Center. It will assist farmers in seeing information related to their application status, ठीक है जी, payment details, ineligibility status and other scheme related updates. It is accessible through PM Kisan mobile app, offers multilingual support. अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, was it supported with the help of Niti Aayog? सो आंसर यहां पे क्या होगा, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट है। देखो क्योंकि पॉइंट समझो, बिल्कुल फ्लैगशिप इनिशिएटिव, बट यार ये नीति आयोग का इनिशिएटिव ही नहीं है, ई के स्टेप का इनिशिएटिव है, ई के स्टेप फाउंडेशन एंड भाषणी का इनिशिएटिव है, ठीक है। क्योंकि देखो नीति आयोग कहां से आ गया, ठीक है नहीं आ रहा, बट नीति आयोग तो हमने पढ़ा ही नहीं ना सर, नीति आयोग तो हमने पीएम किसान में कहीं पे भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ई के स्टेप फाउंडेशन एंड भाषणी ऐप जो है ये यहां पे इन्होंने बनाया, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ठीक है गाइस, क्लियर। चलो जी, ठीक है, टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू लैंड होल्डिंग फार्मर इज द मेन क्राइटेरिया है, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और हमने क्लियर कट पढ़ा था 6,000 पर ईयर आर डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट, रुपीज 2,000 फॉर एवरी 4 मंथ्स, तो ये 3 इंस्टॉलमेंट में तो मिला, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज गाइस पीएम आवास योजना अर्बन, ठीक है जी। चलो
So consider the following statements with respect to PM Awas Yojana Urban 2.0. The scheme targets the construction of 1 crore houses for urban poor and middle class families with an investment of ₹10 lakh crore rupees. The houses constructed under this scheme will be required to be sold after 3 years lock-in period. ऐसा कुछ हमने पढ़ा है कि हाउसेस सोल्ड करने हैं, ठीक है। फिर आ जाता है द स्कीम फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू अर्बन रेजिडेंट्स स्पेशली टारगेटिंग ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एंड एमआईजी हाउसहोल्ड्स, ठीक है जी। Question is asking which of the given statements are correct here. So what is going to be the answer? यहां पे देखो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, तो टू गलत, टू गलत, टू गलत, ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट हियर। हमने बताया कि थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। देखो अब आप बोलो स्किप करना है, हर्षल ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। सेकंड स्टेटमेंट तो पक्का गलत है, तो ये गलत हो गया। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि इसी के लिए तो स्कीम बनी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एलआईजी ग्रुप और एमआईजी के लिए तो बनी है ये। तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द आंसर हियर। गेटिंग दैट पॉइंट? इसको क्यों स्किप करना यार, ये तो इजी क्वेश्चन था, बस देख के डर गए ये वाला क्वेश्चन। आप वही तो कह रहे हो, एप्लीकेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन यार, ठीक है। इतना इतना क्वेश्चन देख के एकदम नहीं घबराना, पहले देखो तो सही है कि सर क्या चीज थी इसकी मुश्किल, ठीक है ना। चलो अगला योजना भी, अगला क्वेश्चन भी आवास योजना अर्बन 2.0 पे ही है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ अप टू ₹2.5 लाख पर यूनिट फॉर एलिजिबल बेनिफिशियरीज इन बोथ प्लेन एंड हिली एरियाज। The scheme includes an interest subsidy scheme with a subsidy of 4% on loans up to ₹35 lakh for the EWS category. Up to a loan of 35 लाख था, 25 लाख है भाई। 35 लाख तो आपके हाउस की वैल्यू होनी चाहिए, और 35 लाख तक के तो लोन की बात भी नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि 25 लाख जिसमें 8 लाख तक का सब्सिडी देगा। तो यहां पे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब सेकंड तो पक्का है जी, ठीक है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ ₹2.5 लाख पर यूनिट फॉर एलिजिबल बेनिफिशियरीज इन बोथ प्लेन एंड हिली एरियाज। क्या प्लेन और हिली एरियाज में सेम था? अब ये देखना पड़ेगा। बेनिफिशियरी सिलेक्शन इज डन बाय अ कमेटी एट द डिस्ट्रिक्ट और अर्बन लोकल बॉडी हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल कमिश्नर हियर। अब पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो मुझे पता है सेकंड तो पक्का है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखते हैं इसमें से क्या आंसर बनेगा, ठीक है जी। व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर हियर? आंसर यहां पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही यहां पे गलत है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है बिकॉज देखो मुझे पता है कि मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है, तो ये गया, ये गया। थर्ड की मुझे श्योरिटी ही नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि यहां पे 2 और 3 ऑप्शन ही नहीं है। गॉट दैट पॉइंट? This is how eligibility, this is how elimination method will work in the examination. समझो, इस तरह एलिमिनेशन मेथड पे काम करना है, क्योंकि जब हमने पढ़ा ही था कि यहां पे जो लोन दिया जाएगा, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा यहां पे कि जी लोन आपको मिलेगा 25 लाख तक, घर की कीमत 35 लाख होनी चाहिए, आपको 4% इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे ऑन फर्स्ट 8 लाख फॉर 12 ईयर्स। आपकी टोटल सब्सिडी अमाउंट है 1.8 लाख रुपीस, जो कि आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी, ठीक है। फिर यहां पे हमने ये पढ़ा था टीआईजी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ग्रांट, जो कि 3000 और 5000 है इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। टीआईजी जो एएचपी में वो कितनी है, वो 1000 रुपीज है। और यहां पे पढ़ा था बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2.5 लाख रुपीज दिएगा, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट क्या था, जो रिमेनिंग स्टेट्स है वहां पे 2.5 एंड 1 ऑफ रिमेनिंग स्टेट्स है जहां पे 1.5 और 2.5 की 1.5 और 1 लाख जो है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, बट वहां पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। वो अगला पॉइंट आता है जी, कॉर्पस जो है वो बढ़ा दिया गया है क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट में फ्रॉम 1000 करोड़ रुपीज टू ₹3000 करोड़, ठीक है। चलो, और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम कंपोनेंट इकलौता कंपोनेंट है जो कि सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है, बाकी कंपोनेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट है, ठीक है जी। चलो जी, कमिंग टू 39th क्वेश्चन, 39th और 40th क्वेश्चन करेंगे और फिर एक वाटर ब्रेक लेते हैं, ठीक है। चलो जल्दी
हेलो 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 ओके गाइस, सो नाउ द वॉइस इज कमिंग गाइस, एवरीवन. Voice is coming now. चलिए, यस सर, वॉइस आ रही है. चलो, आ रही है जी वॉइस. ठीक है जी, लेट्स वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स मोर. ठीक है, चलिए जी. हाँ. ठीक है, चलिए जी. कोई बात नहीं यार, आप वॉइस वाली क्लास लगा लो, बट एक ही चीज बोलूंगा कि भाई ये देख लेना बाद में, चाहे रिकॉर्डेड देख लेना, पर देख जरूर लेना, बिकॉज देयर आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर हियर, सो डू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस. इंपॉर्टेंट है, देख लेना बिल्कुल. ठीक है, चलो जी. Let's come to the question. Which of the given statements are correct with respect to the Prime Minister's internship scheme? The scheme provides training for youth between 21 and 24 years with a preference for those who are full-time employed. तो full-time employed को तो pure training दोगे आप. ठीक है. Partner companies are permitted to offer internship in collaboration with their suppliers or other value chain entities if they are unable to provide in-house internship opportunities. The interns are insured under the government schemes like PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, Suraksha Bima Yojana, with premiums entirely covered by the companies. Is it entirely covered by the companies or entirely covered by the government of India? The Ministry of Corporate Affairs will issue a one-time grant of ₹6,000 to cover incidental expenses when interns join the workplace. So, which of the given statements given here are correct, guys? So, the answer is actually option number B. 2 and 4 is correct here. क्योंकि देखो यार, ये स्कीम जो है वो 21 और 24 पर्सन के एज के लिए, बच्चों के लिए है, जो कि फुल एम्प्लॉयड नहीं है, फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं है, या फिर वो हायर एजुकेशन नहीं है. ठीक है. दूसरा आ जाता है जी स्टेटमेंट 2, क्या कहता है? कंपनीज कोलैबोरेट कर सकते हैं बिल्कुल सप्लायर्स और अदर वैल्यू चेन्स के साथ इफ दे कैन नॉट ऑफर इन हाउस ट्रेनिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको 1 साल की इन हाउस ट्रेनिंग करवाना है, जिसमें से 6 मंथ्स जो है वो आपको ऑन दी फील्ड करनी है. ठीक है. इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कंपनीज नहीं, गवर्नमेंट पे करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वन टाइम ग्रांट देता है. बिल्कुल सही है. अगला क्वेश्चन फिर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के ऊपर आता है. द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड 1.25 करोड़ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज within the fiscal year 24-25 with the participation of India's top 500 companies here. Interns are required to dedicate at least 75% of the internship hands-on work experience in real world job. 75% है, 50% है. A monthly stipend of ₹5,000 is provided with 4,500 funded by the government and 500 contributed by the companies from the corporate social responsibility fund. So which of the given statements are correct here? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ही सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि देखिए 1.25 करोड़ नहीं था, 1.25 लाख इंटर्नशिप्स था. ठीक है जी, इसलिए गलत है. दूसरा क्या है? 75% नहीं है, 50% ऑफ द इंटर्नशिप वर्क जो है वो आपको भाई उस जगह पे करना पड़ता है, हैंड्स ऑन वर्क. थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. टोटल स्टाइपेंड 5,000 रुपीज का, जिसमें 4,500 गवर्नमेंट पे करती है और 500 कंपनी यहाँ पे पे करती है. ठीक है, चलो जी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन पीएम जनमन स्कीम. तो सॉरी फॉर दैट गाइस. ठीक है, थोड़ा सा गला मेरा खराब है, तो सॉरी फॉर दैट. तो नाउ द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू पीएम जनमन स्कीम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहां पे आपको मुझे बताने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. The scheme targets the comprehensive development of PVTGs across 18 states and 2 union territories. 2 union territory है या 1 union territory है. Under the scheme, ₹2.39 lakh per unit is allocated for the provision of Pakka houses to eligible PVTG households. One of the key features includes the construction of multi-purpose centers, each supported with the provision for an auxiliary nursing midwife and Anganwadi workers here.
तो इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर एक्चुअल में ऑप्शन नंबर बी है 2 एंड 3, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज नहीं आता, 1 यूटी पे एप्लीकेबल है। पीवीटी 18 स्टेट्स और 1 यूटी पे एप्लीकेबल है, नॉट 2। देन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द पीएम जनमन scheme here. Which of the given statements are correct here? Provision of Pakka houses to 10 lakh beneficiaries, piped water supply to all PVTG habitations here, and constructing 80,000 किलोमीटर ऑफ रोड्स here. So what is going to be the answer here? यहाँ पे दोस्तों सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि 10 लाख पक्का हाउसेस की बात नहीं कर रहे थे। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें तो पक्का हाउसेस की बात करता है ये अराउंड 4.9 लाख बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड करने की, कनेक्ट करना है 80,000 नहीं 8,000 किलोमीटर ऑफ रोड को। 8,000 है, 80,000 नहीं, ठीक है जी। आंगनवाड़ी सेंटर्स बनने हैं 2500, वोकेशनल सेंटर्स हैं जहां पे एस्पिरेशनल पीवीटीजी ब्लॉक्स बनाना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ होस्टल्स 500 होस्टल्स, और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनाना चाहते हो 1000 विद रिस्पेक्ट टू 10 पर डिस्ट्रिक्ट हियर, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी उसको क्लास में बोला था, इसको आप एक बार ना एक दो बार पढ़ लेना। और अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो जनरली अगर आपकी स्कीम्स पे इतना होल्ड नहीं है, सो माय तो एडवाइस वुड बी दैट यार आप ना इस चीज को थोड़ा सा, क्वेश्चन ऐसा आएगा लग रहा है नहीं समझ आ रहा, क्लियर कट है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है जी, ये याद रखना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आप ऐसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है जी, जिसको आप डीए जुगा भी बोलते हो। The scheme aims to improve socio-economic conditions of tribal communities through saturation coverage in tribal majority villages. It involves 17 ministries and is funded under the Development Action Plan for Scheduled Tribes. The scheme includes a dedicated focus on universal access to good education and healthy aging among the SC population here. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा जी बताइए guys, what will be the answer here? What about other students? जिनकी क्लास है वो तो ठीक है, जिनकी क्लास नहीं है वो क्या आंसर है भाई? यहां पे दोस्तों आंसर बन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन हियर आर करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान हियर। द स्कीम विल प्रोवाइड 63,000 विलेजेस एंड 549 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। Up to रुपये 2 लाख पर हाउस होल्ड इज प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन अंडर द ट्राइबल होमस्टेज। 2 लाख नहीं है जी, 5 लाख रुपीज है। फिर लिखा द रेकरिंग कॉस्ट पर बेनिफिशियरी इज, ठीक है, द रेकरिंग कॉस्ट पर बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम इज फिक्स्ड एट रुपीज 1 लाख। ऐसी हमने कोई लाइन ही नहीं पढ़ी है पूरी स्कीम में, कोई रेकरिंग कॉस्ट वाला पॉइंट भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा जी? यहाँ पे आंसर बन जाएगा 2 and 3 आर इनकरेक्ट हियर, ठीक है। बात करते हैं स्कीम की दोस्तों, तो ये सितंबर 2024 में लॉन्च हुई है। 63,000 विलेजेस हैं, 549 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है जी, जो भी आपके डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब उसी के अंतर्गत बन रही है, ठीक है जी। फोकस किस पे है? जहां पे हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, 500 या उससे ज्यादा, या फिर 50% पॉपुलेशन आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहां पे प्राइम फोकस है, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 गोल्स हैं: डेवलपिंग द एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एंड एजुकेशन और हेल्दी लाइफ एंड डिग्निफाइड एजिंग हियर। अलाइंड है जी विद 17 मिनिस्ट्रीज एंड 25 स्कीम्स हियर, ठीक है। और जो इसके अंदर जो हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसको हम बोलते हैं ट्राइबल होमस्टेज, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला 5 लाख रुपीज आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड हियर, ओके। चलो लेट्स टॉक अबाउट एनआरएलएम हियर, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेंडिंग to self-help groups under the NRLM is correct here. Self-help groups are eligible only for one-time loan capped at ₹3 lakh. Collateral is mandatory for loans beyond ₹5 lakh. Self-help groups can avail multiple dose of credit starting from ₹1.5 lakh to above ₹6 lakh based on microcredit plans and prepayment history. Self-help groups cannot, or self-help group loans cannot be used for income generating activities. So what is going to be the answer here, guys? So, दोस्तों अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट या सजेशन आप सबसे हो गया, प्लीज आप इनको ना आंसर को सॉल्व जरूर कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर बन जाएगा जी, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है जी। समझते हैं दोस्तों, एनआरएलएम अलाउज रिपीटेड डोजेज ऑफ लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो पहला पॉइंट ये तो देखो वैसे ही लग रहा है कि
तो यहां पे ना ये इनकरेक्ट होगा, सॉरी। चलो एक मिनट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा। हाँ थर्ड सही है, फोर्थ तो वैसे ही गलत लग रहा है। अब पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है दोस्तों, देखिए यार, क्योंकि ये जो लोन है ना वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांचे में मिलते हैं, 1.5 लाख, 3 लाख, 6 लाख है और उसके बियॉन्ड। तो ये ऐसा नहीं है कोई एक टाइम कैप मिलता है, वो नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है दोस्तों, कोलेटरल इज मैंडेटरी फॉर लोन। कोलेटरल इज मैंडेटरी बट इट इज लोन अप टू ₹10 लाख। ठीक है जी। तो 10 लाख के ऊपर मैंडेटरी है, 10 लाख 5 लाख से ऊपर मैंडेटरी नहीं है। और बिल्कुल दोस्तों लास्ट लाइन तो वैसे ही गलत है यार कि एसएचजी लोन्स कैन नॉट बी यूज्ड, दे कैन बी यूज्ड। तो वो तो बनाए ही इसलिए कि ताकि आप इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में पैसा लगाइए। ठीक है। 50 to 85% ऑफ हायर वैल्यू लोन्स मस्ट बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेस हियर। ठीक है जी। चलो let's talk about next question. Question number 46. Consider the following statements that reflects the key features of NRLM here. One member from every rural household is mobilized into self-help group with at least 50% beneficiaries from SC/ST, 15% from minorities, and 3% from persons with disabilities. Community-based participatory identification of poor is vetted by Gram Sabhas, reduced inclusion, exclusion, or errors here. Self-help groups receiving revolving funds, CIF, and interest subventions, but not capital subsidy. The mission is implemented in a phased manner. ठीक है जी, with the intensive blocks receiving full staff and activities. तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट पूछी गई है, सही है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे सभी की सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ये मैं जनरल कंटेक्स्ट में बच्चों को बताता होता हूँ कि अगर आपको लगे ना कि किसी क्वेश्चन में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो जनरल कंटेक्स्ट में उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ही वहां पे आंसर होता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनआरएलएम हियर। एन एसएचजी मस्ट बी एटलीस्ट 6 months ओल्ड एंड हैव रिसीव्ड अ प्रीवियस रिवॉल्विंग फंड टू बी एलिजिबल फॉर फर्दर रिवॉल्विंग फंड असिस्टेंस हियर। दूसरा ये पूछ रहा है कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो सैंक्शन किया जाता है डायरेक्टली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनकी बैंक लिंकेज एटलीस्ट 5 लाख होती है। NRLM at least one member from every rural household, preferably a woman, is to be brought under the self-help groups network in a time-bound manner. ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो मुझे बाकी तो स्टेटमेंट अभी नहीं समझ आ रही, पर थर्ड लग रहा है सही है। अब यहाँ पे थर्ड पे अगर देखी जाए तो एक ही ऑप्शन बच जाए, तो 3, 4, 5 है या 1, 2, 3 and 4 है। फिर आता है वल्नरेबिलिटी रिडक्शन ऑफ अप टू ₹1.5 लाख। ठीक है जी। 1.5 लाख पर विलेज ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड टू एड्रेस द कम्युनिटी लेवल वल्नरेबिलिटी ओनली। Interest subvention for self-help group loans above ₹3 lakh and up to ₹5 lakh is capped at 5% and is applicable only when the loan amount remains standard. अब देखो थर्ड में या तो 1, 2, 3 and 4 है, 3, 4 and 5 है, इसका मतलब 3 and 4 तो करेक्ट है। ठीक है। अब आते हैं पहली स्टेटमेंट के ऊपर। अगर कैलकुलेटिव गेस मारना है कि यार क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो 6 months ओल्ड होंगे या 3 months ओल्ड होंगे या 1 month ओल्ड होगा, तो यहां पे अगर आप कैलकुलेटिव गेस मारे तो कैलकुलेटिव गेस के हिसाब से, क्योंकि यहां पे ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हमेशा आपको इस चीज को ध्यान रखना है इस एग्जाम में जाके कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब हर स्टेटमेंट आती होगी, नहीं, कहीं कहीं जगह पे कैलकुलेटिव गेस मारना पड़ेगा कि जैसे मुझे पता है थर्ड स्टेटमेंट तो मैंने पक्का पढ़ी हुई है, तो यार ये भी गलत है, हो सकता है ये तो गलत ही है दोनों। ठीक है। फिर मैं देखूंगा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा 1, 2, 3 and 4 हियर। तो हमें सबको पता है कि मेन ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन ही है और हम चाहते हैं प्रेफरेबली एक वन वुमेन जो है इन अ टाइम बाउंड मैनर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर उनको इंक्लूड करें। अल्टीमेट टारगेट ये है कि हम 100% कवरेज चाहते हैं ऑफ ऑल द हाउसहोल्ड्स टू बी पार्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, और बेनिफिशियरीज होंगे 50% फ्रॉम SC/ST, 15% फ्रॉम माइनॉरिटीज एंड 3% फ्रॉम पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अब बात करते हैं जो रिवॉल्विंग फंड की। रिवॉल्विंग फंड जो है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए 3 से 6 महीने के बीच में, कोई अर्लियर ग्रांट नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या आता है, लोन अप टू ₹10 लाख, कोई भी कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं होता है, और जो पैसा है वो 20,000 to 30,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। फिर इसी से आगे आता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। ठीक है जी। जो कि मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट लेके आता है टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन ऑल ब्लॉक्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है। ठीक है जी। देन द नेक्स्ट पार्ट इज इंटरेस्ट सबवेंशन इन रूरल एरियाज ओनली, लोन्स अप टू ₹3 लाख।
और बैंक 4.5 लाख तक सबवेंट आपको कर देते हैं, और अबव ₹3 and 5 लाख जो है वहां पे भी आपको 5% सबवेंशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलो दिव्यांशी, एनआरएलएम तो देखो अभी आपकी इस मंथ भी न्यूज में है, और एनआरएलएम अगर मैं बात करूं तो वो अगस्त में भी न्यूज में है। ठीक है, अगस्त या जुलाई में भी न्यूज में है। ठीक है ना, ठीक है, चलो। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नाउ रिगार्डिंग द ग्रीन हाइड्रोजन अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, first is, in the shipping sector at least 2 ships must be retrofitted to run on the on the green hydrogen or its derivatives by 31st of December 2027। ठीक है, दूसरा आ जाता है जी, इन द स्टील सेक्टर फंडिंग ऑफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स शैल नॉट एक्सीड 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स। इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर certain routes would be designated as a hydrogen highways where necessary infrastructure will be built here। Then it says in R&D schemes, research and development sector, private research institutions can receive up to 100% of the total project as a financial support here। क्या देखो, अब ये स्कीम को पढ़ेंगे, अगर हम डाटा याद करें हम कहेंगे यार सर हमने तो नहीं पढ़ी, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। कीवर्ड, क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने 100% फंडिंग दे दी होगी? पॉइंट इज दैट गवर्नमेंट ने 100% फंडिंग दी होगी, पहले तो ये देखना है। दूसरा क्या है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या किसी सेक्टर्स को हमने हाइड्रोजन हाईवेज बनाया होगा, वेयर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी बिल्ट। अब अगर मैं देखूं थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है, मैं नहीं कह रहा कि मेरे को आंसर होगा या नहीं होगा, लॉजिकल लग रहा है। अब अगर देखो थर्ड स्टेटमेंट को थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं तो यार ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, या तो सारे सही होंगे या 1 and 3 सही होगा। अब मुझे कैलकुलेटिवली ये लग रहा है कि 100% सरकार ने पैसा दिया होगा। ठीक है, अब देखो 1, 3 and 4, 1 and 3 या 1, 3 and 4 या 1 and 3 होगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मुझे पता है कि R&D के गवर्नमेंट इंडिया कभी भी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को तो 100% पैसा नहीं देगा, ये तो कैलकुलेटिव जैसे लगा रहा हूं मैं, तो आंसर ऑप्शन ही हो गया। इस तरह से आपको जो पेपर में क्वेश्चंस करने हैं वहां पे कैलकुलेटिव गेसेस लगाने हैं। जो चीज आपने पढ़ी है उसको अप्लाई करना सीखो, बिकॉज आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आने वाले हैं। ठीक है जी, तो देखो स्टेटमेंट ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, 2 शिप्स को रेट्रोफिट करना चाहते हो। स्टेटमेंट भी क्या है कि स्टील सेक्टर में बोला 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो लेके आना चाहते हैं। ठीक है जी, विच वुड बी एक्सटेंडेबल टू 70%। फिर आ जाता है स्टेटमेंट से बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 4 क्या है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को 80% आप फंडिंग दोगे, ना कि 100%। 100% आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को पैसा दो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी अगली स्कीम के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू द सबमिशंस at the National Green Hydrogen Mission. Choose the correct statement here. The site program provides 2 distinct financial incentives, one for the electrolyzer manufacturing and another for the green hydrogen production. Green hydrogen hub scheme mandates at least 4 hubs to be established in the initial phase. क्या 4 hubs की बात हुई थी या 2 hubs की बात हुई है? The site program is implemented by the Solar Energy Corporation of India under the Ministry of New and Renewable Energy. Green hydrogen hub aims to co-locate production and consumption to reduce logistic cost. So what is going to be the answer here? Which of the given statements are correct? तो यहाँ पे भाई 1, 3 and 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं, एक्चुअली में 2 हब्स की बात की गई है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन में क्या हुआ थोड़ा सा समझाता हूं पहले। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स में बात हुई है कि हम एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन हब्स जो हैं वो बनाएंगे इनिशियल फेज। ठीक है, तो ये सब पार्ट्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। अगर एग्जामिनर आपसे बहुत, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन इतना ज्यादा न्यूज में है, चाहे आप जीए की न्यूज पढ़ रहे हैं, चाहे आप पीएसए की न्यूज पढ़ रहे हैं, चाहे आप स्कीम्स पढ़ रहे हैं, तो ये जो ये पार्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन है ये तो हमें पता है कि तो हमें याद करना ही है कि टारगेट्स क्या, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि हमारा टारगेट है जी हमें 5 मिलियन मैट्रिक टन से 10 मिलियन मैट्रिक टन तक अपना टारगेट लेके जाना है। दूसरा टारगेट ये था कि हमें 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम करना है, हमें 50 मिलियन मैट्रिक टन की अबेटमेंट करना है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन करना है, 6 लाख जॉब्स क्रिएट करनी है, 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। बट इंपॉर्टेंट है इसके सबमिशंस, ये भी थोड़ा थोड़ा आइडिया रखिए। ग्रीन हाइड्रोजन हाउस में इसलिए आपने बोला हम 2 हाइड्रोजन हाउस बनाएंगे। फिर आता है इसका दूसरा इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं हम R&D वाला पार्ट। अब R&D वाले में आपने बोला कि भाई हम एकेडमिक प्रोविजंस को तो 100% पैसा दे देंगे, बट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम 80% तक पैसा देंगे ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हियर।
ठीक है। फिर बोला गया 30% ऑफ द टोटल असिस्टेंस एक्सक्लूडिंग द इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड्स वुड बी रिलीज विद द सैंक्शन, इसके साथ आप सैंक्शन कर दोगे। फिर अवार्डिंग दी गई, कैसे कैसे अवार्ड दिए गए, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ये आपने काइंड ऑफ इंसेंटिवाइज करने के लिए पैसा दिया है, ठीक है जी। इसको रीड कर लेना दोस्तों, कोई डाउट आएगा तो कोई इशू नहीं है, जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल एट hello@edutap.co.in, वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट थिंग। फिर आ जाता है जी आपका स्कीम फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स ऑन यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स हियर, ठीक है। तो पायलट प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट याद रखना पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज में है, ठीक है जी। फिर ये बोला गया था कि 2 शिप्स को हम रेट्रोफिट करेंगे ऑन दी ग्रीन हाइड्रोजन विद 31st of December 2027 के, ठीक है। फिर स्टील में आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि 100% हाइड्रोजन यूज करेंगे डायरेक्ट रिडक्शन इन आयरन बेकिंग के लिए, ठीक है। और 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर फंडिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडिंग पैटर्न ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, which of the given statements are correct here, ठीक है जी। 1 and 2, 1, 2 and 4, 2 and 4, 1, 2 and 3 और all 4 statement और all of the above statements are correct here। तो अगर हम यहां पे बात करें दोस्तों, तो हमने पढ़ा था कि ये तो सही है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1/2, 1/3 और 1/4 याद करना है। तो 1/4 वाला पार्ट तो सही है जी, 10 लाख प्लस, पर ये गलत चल रहा है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3 is going to be the answer here, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। 1, 2 and 3 यहां पे सही आंसर है। देखो यहां पे चक्कर क्या पड़ा है, क्योंकि अगर हम बात करें 1 लाख से कम पॉपुलेशन तो 50:50 हो जाएगा, 50-50 होगा, ये 33/67 होगा और ये हो जाएगा 25/75 अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। तो लेस देन 1 लाख है तो 50-50 है, 1 to 10 लाख है तो 33:67 है, और अगर मैं बात करूं 10 लाख से ज्यादा है तो आपका 25% एंड 75% हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा 1, 2 and 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर, ठीक है जी। यही हमने यहां पे पढ़ा भी था, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की, तो ऑब्वियसली इट्स अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव सिंपल, टू मेक द सिटीज कंप्लीटली फ्री ऑफ गार्बेज, जहां पे सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाएगी, सैनिटेशन ट्रीटमेंट की बात की जाएगी, और वी वांट टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी आल्सो टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द इंटरवेंशंस ऑफ द प्रोग्राम हियर, ठीक है। देखो अब यहां पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, ये देयर इज अ थिंग that there is going to be construction and demolition of waste processing facilities, जो कि यहां पे बनेगा। Most important thing is in cities with more than 5 lakh population, it has been said that there should be a proper construction and demolition of waste processing facilities has to be deployed here। तो यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। फिर आपको जो भी लीगेसी डंप साइट्स हैं उनको आपको ग्रीन जोन्स में भी यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। अगला आ जाता है जी अर्बन डिस्कस किया, अभी डिस्कस करते हैं ग्रामीण के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, व्हिच आर द गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट हियर। अंडर द गोबर्धन इनिशिएटिव टू कन्वर्ट बायो वेस्ट इनटू बायोगैस, फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹50 लाख per district for setting up community and cluster model biogas plants are going to be set up here. Community sanitary complexes are mandatory for villages with over 100 households and must include gender segregated facilities here. The ODF plus model status mandates visual cleanliness along with sustainable solid and liquid waste management solutions here. Grey water management systems varies based on population size, ensuring higher allocation for larger villages here. अब आपको मुझे बताना है जी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें, सभी की सभी स्टेटमेंट्स ही सही है रिगार्डिंग द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत बच्चे यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन गलत कराते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। ये जल शक्ति का इनिशिएटिव है, ठीक है जी। तो देखिए 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटर, जिसके लिए आपको 12,000 रुपया दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड टू एलिजिबल हाउस होल्ड्स। फिर यहाँ पे याद रखना रेट्रोफिटिंग इज ऑल्सो पार्ट है। कम्युनिटी सेंट्रिक कॉम्प्लेक्सेस बनाना है एक, अगर आपकी पॉपुलेशन यहाँ पे 100 हाउस होल्ड से ज्यादा है
तो देयर शुड बी वन कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स दैट इज गोइंग टू बी सेट अप हियर। अब यहाँ पे क्या रहेगा, इस बाथरूम्स के लिए बोला गया कि जियो टैगिंग जो है उसको मैंडेटरी यहाँ पे कर दिया गया है। फिर आता है गोबर्धन इनिशिएटिव, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम आता है, जो कि बेसिकली दोस्तों आपका बायो वेस्ट को बायोगैस और बायोस्लरी में कन्वर्ट करता है। और इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है अप टू ₹50 लाख पर डिस्ट्रिक्ट फॉर सेटिंग अप अ कम्युनिटी एंड क्लस्टर मॉडल बायोगैस प्लांट हियर। ठीक है जी। अर्जुन जी, जो आपका डाउट है आप उसके लिए ईमेल कर दीजिए हमें hello@edutap.co.in। ठीक है, ठीक है गाइस। फिर ग्रे वाटर मैनेजमेंट आता है, बिल्कुल सही। ग्रे वाटर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस पर पर्सन ₹280 मिलता है पर कैपिटा विद अ पॉपुलेशन अप टू 5000, 660 मिलता है विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5000। ठीक है, ये आपको पर पर्सन पैसा मिल जाता है फॉर द ग्रे वाटर मैनेजमेंट हियर। बात करते हैं जी अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऊपर दोस्तों। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं मुद्रा योजना के ऊपर, अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु कैटेगरी कवर्स लोन्स अप टू ₹50,000। तरुण कवर करता है जी, तरुण प्लस कवर्स 10 लाख। ये तो पहले गलत हो गया, बिकॉज तरुण प्लस जो है वो 20 लाख की बात करता है, 10 लाख की बात नहीं करता। तो मुझे पता क्या है, पूछा है क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये घटा ये घटा ये घटा। अब ज्यादा थर्ड स्टेटमेंट दूंगा बिकॉज टू तो दोनों में ही है, थर्ड देख लो मतलब टू सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स अप टू ₹10 लाख फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर डू नॉट रिक्वायर कोलेटरल सिक्योरिटी बाय द बैंक हियर। ठीक है जी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि 20 लाख तक में अब ये बढ़ के क्या हो चुका है, सॉरी 10 लाख में अब ये बढ़ के 20 लाख हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे आंसर जो बढ़ के 20 लाख हो चुका है, तो दैट इज द थिंग, दैट इज द आंसर हियर। Which among the following organization is not eligible to extend the loans under Pradhan Mantri Mudra Yojana? Regional rural banks and small finance banks, non-banking financial companies, foreign banks and private sector banks, फिर आ जाता है micro financial institutions और फिर आ जाता है none of the above। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा none of the above, बिकॉज यार यहाँ पे सारे के सारे ही एलिजिबल हो जाते हैं फॉर ग्रांटिंग अ लोन अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखो अब बेसिकली जो कैटेगरी है वो ये बोल जाएगा कि आपको 20 लाख तक जो है कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने 10 लाख का लोन पे कर दिया तो आपको 20 लाख तक जो है वो कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो लोन जो है कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, आरआरबीस है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स है, वो दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है इसमें, मेन पॉइंट जो अपडेट्स हुए हैं, 3 तरह के लोन, 4 तरह के लोन, 50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख। ठीक है, और फिर आ जाता है अगर 10 लाख आपने पे करे तो आपको 20 लाख तक लोन मिल जाता है। ठीक है, 50,000 में क्या है कि आपकी यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फी भी जो नहीं है वो यहाँ पे नहीं लगती है। ठीक है, प्रोसेसिंग फी भी यहाँ पे आपकी नहीं लगती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है विद रिगार्ड्स टू द अपग्रेडेशन ऑफ द स्कीम हियर। ठीक है, लोन जो है वो आपको मिल जाता है नॉन लोनी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए, बट याद रखना ये पैसा आपका इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए मिलना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है जी, पैन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। ठीक है जी, बट उनको केवाईसी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी सब्सिडी भी आपको नहीं मिलती है, कोई सब्सिडी भी यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। सब्सिडी अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही है तो फिर आपको सब्सिडी यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है जी अटल पेंशन योजना के ऊपर, इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट एपीवाई हियर। द स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 50 ईयर्स। देखो यहाँ पे पहली ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहली बात तो ये एप्लीकेबल तो है बट वो 18 टू 50 ईयर्स में है और सभी सिटीजन को एप्लीकेबल नहीं है। किनको एप्लीकेबल है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक है जी, नॉन इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होने चाहिए और एज ग्रुप 18 टू 40 में होना चाहिए। तो यहां पे पूछा गया फिर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये गलत और ये गलत। अब आते हैं जी 2 एंड 3 और ऑप्शन बचती है 2, 3 एंड 4 हियर। ठीक है, इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट देखनी ही नहीं, सीधा फोर्थ स्टेटमेंट को देखेंगे। 2 एपीवाई अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है भाई, 2 तो नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी।
ये तो सबसे पहला प्रोविजन है एपीवाई के अंदर कि आप 2 एपीवाई अकाउंट्स नहीं खोल सकते, ओनली सिंगल एपीवाई अकाउंट कैन बी ओपन हियर। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। ठीक है जी। अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना के ऊपर। एपीवाई की बात करो तो देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको 18 to 40 ईयर्स है, पेंशन जो है वो आपको मिलेगी 1000 से लेके 5000 तक की रेंज में। इंपॉर्टेंट याद क्या रखना, अगर डेथ हो जाती है स्पाउस की, डेथ हो जाती है तो जो स्पाउस है यार उसको क्या होता है, उसको फुल मिलता है, फुल अमाउंट ऑफ पेंशन इज बीइंग गिवन है। ठीक है, अगर 60 ईयर से पहले डेथ हो जाते तो या तो स्पाउस कंटिन्यू कर लेगा या फिर वो लमसम पैसा ले लेगा, दोनों ऑप्शन दी जाती हैं। ठीक है, 60 के बाद होते तो भाई उसको पूरी पेंशन जितनी उसको लगी थी उनको भी यहाँ पे पूरी पेंशन लग सकती है। और अगर स्पाउस की डेथ भी हो जाए और बेनिफिशियरी की डेथ, मतलब बेनिफिशियरी की डेथ हो गई, स्पाउस की डेथ भी होगी, तो जो नॉमिनेशन है, तो जो नॉमिनी है उसको फिर यहाँ पे लमसम पैसा मिल जाता है। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे मेन चीज। ठीक है, तो देखो जी एनपीएस के अंडर ही वर्क करता है, पीएफआरडी ही काम कर रहा है, एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन 18 to 40 है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, सेविंग बैंक अकाउंट है, अनऑर्गेनाइज वर्कर होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। ठीक है जी, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है, एप्लीकेबल है सिटीजन पर वो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स इनकम टैक्स पे जो है वो नहीं होने चाहिए। फिर क्या है, आपकी जो एज है वो होगी जी 42, सॉरी, अगर आप 18 ईयर्स में चाहते हैं 1000 पेंशन लेना तो आपको 42 रुपीज एनुअली पे करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 5000 पे मिले तो आपको 210 रुपए पे करनेंगे। अगर आप 40 ईयर्स में आएंगे तो आपको भाई 291 रुपए पे करेंगे 1000 की पेंशन के लिए, और 1454 पे करने पड़ेंगे 5000 रुपीज की पेंशन के लिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, आप जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपके ऊपर है, मंथली कर लो, क्वार्टरली कर लो, हाफ ईयरली कर लो। ठीक है जी, ये चीज आपको याद रखना। और मल्टीपल अकाउंट्स ओपन यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। आधार जो है वो भाई डिजायरेबल है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मैंडेटरी नहीं है, इंपॉर्टेंट याद रखना है, डिजायरेबल है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो आधार है ना, अगर आप जब बेनिफिट्स लोगे तब आपको आधार जो अपना शो करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम इज इनकरेक्ट। अब देखो ये इस तरह का क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है जहां पे मल्टीपल स्कीम्स को क्लब करके क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है जी, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज एंड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड एंड फंडिंग द अनफंडेड। बिल्कुल सही है, पूछा इनकरेक्ट। सुरक्षा बीमा योजना आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देता है ऑफ फॉर टोटल डिसेबिलिटी और डेथ एट ₹20 पर एनुअल प्रीमियम। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट, जीवन ज्योति बीमा योजना 2 लाख रुपए दे रहा है एट 500 रुपीज। 500 रुपीज नहीं है भाई, यही तो गलत है, 436 रुपए प्रीमियम है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। ठीक है जी, अगर आप थोड़ा समझे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए जेडीवाई हो गया, एपीवाई हो गया, मुद्रा योजना हो गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आ जाता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और आपका सुरक्षा बीमा योजना। तो फटाफट में कवर करते हैं। पीएमएसबीवाई, एज है यहाँ पे 18 to 70 ईयर्स, आपको 20 रुपए का प्रीमियम पे करना है। आपको डेथ या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में 2 लाख रुपए मिल जाता है, पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, पार्शियल डिसेबिलिटी केस में यहाँ पे 1 लाख रुपए मिलता है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है, इनका जो टाइम है वो जून से मई है। मर्डर यहाँ पे कवर है, सुसाइड यहाँ पे कवर नहीं है, जो हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। फिर आ जाता है जी पीएमजीजीबीवाई, जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एज ग्रुप है 18 to 50, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है 55 ईयर्स, सॉरी 55 ईयर्स, क्योंकि जो आपको पेमेंट मिले, जो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है वो 55 ईयर्स तक ही दिया जाता है, और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एलआईसी। ठीक है, 436 रुपए का प्रीमियम है। अब इन दोनों स्कीम्स में क्या है, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर खोल सकते हैं बट वो इंडिविजुअली खोलेंगे। दूसरा क्या है, कंपनी नहीं खोल सकती, ना तो यहाँ पे ना यहाँ पे। एनआरआई जो है अगर उनका बैंक अकाउंट इंडिया में है, ठीक है जी, तो वो स्कीम को एप्लीकेबल है, यानी कि वो स्कीम का मेंबर बन सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना है कि एनआरआईज यहाँ दोनों पे एप्लीकेबल है, बट अगर उनका बैंक अकाउंट इंडिया में और उनको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो इंडियन रुपी में मिलेंगे, ना कि फॉरेन करेंसी में मिलेंगे। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। फार्मर्स availing a short-term crop loan up to ₹3 lakh are charged an interest rate of 7% per annum, which can be reduced to 4% per annum. ठीक है, on prompt repayment of the loan here. A sub limit of ₹2 lakh has been earmarked for loans related to allied activities like animal husbandry, dairying and fisheries here. फिर आ जाता है कोलेटरल फ्री लोन लिमिट अंडर द स्कीम हैज बीन एनहांस्ड टू ₹5 लाख पर बोरोवर। ये गलत कर दिया है दोस्तों, 5 लाख नहीं किया गया है। ठीक है जी, अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है जी, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, सबसे पहला बात है कि अप टू ₹3 लाख तक सरकार ने बोला कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने बोला। दूसरा बोला इंटरेस्ट रेट 7% है, सबवेंशन दिया गया 1.5% का, और एक अलग से एलिजिबिलिटी आपको मिलती है, सब लिमिट दी जाती है दोस्तों आपको 2 लाख रुपए की। ठीक है, फॉर दी अलाइड एक्टिविटीज हियर। फिर जो है वो कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट जो है वो 1.6 लाख रुपए से लेकर ₹2 लाख तक यहाँ पे बढ़ा दी गई है। ये बेसिक पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस स्कीम। तो कोलेटरल फ्री लोन लिमिट जो है वो 1.6 से 2 लाख की गई है, 1.6 से 5 लाख नहीं की गई है। तो ये आपको याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बजट में भी था और ये इकोनॉमिक सर्वे में भी हाईलाइट किया गया था। ठीक है, चले जी, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के ऊपर। देखो जनरली मैं आपको बताता हूं कि एग्रीकल्चर स्कीम्स पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं अगर आप आरबीआई एस्पिरेंट हैं, बट क्योंकि यार कुछ स्कीम्स पे हमने देखा है रिसेंटली आरबीआई क्वेश्चन पूछते हुए, तो इसीलिए कुछ कुछ जो स्कीम्स रिसेंटली न्यूज में है हमने सोचा क्यों ना इतना ही आपको कवर करवा रहे जितना कि आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, तो मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको बस जितना टू द पॉइंट जितने क्वेश्चन में हमने इन्फॉर्मेशन है उतना थोड़ा सा याद कर लीजिए। अगर आपने बाकी स्कीम्स पे ऊपर फोकस नहीं किया है, पढ़ा है तो यार एक बार स्कीम को भी रीड कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी, बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भाई यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आंसर मैंने आपको पहले बताया, पर थोड़ा समझते हैं। द मैक्सिमम गारंटी नीड फॉर इंटीग्रेटेड कोच इन वैल्यू जो है भाई वो कितनी है, वो 10 करोड़ है, 5 करोड़ नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा बोला गया है द क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी कंपोनेंट इज 50%। तो यहाँ पे क्या है 15 या 35% है। ठीक है, 50% एक्चुअल में स्पेशल एरियाज के लिए है। तो यहाँ पे सिंपल चीज क्या था, यहाँ पे उल्टा लिखा हो। देखो इसको कैसे ठीक कर सकते हो, थोड़ा समझो। अब देखो यहाँ पे लिखा है 50% जो है भाई वो जनरल एरियाज के लिए और स्पेसिफिक के लिए 35% है। तो कभी भी गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉइंट लॉन्च करेगा या ऐसी स्कीम लॉन्च करेगा जहां पे वो नॉर्थ ईस्ट पे फोकस ही नहीं कर रहा, वो तो कभी भी ये स्कीम लॉन्च नहीं करेगा। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर आ जाता है क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, जहां पे ग्रांट नेट 35% एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट की और 50% डिफिकल्ट एरिया के लिए, वो बिल्कुल सही लिखा गया इन्होंने। ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन यानी कि एचआर डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस है वो 100% ग्रांट नेट करता है इन ऑल रीजन्स। कभी भी गवर्नमेंट 100% सभी रीजन पे कभी नहीं करेगा। तो फिर वो यही है कि 50% जनरल में कर रहा है, 70% कर रहा है डिफिकल्ट एरियाज में। देखो यहाँ पे ना बहुत कीवर्ड्स हैं, बहुत बच्चे क्वेश्चन देख के छोड़ देंगे, बट हमेशा मैं कहता हूं कि आप इन तरह के क्वेश्चंस को सबसे एंड में करिए, बट इनको बिल्कुल देखे बिना मत छोड़ दीजिए। आप थोड़ा सा देखिए कि यार अगर मेरे पास टाइम कम है या टाइम बचा है, टाइम कम है तो फिर तो छोड़ दो। अगर टाइम बचा है, आपको लग रहा है कि यार बाकी कंपोनेंट में जो मेरे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट थे कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है, वहां पे क्वेश्चन पता नहीं कैसे आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं फिर इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखो, टच करो कि यार ये पूछना क्या चाहता है। क्या बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो नहीं पूछ रहा? अगर बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट पूछ रहा है तो मेरे पास कहीं ना कहीं मुझे जो है वो एक आइडिया लग जाता है कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकूं। जैसे मैंने बोला कि आपका देखो सेकंड स्टेटमेंट मुझे पता चला गलत है, ठीक है। अब मेरे को यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट में डाउट होगा, सेकंड में तो नहीं है, थर्ड पे डाउट हो सकता है और मुझे फोर्थ पे भी नहीं डाउट होगा, मुझे फिफ्थ पे भी लगेगा कि मेगा फूड पार्क है कि नहीं है। अब ये बेसिकली डिसकंटिन्यू किया गया था, तो यहां पे कम से कम 2 स्टेटमेंट्स में एलिमिनेट कर सकता था। तो इस तरह की चीजों को आपको हमेशा देखना है जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अंडरटेक डिमांड ड्रिवन R&D वर्क फॉर बेनिफिट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टू बी प्रोवाइडेड हियर। इट वाज रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इन अगस्त 2017। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर ऑपरेशन ग्रीन
The scope extended from tomato and potato to 22 perishables good here, और आंसर है जी none of the above। पूछा क्या यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब भाई जिसने ये स्कीम नहीं पढ़ी, ये वो क्वेश्चन है जो आपको छोड़ने हैं कि सर समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है, कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, कुछ भी हो सकता है इसमें से, तो है ना। तो यहां पे एक्चुअल में बात करूं दोस्तों, ऑप्शन सी गलत है, बिकॉज ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है। ठीक है, 2017 में स्टार्ट हुआ था, इसका नाम रखा गया था किसान संपदा योजना 2017 में। ठीक है जी, उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है R&D वर्क के लिए, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करके आए हैं। और ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है फ्रॉम TOP टू 22 पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ा तो यार इतना कर जाओ, फिर अगेन बोलूंगा ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बाकी स्कीम्स हमने उससे पहले की हैं। अब 80 में से अगर 4-5 क्वेश्चन करते तो कोई बात नहीं, बट जो स्कीम्स आती थी वहां पे गलती हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है जी, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। देख लेते हैं क्या चीज है, कीवर्ड देखते हैं। एम्प्लॉयज अंडर पार्ट ए मस्ट सर्व कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 12 months to receive the first installment of their EPF wage। ठीक है, must serve continuously। Employees with exactly 50 employees must hire a minimum of 2 additional workers to become eligible for incentive। दूसरा लिखा गया, employers incentives under the Part B are disbursed based on the EPF wage slabs of new hires with proportional incentive for wages which is range from up to 10,000। तो ये तो बिल्कुल सही है यार, पूछा इनकरेक्ट है। तो देखो तीसरी स्टेटमेंट तो जहां पे है वो तो सही है। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पूछा क्या है उसने, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी बन गया। 1, 2 एंड 4 मेरा गलत आंसर है। अब देखो क्या उसने ये बोला था, मस्ट सर्व कॉन्टिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 12 months फॉर टू रिसीव द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हियर। ठीक है जी, पहले तो समझते हैं इसको। क्या पहले ऐसे बोलता कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेने के लिए लगातार, हमने बोला 6 महीने के बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। दूसरे में क्या बोला है, विद एग्जैक्टली 50 एम्प्लॉयज मस्ट हायर अ मिनिमम ऑफ, तो क्या 2 ही करने हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया इसका भी। तीसरा बोला गया, इंसेंटिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट थ्रू द आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम। ऐसा तो था ही नहीं भाई, ये डिफरेंट है। पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट होगा जिसका एम्प्लॉयर है, और आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम होगा जो इंडिविजुअल है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है कि यार क्या पूछ रहा है। इनकरेक्ट पूछा तो मुझे पता है मेरी थर्ड स्टेटमेंट सही है, मैं भूल गया बाकी चीजें, कोई बात नहीं यार, थर्ड से एलिमिनेशन कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू पार्ट ए ऑफ द प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना हियर। द बेनिफिट इंक्लूड्स 2 months EPF wage paid immediately upon joining। कैसा कुछ है जी। It targets 1 crore first time employees registered with NPS। NPS की बात हो रही है, NPS तो है ही नहीं इसमें, ये तो EPFO की स्कीम है, तो NPS कहां पे आ गया, ये तो गलत हो गया भाई। Employees earning up to 1 lakh per month are eligible for the incentive। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। No condition are attached for receiving the full benefits, ऐसा कुछ है ही नहीं। Incentive is paid entirely in cash without any saving requirement, ऐसा है ही कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही है, यही तो बेसिक पूछी गई थी। ठीक है, अब समझ लेते हैं स्कीम को थोड़ा सा, कि भाई पहली बात तो क्या है कि ये जो स्कीम है ये 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स की बात करता है, ना कि 1 करोड़। ठीक है, और 2 करोड़ 60 लोग। अब यहाँ पे क्या सिंपल चीज है, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको बोला गया है कि भाई फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर जिसकी सैलरी जो है वो 1 लाख से कम है, उसको पहला इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद मिलेगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट 12 महीने के बाद मिलेगा। ठीक है, और आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कंप्लीट करना उसके बाद मिलेगा। दूसरा बोला गया है कि भाई कुछ पैसा आपका आपके सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाएगा। ठीक है, ताकि आपकी सेविंग्स को एनकरेज किया जा सके। ठीक है, और इनको जो पैसा है वो दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम हियर। अब आते हैं अगली पार्ट पे, एम्प्लॉयर वाले पार्ट पे। एम्प्लॉयर को क्या बोला गया, एम्प्लॉयर को बोला गया कि भाई हम आपको बेनिफिट देंगे अगर आप नॉर्मल केस में तो आपको 2 साल इंसेंटिव देंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें तो हम आपको 4 साल के लिए इंसेंटिव देंगे। और इंसेंटिव कैसे देंगे,
वो 3000 पर मंथ देंगे पर एडिशनल एम्प्लॉय, बट शर्त ये है कि वो बंदा कम से कम 6 महीने काम करे। अब आपको जो इंसेंटिव है, हमने इसके लिए कंडीशन रखी, अगर आपके पास 50 से कम एम्प्लॉय हैं तो आपको 2 लोग रखने पड़ेंगे, अगर 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो आपके पास 5 लोग रखने चाहिए, दैट इज एटलीस्ट। तो यहां पे इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हुआ। अब जो ये प्रोपोर्शनेशन वाला पॉइंट है बिल्कुल सही, क्योंकि 10,000 अगर आपकी सैलरी 10,000 तक है तो आपको भाई 1000 पर मंथ मिलेगा, बट वो प्रोपोर्शनेट है एज पर दी सैलरी। 10,000 से 20,000 है तो 2,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा, और 20,000 से ज्यादा है तो 3,000 पर मंथ का इंसेंटिव मिलेगा टू द एम्प्लॉयर, और वो मिलेगा उसके पैन अकाउंट में। तो पैन और आधार का कोई लिंकेज यहां पे नहीं है, और ये स्कीम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बात करूं पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम मुद्रा स्कीम, जल जीवन मिशन स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स को विकसित भारत रोजगार योजना बोल रहे हैं यार, इन स्कीम्स में बहुत मेजर अपडेट्स हुए हैं, बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, सरकार ने अभी अप्रूव की हैं, तो ये क्वेश्चंस आने के चांस यहां पे ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग दिस स्प्री स्कीम। स्प्री दैट इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। देखते हैं जी, एम्प्लॉयर्स कैन रजिस्टर द यूनिट्स एंड एम्प्लॉयर्स थ्रू द ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल एंड एमसीए पोर्टल हियर। Registration under the spree is valid for the date declared by the employer and no contribution benefit apply to any period prior to the registration. Employers' participation will be subjected to retrospective penalties for the pre-registration period. The scheme is designed to bring unregistered employers and employees, including contractual and temporary workers, into formal ESI work. Spree 2025 aims to increase the coverage of establishments under the ESI Act and provides medical and social benefits. अब आते हैं यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है जी, हाँ जी एनोनिमस जी, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर हियर? सो यहां पे आंसर बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी, यहां पे गलत है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा गया, एम्प्लॉयर्स पार्टिसिपेशन विल बी सब्जेक्ट टू रेट्रोस्पेक्टिव पेनल्टीज को खत्म करने के लिए तो ये स्कीम आई थी। ठीक है ना, अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली क्या था, ये एग्जम्प्ट करता है पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयर्स फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव पेनल्टीज एंड लीगल एक्शंस। उनको कहता है उनको नहीं बुलाना, क्योंकि इसी चीज को लिए तो स्कीम लेके आए हैं ये वाली पार्ट। ठीक है, ईएसआई के अंडर। अगला क्वेश्चन है आदित्य स्कीम के ऊपर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की स्कीम है। द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अच्छा आदित्य, सॉरी हाँ, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट, क्या पावर की है या हैवी की इंडस्ट्रीज के? चलो देखते हैं ये वाला। इट ऑफर्स इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 5% फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड 3% फॉर मीडियम एंटरप्राइजेज. Aditi targets 14 energy-intensive sectors, including textile, forging, food processing, and pharmacy. Here, the scheme is scheduled to be implemented for a period of 5 years, from 24-25 से 28-29. 5 साल है, 6 साल है. Aditi includes funding for energy audits, detailed project reports, monitoring, and verification activities. तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि ये जो स्कीम है ना, ये बेसिकली 2025-26 से 2027-28 तक के लिए लॉन्च की गई है. एक्चुअल में जो धरती आभा स्कीम है वो 6 साल के लिए लॉन्च हुई है. ये स्कीम सिर्फ 27-28 तक के लिए लॉन्च की गई है, और ये बिल्कुल सही है जी. ये स्कीम आदित्य का देखो नाम पढ़ो ना, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम है. ठीक है, जो कि लॉन्च की है गवर्नमेंट ने रिसेंटली. फिर आ जाते हैं धन धान्य कृषि अभियान के ऊपर. ठीक है जी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट जो पूछा गया यहाँ पे करेक्ट है. द स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर अ 3-year पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25. 3 साल के लिए है जी, कि 6 साल के लिए है. ओनली डिस्ट्रिक्ट विद हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल बी सिलेक्टेड. देखो यार, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है. क्या हम लोग ऐसी स्कीम लॉन्च करेंगे जो कि हाई प्रोडक्टिविटी एरियाज के लिए होंगी? वो तो बिल्कुल भी नहीं लॉन्च करेंगे, कभी भी नहीं करेगी सरकार ऐसी स्कीम लॉन्च कि हाई प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ. या जो यहाँ पे पहले ही प्रोडक्टिविटी हाई है वो तो सरकार को पता है, जहां पे प्रोडक्टिविटी लो है उसको कैसे हाई करना ये सोचेंगे हम लोग. फिर लिखेगा स्कीम एक्सक्लूड्स प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, तो बिल्कुल ही गलत है. हम कब कहेंगे प्राइवेट सेक्टर को मत बुलाओ? हम तो चाहते हैं कि पीपीपी मॉड यूज हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉड यूज हो. डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान अंडर द स्कीम विल बी प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति व्हिच इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव फार्मर्स. स्कीम इज लिमिटेड टू इरिगेशन डेवलपमेंट, डज नॉट कवर पोस्ट हार्वेस्ट. देखो ये भी गलत है, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर. अगला क्वेश्चन फिर आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स धन धान्य कृषि अभियान. The scheme integrates 3 central government schemes to promote agricultural development. क्या ऐसा कुछ हुआ है कि 3 एग्रीकल्चर स्कीम्स को हमने सबमर्ज किया है?
focuses on increasing support agriculture credits disbursement by integrating private sector partnership for localized support। दूसरा सही है, तो ये गलत हो गया, या तो 2 और 3 होगा या ऑल ऑफ दी होगा। देखते हैं जी। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द स्कीम इज बेस्ड ऑन 50 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। क्या 50 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे, 100 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे, 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे, बट इतना पता सर 50 तो नहीं थी। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यार यहाँ पे हमने कोई भी स्कीम को इंटीग्रेट नहीं किया है। हमने सिंपल बोला कि सरकार ने बोला कि हम अगले 6 साल के लिए टोटल 1,44,000 करोड़ में, जिसमें 24,000 करोड़ रुपया हर साल देंगे। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हम यहाँ पे 100 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, 100 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर हमने यहाँ पे बोला कि भाई सिलेक्शन होगा इस 3 क्राइटेरिया के ऊपर, लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग और लो एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है जी। फिर आ जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ानी है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज बढ़ाना है, और 36 सेंट्रल स्कीम्स को जो है उनको कन्वर्ज करेंगे, मर्ज नहीं कर रहे, कन्वर्ज कर रहे हैं। और की इंडिकेटर्स कितने हैं ये मुझे आप बताओ जी। क्या 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, यस और नो? सो डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। क्या 117 है, 123 है या उससे कम है, बताओ। ठीक है। सो दैट इज योर होमवर्क आल्सो, टू टेल मी इन द चैट सेक्शन एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कितने हैं। ठीक है, 117 चलो। सो नीति आयोग जो है गाइड करेगा दोस्तों, सेंट्रल नोडल ऑफिस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यहाँ पे आपके जो हैं दे विल असाइन पर डिस्ट्रिक्ट फॉर द फील्ड लेवल रिव्यू। अगला क्वेश्चन आ जाता है जी अमृत 2.0 के ऊपर। यहाँ पे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट, ठीक है, विच इंसेंटिव्स अंडर द अमृत 2.0 इज गिवन अमंग विच अमंग द फॉलोइंग पर्पस। समझते हैं। रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, रिड्यूसिंग नॉन रेवेन्यू वाटर टू 20%, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, रीयूज ऑफ 20%, ट्रीटेड वेस्ट वाटर करना है। ठीक है जी। और फिर पूछा उसने रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर टू मीट 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे की सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। ठीक है। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अमृत हियर, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल कवरेज ऑफ सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट इन 1000 अमृत सिटीज। क्या ऐसा है जी, सिर्फ 1000 तक होगा या ऑल अर्बन लोकल बॉडीज में होगा? दूसरा लिखा है फंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू द डिस्ट्रिक्ट और अर्बन लोकल बॉडीज डायरेक्टली। तीसरा है द स्टेट्स और यूटीज वर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल स्टेट वाटर एक्शन प्लान्स एंड गेट इट अप्रूव्ड विद इन 2 years फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मिशन हियर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं बोला है कि 1000 अमृत सिटीज के ऊपर है। एक्चुअली ये स्कीम जो है वो एप्लीकेबल है दोस्तों सारी की सारी अर्बन सिटीज के ऊपर। ठीक है। तो पूरे अर्बन लोकल बॉडीज पे अवेलेबल है। ठीक है। 100% कवरेज करना है हमारे वाटर सप्लाई का, 100% कवरेज करना है सीवेज एंड सेप्टेज टैंक का इन 500 अमृत सिटीज, जो कि पहले था, अब इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज करना है, कैटर करना है 20% जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको हम यहाँ पे यूज कर सके। ठीक है जी। फिर आ जाता है जी जो हमने पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। नॉन रेवेन्यू वाटर 20% तक लेके आना है, 20% ट्रीटेड वेस्ट वाटर को यूज करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, रीयूज करना है वेस्ट वाटर टू मीट 40% इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, डेवलपमेंट करना है ग्रीन स्पेस का, और इंप्रूव करना है लैंड यूज एफिशिएंसी थ्रू दी जीआई बेस्ड मास्टर प्लानिंग। ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन आता है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। कमिंग टू द फाइनल लेग ऑफ द क्वेश्चंस नाउ, द स्कीम ऑफर्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ फॉर 1 crore हाउसहोल्ड्स। Households must not have availed any other subsidy for solar panels here। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कीवर्ड must not है, बट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस कवर्स अप टू 100% ऑफ द सिस्टम, पर यही गलत कर दिया। 100% कभी नहीं करता, वो 60% करता है जी, अप टू 2 किलोवाट प्लस 40% अप टू 2 to 3 किलोवाट। तो यहाँ पे 60 + 40 100 मत कर देना, ये गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे से पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे गलत है। ठीक है जी। सो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। फिर आ जाते हैं स्कीम के ऊपर। एमएनआरई की स्कीम है, हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई 60 और 40% देते हैं। ये पैसे याद करने हैं, 30,000 फॉर 1 किलोवाट, 60,000 फॉर 2 किलोवाट एंड 78,000 फॉर 3 किलोवाट। इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी रिमेंबर्ड हियर इज कि एप्लीकेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, खुद का अकाउंट, खुद का घर हो और एक वैलिड इलेक्ट्रिक मीटर कनेक्शन लगाओ।
किसी और स्कीम का बेनिफिट ना लिया हो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, ठीक है जी, उनको ये तो सब्सिडी है, फिर सरकार बोल रही है कि हम आपको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी पे अगर आपको इंस्टॉल करवा रहे तो हम आपको यहाँ पे 7% पे एक बेसिकली गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड करवाए कोलेटरल फ्री, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट याद रखना, इनोवेट प्रोजेक्ट कंपोनेंट जो कि रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है, वो बेसिकली क्या है भाई, वो न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहते हैं हमारे रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए, जहां पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, 500 करोड़ पे दिए जा रहे हैं और 60% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट या फिर 30 करोड़ जो भी लोअर है वो सरकार कह रही है कि हम यहाँ पे आपको वी आर गोइंग टू हेल्प यू हियर, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखना। 30 गीगावाट का रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर कैपेसिटी जो हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। फिर आ जाते हैं जी, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। The scheme will continue with the existing unit cost of 1.2 lakh for beneficiaries in plain areas and 1.3 lakh for those in northeast and hill states. The scheme aims to complete the remaining 35 lakh houses from the previous phase by March 2025. The scheme will be reappraised by the EFC and evaluated by the Niti Aayog before its continuation beyond March 2026. आवास प्लस लिस्ट इज अपडेटेड यूजिंग न्यू इंक्लूजन क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाई द एलिजिबल रूरल हाउसहोल्ड्स। पूछा गया है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखो यार, ये बिल्कुल सही हमने पढ़ा है, ये हमने बिल्कुल सही पढ़ा हो, तो 2 और 3 ऑप्शन में होना चाहिए। तो 2 और 3 इस ऑप्शन में नहीं है, 2 और 3 इस ऑप्शन में नहीं है, या तो 1, 2 और 3 है, यहां पे 2, 3 और 4 और ऑल ऑफ द अबव है। अब आते हैं पहले पार्ट के ऊपर। हमने कहीं पे भी ये लाइन तो नहीं पढ़ी, या ये लाइन तो हमने कभी छोड़ी ही नहीं कि भाई ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि स्कीम जो है उसने हमारी यहां पे कॉस्ट चेंज कर दी है, ठीक है, ऐसा तो नहीं किया, तो वो तो वही रही है, तो 1 तो होना चाहिए। अब यहां पे अगर 1 होगा तो आंसर तो 1, 2, 3 और 4 होना चाहिए, 1, 2 और 3 या 1, 2, 3 और 4। अब 4th भी सही है यार, अगर आवास प्लस का तो मतलब ही है कि जो लेटेस्ट चीज अगर आपने कोई नया इंक्लूजन किया होगा तो यहां पे तो अपडेट हुआ ही होगा। तो आंसर यहां पे क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर यहां पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। अब देखो मैं आपको चीज समझाता हूं कि जो मैं ही आपको बता रहा था अभी कि यार ये तो हुआ ही होगा, है ना, ये हम लोग थॉट प्रोसेस में लेते हैं, जैसे मैंने भी लिया कि हो सकता है क्या हुआ हो, बट नहीं, ठीक है, समझो। आवास प्लस लिस्ट इज अपडेटेड यूजिंग द न्यू इंक्लूजन क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग एलिजिबल रूरल हाउस। आवास प्लस क्राइटेरिया जो है अभी उसके ऊपर जो है अगर हम बात करें तो अभी वो अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है जी। आवास प्लस टॉप जो है, जो नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि आवास प्लस लिस्ट इज अपडेटेड नहीं है, वो तो होगी क्योंकि अभी तो क्राइटेरिया ही अपडेट हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं अभी अपडेट हो गया होगा, है ना। फिर आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज वुड बी एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट्स अंडर द रिवाइज्ड क्राइटेरिया ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो आता है जी, अ फैमिली दैट ओन्स 2 मोटरसाइकिल एंड अर्न्स रुपीज 18,000 पर मंथ। 18,000 हमने पढ़ा था, 15,000 तक ही तो पढ़ा है, 18,000 तो आया ही नहीं, तो ये गलत हो गया। अ फैमिली दैट ओन्स अ ट्रैक्टर के साथ क्रेडिट कार्ड लिमिट ऑफ 55,000, तो ये भी गलत है बिकॉज 50,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है किसान क्रेडिट कार्ड की, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा पूछा गया है, अ फैमिली वेयर 1 मेंबर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड देन दे ओन्स 1.5 एकड़ ऑफ लैंड। अब ये भाई यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही आ गया, तो ये भी कट गया। अ फैमिली दैट ओन्स अ रेफ्रिजरेटर, अ मोटराइज्ड फिशिंग बोट एंड अर्न्स रुपीज 14,000 पर मंथ, बिल्कुल लग रहा है। A family registered with a registered non-agriculture entrepreneurship and income of rupees 8,000 per month। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा आंसर, ठीक है जी, ऑप्शन डी आंसर बनेगा बिकॉज यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप की अगर आपके पास है तो फिर आप एलिजिबल नहीं, ठीक है जी। अब थोड़ा समझते हैं दोस्तों, आवास योजना ग्रामीण के अंदर पक्का हाउस देने वाले हैं, ये हमने बिल्कुल पढ़ा था कि 2026 के बाद नीति आयोग एक इवैल्यूएशन करेगा और उसके बेस पे डिसाइड होगा कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कीम हियर, ये कैसे करना है, ठीक है जी। ये यहाँ पे घर बनते हैं 60% फॉर SC ST, 15% फॉर माइनॉरिटीज एंड 5% फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है जी। अगर हम बात करें दोस्तों तो क्राइटेरिया फॉर ऑटोमेटिक इंक्लूजन क्या था, हाउसहोल्ड्स विदाउट शेल्टर, डेस्टिट्यूट लेबर है, मैनुअल स्कैवेंजर्स है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स और लीगली रिलीज बॉन्डेड लेबर है, ठीक है जी। बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया कि रीसेंट क्राइटेरिया में क्या इंक्लूड किया गया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर आपके पास 15,000 तक की इनकम है, आपके पास 2 व्हीलर्स हैं, मोटर है, फिशिंग बोट है, रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन है, तो भाई आप इंक्लूडेड, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, देखो अगर आपका कोई बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे है, कोई नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज है या फिर 2.5 एकड़ से ज्यादा की लैंड है, तो वो एलिजिबल नहीं होता है।
ठीक है। फिर जो अमाउंट था वो सेम ही रहा, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे अमाउंट चेंज किया, तो 1.35 का 1.35 और 1.25 ही यहाँ पे रहा है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आवास प्लस आया, आवास प्लस सर्वे है जो 2019 में करवाया गया था टू अकोमोडेट द एलिजिबल बेनिफिशियरीज। अब यहां पे जो ये वाला स्टेटमेंट है ये हमारा क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमने जो बात की थी यहां पे आवास प्लस लिस्ट में आवास प्लस सर्वे की लिस्ट अपडेट होगी, ना कि आवास प्लस मोबाइल ऐप। आवास प्लस तो मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, ये तो मोबाइल एप्लीकेशन जो तो डिटेल कर रहा है कि भाई पोटेंशियल एलिजिबल हाउसहोल्ड्स की, बट जो लिस्ट अपडेट हो रही है वो एज पर आवास प्लस सर्वे हो रही है जो 2019 में जो है करवाया गया था। ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है जब लेटेस्ट सर्वे करवाया जाएगा तो जो लेटेस्ट क्राइटेरिया वो यहां पे ऐड किया जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, अगला क्वेश्चन आता है जन आरोग्य योजना के ऊपर। गाइस अब लास्ट के 10 क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट में करते हैं इनको। So which of the following statements regarding the आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना आर इनकरेक्ट हियर। ठीक है जी। पीएम जन आरोग्य योजना subsumes the earlier राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना and provides ₹5 lakh convergence per 5 lakh coverage per individual for primary, secondary and tertiary care। पूछा गया इनकरेक्ट, ये पहले ही गलत है भाई, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर तो इसके अंदर वैसे ही नहीं आता है, तो सेकेंडरी और टर्शरी के लिए होते हैं, तो पहली ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है जी। बाकी देखो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कवर होती हैं, नॉट इंप्लीमेंटेड, पीएम स्टेट और यूटीज वेयर पीएमजे इज नॉट इंप्लीमेंटेड बेनिफिशियरीज अवेल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सीनियर सिटीजन 70 ईयर्स के हैं, नॉन पीएम वे उनको भी 5 लाख का सरकार ने टॉपअप दे दिया है, बिल्कुल सही है। फैमिलीज नॉट प्रेजेंट इन एससीसीसी बट प्रीवियसली कवर्ड अंडर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी यहाँ पे कवर्ड है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। ठीक है जी। मिस्टर एक्स हु इज एन आर्टिजन हैज अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स इज ट्राइंग टू गेट अ बेनिफिट अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना which is the largest health insurance scheme in the world. Which of the following conditions is or are correct with respect to the benefits under the scheme here? Only 5 members of the family will be eligible। क्या ऐसा लिखा कहीं पे 5 मेंबर, उन्होंने बोला है फैमिली एलिजिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। आपसे पूछा कौन सा बेनिफिट है, इट कवर्स 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 50 days, तो ये भी गलत भाई, 3 दिन और 15 दिन है, 3 और 50 नहीं है, 3 और 15 है। चिल्ड्रन अप टू 5 years ऑफ एज अवेल द ट्रीटमेंट ऑन द आयुष्मान कार्ड ऑफ द पेरेंट्स, तो यहाँ पे भाई थर्ड स्टेटमेंट ही सही है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर हियर। ठीक है, क्योंकि पहली दोनों गलत है, कहीं पे 5 मेंबर्स नहीं है, उन्होंने बोला पर फैमिली है, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है। अब बेनिफिट क्या मिलता है, 5 लाख पहले नॉर्मल मिलता था, अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको भी 5 लाख दिया जाता अप टू 70 years। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 5 लाख 70 years के बाद सीनियर सिटीजन तो 5 लाख रुपीस दिया जाता है, अगर उनकी फैमिली के पास 5 लाख रुपया है तो उनको एडिशनल 5 लाख का टॉपअप दिया जाता है फॉर द सीनियर सिटीजन कवरेज। ठीक है जी। गवर्नमेंट के एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दी जाती है, जहां पे प्रीमियम है 1052 रुपए, बट कॉन्ट्रीब्यूशन पर्सन से नहीं ली जाती है। ठीक है जी। बात की जाए तो हमारा प्राइम सेक्टर है कि जो हमारी बॉटम पॉपुलेशन है उसको हम यहाँ पे कवर करना चाहते हैं। ठीक है जी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लेके आना चाहते हैं। 60-40 है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालय स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालय स्टेट जहां पे 90:10 रहता है। नॉर्मल बात करो तो यार ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है। 5 लाख होना चाहिए, फैमिली में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग पहले दिन से कवर की जाती है, 3 दिन का प्री हॉस्पिटलेशन, 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलेशन कवर किया जाता है। प्री ऑथराइजेशन अप टू 3 days, पोस्ट डेट ऑफ एडमिशन भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है। और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर सीनियर सिटीजन भाई 70 years के बाद हैं तो उनको न्यू डिस्टिंक्ट कार्ड दिया जाता है। ठीक है जी। अगर ऑलरेडी कवर्ड है तो उनको टॉपअप दिया जाता है। फिर क्या है, कोई भी सीनियर सिटीजन अप टू 5 लाख पर ईयर जो फैमिली बेसिस पे ऊपर कवर ले सकते हैं। अगर उनके पास ऑलरेडी कोई स्कीम है तो भाई उनकी ऑप्शन है कि या तो वो उस स्कीम को यूज करें या फिर वो इस स्पेसिफिक स्कीम को यूज करें, वो बेसिकली उनकी ऑप्शन है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, ये याद रखना है। ठीक है। चलो जी, बात करते हैं नरेगा स्कीम के ऊपर। ठीक है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एमजी नरेगा स्कीम हियर। अब देखो एमजी नरेगा जो है ना यार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नाबार्ड के लिए है, आरबीआई के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना ज्यादा आरबीआई में हमने क्वेश्चन नरेगा स्कीम पे नहीं देखे हैं। एनआरएलएम इसलिए पढ़ रहे बिकॉज एनआरएलएम की गाइडलाइंस हर बार आरबीआई ही निकाल रहा है। ठीक है। चलो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन हियर।
सो है जी द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन February 2, 2006 guaranteed the right to work here. Narega provides at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year here. Under the normal provision, the wage and material cost is 50:50. ये गलत है क्योंकि ये 60:40 होता है, यही यहाँ पे आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी ही यहाँ पे आंसर है क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट कॉस्ट है वो 60:40 होती है, 50:50 नहीं होती है। ठीक है, चलो। With reference to the National Apprenticeship Promotion Scheme, which of the following statements are true? NAPS 2.0 रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली थी। अब अगर मैं स्किलिंग की बात की जाए तो NAPS 2.0, स्किल इंडिया मिशन, कौशल विकास योजना सारी ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, तो हमें पढ़नी है, हमें याद रखनी है। The central government shares 25% of the prescribed stipend with a maximum of ₹1,500 per month apprentice. Stipend support is given during basic training period for fresh apprentice also. अब देखो NAPS 2.0 की बात हो रही है और बेसिक ट्रेनिंग वाला जो पर्सपेक्टिव है वो NAPS 1 का पर्सपेक्टिव था, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। The scheme targets enrollment of 46 lakh apprentices over 4 years. Again मेरा एलिमिनेशन मेथड काम आएगा, 2 none of the above भी आ गया यहाँ पे। पहले मुझे पता सही है, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर है। ठीक है जी, राधा देखिए यहाँ पे क्या है, 2005 लॉन्च डेट है, बट जो एक्ट आया वो 2006 में केम इनटू इफेक्ट आया है। जो नरेगा एक्ट है ना वो एक्चुअल में इफेक्ट में 2006 से स्टार्ट हुआ है। 2005 में से कई बार कहते हैं स्कीम 2027 में लॉन्च, 2017 में स्टार्ट हो गई, बट वो जब लॉन्च हुई, जैसे अब ELI है यार, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव, ये तो पिछली बार भी सरकार ने बोलती, बट केम इनटू इफेक्ट ऑन अगस्त, तो ये वाला पार्ट है वहां। ठीक है, ठीक है, चलो अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलो जी। अब 25% देता है, कोई भी स्टाइफंड नहीं दिया जाता इस स्कीम के अंतर्गत, वो दिया जाता था एक्चुअल में आपका NAPS के अंदर। ठीक है, 7500 रुपीज का। अगला क्वेश्चन आता है कौशल विकास योजना, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कौशल विकास योजना 4.0। ठीक है, गॉट दैट पार्ट आदा? ओके, गुड। कौशल विकास योजना 4.0 continues to track placements for all trained candidates। ठीक है जी, as we done in कौशल विकास योजना 1 to 3। अब मैंने क्लियर ही बोला था। ओके, योर स्वप्निल, ओके जी, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए जी। सो कौशल विकास योजना continues to track placement for all trained candidates। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि प्लेसमेंट ट्रैकिंग यहाँ पे बंद हो चुकी है, तो पूछा क्या है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसका मतलब भाई पहली स्टेटमेंट तो आंसर में होनी चाहिए। अब पूछा जो क्या है, 3 and 4 आर इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, दूसरा है जी प्लानिंग अंडर कौशल विकास योजना फॉलोज अ टॉप डाउन मॉडल वेयर सेंट्रल पॉलिसीज डिक्टेट्स लोकल इंप्लीमेंटेशन। क्या गवर्नमेंट कभी ऐसे करेगा कि सेंट्रल पॉलिसी करेगा? नहीं करेगा, देखते हैं आगे। कौशल विकास योजना 4.0 is a training centric initiative with district level nodal skill centers acting as a fundamental implementation unit। अब पूछा गया है अंडर स्किल हब स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव कवर्स नॉट ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 10 बट ऑल्सो कवर्स स्कूल ड्रॉप आउट्स एंड आउट ऑफ द स्कूल एजुकेशन यूथ हियर। अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो तो ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या पूछा, कौन सी स्टेटमेंट पूछा, इनकरेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं पहली 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, बाकी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी सही है, ये वाला पॉइंट भी सही है। बात करते हैं कौशल विकास योजना की, तो इंपॉर्टेंट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम है, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें स्किल प्रोवाइड करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि प्लेसमेंट्स ट्रैक होती थी, बट यहां पे उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, डी लिंक कर दिया है। ठीक है, हम 6 to 8, 9 to 12 स्कूल ड्रॉप आउट जो है उनको हम बेसिकली स्किल हब्स के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। 300 से 600 घंटे का कोर्स होता है, 15 से 45 की एज होती है। और अगर मैं बात करूं एक आता है इसके बाद RPL रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो बंदे ऑलरेडी किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं उनको बोला जाता है कि अपना एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए 18 to 59 ईयर्स में आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। बट पॉइंट यहाँ पे क्या कि यहाँ पे प्लेसमेंट मैंडेटरी नहीं है। फिर स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए बोला जाता है 15 to 45 की एज ग्रुप में भाई कि अगर आप जो हैं किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, तो ये बेसिकली पार्ट आता है आपको कौशल विकास योजना का। अगला आ जाता है जी स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, लास्ट के 5-6 क्वेश्चन रह गए दोस्तों। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। ठीक है जी,
क्योंकि तो थोड़ा सा मेरा अगेन गाइस डीलिंग विद माय सॉर थ्रोट हियर, तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। चलो, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे स्किल इंडिया मिशन के बारे में इनकरेक्ट है, पूछा गया। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। द मिशन इंक्लूड्स स्कीम्स लाइक कौशल विकास योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना। ओनली लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, यही गलत है भाई। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्रोवाइड की जाती हैं अंडर द स्किल इंडिया मिशन हियर, ठीक है। सो दैट्स अ पॉइंट हियर, दैट्स अ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड हियर, ठीक है जी। इट एम्स टू इक्विप यूथ विद इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। और इंपॉर्टेंट याद रखना है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेंट्स लाइक वीविंग, कारपेंट्री, ये भाई बिल्कुल इंक्लूड होते हैं, बट यहाँ पे याद रखना है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की ट्रेनिंग, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है जी, सोर इनिशिएटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बार ही स्किल इंडिया मिशन के नीचे इनिशिएटिव के अंदर जो है वो स्टार्ट किया गया है, सोर इनिशिएटिव। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस इनिशिएटिव अंडर द स्किल इंडिया मिशन हियर? To make college students AI ready with skills in AI basics, ethics and cyber security, to provide the advanced AI research scholarship for university students, to make school students, that is class 6 to 12th, AI ready with skills in AI basics, ethics and cyber security, to train teachers in AI programming only, and to build AI power robotic labs in schools. तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या, इसका ऑब्जेक्टिव है जी ऑप्शन नंबर सी, हमें जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली रेडी करना है ऑन द AI बेसिक्स, एथिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है जी। तो ये हमें यहाँ पे बेसिकली जो चीज है यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो सोर जो है वो 6 to 12th क्लास के बच्चों के लिए है, यंगस्टर स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, नॉट कॉलेज। तो ये बेसिकली कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए है ही नहीं, ये यंग बच्चों के लिए हमने स्टार्ट किया है। तो गोल है कि एक फाउंडेशन नॉलेज हम यहीं पे यहाँ पे बच्चों की बिल्ड कर सके, ठीक है। चलो जी, लास्ट 4 क्वेश्चन ऑफ द डे। The National Critical Mineral Mission aims to fast-track regulatory approvals for critical mineral mining projects and develop a stockpile of critical minerals in India. Under this mission, the Geological Survey of India will conduct how many explorations? Will conduct 1200 explorations. ठीक है, 1200 explorations जो है Geological Survey of India conduct यहाँ पे करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में बताया गया जी। फाइनेंशियल आउटले है 16,300 करोड़ रुपए यहाँ पे, ठीक है जी। अब 1200 एक्सप्लोरेशन जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा 2024-25 से 2030-31। इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का इनिशिएटिव है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी यहाँ पे कोलैबोरेट किया है फॉर दिस स्पेसिफिक इनिशिएटिव। फिर आ जाते हैं जी, अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन वन ऑफ द की फीचर इंक्लूड्स फिस्कल सपोर्ट ऑफ 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर सेटिंग अप। क्या सेटअप करना है जी? फॉर सेटिंग अप विच पार्ट इन इंडिया एंड अलॉन्ग विद द सपोर्ट फॉर दैट इज फॉर सेटिंग अप ऑफ दैट इज सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, ठीक है जी, इन इंडिया अलॉन्ग विद द सपोर्ट फॉर डिस्प्ले फैब्स। अब आपको पता है कि रिसेंटली हमने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्टार्ट किया था गुजरात में, और अभी इसी के अंदर ना हमने टेस्टिंग फैसिलिटी जो चाहिए होती है, ठीक है, जो हमने बोला ना टेस्टिंग फैसिलिटी, भाई वो टेस्टिंग फैसिलिटी भी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। कहां पे? गुजरात में स्टार्ट हुई है। आपको मुझे बताना है गुजरात में कौन सी प्लेस में स्टार्ट हुआ है आपका सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, कहां पे बना था, और मुझे यह भी बताना है आपको कि गुजरात के कौन सी एरियाज में रिसेंटली जो है वो हमारा ओसेट टेस्टिंग फैसिलिटी स्टार्ट की गई है इंडिया में, ठीक है। तो फटाफट मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या है। Coming to the second last question for the day, guys. Which of the following is not one of the objectives of Gyan Bharatam mission? Digitization to creation of national digital manuscripts, capacity building in manuscriptology, paleontology and conservation, outreach through seminars, exhibition and cultural programs, promoting competitive research grants for biotechnology and life science. अब देखो यार, ये जो स्कीम है और ये जो क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या आपको हक रट्टा मारनी नहीं मारनी, बट यहां पे पूरे क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट है, थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा लग रहा है, बायोटेक्नोलॉजी वाला। कि बाकी तो तुमने हिस्ट्री की बात की ज्ञान भारतम में, यहां पे तुमने बोला साइंटिफिक प्रिजर्वेशन करोगे, बिल्कुल सही है, बट तुम बायोटेक्नोलॉजी पे क्या काम करोगे? वो तो लेना देना ही कुछ नहीं उसके साथ। तो यही यहां पे आंसर है। हमेशा एग्जाम में सोच के जाओ कि हमें हर चीज बहुत ओपन माइंडेड से चीजों से देखनी है। पूछा गया है नॉट, बहुत ओपन माइंड होके जाओ एग्जाम में, स्पेसिफिकली स्कीम्स वाले पार्ट में,
कॉम्प्लिकेशन स्कीम्स में इसलिए नहीं आ रही कि आपको याद नहीं है, कॉम्प्लिकेशन इसलिए ज्यादा आ जाते हैं बिकॉज जब आप क्वेश्चन देखते हो ना तो आप बोलते हैं ये क्या आ गया। एप्लीकेबिलिटी स्कीम्स में बहुत ज्यादा मैटर करती है, थोड़ा सा एप्लीकेशन माइंड से क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी, अब आ जाते हैं हमारे आज के फाइनल सवाल के ऊपर जो कि है पीएम कुसुम स्कीम के ऊपर। ठीक है, तो बताइए जी, विद रेफरेंस टू कंपोनेंट्स ऑफ पीएम कुसुम स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंपोनेंट बी जो है वो सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर टू प्रोवाइड डाई टाइम की बात करता है। सेटअप कंपोनेंट ए बात करता है सेटिंग अप ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड और स्टिल माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स ऑन फार्मर्स लैंड, ये बिल्कुल सही है। फोकस ऑन डी डीजलाइजेशन बाय इंस्टॉलिंग ऑफ ग्रिड स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स। तो पूछा यहां पे ये कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। ठीक है जी, सॉरी दोस्तों, तो यहां पर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी बी और सी इंटरचेंजेबल लिखी हुई है। ठीक है, एक्चुअल में कंपोनेंट बी कहता है कि हमें सोलराइजेशन करना है एग्रीकल्चर पंप्स को, कंपोनेंट सी करता है कि हमें एग्रीकल्चर फीडर्स पे काम करना है। ठीक है जी, चलो, तो दोस्तों ये था हमारा सेशन, दैट्स द स्पेशल मैराथन सेशन दैट वी हैव कंडक्टेड फॉर यू। आई होप द सेशन वाज रियली फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है जी, वी गाइस हैव गिवन आवर बेस्ट। बीच में एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा है यार, उसको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है जी, कोई चक्कर नहीं, तो एक दो क्वेश्चंस हमने आंसर ठीक दिया, तो थोड़ा सा एक ज्यादा टाइपोग्राफिकल एरर है, वी विल रेक्टिफाई दैट पार्ट। इंपॉर्टेंट थिंग, इफ आई से दैट द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस स्पेसिफिक सेशन इज, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है यार कि सबसे पहले आपको अपने एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसको हमने आज डिस्कस किया। नोटिफिकेशन है, रिपोर्ट्स हैं, स्कीम्स है। ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, और इसको कंडक्ट करने का हमारा रीजन भी यही था कि हम इसको क्यों 1 वीक प्रायर कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम नेक्स्ट वीक से बात करें 11th ऑफ सितंबर सैटरडे से हम लोग आपके स्कीम्स मैराथन सेशंस लेके आएंगे, सारे मैराथन स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर मैराथन में कई बार क्या होता है, मैराथन से पहले ना अगर एक इनिशियल एक कह सकते हैं आंखें खुल जाएं तो वो यहां से आप उस चीज को कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब यहां से आपको पता लग जाएगा ये गलती कर रहा हूं, इसको ना करूं ताकि मैं 11 तारीख को टेस्ट कर सकूं, यार ये गलती नहीं रिपीट करनी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है जी, हाँ मैं बेसिकली वही स्कीम है जो हमने मिनिस्ट्री वाइज तो नहीं, बट हमने वही स्कीम्स उठाई है जो आपकी आरबीआई में आने के चांस ज्यादा है। ठीक है, दूसरा यार आपको यहां से ये देखना है, अगर आपने कोई चीज पढ़ी हुई थी और आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ है, तो वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, आपने क्या चीज जो थी वो सोचे कि यार ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को देखना है। आगे गाइस, बिफोर आई रैप अप द सेशन गाइस, देखिए हम आपके लिए एक चीज कल ही हमने लॉन्च किया आपके लिए, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज। तो अगर आपको दोस्तों करंट अफेयर्स की और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारी अल्टीमेट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको स्ट्रक्चर्ड लेवल में सारे क्वेश्चन जो सारी चीजें वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आरबीआई नोटिफिकेशन हो, स्कीम्स हो, रिपोर्ट्स हो, जीए, ईएसआई, फाइनेंस, लास्ट मिनट में प्रैक्टिस करनी है तो आप उस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आरबीआई किसी कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं EduTap के साथ, तो फिर वो कोर्स आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, बिकॉज वो चीज आपको ऑलरेडी उन कोर्सेज में मिल चुकी है। ठीक है जी, रजनीकांत सिंह सर क्या नाबार्ड के लिए हेल्पफुल? देखिए नाबार्ड के लिए मैं नहीं बोलूंगा, स्कीम्स तो नाबार्ड के लिए भी वैलिड ही है या फिर रिपोर्ट्स भी वैलिड ही है। पॉइंट यह है कि जो हमने क्वेश्चंस तो देखो दोनों के लिए वैलिड है, बट पॉइंट है कि जो प्राइमरीली फोकस है सेशन का वो आरबीआई पे ज्यादा था। ठीक है, तो अब आई विल नॉट बी टेकिंग मोर टाइम ऑफ योर्स बिकॉज थोड़ा सा मेरा भी गला बैठा हो, बट आई विल बी वेटिंग जस्ट फॉर 1 to 2 मिनट्स मोर। अगर आपको कोई भी डाउट है गाइस आप मुझसे पूछ लीजिए। देखो यार, अगर शेख जी अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखोगे तो पिछले 2 साल से जो ट्रेंड हुआ है वो यही हुआ है कि कहीं ना कहीं आपके रिपोर्ट्स और नोटिफिकेशन से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, स्कीम से क्वेश्चन 7-8, पिछले बार तो 4-5 ही थे, तो स्कीम से क्वेश्चन कम है। बट आरबीआई हमेशा रेडी रहता है सरप्राइज देने के लिए। तो मैं बोलूंगा दोस्तों आपको कि आप रेडी रहे ना, कि आप ये मत कोशिश करना कि स्कीम्स को छोड़ दें। अगर स्कीम्स वीक है तो मैंने ना आपने इसी चैनल पे आप जाएंगे हमारे रेगुलेटरी बॉडीज पे, तो हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम्स की लिस्ट बनाई है, आप उसको देख लीजिए ताकि आप उनको रिवाइज कर लीजिए। और उसके साथ मैंने यूट्यूब पे सेशंस लिए हुए हैं उन सभी स्कीम्स के, तब वो सेशंस भी देख सकते हैं, है ना। तो वही करो। मैं आपको भी ये एडवाइस करूंगा कि यार अगर आपकी स्कीम्स वीक हैं तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दी हुई होगी, आप इसी चैनल पे चले जाइए,
हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां पे मैंने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम्स की लिस्ट दी है, उसमें हार्डली कुछ 4-5 स्कीम्स ही ऐड होंगी। उन स्कीम्स पे मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे सेशन ले चुका हूं, आपके ये सेशन भी हमने ले लिया है, तो आप वहां पे जाइए, उनको वीडियो थोड़ा सा उनको 2x पे जाके डिटेल पे वो स्कीम समझ लीजिए, ठीक है। प्लस जो मैंने आपको यहाँ पे सेशंस लिए हैं, जैसे मैंने मंथली रिवीजन सेशंस लिए स्कीम्स के, वो आप देख लीजिए। प्लस आप यहाँ पे जो स्पेशल मैराथन सेशन आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मैराथन सेशन अपकमिंग आने वाला है तो उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने स्कीम्स एरिया के लिए। पर जो आपकी एरिया स्ट्रांग है, स्ट्रांग एरियाज है, उस पर जरूर फोकस करो यार, क्योंकि ये ना हो कि वीक को इतना कर लो कि यार अगर क्वेश्चन सिंप्लीफाई आता है तो मैं कर सकूं, बट जो स्ट्रांग एरिया उसको फिर आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि अगर उस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया उसने तो यू शुड बी रेडी। See, John, the thing is, this year we are not basically providing any sort of boosters. If I talk about freely, तो कोई नहीं दे रहे हैं। हमारे कोर्सेज में अवेलेबल हमने मंथली बूस्टर्स दिए हैं, वो हम ऑलरेडी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी, दैट इज द थिंग। तो मंथली बूस्टर्स हैं जो कोर्स में अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ। तो अभी तक कोई प्लान नहीं है बूस्टर वाला, ठीक है, रिलीजिंग ऑफ अ बूस्टर हियर, बट देन ऑल्सो वी विल सिट ऑन दैट थिंग, वी विल हैव अ डिस्कशन विद द मैनेजमेंट। अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग प्लान करेंगे, बट अभी तक एज ऑफ नाउ कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है, ठीक है। चलो गाइस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट यार फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है जी, बिकॉज इट्स नाउ अ टाइम फॉर यू गाइस टू टेक अ रेस्ट ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो, ठीक है जी। रेस्ट कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है, अपनी तैयारी कीजिए। वही चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ जी, जो आपका वीक एरिया उस पर थोड़ा सा काम कर लो कि यार बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि अगर उसमें से पेपर आ जाए तो मैं बिल्कुल ही हिल जाऊं, वो भी मत करो। बट हाँ यार, जहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एरिया आपको पता है कि मैंने बहुत अच्छी तरह मेहनत की है, मैंने पढ़ा है, उसको मत जाने दो, ठीक है। चलो जी, on that note guys, I wish you all the best for the examination. Really thank all of you to stay till the end in this session, that is till this time. तो I think almost आपका 8 घंटे का ही सेशन है, तो आई रियली विश यू एंड आई होप यू टेक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस सेशन। कोई डाउट है यार, कोई इशू नहीं है। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग समबडी, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, बेटर क्या है कि आप हमसे कॉल कनेक्ट करवा लीजिए, दैट इज एट hello@edutap.co.in, उस पर मेल कर दीजिए या फिर कॉल कर लीजिए ऑन द नंबर 8146207241, ताकि कोई भी डाउट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप हमसे कनेक्ट करके उस कॉल को उस चीज को रिजॉल्व करवा लो, ये सोचो, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मयंक, आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज गाइस एवरीबॉडी नोट डाउन दिस नंबर 8146207241, ये हमारा नंबर है जी, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कोई डाउट आता है आपको ऑन दिस थिंग, hello@edutap.co.in, तो यहां पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। बिकॉज गाइस कोई भी आपको डाउट है, बेटर है कि अपना डाउट रिजॉल्व कर लो, बिकॉज टाइम कम रह चुका है। मैं यही बोलूंगा, आप मेल कर देना, कॉल कर लेना हमारे साथ 1-on-1, ताकि जो डाउट है वो रिजॉल्व हो जाए, आप जो फाइनल जो आपके मन में जो मेन चीज है ना एग्जाम डे पे, वहां पे ज्यादा फोकस हो सके, ठीक है। चलो गाइस, ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन नाउ, ठीक है जी। कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, बाय।